Innovators are being boasted in India. That means we're boasting about innovators in India, and it's become a land of startups with over 60,000 startups operating in the country. And he also took a jibe at Congress and said there is no middleman in my government. All benefits and subsidies directly go to the people of India. On Monday, Prime Minister Modi addressed the Indian diaspora in Berlin. The speech, Prime Minister spoke about India's progress, hitting out at previous governments. He said the country is same, but now the government gives results. आठ साल पहले 200, 300 या 400 स्टार्टअप्स आज 68,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स दुनिया के सारे पैरामीटर्स कह रहे हैं कि इसमें दर्जनों स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बन चुके हैं। पिछले साल पूरी दुनिया में हुए रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स, कान खोल दो, रियल टाइम डिजिटल पेमेंट में से मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। अब भारत छोटा नहीं सोचता है। रियल टाइम डिजिटल पेमेंट में से 40% भागीदारी भारत की है। पहले तो हमारा देश की विशेषता देखिए साहब, देश एक संविधान दो थे, मालूम है ना, 2 संविधान थे। सात दशक हो गए दोस्तों, 7 दशक हो गए एक देश एक संविधान लागू करते करते। अब लागू हुआ दोस्तों। पिछले 7-8 साल में भारत सरकार ने डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीधा एक क्लिक किया, जो हकदार है उसके खाते में पैसे चले गए। डायरेक्ट जो डीबीटी के द्वारा हमने पैसे भेजे वो अमाउंट है 22 लाख करोड़ रुपए से अधिक। यानी अब आप जर्मनी में हैं तो आपको बता दूं, $300 बिलियन से भी ज्यादा बेनिफिशियरीज के खाते में पैसे पहुंचे हैं। बीच में कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट की कंपनी नहीं, कहीं कट मनी नहीं। सरकारी मदद हो, स्कॉलरशिप हो, किसान को फसल की कीमत हो, सब कुछ अब डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। अब किसी प्रधानमंत्री को ये कहना नहीं पड़ेगा कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं और 15 पैसा पहुंचते हैं। वो कौन सा पंजा था जो 85 पैसा घिस लेता था। Prime Minister Narendra Modi got a rousing welcome from the Indian diaspora in Berlin, and him along with his German counterpart ended up meeting to discuss the Russia-Ukraine conflict and tried to find a plausible solution to the conflict and work towards a multipolar world order. Now, is that likely to happen, or is that really a tall order? Let's find out. Надають чіткі гарантії безпеки. In the shadow of the Ukraine war,
As conflict draws Europe and NATO into another whirlpool of uncertainty, these images couldn't possibly be speaking any louder. With fanfare typical of the Indian Prime Minister's foreign visits, Modi has begun a high-speed tour of Western Europe. While the United States has indulged in public lecturing and gyan over India's stand in the Russia-Ukraine conflict, Germany has been praising India, recognizing just how singular India's foreign policy maneuvers on this issue have been. India numbers amongst those countries that are of greatest importance with regard to this perspective, not only because it is the country with the biggest population, but also because of the part it plays and the share it has in the global economy. India is amongst the very important partners of ours here. The world can only develop well if we are clear as to the fact that future relations in the world will be characterized and marked by many countries, not by a few powerful countries. As head of the G7, German Chancellor Olaf Scholz, like his predecessor Angela Merkel, shares a warm equation with the Indian Prime Minister. But that doesn't mean Germany isn't looking to leverage India to pile the pressure on Putin's Russia. Europe has specially aligned, and these are the countries which have aligned itself against Russia. They call it the Russian invasion of Ukraine. India, as of now, has always maintained a very balanced stand on the entire issue, a neutral stand. So it's a very important geopolitical, if you talk about India's power, its emerging value of its stand in the entire Russia-Ukraine war, and how Prime Minister Modi takes this relationship forward with Europe. और फिर जब वो आए तो लगा हम अभी से इतने तरोताजा है कि हम उनका पूरा लाइफ टाइम वेट कर सकते हैं। आप भी बताइए, आप मिल पाए? हाँ मिल पाए, हम एकदम सामने खड़े थे। आते बराबर मोदी जी ने कहा शुक्रिया, आप लोग इतने सुबह से आए हुए हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगा वो सुन के कि उन्हें भी पता है कि लोग कितने वेट कर रहे हैं उनका और उत्साहित है उनके लिए। बिल्कुल, जैसे वो हमारे तरफ आए और नमस्ते करके जो मोमेंट था, मतलब और ढोल, आप ढोल बजाने वाले हैं तो ढोल में इनके अब ज्यादा जोश होगा, पूरा ढोल ताशा है इंटू 200 पावर। गरबा के नृत्य के साथ जो जोश यहाँ पर महिलाओं में दिख रहा है, उत्साह तमाम भारतीयों में दिख रहा है, और इनके सब के बीच ये गरबा का वो रंग है जो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की बढ़ती हुई ताकत का एक नजारा है। जब आप जर्मनी में बर्लिन में ऐसी महत्वपूर्ण जगह पर, जो सबसे महत्वपूर्ण इमारत एक तरह से ब्रांडेनबर्ग गेट है, उसके सामने आप मिनी इंडिया देखते हैं। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के साथ साथ ये देखिए, अब यहाँ पर जो मौजूद पुरुष है वो भी गरबा करने लगे। गुजरात का जो रंग और जोश यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको कोई टोक नहीं सकता। The color and fervor that frames the start of Modi's Europe tour also carries a lot of signaling, underscoring a popular leader who has spent the last 2 months navigating a series of global taunts for abstinence on Russia's invasion. With this turbulent global scenario as a canvas, the Europe tour is Modi's first international platform to flex India's uniquely forged foreign policy. A message to the world that India shapes its own relations and cannot be pressured by any side. किस युद्ध में कोई विजयी पार्टी नहीं होगी, सभी को नुकसान होगा। इसलिए हम शांति के पक्ष में हैं। From Germany, Modi heads to France, where a newly victorious President Emmanuel Macron is expected to sustain the warmth for the visiting Indian Prime Minister. Even while the Biden administration has taken public potshots at India, the two European NATO powers have handled things much more delicately, recognizing that the time to lecture India on foreign policy is perhaps history. Bureau Report, India Today. The opposition has hit out at Prime Minister Modi for the jibe that the Prime Minister took on the opposition on the middlemen during the Congress regime, and politics has peaked at the moment. Congress has slammed the Prime Minister, accusing him of behaving like a BJP karyakarta. Congress said Prime Minister must stop behaving like a BJP karyakarta and instead behave like a Prime Minister, and that he's representing the whole country and not just the BJP voters. The backlash came after Prime Minister said that now no Prime Minister can say that they transferred 1 rupee but only 15 paise reached the people. Prime Minister in a veiled attack at Congress also said he wondered whose palm, referring to Congress symbol, rubbed off 85 paise.
Breaking news just coming in. There are clashes that have broken out in Jodhpur on Eid. We're getting you all the details. Dev Ankur is getting us all the details of these clashes over the installation of flags and loudspeakers in Jodhpur. It was a midnight clash between two communities. Stones were pelted. Situation currently under control and the internet services stopped. Heavy police force has been deployed at Jalori Gate, Chauraha in Jodhpur. And Chief Minister Gehlot has appealed for peace and calm. Let's get Dev Ankur Vadhavan on this particular story. Dev, how did this clash begin and what was the trigger point? Midnight clashes and clashes between two communities. What really happened right there? Well, Katie, the clashes broke out in Jodhpur around midnight. What actually happened was that over the installation of flags and loudspeakers, these clashes broke out between two communities. What has happened is that there was police patrolling to ensure that that the clashes do not aggravate further the situation, which already seemed to be tense, and that is why an internet ban has been imposed in the entire district. This has been done on the instructions or the orders of the Divisional Commissioner Himanshu Gupta. In fact, this particular area, Jalori Gate, has a certain number of members from the minority community, and when the clashes broke out, the police, in a bid to ensure that there was no further, tense situation, that lathi charge was conducted out there also, and some of the journalists were also, caught in the melee, and some of them were also, beaten up badly out there. The situation remains under control, but it is currently tense. The police, apart from resorting to lathi charge, had also, resorted to applying tear gas shells out there, and that is how the situation was brought under control. Today is Eid, and on the occasion of Eid, this kind of a situation erupting in Jodhpur, the administration is trying to keep an eye on the entire situation. Well, the good news, though, Dave, is that the situation is at the moment calm and under control. We leave it at that. Thanks so much for joining us with the very latest details. Well, the loudspeaker controversy in Maharashtra is just getting louder and louder by the day. There is a big debate that is being ignited over this particular controversy. MNS Chief Raj Thackeray has reiterated his 3rd May ultimatum to remove loudspeakers, threatening to play Hanuman Chalisa outside mosque on double the volume if his demand was not met with. OAC has slammed Shiv Sena and BJP over Thackre's comment, which is Raj Thackeray's comment. He claimed that government cannot take action against Chief Minister's brother. He also claimed that it was all a part of the BJP RSS game plan. Now the loudspeaker debate has reached the national capital. Delhi BJP MP Parvesh Sahib Singh wrote to the governor demanding UP-like crackdown on loudspeakers. The leader said that the Supreme Court order on loudspeakers is not being strictly followed in Delhi, claiming that UP-like treatment is required for the law to take its own course. जब वहां की मुकामी पुलिस ने इनको कंडीशन के साथ परमिशन दिया है, तो उनको चाहिए कि फौरन सो मोटो एक्शन ले कि एक बार हो जाने दो। क्या हो जाने दो? क्या एक शख्स पूरे स्टेट के पीस को दांव पे लगाएगा? क्या एक शख्स थ्रेटन करेगा औरंगाबाद की हिंदू मुस्लिम दलित के भाईचारगी को? तो पुलिस क्या कर रही है? और क्या ये क्या मतलब है कि एक बार हो जाने दो? क्या हो जाने दो? क्या सो मोटो एक्शन पुलिस नहीं लेगी? लगाइए 153 to 95 और अरेस्ट करके जेल को भिजाइए, क्योंकि शिवसेना की सरकार है और वो अपने भाई के खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। वही एक नवनीत राणा अगर उद्धव ठाकरे घर पर जाकर कुछ पढ़ना चाहती थी तो आपने उसको अरेस्ट करके सेडेशन लगाया। यहाँ आपके भाई का मामला आ रहा है, वो बकवास कर रहा है, पूरे पीस को बर्बाद करना चाहता है, धमकी दे रहा है। भाई 4 तारीख क्या स्टेट को कोई रैंसम पे होल्ड कर सकता है क्या? मैं आपके जरिए उनको कहना चाह रहा हूँ कि हमारा मजहब भी ये कहता है, हमारी तहजीब भी ये कहती है कि वो हमारे मेहमान हैं। अगर वो आ रहे हैं यहाँ पर तो आप सभा में जाने से पहले हमें बताइएगा कि हम सब साथ में मिलकर है, तो आप स्टेज पर जाकर आपको जो बोलना है आप बोलिएगा उसमें है? लेकिन हम दुश्मन नहीं है। आपकी अलग राजनीतिक पार्टी का एजेंडा है, हमारी अलग राजनीतिक पार्टी का, दूसरों की राजनीतिक पार्टी का अपना अपना एक एजेंडा है इसके अंदर। तो आपके जरिए मैं आपको ये दावत दे रहा हूँ कि आप आइए, हमारे साथ इफ्तार करिएगा, उसमें हम सब साथ में मिलकर करते हैं।
Paras Dama is now joining us from Mumbai for the very latest on this. Paras, it really is bizarre how Raj Thackeray again and again is talking about removing the loudspeakers from the mosque, but has not uttered a single word when it comes to the loudspeakers that get played out of places of worship in the Hindu religion as well. If he's trying to make a point here about the noise pollution, then it should apply across the board. Has he really broken his silence about, every other community and the loudspeakers getting played in places of worship outside of the mosque? Chaiti, the situation is not getting bizarre. It's the worst situation ever Maharashtra and Mumbai has faced. Raj Thackeray continuously telling that if the loudspeaker will not be removed from the mosque on 4th, he will reply in his own way. But 2 days before, when he conducted a Sabha in Aurangabad, he also said that first, all the loudspeaker should be removed from the mosque, and after that, all the loudspeaker will be removed from every religious places. But for now, the main point of Raj Thackeray is that the loudspeaker which has been put illegally up the mosque is the main issue that Raj Thackeray is fighting, or Raj Thackeray is making his point. Yesterday, Oveshi also targeted Shiv Sena and Raj Thackeray, that Shiv Sena is not doing anything because Raj Thackeray is Uddhav Thackeray's brother, and that's the main issue. He is not doing anything regarding this. Muslim community has been threatened by Raj Thackeray, but Uddhav Sarkar is not doing anything. So these are the major points which is happening right now in Mumbai and Maharashtra, and which are very serious because tomorrow is 4th, and if the loudspeaker will not be removed from the mosque, Raj Thackeray had already threatened and already warned Sarkar that if it will be not removed, he will reply in his style. He will play Hanuman Chalisa near the mosque in double volume. So right now situation is very bizarre in Mumbai and Maharashtra. Chaiti. It is a very precarious situation to be in Maharashtra with this kind of a row, with Raj Thackeray causing up to one community and really targeting another community and not making a demand of the loudspeakers going away across the board. Because if he was really concerned about the noise pollution issue, then this should apply across the board. But here there is a specific targeting against a certain community by Raj Thackeray, and it's evident for all to see the pleas that he's making and the ultimatums that he's given. I want to take this across to Kumar Kunal, who's joining us from Delhi as well. Kumar, while you have Raj Thackeray raking up this controversy in Maharashtra and situation getting bizarre there, one BJP MP or a leader, if I'm not mistaken, correct me if I'm wrong, has made a similar demand in Delhi and has written to the governor. What are we picking up on that front? Not just a single letter. There are several letters which have been flown to yesterday and today on the eve of Eid. There is a point that the communal harmony, especially in Delhi, that has never been questioned. That is somehow these MPs, the Parvez Sahib Singh Verma, who has written letters to Lieutenant Governor, Commissioner of Police, and even MCD Commissioner, he has written that communal harmony due to loudspeakers is on stake, and that's why the loudspeaker should be removed immediately from the places of worship. But another letter, which has come up from Delhi BJP President Adish Gupta, he is taking another plea. He is writing to Arvind Kejriwal, who is Chief Minister of Delhi, and he is writing that since noise pollution is a big cause of concern, so these loudspeakers should be removed. So even in the BJP, there are two separate voices. There are two separate set of letters. One is talking about communal harmony. The second one is talking about the noise pollution. Even BJP leaders are not sure that why they are opposing loudspeakers and why they haven't done so far. When a festival of Muslim community Eid is there, why such pleas are coming up suddenly in the night. So these are the things which are coming up, but definitely the politics will be played upon this, and we are also expecting some political
political allegations. Kumar Kunal, we are expecting a political backlash on the back of these developments right there. Just look at what is happening in Maharashtra, and that is now slowly looks like it is extending to Delhi as well, with all these comments that are coming in from the BJP ministers. We leave it at that, but now our next focus is on Rahul Gandhi, who was denied permission to speak at Osmania University when he went there, and now the Congress party has alleged that the university is under the state government pressure. Take a look at this report, and then Ashish joins us from Hyderabad for more on this. High drama at the Osmania University in Hyderabad. Rahul Gandhi's planned visit to the university this week has sparked a big face-off. Congress claims the university has denied Rahul Gandhi permission to interact with the students on the campus. The Youth Congress held protest against the University Vice-Chancellor on Monday. The Telangana Mahila Congress too hit the streets. 17 NSUI workers were arrested and sent to 14-day judicial custody. Congress alleges the university is blocking Rahul Gandhi under pressure from the KCR government. स्टूडेंट से अगर कांग्रेस पार्टी के नेता अगर इंटरैक्ट हुए तो केसीआर के जितने भी गलत काम है और नोटिफिकेशंस भी नहीं दिया हुआ है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी पूरा खत्म कर चुका है, ये सब सारे चर्चा आएगा तब केसीआर को दिक्कत होगा. इसीलिए चीफ मिनिस्टर यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर के ऊपर दबाव डाल के हमारा परमिशन को रिजेक्ट करवाया. Congress has now filed a petition in the High Court seeking permission for Rahul Gandhi to visit the university. The university has rejected all the charges. It has clarified that no political meetings are allowed on the campus. The BJP has lashed out at the Congress, calling it anarchist. BJP strongly condemns the anarchist politics of Congress party. Rahul Gandhi wanting to go to Osmania University is the biggest joke of his trip. He has been given permission to conduct a public rally in Warangal. He should be doing just that. And when the permission is not being granted, they want to anyway go there and disrupt the academic activity. So what kind of politics is this? What kind of a futuristic vision which Rahul Gandhi keeps talking about is this? Rahul Gandhi is set to visit Telangana on May 6th and 7th. The Congress is firm it will take Rahul Gandhi to the campus for an interactive session with students. According to sources, Rahul Gandhi will be meeting arrested Congress activists, including the state NSUI president, in jail. The political face-off comes even as Congress is struggling to create its own space in Telangana, where the party has not won a single election since the formation of the state. Bureau Report, India Today. We're now being joined by a reporter to get us more on this story. Ashish is joining us live from Hyderabad on the story. Ashish, why don't you tell our viewers about what explanation does the administration have at the moment on denying permission to Rahul Gandhi at the Osmania University, because the Congress is alleging that the university is under pressure from the state administration? So, Chate, it's an all-out political battle between ruling Telangana Rashtra Samiti government and Congress party, which is in opposition in Telangana. Congress party has planned a visit of its MP, Kerala MP Rahul Gandhi here in Telangana. Rahul is scheduled to arrive in Telangana in Hyderabad on May 6th. He'll go to Warangal, second largest city of Telangana. There he'll address a public meeting on 7th. The Congress party, the state unit of Congress party, had planned an interactive session at Osmania University of Hyderabad. Osmania University always been the epicenter of separate statehood movement, separate Telangana statehood movement, and that's why Telangana Congress wanted to take Rahul Gandhi to the university, where a student interaction with the student was planned.
But now the university administration say that they have passed a resolution last year in 2021. The executive council of the university, they passed a resolution disallowing any kind of political activity inside the campus, and that's the reason university is refusing the permission to Telangana Congress or NSUI leader who wanted to take Rahul Gandhi to the university. All right. NSUI has approached to Hyderabad High Court, but Hyderabad High Court also refused to intervene in the matter and rejected the petition of Telangana Congress and asked university to take a decision on it. All right. Thank you so much, Ashish, for joining us with those details right there. We'll continue updating the story for our viewers. In the meanwhile, we're moving on to Amit Shah's visit to Karnataka, which is coming on the backdrop of a possibility of a cabinet recheck and a change in guard in Karnataka. Chief Minister Basavaraj Bommai is going to be hosting a dinner for the Home Minister at his official residence, and that's going to be a crucial one. Shah and Bommai are going to have one-on-one discussions of the boiling political situation in Karnataka, especially with one more year to go for the assembly elections. A month back, during his last visit, Shah attended the party core committee meeting, set a target of 150 seats in Karnataka election for 2023 for BJP. He's on an official visit to the state. He's going to be taking part in the valedictory function of Khelo India University Games. He's going to be paying tribute to 12th century social reformer and Lingayat saint Basavana on the occasion of Basavana Jayanti. That's the latest coming in from Karnataka. The breaking news is coming in from Mysuru, where there has been a gang war that is being reported inside a bar in Bannur near Mysuru due to old rivalry of a gang. 4 to 5 members attacked 29-year-old Dayanand with beer bottles and other things on Monday. The whole incident was caught on CCTV camera, which was installed at the bar, and we're getting you those visuals as well if you see on your screens. The FIR has been registered at Bannur police station, and speaking to India Today, the SP of Mysuru said that 2 accused have been arrested so far. They had an old rivalry with the victim Dayanand, who's rowdy sheeter and hails from Bannur. Dayanand has mentioned mainly 3 names and others in complaint. Rest of the accused are absconding and the probe is going on. Slipping into a break, but when we return, India's power crisis is worsening. Many states are out of coal supply. We're bringing you the story in just about a bit. Stay with us. India Today TV wins big awards at ENBA 2021. Bags the best channel of the year. Shines bright with 15 goals. Gaurav Sawant, Best Anchor, English. Preeti Chaudhary, Best Continuing Coverage by a Reporter, English. Shivarur, Best Anchor, English. Udayan Mukherjee, Best Business Program, English. Rahul Kamal, News Director of the Year. India Today Group sweeps with a record 90 awards. India Today Group, the gold standard of journalism. Will Metaverse replace our reality? Can it? We don't know that yet, but in its present form, it kind of is a duplicate of the physical world. But the only way to access it is via the internet. The idea of Metaverse has its roots in many sci-fi narratives from the 90s. It exists either as immersive online games, workrooms, virtual concerts, or much more. So what can you do in the Metaverse? Apparently a lot. From watching your favorite pop star to working as personalized avatars in a virtual workspace, Metaverse can make that happen. It will eventually be possible to do exactly what we do in reality thanks to a virtual reality freed from physical constraints. As interactions increase, it will be possible to meet people, make purchases, and pay in cryptocurrency or go sightseeing while staying at home. Well, virtual tourism seems like a nice idea in the comfort of your room.
What tools would you need for Metaverse? You'd need virtual reality headsets and a good internet connection for starters. Virtual reality headsets will allow us to immerse ourselves in 3D worlds in the form of avatars animated by our movements. But it will require an enormous amount of computing power to allow millions of people to act simultaneously in that virtual space. Even devices that recreate taste, smell, and touch could be invented. What do you think? Are you ready for the Metaverse? There is a heat wave in India, and amidst this particular heat wave, there are many states that are going through a massive power crisis on the back of the shortage of coal. There are many states in India that are going through power cuts for 4 to 5 hours in this sweltering heat as well. In fact, Delhi Chief Minister and Rajasthan Chief Minister have also written to the centre about the coal shortage, but the centre has refuted the claim, saying that there is enough coal for the power to be generated. Here's the complete story. India is staring at a power crisis as coal reserves in several states are quickly running out. Several states across the country are reeling under long power cuts. In Jammu, people frustrated with power snags and disruption in water supply staged protests. सर 2 प्रोजेक्ट यहाँ लगने थे बिजली के रोशनी एक्ट के अंदर ज़मीनें बेच करके वो डाकू पैसा खा गए और माननीय उपराज्यपाल की उन डाकुओं को पकड़ो क्यों नहीं लगे प्रोजेक्ट। आज वो अख्तारी की बातें कर रहे हैं, आज वो शेरी की बातें कर रहे हैं, लेकिन अपने गिरबान के अंदर झांक करके देखें वो माल किसने खाया रोशनी एक्ट का। कृपया लाइन पर बने रहें, आपकी कॉल ग्राहक सेवा प्रतिनिधि के पास स्थानांतरित की जा रही है। An India Today reality check showed the calls to Uttar Pradesh helpline number giving little respite. बिजली कटौती हो रही है और कोई जवाबदेही नहीं है। केवल बिजली कटौती ही नहीं बल्कि बिजली का जो हेल्पलाइन नंबर है यानी कि 1912 उसको भी ऐसा लगता है लू सी लग गई है। हम इस वक्त मौजूद हैं उसी हेल्पलाइन नंबर के ऑफिस में और ये आपको तस्वीरें में दिखा रहा हूँ। 1912 का ये ऑफिस है, लखनऊ में ये है और हम यहाँ पर कंप्लेंट्स ये हो रही हैं कि लोग जब इस नंबर को डायल करते हैं तो उनकी कॉल ही नहीं कनेक्ट हो रही। यानी कि ये नंबर इसलिए है कि अगर आपके घर बिजली गई है और जानकारी लोगों को करनी होती है कि बिजली कितनी देर में आएगी, तब वो इस नंबर को डायल करते हैं और उनको जानकारी दी जाती है कि बिजली इतनी देर में आएगी। यूजुअली ये नंबर एक्टिव रहता है। बिजली तो सर इस समय इतनी कट रही है कि क्या बताएं। बिजली आती है जाती है, रात में काटती है, दिन में काटती है, दिन भर बिजली काट रही है इस समय। और गर्मी के चलते इतना बिजली काट रही है कि गर्मी से परेशानी हो जा रही है बहुत ज़्यादा। थोड़ी बिजली की व्यवस्था डिस्टर्ब हुई है, कोयले के संकट की वजह से बिजली की व्यवस्था थोड़ी सी ध्वस्त हुई है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। योगी जी प्रदेश में महंगे दर पे अदर स्टेट से बिजली खरीद के बिजली की सुचारू व्यवस्था 2-4 दिन के अंदर कर देंगे। जनता को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज में बिजली कटौती है लेकिन वो तो फॉल्ट वगैरह के चलते हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सरकार की मंशा है कि हम बिजली काटें, लेकिन पहले से बहुत अच्छी व्यवस्था है। पहले 4 घंटे बिजली आती थी, आज कम से कम 14 घंटे 15 घंटे बिजली या 12 घंटे मिल रही है। Amid the raging crisis, Home Minister Amit Shah chaired high-level meet on Monday, which was attended by the Power Minister R.K. Singh and the Coal Minister Prahlad Joshi to discuss coal stock positions. Delhi, the first state to raise an SOS over deepening power crisis, said that it only had a day of coal left. Delhi government claimed lack of coordination and appealed to the centre to increase coal allocation to Delhi. देश में 16 राज्यों में कोयले की कमी के चलते बिजली के बड़े-बड़े कट लग रहे हैं। कई घंटों के कट लग रहे हैं, कई जगह तो 20-20, 22-22 घंटे बिजली नहीं आ रही है। ये कोई आम आदमी पार्टी शासित पंजाब या आम आदमी पार्टी शासित दिल्ली की बात नहीं है, देश की बात है। The centre rejected the claims, calling it panic mongering and bid to mislead by Delhi government. Centre also released the data showing that most power plants have enough coal for 5 to 8 days. Opposition was quick to take on the Modi government amid the crisis. Congress's Rahul Gandhi and SP chief Akhilesh claimed mismanagement by the centre. जो बिजली की उपलब्धता की हालत है वो चिंताजनक है
बहुत सारी ट्रेन कैंसिल की गई हैं, पावर हाउसेस में कोयला उपलब्ध नहीं है, एक दिन का कोयले की अवेलेबिलिटी है। सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि उनकी नीति फेल रही है। The prolonged hot spell, lack of rains and rising electricity demands adding to the summer woes. With Samarth Srivastav, Bureau Report, India Today. And Delhi's Bhalaswa landfill is billowing smoke for many consecutive days in a row, and now the residents are not being able to breathe. They're having trouble breathing because of the Bhalaswa landfill billowing this kind of smoke, and they are having trouble breathing, but they are also going on to blame the BJP-ruled MCD and the Aam Aadmi Party government for this crisis. Take a look at the complete story, because we went right there to find out what the ground reality was. Bhalaswa landfill is still on fire. The garbage hill caught fire on Tuesday, and 6 days on, toxic smoke, gaseous fume are still billowing out of it. Bhalaswa landfill is on fire. This white smoke is no ordinary smoke. This is toxic smoke of methane. I'm here on the ground to find out what does this smoke and its toxic effect mean for the people who live here and have been living here for years, facing this every single week. Importantly, who's responsible? Who is accountable? Let's bring you this special telecast from the Bhalaswa landfill from the Delhi border. This school is right opposite the landfill. Children as young as 4 years old are breathing in the toxic fume. क्या मुश्किलें आती हैं परिवारों को? वहाँ होता है मैम, सांस लेने में दिक्कत होती है बच्चों को मैम। खांसी होती है। तो आपको कितने दिनों से यहाँ पे धुआं चल रहा है? 7-8 दिन से हो रहा है। बहुत परेशानी हो रही है। देख रहे हो क्या हालात हो रही है, घर में जा रहा है धुआं। क्या परेशानियाँ होती हैं आपको? ये होता है, गंदगी आता है, मक्खी आती है, बारिश होती है तो बदबू आती है इधर से। It's a hill of garbage, whether it's because of the methane experiments, others. You know, it's very difficult, of course, for families who've been living here. सर, आपसे एक मिनट बात करेंगे जरा, क्योंकि बच्चे आपके साथ हैं। हम ये पता लगाना चाह रहे हैं कि जो लोग आप आसपास रहते हैं, कितना मुश्किल होता है ऐसी जगह पे रहना? ना, मुश्किल तो है ही काफ़ी ज़्यादा। आप देख रहे हैं किस तरह से ये धुआं, और रात में तो ये आग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ कई प्लान तैयार हुए हैं, काफ़ी बाउंड्री के लिए चारों तरफ बाउंड्री होनी है थी। ऊपर से मिलेनियम पार्क के लिए भी इसका कोई प्रस्ताव आया है, लेकिन आज तक कोई हाँ सामने बन गया, यहाँ के लिए भी आया था, लेकिन अब तक कोई भी धरातल पर कुछ काम होता दिखाई नहीं दे रहा है। मेन क्या इशू, हम असेंबली भी बाहर नहीं करवा पा रहे हैं क्योंकि इतना पोल्यूशन है, धुआं आता रहता है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है, तो हम क्लासेस में ही असेंबली करा रहे हैं। हम अपनी वोट लेके चले गए, कोई सुधार नहीं किया उनने। प्रॉमिस सब नेता करते हैं। सब प्रॉमिस करते हैं, खाली कोई वो मतलब कि काम नहीं करते हैं। प्रॉमिस सब करके जाते हैं कि हम यहाँ से तुम्हारी सेवा करेंगे, यहाँ से प्रदूषण हटाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मगर कोई काम नहीं करते। Along with the smoke and toxic fume, the sight of rubber and plastic strewn all around with the dirty stench is unbearable. The risk of fire spreading to residential areas is now very real. And if that happens, it could cause unthinkable damage. What have you seen in the past 6 days? It's like the fire broke out the day when the class was on. We are like, for the past 6 days we have becoming habitual to it, but eventually it is very harmful for us. And even for an adult like us, it is very harmful. So then what would we say about the children? Imagine when it starts to rain in the monsoon, yes. All of this rain and everything, there's no drainage. So all of this gets collected. There's a school here. And they're trying to teach underprivileged children. Because of the heat, toxic smoke, the windows made of fiber have melted. They had to shut down this school. The question is, who is to be blamed for the Delhi landfill fire? The landfill was commissioned in 1994. It exceeded its capacity in 2006
The maintenance of the landfill is under the Municipal Corporation of Delhi, run presently by the BJP. The MCD claims the fire is due to the methane emission and the high temperature of the summer season. The Delhi government has indulged in a face-off and has imposed a 50 lakh rupees fine. The Badli Assembly constituency is under the jurisdiction of the Delhi government and of the Aam Aadmi Party MLA. It's water that is polluted, no development in the area, and the cleanliness of the nearby adjacent roads is the Aam Aadmi Party government responsibility. In one of the longest cleaning initiative by the Delhi Fire Service, for 6 days, 24/7, the firemen have been on the job, taking a risk to their life, breathing the fumes and struggling to douse these flames. While the politicians bicker and unsure on what to do, firefighters are on the job to douse the fire and the smoke that has been caused due to the delay, callousness, lack of policy of the governments, two of them in the national capital, Delhi. This special report to wake up our governments, our institutions and tell them what is happening on the ground. With Pawan Kumar in Bhalaswa, Pooja Shali for India Today. And Ukrainian bomb hits Russia's drones. We're bringing you this complete story on the Russia-Ukraine war in just about a bit. Stay with us here on India Today. You are watching China is witnessing one of the most brutal lockdowns ever since the start of the pandemic, and brutal because the Chinese authorities are going ahead and brutally beating up people
to be able to confine them in their own homes. The people are absolutely shattered by this kind of management of COVID by the administration. Here is a look at the inhuman lockdown in China. The most brutal action against its own people. Citizens being hit, beaten, coerced and confined. This is China's zero COVID policy for you. Unscientific, inhuman and senseless. The Chinese COVID policy has zero empathy in addition to having zero results. China has been following the horrific policy of coercion with COVID-positive patients for days now. Killing pets, separating mothers from kids, or leaving people locked down in Shanghai without essential supplies. In these videos posted by citizens, many of them residents of Shanghai, citizens are protesting against action by health authorities, only to be dragged and pulled away. The scenes speak volumes of the failure in handling the infection that originated from its soil. The truth that China denies vehemently till this date. It appears as though a long-term strategy of zero COVID is simply not going to work. It imposes a lot of stresses on the population, lots of economic difficulties, a lot of social difficulties in terms of the very large-scale movements of populations to confinement zones that Shanghai is currently seeing. It's unlikely that this can be sustained, as I said, for a long period of time. We may just simply have to figure out better strategies. These pictures, now for the world to see, show how turning positive for COVID is a deadly traumatic experience in China. When the world is trying to work its way around the virus, a country that prides in calling itself an emergent superpower is failing at basics and letting down its own people. Bureau Report, India Today. The Russianization of Melitopol is underway at the moment. India Today is on ground zero getting you all the updates of the Russia-Ukraine war. My colleague Geeta Mohan brings you this ground report. Take a look. Third month of Russia-Ukraine war. Amid continuous assault on Ukrainian cities, Russia is reminding its captured Ukrainian territories the feel of Soviet-era rule, wiping out last remaining symbols of Ukraine. One such instance can be witnessed at the Freedom Square in captured Melitopol. We are back in Melitopol 2 weeks and we see a huge change at the Freedom Square here in Melitopol. You can see the communist flag going up where once the Ukrainian flag flew proudly. Below it you can see the ribbon of George, which represents military valor and is a symbol and sign for Russia and Russian military prowess. So that the St. George orange and black ribbon is visible. This very same place had Melitopol written in Russian and now all Ukrainian. The landscape of key locations in Melitopol has been completely changed. Russian Army's Kazakh regiment has been stationed at the Freedom Square ahead of the May 9 Victory Day celebrations. The red
Victory Soviet banner is up here at the Freedom Square. The entire landscape of this Freedom Square has changed from the time we had visited here last time. We see the Kazakh regiment over here in place. This is preparation for the Victory Day celebrations that will be taking place on the 9th of May. The acting mayor, Mayor Galina, has said that there will be massive celebrations here in Melitopol. St. George's ribbon up again, something that she says was taken off the official insignia in 2014, and now it is back. While Melitopol is written in Ukrainian, we will see that change to Russian as well. Russia, after wresting the area from Ukraine, is going all out to register its staying presence. The blue and yellow of the fountain has completely changed. It's now aqua green and blue. The colors of Ukrainian flag absolutely removed from this entire Melitopol area. That's the Freedom Square. And you can hear the Russian songs, Russian national songs, victory songs, military songs. Katyusha playing right behind me, a song that has been an inspiration for all the officers who have been here and who have been fighting. Melitopol certainly does not seem like it is going to go back to Ukraine. The colors have changed, and so has the atmosphere here in the city of Melitopol. Russian troops are slowly easing curbs to allow businesses to reopen. In Melitopol, the skating rink, which is connected in Kyiv. Kyiv controls all the skating rinks in Ukraine. Kyiv shut down this rink, but Melitopol administration today has opened the rink for children, and they did it manually because the automated version and the controls are in Kyiv. Children are back in the rink. They look happy because it's a difficult situation, but when we're speaking to kids over here, the teenagers certainly not happy with the situation. It'll take a long time for these territories to really understand what is really happening on the ground. The famous Zaporizhzhia power plant, taken over by the Russian forces, is still being run by Ukrainian officials. This is the training center that came under the crossfire between Ukraine and Russian forces. The damage is quite visible, and this was the reason why there was a huge alarm about what the safety and security of the nuclear power plant is really going to be. Massive damage over there, if you can see the building, but it is far away, outside the gate of the Zaporizhzhia nuclear power plant, which is right in front of that training center. But that first came under attack. The strategy in all probability was that if that is the extent of damage that can be done, imagine if something happens over here, what will be the fate of the people and the region. Russian forces, however, still face resistance from Ukrainian armies. With Geeta Mohan in Melitopol, Bureau Report, India Today. With that, it's a wrap from me, Chaiti Narula, on this bulletin. For further news and updates, don't forget to log on to indiatoday.in or go ahead and download our app. But stay with us. I'm joining you with the top headlines in just about a bit. Bazı sayıları tekuçovas na
një bazë taktike të NATO-s. Kjo ndihmon jo vetëm pjesën ushtarake të Shqipërisë, por edhe për Ballkanin Perëndimor, e cila jep një siguri shtesë. You are watching India Today. Queens is definitely, one of the most diverse places in New York City and probably the country, maybe the world, We love New York, but we love our Romanians too. We love our culture, our tradition, and we wanted to keep it and share it with people here. Because there's a lot of diversity around here, and we thought people come here a lot to try different kind of cuisines, and we thought it would be a perfect location to explore Burmese cuisine as well. When it's the world's biggest news story, there's only one gold standard of journalism. You. Very good morning. Thanks so much for being with us here on India Today, a washing burning question with me, Chetty Narula. Let's begin first with all the headlines this morning. Communal clashes in Jodhpur on the eve of Eid. Dispute over installation of flag and loudspeaker. Stones pelted. Cops lathi charge and used tear gas. Internet services snapped. Gehlot appeals for peace. Loudspeaker debate gets louder. OAC slams Raj Thakre over ultimatum. Demands arrest of MNS chief. BJP MP Parvesh Verma demands UP loudspeaker model in Delhi.
Home Minister Amit Shah in Karnataka amidst cabinet rejig speculation ahead of the crucial polls in 2023. Chief Minister Bommai will hold a dinner meeting with Amit Shah. After a massive outreach in Berlin, Prime Minister Modi heads to Denmark on day 2 of Europe visit. He will meet Prime Ministers of all Nordic nations. China's inhumane and most brutal COVID lockdown. Citizens beaten up, confined and coerced into homes. Protests erupts amidst looting and unrest in the city. European football's governing body, UEFA, bans Russian clubs from next season's Champions League and other competitions for Putin's invasion of Ukraine. Breaking news just coming in. Communal clashes broken out in Jodhpur. We're getting you the complete story on the occasion of Eid. 2 groups clashed over the installations of religious flags at key locations in the city. Both the groups then resorted to stone pelting and vandalism. The mob also tried to remove loudspeakers from the location. The mob vandalized property in the area. Many sustained injuries in the clashes. Cops have reached the spot immediately, used force to control the crowd. Police had to resort to lathi charge and use tear gas to disperse the crowd. So that's the latest coming in, that breaking news coming in from Jodhpur right there. Devankur Vidhavan will be getting us all the details from Rajasthan on the violent communal clashes that took place in Rajasthan's Jodhpur on the occasion of Eid. 2 groups clashed over the installations of religious flags at key locations in the city. They will be joining us in just about a bit for the very latest on this. Both the groups then resorted to stone pelting and vandalism. The mob also tried to remove loudspeakers from the location. The mob vandalized property in the area. Many sustained serious injuries in the clashes. The cops also reached on the spot, used force to control the crowd. Police resorted to lathi charge, use of tear gas to dispense the crowd. How did this all begin is something that our reporter will be able to tell us. So let's get Dev on the line for more on the story. Do we have Devankur Vidhavan? Requesting the producers to get us Devankur Vidhavan for more on the story in terms of what really happened right there at the communal clashes. How did it all begin? The Chief Minister, Ashok Gehlot, has now appealed for peace and calm. The 2 communities clashed in Jodhpur. This is, there are many communal clashes happening across the length and breadth of the nation. And on the eve of Eid, this is another communal clash that is being reported from Rajasthan now over the flag installation and loudspeaker as well. We'll get you more on this communal clash between the 2 communities. We'll get you more on the 2 groups clashing over installations of religious flags at key location in the city. The groups resorted to stone pelting, they resorted to vandalism. There was a mob that tried to remove loudspeakers from the location. The mob vandalized property in the area. And who are the members of this mob is the big question. Have the police really identified these people who tried to disrupt peace and harmony during a religious festival in Jodhpur on the eve of Eid? Let's get Devankur Vidhavan. I'm requesting the producers once again to please get us Devankur Vidhavan for more on this. But in the meanwhile, these are visuals that are coming in from Jodhpur, and we're getting you the visuals on your screens of the clashes that took place. Not speculating anything for the moment, and hence waiting for the reporter to bring us more on the breaking news that is coming in. Tear gas, stone pelting, lathi charge, all visible on your screens at the moment. All right, Chief Minister Gehlot has appealed for peace and calm, and they will be joining us in just about a bit to get us the latest details on this. No speculations, and it is a very sensitive story of the communal clashes that have broken out in Jodhpur on the eve of Eid. The big question arising is, why did the mob
try to vandalize in this fashion. You can see the flags over which the clashes broke out, and you can see it on your screens right there. What was the reason? Where does the investigation stand? What does the police have to say? All of these are unanswered questions, but this is the breaking news that is coming in. Latest situation breaking out on the back of communal clashes, on the back of Eid. Who led this provocation, and where does the state administration stand as far as maintaining peace and calm is concerned? The internet has been snapped. This is the hate that you see between two communities on your screens, and it's something that we're seeing across the length and breadth of the nation of late. Communal clashes rising across the length and breadth of the nation, and the latest that is being reported by us from Rajasthan. And Jodhpur is where this communal clash took place on the occasion of Eid. Two communities sparring on the occasion of Eid over the installation of religious flag at key location in the city. And what is this exact location? They will be able to tell us. Both the groups resorted to stone pelting and vandalism. The mob also tried to remove loudspeakers from the location. The mob vandalized property in the area, and many sustained serious injuries in the clashes. Cops have reached the spot immediately. They had to resort to using force to control this crowd. Look at the unruly crowd on your screens right now. The cops had to use force to control this kind of a crowd and this kind of sparring between two communities. The police had to resort to lathi charge. They also ended up using tear gas to disperse the crowd. There is no way to control this unruly mob otherwise, but the situation has been brought under control by the Rajasthan police. The police has brought the situation under control, but peace and calm has been maintained for the moment. That's the good news. And Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot has also appealed for peace and calm. I'm requesting the producers to get us Devankur Vadhavan or other reporters and get some political reactions on the story as well, or get in a word, at least, from the ruling Congress party on what really happened right there in Rajasthan. Listening to what really happened right there in Jodhpur. In the city, both groups resorted to stone pelting, vandalism. Mob tried to remove loudspeakers from the location. The mob vandalized property in the area. Many have sustained serious injuries in these clashes that broke out in Jodhpur. The cops reached the spot immediately. They used force to control the crowd. Police resorted to lathi charge. They resorted to using tear gas to disperse the crowd. There are many communal clashes, as you already know. We are reporting from the length and breadth of the nation, and here you have one being reported from Jodhpur in Rajasthan. This is a row over religious flags, and we're getting you these visuals of stone pelting, getting you visuals of vandalism. The loudspeakers were removed by the mob. I want to take this across to Vanita, who's joining us from Jodhpur for all the very latest on this story. Vanita, tell us what really happened there. How did this clash begin? Who were the members of the mob who started this provocation on the eve of Eid? What does the police and the authorities have to say about this?
We've lost that connection to our reporters, and apologies for that, viewers. We'll get our reporter back on in just about a bit, and we also get you some political reactions as we go along the way as well. But we're getting you the latest on this story, where Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot has now appealed for peace. He's appealed for calm, and from what we're picking up, the situation seems to be under control for the moment right there. But this is one of the many communal clashes that we are witnessing in the country. We'll get you more details on who's responsible without making any speculation whatsoever. The police is investigating the matter at the moment. You already know that there were communal clashes which were reported in Delhi, which were reported in Khargon, reported in many other parts of the country as well. And Jodhpur is where the communal clashes have broken out now. We'll get you some reactions. We'll get you a reporter to get you more on the communal clash on Eid in Jodhpur. The internet services have been suspended. The casualty count is not out as yet. How many have been injured also not out as yet, but we're waiting for the verified information to trickle in, and India Today will not be speculating on anything related to such a sensitive story where there is a communal clash between two communities that has broken out. We'll get you the facts as they are, and hence I'm requesting our producers to get you the reporter to bring you facts as they are. The news breaking out on Jodhpur communal clashes. Dev Ankur Vadhavan is now joining us for the latest on this story. Dev, one big important question. Does the police have an idea, or there has been any kind of an investigation on who were the people in the mob that started the provocation in the first place? Well, Chiti, the police is investigating the entire matter now because the clashes broke out close to the midnight and today's Eid. And on the occasion of Eid, the police does not want any further flare-up in Jodhpur, which is also the home constituency of Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot. And that is why there is a tight vigil which is being kept in the entire Jalori Gate area. The internet ban has already been imposed. No large gathering of people is being allowed. Although what we are given to understand is that the clashes broke out over the installation of loudspeakers and flags, and that is how the two sections of people from both sides clashed with each other. There was stone pelting, and currently the situation remains tense but is under control. JT? Investigation is underway, and hence we're not going to be making any kind of speculation whatsoever. At the moment, what does the administration have to say, and what is the kind of advisory going out in Jodhpur on the back of these communal clashes that we're reporting? Well, Cheti, the police had to resort to a mild lathi charge and tear gas shells so as to ensure that the crowd that had gathered, the clashes that were happening, they can be stopped. In fact, some of the journalists were also caught in the melee. But currently, as I mentioned, the situation remains tense but under control. Already, Section 144 is in place. Internet ban is there. No large gatherings of crowds is being allowed. Today's Eid, the police... They're also reporting, Dave, that the clash happened over the flag hoisting. Which flag was this? Who wanted to remove which flag? Do we have any clarity on that front? Because we're getting those visuals that are painting a slightly clearer picture. But I'm going to leave it up to you to get us the actual facts as they are. Well, Cheti, what we are given to understand is that near the mosque there was an attempt to install a loudspeaker, and that is how the initial ruckus happened. And also some of the people from a certain section wanted to hoist a certain flag, and that is how initially the argument happened, which escalated into a clash. And when that happened, both sides clashed with each other. The situation aggravated, after which the police had to resort to lathi charge and to
and tear gas shells. That come to mind at this point, Dave. One is that did the people who were installing the loudspeakers have permission to install them? And secondly, even if they did not have the permission or had the permission, there is no way for anybody to take law into their own hands as well and create such a ruckus. If you could just clarify on both the fronts. Well, JP, you're absolutely right that no one had the right to take the law in their own hands, but all these clashes that happened, this happened despite the fact that Jodhpur is considered as one of the districts in Rajasthan which has the largest number of police personnel present, but the entire area near Jaluri Gate in Jodhpur is considered to be a volatile area. Several clashes have happened over there in the past also. The police was present, but what we are given to understand is that this entire clash happened when there was an attempt to hoist a flag and for installation of statues, for installation of loudspeakers, and that is how the two communities came face to face with each other. In fact, there was stone pelting which happened towards the police as well, and that is how the situation, really plummeted. And when the situation got volatile, the police had to resort to lathi charge and to fire tear gas shells, and that is how the crowd was dispersed. The police apprehends that situation can aggravate once again. That is why there is an internet ban which is currently there. Section 144 is in place, and the police and the district administration is keeping a tight vigil on the entire situation even as I speak. Katie? All right, we'll continue getting you all the very latest on this story, and we'll also get you some political reactions, and also we'll get you the mayor on the phone line in just about a bit. If she's patched with us, to confirm. All right, we don't have the mayor with us at the moment, but we'll get you more details. Thanks so much for now, Dave, for joining us with the latest details. The loudspeaker controversy in Maharashtra is now only getting louder, with MNS Chief Raj Thackeray reiterating his ultimatum, his 3rd May ultimatum to remove loudspeakers from mosques, threatening to play Hanuman Chalisa outside mosques on double volume if his demand was not met with. OAC has slammed both Shiv Sena and BJP over Raj Thackeray's comment. OAC claimed that OVC has claimed that it was all a part of BJP RSS plan, claiming that the government cannot take action against Chief Minister's brother. Now, the loudspeaker debate has reached the national capital. Delhi BJP MP Parvesh Sahib Singh wrote to the governor demanding UP-like crackdown on loudspeakers. The leader said that the Supreme Court order on loudspeaker is not being strictly followed in Delhi. He's also claimed that UP-like treatment is required for law to take its own course. जब वहां की मुकामी पुलिस ने इनको कंडीशन के साथ परमिशन दिया है तो उनको चाहिए कि फौरन सो मोटो एक्शन ले कि एक बार हो जाने दो। क्या हो जाने दो? क्या एक शख्स पूरे स्टेट के पीस को दांव पे लगाएगा? क्या एक शख्स थ्रेटन करेगा औरंगाबाद की हिंदू मुस्लिम दलित के भाईचारगी को? तो पुलिस क्या कर रही है? और क्या ये क्या मतलब है कि एक बार हो जाने दो? क्या हो जाने दो? क्या सो मोटो एक्शन पुलिस नहीं लेगी? लगाइए 153 295 और अरेस्ट करके जेल को भिजाइए, क्योंकि शिवसेना की सरकार है और वो अपने भाई के खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। वही एक नवनीत राणा अगर उद्धव ठाकरे घर पर जाकर कुछ पढ़ना चाहती थी तो आपने उसको अरेस्ट करके सेडेशन लगाया। यहाँ आपके भाई का मामला आ रहा, वो बकवास कर रहा है, पूरे पीस को बर्बाद करना चाहता है, धमकी दे रहा है। 4 तारीख क्या स्टेट को कोई रैंसम पे होल्ड कर सकता है क्या? मैं आपके जरिए उनको कहना चाह रहा हूं कि हमारा मजहब भी ये कहता है, हमारी तहजीब भी ये कहती है कि वो हमारे मेहमान हैं। अगर वो आ रहे हैं यहाँ पर तो आप सभा में जाने से पहले हमें बताइएगा कि हम सब साथ में मिलकर है, तो आप स्टेज पर जाकर आपको जो बोलना है आप बोलिएगा उसमें है? लेकिन हम दुश्मन नहीं है। आपकी अलग राजनीतिक पार्टी का एजेंडा है, हमारी अलग राजनीतिक पार्टी का, दूसरों की राजनीतिक पार्टी का अपना अपना एक एजेंडा है इसके अंदर। तो आपके जरिए मैं आपको ये दावत दे रहा हूँ कि आप आइए, हमारे साथ इफ्तार करिएगा, उसमें हम सब साथ में मिलकर करते हैं।
Paras is now joining us for the very latest. Paras, it is absolutely shocking how Raj Thackeray goes on to make this comment against one community and targets one community, but keeps quiet on the loudspeakers being played across the board as well. Because if this was a problem as far as noise pollution is concerned, you should have a problem across the board. But here, he's only targeting one specific community. On the back of all of this, how does the Chief Minister of Maharashtra, Uddhav Thackeray, plan to maintain the law and order situation, especially in the light of all that is happening in terms of communal clashes across the country? Chaiti, one of the important things which is going to happen today at 11 is Maharashtra Home Minister Dilip Valse Patil is going to take a very important briefing on a meeting with DG of Maharashtra. It is very important to maintain law and order situation where there is a threat where something can bad happen. So that's why Maharashtra Home Minister Dilip Valse Patil is going to take a meeting with the DG and the most senior officials, police officials at 11 a.m. It will be the most important thing because now they need to maintain law and order, and how they will maintain this will be the main topic or the main talking point in the meeting after probably the situation which has been in Maharashtra. It's little tense how communal rights are happening around the country. It's the major matter of concern right now, and if Maharashtra is concerned, Maharashtra is there. There are already warning given by Raj Thackeray. If a loudspeaker will be not removed from the mosque first, he will play Hanuman Chalisa in front of mosque with double power. So this is the most challenging thing that Mumbai police have to face, and that's why the meeting will happen at 11 a.m. with Dilip Valse Patil, and some major points will be discussed. Thanks, Paras, for now for joining us with the latest details on this story. In the meanwhile, we're getting some breaking news coming in, cutting straight across to it. Stone pelting has been reported outside a mosque in Anantnag. That's the breaking. This is in South Kashmir's Anantnag district. After early morning Eid prayers, people have pelted stones on security forces as well. That's a big breaking that is coming in from the valley. Kashmir Eid clashes is what we're reporting at the moment. News trickling in on stones being pelted on security forces in Kashmir. The stone pelting has been reported outside a mosque in South Kashmir's Anantnag district after early morning Eid prayers. People have pelted stones on security forces. We'll get you more details in just about a bit, but take a look at the visuals that are coming in at the moment. The Eid clashes breaking out in South Kashmir's Anantnag district. That is the big breaking news coming in this morning. Stone pelting outside mosque in Kashmir. Kashmiri clashes are what we are reporting at the moment. This is taking place in South Kashmir's Anantnag district. This stone pelting, from what we are picking up, took place after the early morning Eid prayers, and people have pelted stones on the security forces as well. So let's get you more details on the story with our reporter now who joins us. Ashraf is joining us live for the very latest details. Ashraf, what happened there? The Eid prayers were going on and suddenly you have people pelting stones at security forces. What happened? Jyoti, basically it is the Eid al-Fitr being celebrated all across the Kashmir Valley. We have seen it went off peacefully in all parts of the Kashmir mostly, but there was some kind of a clash after the Eid prayers in Anantnag, where some of the people tried to protest and chant the slogans about the freedom of Kashmir, and that turned it into a small stone pelting where some of the security forces were pelted by few youths, some stones, and now the situation has been put under control. Additional police party had come to the venue. Namaz is over. People had went to the homes, and the security has been briefed around that particular mosque where this Eid prayer was being conducted. Now the police is saying that it is not so big kind of clash. There was some kind of misunderstanding, some sloganeering by some youths, but that has been brought in control. As you said, a minor clash between the security forces who were on the routine security duty on the venue where this Eid prayer was going on,
there was this small clash where people just went and for the safety after this minor clash, and now the situation is completely under control. And it is also worth to mention that the police has not allowed the Eid prayers in the biggest and the largest mosque in Srinagar, that is Jamia Masjid Srinagar. They made it clear due to the law and order situation, the Eid prayers could be offered in different mosques, but if not the grand mosque of Srinagar, that is Jamia Masjid. But it is raining across different parts of the Kashmir Valley, so we are not expecting any kind of such situation further in different parts of the valley. From what I'm picking up from you, the good news though remains is that the police has managed to bring the situation under control, and the situation seems to be calm in the valley for the moment, or any kind of advisory going out from the administration. Can you hear me, Ashraf? I'm not getting you fully. Basically, Ashraf, I'm saying the good news is that the situation has been brought under control. Is there any kind of advisory going out to the citizens at the moment from the administration on the back of this news development? Only one advisory was issued a few days back, that was only specifically for the Jamia Mosque, which is the largest mosque in the Kashmir Valley in Srinagar, that the committee which is looking after the affairs of that particular mosque, they were asked that Eid prayers should not be conducted in the Jamia Masjid because there was some kind of protest in the Friday prayer during last week. That is why the Eid prayers were not carried out in that particular mosque. But there was not any kind of advisory. People were asked everywhere. They can offer the Eid prayers anywhere in the Kashmir Valley. And we have seen most of the mosques, there was peaceful Eid prayers. But in particular, this incident in Anantnag, there was some kind of a clash between the protesters, you can say the people who were going there for the Friday prayers, Eid prayers, only few of them, with the police which was deployed for the security of the venue in Anantnag. Leave it at that. Thanks so much, Ashraf, for joining us with the very latest details on the story. Now, Rahul Gandhi went to address the students at Osmania University, but he never got a chance to interact with the students because he was not permitted. Now, the Congress party is claiming that Osmania University is under the state government pressure. Here is what happened. High drama at the Osmania University in Hyderabad. Rahul Gandhi's planned visit to the university this week has sparked a big face-off. Congress claims the university has denied Rahul Gandhi permission to interact with the students on the campus. The Youth Congress held protest against the University Vice-Chancellor on Monday. The Telangana Mahila Congress too hit the streets. 17 NSUI workers were arrested and sent to 14-day judicial custody. Congress alleges the university is blocking Rahul Gandhi under pressure from the KCR government. स्टूडेंट से अगर कांग्रेस पार्टी के नेता अगर इंटरैक्ट हुए तो केसीआर के जितने भी गलत काम है और नोटिफिकेशंस भी नहीं दिया हुआ है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी पूरा ख़त्म कर चुका है, ये सब सारे चर्चा आएगा तब केसीआर को दिक्कत होगा. इसीलिए चीफ मिनिस्टर यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर के ऊपर दबाव डाल के हमारा परमिशन को रिजेक्ट करवाया. Congress has now filed a petition in the High Court seeking permission for Rahul Gandhi to visit the university. The university has rejected all the charges. It has clarified that no political meetings are allowed on the campus. The BJP has lashed out at the Congress, calling it anarchist. BJP strongly condemns the anarchist politics of Congress party. Rahul Gandhi wanting to go to Osmania University is the biggest joke of his trip. He has been given permission to conduct a public rally in Warangal. He should be doing just that. And when the permission is not being granted, they want to anyway go there
and disrupt the academic activity. So what kind of politics is this? What kind of futuristic vision, which Rahul Gandhi keeps talking about, is this? Rahul Gandhi is set to visit Telangana on May 6th and 7th. The Congress is firm it will take Rahul Gandhi to the campus for an interactive session with students. According to sources, Rahul Gandhi will be meeting arrested Congress activists, including the state NSUI president, in jail. The political face-off comes even as Congress is struggling to create its own space in Telangana, where the party has not won a single election since the formation of the state. Bureau Report, India Today. Slipping into a break, but when we return, we're bringing you the entire story on Prime Minister Narendra Modi's visit to Denmark after the rousing welcome that he ended up getting in Berlin. All details in just about a bit. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com or call 9999892171. Marine transport delivers goods via sea routes. We use marine transport for the supply of raw materials like cereals, oil, coal, etc. But while delivering these goods, it uses fuel that harms our planet. It contributes to 3% of greenhouse gas emissions. What is the future of marine transport? Imagine a future in which marine transport is energized by the wind. Marine transport represents 90% of all transport of international goods, and it generates considerable pollution. The search is on for alternatives to heavy fuel oil. One option could be traction sail or kite. This smart sail, fitted to the forward section of a vessel, soars 400 to 500 meters above the ocean, far from the turbulence beneath the waves. Routing software analyzes oceanographic and meteorological data. The 500 to 1,000 square meter sail deploys and adjusts automatically. These vessels are capable of crossing the Atlantic. Another option entails fixing rigid, hinged vertical sails on the deck of an oil tanker or freight ferry. These high-tech sails imitate the rigging of transatlantic racing catamarans. A third option consists of the use of the rotating cylinders, a modern version of the rotor ship invented by German engineer Anton Flettner in the 1920s. They propel the ship forward using the Magnus effect, the generation of a sideways force on the spinning rotor. Complementary to the ship's engine, these three technologies make it possible to use between 5 and 40% less fuel, depending on the weather and wind speed. You are watching India Today. It is day 2 of Prime Minister Narendra Modi's visit in Europe, and he is going to be arriving in Denmark now. We're bringing you all the updates after the rousing welcome he ended up getting in Berlin. He's going to be arriving in Copenhagen to hold a bilateral meeting with his Danish counterpart, Mette Frederiksen. He's also going to be participating in the Second India-Nordic Summit. He's going to reach Copenhagen at about 2 p.m. Indian Standard Time and will visit Denmark Prime Minister's residence immediately after the arrival in Denmark. He's going to be a part of a business roundtable later this evening, and interaction with the Indian diaspora is also scheduled for 8 p.m. IST. He also met the Danish Queen and attended a dinner hosted by Queen Margaret II. In the first leg of the trip, he received a rousing welcome in Berlin. He addressed the Indian diaspora
He also said India has registered highest real-time payment transactions in 2021, accounting for over 40% of world's real-time payments. The Prime Minister took a jibe at Congress, said that there is no middleman in my government and the benefits and subsidies directly go to the people of India. आठ साल पहले 200, 300 या 400 स्टार्टअप्स आज 68,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स दुनिया के सारे पैरामीटर्स कह रहे हैं कि इसमें दर्जनों स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बन चुके हैं। पिछले साल पूरी दुनिया में हुए रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स, कान खोल दो, रियल टाइम डिजिटल पेमेंट में से मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। अब भारत छोटा नहीं सोचता है। रियल टाइम डिजिटल पेमेंट में से 40% भागीदारी भारत की है। पहले तो हमारा देश की विशेषता देखिए साहब, देश एक संविधान दो थे, मालूम है ना, 2 संविधान थे। सात दशक हो गए दोस्तों, 7 दशक हो गए एक देश एक संविधान लागू करते करते। अब लागू हुआ दोस्तों। पिछले 7-8 साल में भारत सरकार ने डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीधा एक क्लिक किया, जो हकदार है उसके खाते में पैसे चले गए। डायरेक्ट जो डीबीटी के द्वारा हमने पैसे भेजे वो अमाउंट है 22 लाख करोड़ रुपए से अधिक। यानी अब आप जर्मनी में हैं तो आपको बता दूं, $300 बिलियन से भी ज्यादा बेनिफिशियरीज के खाते में पैसे पहुंचे हैं। बीच में कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट की कंपनी नहीं, कहीं कट मनी नहीं। And there is politicking going on the back of Prime Minister Narendra Modi's speech in Berlin. The Congress party has hit out at the BJP. The opposition has hit out at the Prime Minister for his middleman jibe at the Congress party during his address to the Indian diaspora in Berlin. Congress slammed the Prime Minister, accusing him of behaving like a BJP karyakarta. Congress said that Prime Minister must stop behaving like a BJP worker and instead behave like a Prime Minister, and that he is representing the whole of the country and not just the BJP voters. The backlash came after Prime Minister in a speech said that now no Prime Minister can say they had transferred 1 rupee but only 15 paise reached the people. Prime Minister, in a veiled attack at the Congress party, also said that he wondered whose palm, referring to the Congress symbol, rubbed off the 85 paise. सरकारी मदद हो, स्कॉलरशिप हो, किसान को फसल की कीमत हो, सब कुछ अब डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। अब किसी प्रधानमंत्री को ये कहना नहीं पड़ेगा कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं और 15 पैसा पहुंचते हैं। वो कौन सा पंजा था जो 85 पैसा घिस लेता था। The
Prime Minister received a rousing welcome in Berlin. He also ended up speaking to his German counterpart on the Russia-Ukraine war, and both of them spoke about finding a solution through a multi-polar order around the world. But is that really going to happen? Is that a plausible solution, or is that really a tall order? We find out in the next report. надають чіткі гарантії безпеки. In the shadow of the Ukraine war, as conflict draws Europe and NATO into another whirlpool of uncertainty, these images couldn't possibly be speaking any louder. With fanfare typical of the Indian Prime Minister's foreign visits, Modi has begun a high-speed tour of Western Europe. While the United States has indulged in public lecturing and gyan over India's stand in the Russia-Ukraine conflict, Germany has been praising India, recognizing just how singular India's foreign policy maneuvers on this issue have been. India numbers amongst those countries that are of greatest importance with regard to this perspective, not only because it is the country with the biggest population, but also because of the part it plays and the share it has in the global economy. India is amongst the very important partners of ours here. The world can only develop well if we are clear as to the fact that future relations in the world will be characterized and marked by many countries, not by a few powerful countries. As head of the G7, German Chancellor Olaf Scholz, like his predecessor Angela Merkel, shares a warm equation with the Indian Prime Minister. But that doesn't mean Germany isn't looking to leverage India to pile the pressure on Putin's Russia. Europe has specially aligned, and these are the countries which have aligned itself against Russia. They call it the Russian invasion of Ukraine. India, as of now, has always maintained a very balanced stand on the entire issue, a neutral stand. So it's a very important geopolitical, if you talk about India's power, its emerging value of its stand in the entire Russia-Ukraine war, and how Prime Minister Modi takes this relationship forward with Europe. और फिर जब वो आए तो लगा हम अभी से इतने तरोताजा है कि हम उनका पूरे लाइफ टाइम वेट कर सकते हैं। अभी बताइए आप मिल पाए? हाँ मिल पाए, हम एकदम सामने खड़े थे। आते बराबर मोदी जी ने कहा शुक्रिया, आप लोग इतने सुबह से आए हुए हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगा वो सुन के कि उन्हें भी पता है कि लोग कितने वेट कर रहे हैं उनका और उत्साहित है उनके लिए। बिल्कुल, जैसे वो हमारे तरफ आए और नमस्ते करके जो मोमेंट था, मतलब और ढोल, आप ढोल बजाने वाले हैं तो ढोल में इनके अब ज्यादा जोश होगा, पूरा ढोल ताशा है इंटू 200 पावर। गरबा के नृत्य के साथ जो जोश यहाँ पर महिलाओं में दिख रहा है, उत्साह तमाम भारतीयों में दिख रहा है, और इनके सब के बीच ये गरबा का वो रंग है जो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की बढ़ती हुई ताकत का एक नजारा है। जब आप जर्मनी में बर्लिन में ऐसी महत्वपूर्ण जगह पर, जो सबसे महत्वपूर्ण इमारत एक तरह से ब्रांडेनबर्ग गेट है, उसके सामने आप मिनी इंडिया देखते हैं। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के साथ साथ ये देखिए अब यहाँ पर जो मौजूद पुरुष है वो भी गरबा करने लगे। गुजरात का जो रंग और जोश यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको कोई टोक नहीं सकता। The colour and fervour that frames the start of Modi's Europe tour also carries a lot of signalling, underscoring a popular leader who has spent the last 2 months navigating a series of global taunts for abstinence on Russia's invasion. With this turbulent global scenario as a canvas, the Europe tour is Modi's first international platform to flex India's uniquely forged foreign policy. A message to the world that India shapes its own relations and cannot be pressured by any side. किस युद्ध में कोई विजयी पार्टी नहीं होगी, सभी को नुकसान होगा। इसलिए हम शांति के पक्ष में हैं। From Germany, Modi heads to France, where a newly victorious President Emmanuel Macron is expected to sustain the warmth for the visiting Indian Prime Minister. Even while the Biden administration has taken public potshots at India, the two European NATO powers have handled things much more delicately, recognizing that the time to lecture India on foreign policy is perhaps history. Bureau Report, India Today.
We're slipping into a very short commercial break here on India Today, but when we return, we're bringing you all the updates from IPL 2022. Stay with us right there as we're getting you the details of Kolkata snapping their losing streak. Off the bat of a Nitish Rana. COVID-19, an infection that shook the world and transformed our lives. 2 years on, we have learned to live with the virus. 5 variants of concern have been in circulation, and the last reported variant of concern, Omicron, is mutating. The World Health Organization has warned about mutating variants, saying the viruses will continue to change form and also variants that will come together to form recombinants. What is a recombinant virus then? A virus that is a hybrid version of 2 strains of a previous virus is a recombinant. Recently, the United Kingdom Health Security Agency said that there are 3 recombinant strains. XD, which is a hybrid of Delta and BA1 Omicron variant. XC, which is a recombination of BA1 and BA2 variants of Omicron. And XF, another hybrid of Delta and Omicron. Let's tell you about XC first. Where in the world have recombinants been found? Well, the WHO has warned about the evolved Omicron variant of recombinant virus XC. The body says it will classify XC under the Omicron umbrella until significant differences in transmission and disease characteristics, including severity, may be reported. It was first detected in the UK in January 2022, beginning of this year. And a very limited number of cases have been found in China and Thailand. While the recombinant XC is still being studied, initial reports suggest the virus has a community growth rate advantage of 10% as compared to the BA2 strain of Omicron, which has been categorized as the most transmissible strain so far. The WHO says that some media have misreported the potential growth advantage of 10% as 10 times. This is incorrect. If the 10% increase in growth is confirmed, this variant would actually just be 1.1 times more transmissible, not 10 times. Well, since it's a genetic mutation of 2 strains of existing variant, the symptoms remain the same. Fever, scratchy and sore throat, skin irritation and discoloration, gastrointestinal distress, palpitation, etc. Breaking news coming in. You can see the visuals on your screens right now. The live visuals coming in are from Jodhpur, where clashes are taking place. After midnight clash, there is a fresh clash being reported in Jodhpur. There is more communal unrest which is being reported in Jodhpur at this point of time. We had reported the story of how 2 communities clashed on the occasion of Eid, but then there was law and order situation that the police said was maintained. But now again, live visuals coming in of clashes breaking out in Jodhpur. The mob is clashed with the police officials in Jodhpur. We'll get you more details in just about a bit. We also had the story on how the midnight clashes took place, and now there is fresh unrest that is being reported. In fact, as Ankur Vadhavan was telling me earlier, there was Section 144 imposed in the area, but then questions arising on where is the law and order situation right there in Jodhpur. The police, as you can see, is trying their level best. All right, there's lathi charging going on. You can see the visuals coming in of police lathi charging people right there in Jodhpur. We're not going to jump into conclusions, or we are going to be drawing any speculation as to why this is happening. But the police is trying to control the mob as we speak. Live visuals on your screens right now. Section 144 has been imposed in Jodhpur, according to Ankur Vadhavan, our reporter who joined us just a little while back. The cops are lathi charging the people on the streets at the moment. Getting you these details of Rajasthan Minister Pratap. Mr. Pratap is now joining us on this story. Mr. Pratap, I just want to ask you the first question. What is going on right now in Jodhpur, sir?
देखिए, जोधपुर में स्थिति कंट्रोल में है और जो जिस तरह से दंगा हुआ ये तय कर लेना चाहिए, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कांग्रेस, बीजेपी, किसी का कार्यकर्ता हो, किसी जाति धर्म का व्यक्ति हो, दंगा फैलाने का, दंगा भड़काने का, दंगा करने का किसी को हक नहीं है। स्थिति कंट्रोल में, सख्त कार्रवाई करेंगे। मैं प्रताप सिंह जी क्या कह रहे हो? सिचुएशन कंट्रोल में, लाइव विजुअल्स हम हमारे चैनल पे चला रहे हैं जिसमें पता चल रहा है कि यहाँ पे क्लैशेस और हो रहे हैं। देखो लाठीचार्ज चल रहा है, वहाँ पे लाइव विजुअल्स लेकर आ रहे हैं, आप कह रहे हो कुछ नहीं हो रहा है। पुलिस वहाँ पर मौजूद है और किसी भी कीमत पर किसी भी दंगाई को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी दंगा फैलाने का हक नहीं है। आमने सामने लोग हुए, इसमें कोई दोहराई नहीं है, दंगा भड़का है। और जिन लोगों ने ये कार्रवाई की है, जो जिस तरह से प्लान वे में आज आखा तीज है, हिंदुओं का बड़ा त्योहार है, ईद भी है, मुसलमानों का बड़ा त्योहार है, सबकी जिम्मेदारी है अमन चैन और भाईचारे से रहने की। छोटी सी बात पर लड़ने वाले लोग तय कर ले, सबसे बड़ा तिरंगा है। यदि इसी तरह बेवजह छोटी छोटी बात पर लड़ेंगे झंडों को लेकर, तो सब चौराहों पर तिरंगा लगा देंगे, राष्ट्रीय झंडा लगा देंगे। आपकी बात बड़ी सही कह रहे हो आप कि इतनी छोटी बातों पे लड़ना नहीं चाहिए और ये दो कम्युनिटीज़ को तो बिल्कुल लड़ना नहीं चाहिए। ये बहुत ही यूटोपियन बात कह दी है, पर अभी हो रही है लड़ाई और हमारे पास लाइव विजुअल्स आ चुके हैं। हमने रिपोर्ट किया था कि पुलिस ने जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन कर दिया है। चीफ मिनिस्टर गहलोत ने भी बोला है कि पीस मेंटेन किया करे, बट अभी जो विजुअल्स आ रहे हैं उससे पता लग रहा है कि ये क्लैशेस अभी भी चल रहे हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन क्यों इसको कंट्रोल नहीं कर पाया अब तक? देखिए, पूरी पुलिस प्रशासन वहाँ पर है। पुलिस की हमेशा कोशिश होती है कि पहले लाठी से समझाकर बुझाकर शांत किया जाए। और ये बात आप जानते हो, सबसे बड़ी चुनौती उसके लिए जो फील्ड में खड़ा होकर रोकने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि भड़काने वाले इस वक्त बड़ा जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, 1.5 वर्ष चुनाव का रहेंगे। ऐसे में पिछले 3 वर्ष से राजस्थान में पूरी शांति थी। प्लान वे में बीजेपी जिस तरह से दंगे कराने की साजिश कर रही है, तय कर लेना चाहिए। हमारा धर्म चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सब कोशिश की होनी चाहिए अमन चैन बना रहे। आप महंगाई के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए जिस तरह से पॉलिटिक्स करना चाहते हो, वो पॉलिटिक्स देश के इसमें नहीं है ना। अभी ये राजनीति की बात आप जो कह रहे हो, मैं मानती हूँ आप जो कह रहे हो, और अभी ये वक्त नहीं है राजनीति करने का, क्योंकि अभी तो सिचुएशन आपको कंट्रोल में लानी पड़ेगी, क्योंकि ये कम्युनल क्लैशेस जो ब्रेकआउट हो गए हैं। मैं मेयर के पास जाना चाहूंगी, पर मैं जाऊं उसके पहले मुझे एक शब्द आपसे चाहिए। 1 word फ्रॉम यू मिस्टर प्रताप सिंह। Where does the situation stand at the moment? कितना टाइम लगेगा इसको कंट्रोल में लाने के लिए, और अभी कोई एडवाइजरी है जो सिटीजन्स को दी जाए? तय कर ले, कोई भी दंगाई यदि दंगा फैलाने की कोशिश करेगा, मुकदमे लगेंगे, बंद करेंगे उठाकर, चाहे वो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ हो, किसी धर्म से जुड़ा हुआ हो। दंगा फैलाने का, माहौल बिगाड़ने का कानून हाथ में लेने का किसी हक नहीं है। अपने अपने घर में रहे, शांति से रहे। पड़ोसी आपस में लड़ते हुए अच्छे लगते, ज्यादा पार्टीबाजी में और ज्यादा इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो लोग भड़का कर उनको दंगा फैलाने के लिए भड़का रहे, मुकदमे उन पे नहीं लगेंगे। जो दंगा फैलाने की कोशिश करेगा उन पे लगेंगे। इसलिए सावधान रहे, ज्यादा इस तरह की राजनीति में नहीं पड़े। दंगा फैलाना गैर कानूनी है और ये मानकर चलिए, बेवजह यदि आप इस तरह की कोशिश करोगे, आप खुद कैमरे की नजर में सारे लोग पकड़े जाएंगे। इसलिए शांति बनाए रखें, यही देश के हित में, ये जोधपुर के हित में, हम सबके हित में है और सबकी जिम्मेदारी। आप आगे यदि ये हालात रहे तो पूरे राजस्थान क्या हो रहा है? नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल। प्रकाश सिंह जी, आप हमारे साथ बने रहिए। विनीता सेठ, शी इज द मेयर ऑफ जोधपुर साउथ, शी इज ऑल्सो जॉइनिंग अस ऑन दिस ब्रॉडकास्ट। आई अप्रिशिएट यू टेकिंग द टाइम आउट। व्हाट इज गोइंग ऑन इन जोधपुर साउथ, वनीता सेठ? हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है वनीता सेठ? आ रही है। बिल्कुल, आप हमें बताएंगे जोधपुर में क्या हो रहा है? ये जो अनरेस्ट और विजुअल्स हम बता रहे हैं कि दंगे अभी भी चल रहे हैं। मैं आपको एक मिनट, आप मैं सुन रही थी। ये आपके पास जो मिस्टर बैठे हुए बोल रहे थे, उनका क्या नाम है और क्या जिम्मेवारी है? वो प्रकाश सिंह। क्या जिम्मेवारी है इनके पास? ये बोल रहे थे कि बीजेपी दंगे जैसे जैसे चुनाव आ रही है भड़का रही है। इनको बोलो जोधपुर में खुद आते हैं, वहाँ मौजूद रहते हैं, उसके बाद पता करें। वहाँ पे किसी ने दंगा नहीं भड़काया था। जो पत्रकार थे वहाँ पे वो निकल रहे थे, उस समय रात को भजन संध्या थी। वो अंदर से जब बाहर आए हैं, उससे पहले दोपहर में पुलिस वालों ने उनको कहा है कि यहाँ पे परशुराम जयंती के और वो है जालोरी गेट चौराहे पे आपने भगवे झंडे सजाए हुए हैं। उन्होंने सारे उतारे हैं कि कल नमाज का दिन भी है और ईद की है, इसलिए ये झंडे हटा देते हैं। और वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी दंगे भड़का रही थी, उनको शर्म आनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने वो झंडे दोपहर में हटा दिए ताकि चौराहे पे जो है वो कोई ऐसी बात नहीं रहे।
जब झंडे हटा के वो निकल वनीता सेठ, ये राजनीति करने का वक्त नहीं है। मैं आप जो कह रहे हो, मैं प्रताप सिंह को रिस्पॉन्ड करने को मैं उनसे जवाब लूंगी, मैं उनसे जवाब लूंगी और ये समय राजनीति करने का नहीं है। आप मुझे बताइए, एज अ मेयर मेरा सवाल आपसे है कि सिचुएशन को कंट्रोल में लाना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि नहीं इस वक्त? आप ये सुनिए, सिचुएशन को कंट्रोल में किया था। जब मैं वहाँ पे गई, उन्होंने बोला कि यहाँ पे 2-3 गलियां ऐसी हैं जहाँ पे हिंदू परिवार रहते हैं, वहाँ मुस्लिम ज्यादा हैं, पुलिस वहाँ पे खड़ी है, आप एक बार बात कर लो, क्योंकि ये पता चला है कि अंदर वहाँ पे कुछ झगड़े हुए हैं। मैं उनके पास बात करने जा रही हूँ, उन्होंने वापस लाठी वहाँ से पत्थर फेंके हैं और उस समय वहाँ पे इनके ही नेता खड़े हैं मुसलमानों के और वो उनको उकसा रहे हैं। वो अल्लाह अकबर करके वापस उन्होंने पत्थर फेंके। तब तक सिर्फ हम 20-25 लोग थे। उसके बाद मैं वापस साइड में आई हूँ तो इन्होंने लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। किसके कहने पे किया? पहले लाठीचार्ज अमित शाह ने किया, बुरी तरह से सबको मारा। दोबारा 2 बजे रात को फिर लाठीचार्ज कर दिया। क्या मजाक बना रखी है? वहाँ पे किसने, हम में से किसने पत्थर मारे ये तो बताओ। हम तो वहाँ पे कह रहे हैं शांति रखो। ये मैं आपकी बात मानती हूँ, मैं आपकी बात सुन भी रही हूँ और आपके को ये सारा कुछ बोलने के लिए प्लेटफॉर्म दिया गया है इंडिया टुडे पर। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, एज अ मेयर आप मुझे बताइए, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो मेंटेन करना होगा, लॉ ऑर्डर की बात करें ना, 1 मिनट। सुबह 6 बजे कलेक्टर के साथ मीटिंग हुई, उसमें ये डिसाइड हुआ, यहाँ की एमएलए भी हमारे साथ थी, जी सूर्यकांता जी जो हैं, और भी नेता थे, ये तय किया कि भाई नमाज, आज उनका त्योहार है, 1 महीना उन्होंने रोजे रखे हैं, इसलिए नमाज टाइम पे हो जाए। हम सब वहाँ से हटते हैं। बस आपको जो एसीपी और जो अमित शाह ने गलती की है उसके तो पुलिस को एक्शन लेना पड़ेगा। और जो अपराधी हैं जिन्होंने उस मूर्ति के ऊपर वो लगा दिया प्लास्टिक बंद करके, मतलब उनका मुंह पैक कर दिया और इस्लामिक झंडा लगाया, उसको तो 2 दिनों को आप अरेस्ट करोगे। उन्होंने कहा ठीक है, हम वीडियो देख के कार्रवाई करेंगे। मैं आपसे ये सवाल दोबारा पूछना चाहूंगी वनीता सेठ, मैं आपसे ये सवाल नहीं, आपने बहुत बोल दिया है वनीता सेठ, आपने बहुत बोल दिया है। मैं कह रही हूँ, all right, Vanita Seth does not have answers to our questions, so she has disconnected the call. My big question to her was, what about the law and order which is to be maintained at the moment? She was more interested in politicking at this point of time when there are already communal clashes that are going on in Jodhpur. The mayor has cut the line. She has not responded to how the law and order situation can be maintained at the moment. Dev Ankur Vadhavan now joins us. Dev, it is very, very unfortunate to see these kind of communal clashes breaking out in any part of the country, and this time around it has happened in Jodhpur, outside of the politicking. What now as far as Jodhpur is concerned in terms of the law and order situation? What does the police have to say? When does the situation look like it's going to come under control, and any advisory going out to the citizens? Well, Katie, as you mentioned, really unfortunate that these kind of communal clashes have broken out in Jodhpur. From where the Rajasthan Chief Minister had won the elections. That is his home district. His constituency is in Jodhpur. And it is also more unfortunate that there has been politicking or politics happening over communal clashes. The parties blaming each other over communal clashes. The situation right now continues to be volatile. It is tense out there. There is heavy police patrolling. What we are given to understand is that after the clashes that broke out during the night, around midnight, once again in the morning the clashes have broken out. There are several people who have been resorting to stone pelting, not just on each other but also on police. The police had to resort to a mild lathi charge and tear gas shells so as to disperse the crowd. Today is Eid and the police The mayor is now joining us. वनीता जी, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप हमें बताइए एज अ मेयर, ये जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है कब कंट्रोल होगा? ये राजनीति हम बाद में करेंगे, इसकी बात भी हम बाद में करेंगे, सबसे पहले मेरा सवाल का जवाब दीजिए। दीजिए मुझे। वनीता जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। आप मुझे ये बताइए, आप बार बार कह रही हैं राजनीति, वहाँ पे क्या बीजेपी का कोई नेता था क्या? मेरे अलावा कोई भी नेता क्यों बार-बार राजनीति कर रहे हो? मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़ दीजिए, आप मुझे सिर्फ जवाब दे रही हो, पर आप एक सवाल का जवाब दीजिए ना। आप किसी की तो आप जो सवाल कर रहे हो कि लॉ एंड ऑर्डर किसके अंडर में? पुलिस के। पुलिस क्या कर रही है आपने पूछा?
नहीं, बिल्कुल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आप पूछ रहे हो। आज मेरे को ये जवाब दो, हम 6 बजे वहाँ से आए हैं ये कह के कि इनकी नमाज का टाइम है, अभी आप एक बार इनका नमाज होने दो। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे जितने व्हीकल निकल रहे हैं उनके कांच तोड़े, ये किसकी जिम्मेवारी है? पुलिस की। बिल्कुल। फिर अब आप मुझे ये कह रहे हो, आप ये बताओ कोई भी राजनेता वहाँ पे था क्या सिवाय मेरे? तो मैं, आप मुझे पहले लॉ एंड ऑर्डर, तो जिसको करना है लॉ एंड ऑर्डर वो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो ये सवाल आप उठा रहे हो, एक पक्ष पे डंडे बरसा रहे हैं जी। और मुझे ये बताओ कि उन मुस्लिम वालों के पास पत्थर आए कहाँ से? जांच का तो ये विषय होना चाहिए ना। बिल्कुल, तो आपकी पुलिस से ये विनती है कि इन्वेस्टिगेशन थॉरली कंप्लीट किया जाए इस पर। इन्वेस्टिगेशन वो करें और अब लॉ एंड ऑर्डर उनको करना चाहिए। वो क्या कर रहे हैं ये तो वो बताए ना। आप अभी क्या कहना चाहोगे? ये जो सिचुएशन कम्युनल किस्म का है और हम बहुत ही सेंसिटिवली डील करते हैं ऐसे सिचुएशंस में। मैं प्लीज एक बात कह रही हूँ, इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं, इसमें ये देखना चाहिए कि जिन्होंने ये पत्थर चलाए हैं उनके पास कहाँ से आए, क्योंकि आज तक जोधपुर में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है और ये प्री प्लान्ड हुआ है पत्थर का जो भी हुआ है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि आप कह रही है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? अब ये पॉलिटिकली हम अपन नहीं कह सकते। देखो, मैं गलत इसलिए नहीं कि पहले हम ये तो पता करें कि पत्थर चलाने वाले कौन थे। जी, ये इसका जवाब पुलिस देगी। एक ही जगह से वो आ रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, पुलिस जो है वहाँ पे खड़ी है, क्या कर क्या रही थी वो? बिल्कुल। और आप कुछ सवाल उठाना चाह रहे हो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, आप बताइए वो क्या है? मुझे इस समय कांग्रेस बीजेपी का कुछ नहीं कहना, मुझे सिर्फ ये कहना है कि जिनके लगी है पहले तो हम उनको संभालें और जो अब वापस वो झगड़ा दंगा कर रहे हैं उनको पुलिस कंट्रोल करे। आप हमारे साथ बने रहिए। Dev is now joining us. Dev, where does the investigation stand on the communal clashes that have broken out in Jodhpur? Well, Cheti, the police is still trying to ensure that peace and tranquility is somehow maintained in the area, but the mayor should also answer as to whether she has communicated with anyone in the higher-ups in the police hierarchy, whether this kind of, she mentioned that she had visited that particular area. So whatever she saw out there, whether she communicated that to the higher-ups in the police or not, what has she done? It's not about a BJP or Congress or blame game. That seems to have, emanated from the communal clashes. But the mayor should also answer. She's the mayor of the place, and she should also answer whether she has communicated whatever she has seen and what has she done particularly to bring the situation under control. मनीता जी, ये मेरा सबसे पहला सवाल आपके लिए यही था कि आपने अपनी तरफ से क्या किया? ये जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो तो खराब हो ही रहा है, आपने कम्युनिकेट किया है पुलिस अथॉरिटीज से वहाँ पर राजस्थान में? Have you made any effort from your side as the mayor? All right, line has gotten disconnected, but they very important question that you asked of the mayor at the moment. We'll try to re-establish our connection with the mayor as well, but I'm going straight across to you, Dave, for the latest that is coming in from ground zero. The situation continues to be tense at this point in time over there, Cheti. That the police is trying to ensure that somehow, the violent clashes that had broken out over there around midnight, that situation does not aggravate any further. Already Section 144 is in place. Internet ban has been imposed in the Jaluri Gate area, which is considered to be a sensitive area in Jodhpur. The police had to resort to a lathi charge and also tear gas shells to ensure that crowd is dispersed. In fact, what we are given to understand is that some of the journalists were also caught in the melee. Some of them got injured as well. But the situation, as I mentioned today, all right, there BJP State President Satish Punia is also joining us. Satish Punia, your first up reaction, आप हमें बताइए ये जो clashes चल रहे हैं जोधपुर में, इस पे आपका first reaction क्या है? पहली प्रतिक्रिया ये है कि अशोक गहलोत जी से कांग्रेस के शासन में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है और खास तौर पर जो अपीजमेंट की राजनीति इन्होंने शुरू की है उसी का नतीजा है कि इस तरीके से धर्म के नाम पर या किसी भी समारोह के नाम पर स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति पे झंडा लगाना और परशुराम जी के झंडे उतारना, उसके बाद लगातार जिस तरीके से करौली की घटनाओं के बाद जो घटनाएं सीक्वेंस से हुई
एक तरफ तो सरकार बैन करती है रामनवमी के जुलूस को, 144 इम्पोज करती है 17 जिलों में और लोगों पर 107 और 16 की कार्रवाई करती है, और दूसरी तरफ पीएफआई को परमिशन देती है। तो ये अपीजमेंट के कारण ये हौसला इस तरीके के जो अराजक तत्व हैं उनका बढ़ा है। तो चलती रहेगी। सतीश पूनिया जी, अभी आपका क्या कहना है कि ये जो कम्युनल क्लासेस जो चल रहे जोधपुर में है, बाकी सारे जगह भी है इंडिया में जहाँ पर ऐसे कम्युनल क्लैशेस हम रिपोर्ट कर रहे हैं, और उसमें कुछ बीजेपी रूल स्टेट्स भी है? मैं तो राजस्थान की बात करूंगा। राजस्थान में मुख्यमंत्री ने और सरकार ने जो अपीजमेंट किया है उसके कारण यहाँ इस तरीके की घटनाएं बढ़ी। सतीश पूनिया जी हमारे साथ बने रहिए। प्रताप कचारियावास इज नाउ जॉइनिंग अस। प्रताप कचारियावास, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड? आप सतीश पूनिया को क्या जवाब देना चाहेंगे आज? All right, we'll re-establish our connection right there. Requesting the producers to get Pratap Kachariavas on the phone line to respond to the questions that have been asked by Satish Punia, the state BJP chief of Rajasthan. Do we have Satish Punia with us on the phone line? All right, we'll get you these political reactions in just moments from now. Our relentless coverage continues here on India Today. We're not speculating anything, bringing you the facts as they are and bringing you political reactions as well. I'm throwing this across to my colleague Sneha Mordani, who's joining you from the studio, taking this broadcast forward. Over to you, Sneha. Rather very unfortunate day, unfortunate morning, starting the morning with communal clashes and the sad and unfortunate news of communal clashes breaking out in Jodhpur. Absolutely. Chetty, thanks for that. Chetty is right. Unfortunate series of events we're reporting on an auspicious day. See, today Muslims all over the world are celebrating Eid festivities. But in Rajasthan, clashes have broken out, and this has been simmering for a while now. Over loudspeaker, on Azan over loudspeaker, where the Hindus are opposing it. Hanuman Chalisa should be played over loudspeaker. What should be played the loudest? The question many political leaders have been asking for days together, and this has led to an outbreak of clashes in Rajasthan. Devankur Vadwan is getting us all the details of that big story. We see these horrific pictures coming in of the police unfortunately trying to bring the situation under control. There are protesters who are being lathi charged as well. These are scenes that could have been avoided, but this has been simmering for days together. Take us through the sequence of events. What's really happened in Jodhpur today? Erupted around midnight last night. In fact, the two communities, members from the two communities came face to face in a clash that happened over, hoisting of certain flags. Today is Eid, and before that, these kind of criminal clashes are really unfortunate, which happened. And this is a district from where the Rajasthan Minister Ashok Gehlot comes from. He is an MLA from that district of Rajasthan, and it's one of the districts of Rajasthan which has the maximum number of police personnel stationed out there. But despite that, communal clashes broke out around midnight, and this is the area where the communal clashes broke out is the Jaluri Gate area in Jodhpur, which is considered particularly sensitive. What we are given to understand is that after the clashes broke out over the installation of a few loudspeakers and removal of certain flags from there, thereafter the police had to resort to a mild lathi charge and tear gas shells to ensure that the crowds are dispersed and they do not clash again in violent, really violent clashes in which stones were being pelted allegedly from both sides. So Section 144 has been imposed in the area, Sneha. Apart from that, internet ban was imposed at 1 a.m. On May 3 in the area. Given the fact that today is Eid, the police apprehends that these kind of clashes can again break out during the course of the day, and that is why there is heavy police patrolling that is happening in the entire area that was cordoned off and which is currently considered sensitive. Sneha?
Dave is getting us all of those pictures on the left side of your screens are pictures that Dave in fact is sending us live right now. You can see the administration, their police trying to bring the situation under control. What's been the word from the government of Rajasthan, Dave? Well, the government of Rajasthan has accused the opposition of, of fomenting trouble. One saw that when the communal clashes happened earlier last month, in the month of April in Karoli district of Rajasthan, thereafter too, the Rajasthan government in the state had claimed the BJP of fomenting trouble in the area. It had claimed that the national BJP president JP Nadda had to visit Rajasthan, and around that time the BJP had created this atmosphere. Be with us. We'll just come back to you, Dave. I'm just going to come back to you. Mahant Balaknath, Member of Parliament from the BJP, is now joining us. शुक्रिया इंडिया टुडे के साथ इस समय जुड़ने के लिए। सरकार का ये कहना है, the Rajasthan government is saying that BJP is essentially behind this indirectly because they have been trying to create tensions, talking about loudspeakers being used for azan, and that's what has eventually led to these clashes. This is along expected lines. देखिए मैम, मैं तो हिंदी में बोलना चाहूँगा, जी बिल्कुल बोलिए। मैं समझ गया। ये देखो, सारी घटनाएं राजस्थान सरकार खुद निर्माण कर रही है। जैसा माहौल आज राजस्थान में खड़ा हो चुका है, ये माहौल सारा का सारा राजस्थान सरकार ने ही निर्मित किया है। आप क्यों नहीं, मैं स्पष्ट है कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार है। करौली से हिंसा शुरू होती है, अभी तक उसके अपराधी पकड़े नहीं जाते हैं। उसके बाद चलते चलते ये इस प्रकार का सांप्रदायिक माहौल पूरे देश भर में फैल जाता है। क्योंकि ये माहौल खड़ा किसने किया, ये नोटिफिकेशन जारी किसने किया कि भाई कोई भी सार्वजनिक स्थानों पर, कोर्ट्स पर, चौराहों पर कोई भी ध्वजा नहीं लहराएगा, झंडा नहीं फहराया जाएगा। ये लोगों के अंदर ऐसी भाई झंडा फहराना कि नहीं फहराना, इस विषय को रखा किसने? राजस्थान सरकार ने रखा, उसने नोटिफिकेशन जारी किया, उसने कहा कि कोई भी भगवा ध्वज नहीं लहरा, क्योंकि उस समय कोई मुस्लिम त्योहार था नहीं। उस समय पर भगवा, उस समय धार्मिक हमारे सनातन हिंदू त्योहार थे, तो उस समय पर नोटिफिकेशन जारी किया गया। वो नोटिफिकेशन हालांकि अभी भी लागू है, लेकिन सरकार जहाँ चाहती है उसके नियम लागू कर देती है, जहाँ नहीं चाहती उसके नियम लागू नहीं। लेकिन बालकनाथ जी, ये तो कांग्रेस और बाकी सारे कई सारे राज्यों का ये कहना है, इंक्लूडिंग आपके जो अलायंस पार्टनर है बिहार में, नीतीश कुमार का भी ये कहना है कि बीजेपी के जो नेता हैं वो लाउड स्पीकर बैन का डिमांड करके इस तरह का माहौल बना रही है। ये तो बिहार में आपके अलायंस पार्टनर का कहना है कि माहौल बीजेपी के नेता बना रहे हैं। नहीं, माहौल बीजेपी का नेता नहीं, ये जो देश में सांप्रदायिक घटनाएं होनी शुरू हुई है, इसके पीछे कांग्रेस पार्टी है। और दूसरी बात, देश विरोधी ताकतें भी है जो दूसरे देशों की हो सकती है। ये सब लोग मिलकर अब वर्तमान में जिस प्रकार से भारत और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से उन्नति के पथ पर है और अच्छे से सब देश में चल रहा है, इन लोगों को पसंद नहीं है। मैं आपको सत्यता से कहता हूं कि ये लोग जानबूझकर ऐसा माहौल खड़ा करना चाहते हैं, और इसकी शुरुआत राजस्थान से ही क्यों हो रही है। अगर ऐसी बात है तो मैं राजस्थान की सरकार को कहना चाहता हूँ कि उसकी जाँच करे ना, वो कौन इसके पीछे है। आप पहले तो माहौल क्रिएट करके लोगों को बताते हो कि आपको झंडा फहराना है या नहीं फहराना। पहले सब ठीक से चल ही रहा था ना सब राजस्थान में, लेकिन आपने इस विषय को आपने लोगों का ध्यान आकर्षित कर कि यहाँ झंडा नहीं लगाना, यहाँ झंडा लगाना है, यहाँ माइक लगाना है, यहाँ माइक नहीं लगाना। अरे अगर बीजेपी ने लाउड स्पीकर बंद करने की बात कही है तो वो सब जगह से कही है ना, मंदिरों से भी कही है, मस्जिदों से भी कही है। तो आप देख रहे हैं कि यूपी में कहीं भी कोई घटना नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर का बैन है, जो बैन है वो हर जगह होना चाहिए, वो मंदिरों में भी होना चाहिए। हर जगह हो रहे ना, कहाँ ऐसा है कि कोई मंदिर पे लग रहा है तो मस्जिद पे नहीं है? कहाँ ऐसा है बताओ? यूपी में हर जगह हुआ है, मंदिरों पे भी लाउड स्पीकर उतरे हैं, मस्जिदों से भी लाउड स्पीकर उतरे हैं। और दूसरी बात, जोधपुर के अंदर ये जो सांप्रदायिक घटनाएं यहाँ बढ़ रही है, क्योंकि जोधपुर में राजस्थान में तुष्टिकरण की राजनीति सरकार कर रही है। एक संप्रदाय के लोगों को उत्साह, उनको संरक्षण देती है, तो उनकी जो है कि इस प्रकार की घटनाएं आपको देखने को मिलती है, क्योंकि उनको पता है मुख्यमंत्री के शहर के अंदर इतनी बड़ी घटना होती है और जो लोग करते हैं वो मुख्यमंत्री के करीबी लोग हैं। लेकिन बालकनाथ जी, मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी। आप लोगों ने राजस्थान में ये बोला है कि चुनाव में आपका एक प्रॉमिस है अपने मैनिफेस्टो में कि लाउड स्पीकर्स हटाएंगे। आप जानते हैं कि ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है, आपको नहीं लगता है कि इस मामले में कोर्ट की जी डायरेक्शंस है
सुप्रीम कोर्ट की भी उसमें डायरेक्शंस है और लाउड स्पीकर लगाना है और किस सीमा तक लाउड स्पीकर की आवाज रहेगी, ध्वनि किस प्रकार से, कितनी उसकी ध्वनि ज्यादा रहेगी, कम रहेगी, इस सब का सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है। मैं मानता हूं कि हम सबको मिलकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करना चाहिए और उसी के कानून और संविधान दोनों पर ही देश चलता है, ना कि सांप्रदायिक या किसी का पक्षपात करके देश चलता है। दोबारा पूछना चाहूंगी बालकनाथ जी, दोबारा पूछना चाहूंगी कि मंदिरों से भी और मस्जिदों से भी, दोनों जगह से लाउड स्पीकर्स बंद होने चाहिए, क्या ये आपकी बात है? मंदिरों से सुबह शाम लाउड स्पीकर बजता है, सुबह शाम खाली। ये कोई धार्मिक आयोजन होता है तो उसकी प्रशासन से परमिशन ली जाती है। मस्जिदों के दिन में 10 बने रहिए हमारे साथ। वी हैव सम रिएक्शंस इन फैक्ट दैट हैव कम इन, लिसन इन। कानून के खिलाफ है, उसके विरुद्ध कानून के तहत कार्रवाई की जाए। सर, जालूगेट की पुलिस चौकी के कांच फोड़ दिए गए, चौकी को भी तोड़ दिया गया। कितने घायल हुए हैं सर अब तक? अभी तक हमारे पास बहुत स्पेसिफिक फिगर मेरे पास नहीं है, बस उसको हम लोग इकट्ठा कर। कितने लोग चोटिल हुए सर पुलिस के? पुलिस के और मेजर कोई किसी का नहीं है, कुछ लोग माइनर इंजरीज हुए हैं, उसको हम देख पा रहे हैं। चौकी आज सुबह जो घटनाक्रम हुआ सर, उसको लेकर के क्या है? घटनाक्रम आज सुबह भी कुछ परिस्थिति ऐसी हुई थी, बट हमने उसको अपना कार्रवाई करते हुए उसको नियंत्रण किया। आप प्रसंग ज्ञान लेंगे या जो है जनता की एफआईआर का इंतजार करेंगे, या आप प्रसंग? हम भी लेंगे और जनता का भी, अगर जिसकी तरफ से भी हमारे पास रिपोर्ट आएंगे हम एफआईआर दर्ज करेंगे और हम अपने तरफ से भी करेंगे। सर, अंतिम सवाल, धारा 144 को लेकर क्या लागू कर दी गई है और कब तक लागू की जाएगी? नहीं, ये तो पहले से ही लागू है और बिल्कुल जो ये त्योहार में जुलूस ये निकालते ये परमिशन के तहत होता है, बट उस पर हम बिल्कुल अभी इसीलिए हमने इतना सारा पुलिस पेट्रोलिंग और बाकी व्यवस्था किए हों जाते इसको पालना हम करा पाए। लास्ट दिन क्या अपील करेंगे सर, फाइनली क्या अपील करेंगे? मैं यही अपील करूंगा सभी को शांति बनाए। 10 दिन पूर्व भी आपने लेटर जारी कर दिया था, चौराहे पे किसी तरह का कोई भी श्रृंगार नहीं किया जाएगा, झंडे नहीं लगेंगे, उसके बावजूद भी इस तरह का घटनाक्रम रहा सर। उसको हम इसीलिए देख रहे हैं। ठीक है। Member of Legislative Assembly Manisha Pawar now joining us. आपकी क्या प्रक्रिया है इन डेवलपमेंट्स में? ये जो क्लैशेस हुए हैं जोधपुर में, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए मैम, जोधपुर बड़ा सद्भावना, प्रेम और स्नेह का शहर है। यहाँ सब लोग भाईचारे से और प्रेम से रहते हैं और सभी त्योहार बहुत मिलन और सभी लोग मिलकर मनाते हैं। कुछ असामाजिक तत्व रहे होंगे, उनके उन्होंने कुछ किया होगा, बाकी यहाँ भी शांति है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोगों ने मिलकर शांति सद्भावना से ईद भी मनाई, आकत ईद भी मना रहे हैं और हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत का जन्मदिन भी मना रहे हैं। जी, लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि जोधपुर और राजस्थान जो कि कांग्रेस रूल्ड है वहाँ से ये क्लैशेस शुरू हुए हैं। ये तो पॉलिटिक्स है और ये पॉलिटिक्स कांग्रेस पार्टी कर रही है। नहीं, ये आपको भी ज्ञान है कि कांग्रेस पार्टी कभी भी ऐसे कार्य नहीं करती है। ये तो विपक्ष है, विपक्ष यही कहेगा। हम यही कोशिश करते हैं कि सभी लोग मिलकर रहे, स्नेह से रहे और सब लोग हम आपस में मिलकर सद्भावना से हर त्योहार मनाएं। ये तो विपक्ष यही कहेगा, उनके पास कोई चारा नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने देखिए किस तरह योजनाओं से आम आदमी को जोड़ा है, सभी को हर तरीके से मदद की है, सब योजनाओं के माध्यम से लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। तो विपक्ष के पास अब कुछ कहने को नहीं है, तो इस तरीके से राजनीतिक उत्पीड़न तो वो खुद कर रहे हैं। बीजेपी का ये कहना है कि ये, जैसे मैंने कहा, कि कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये डिवाइड और रूल पॉलिटिक्स है जो कांग्रेस करती है। वो इंसिडेंट ही था, अचानक ही कुछ हुआ। हम सब लोग हमेशा से ही मिलकर, आप देखिए कभी भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। ये तो लोगों को उनका खुद का उत्संड है कि वो लोग खुद चला के इस तरीके की करते हैं, बात करते हैं। बाकी हम लोग हमेशा यही कोशिश करते हैं कि हम सब लोग मिलकर सौहार्दपूर्ण रहे और उनसे भी यही कहेंगे कि आप शांति और सद्भावना का वातावरण बनाएं। जी, मनीषा पवार, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सो यू हैड अ रिएक्शन देयर from the Congress. The Congress says that this is an incident which took place. In fact, it was spontaneous. It was not planned. इसके बारे में क्या कहना है? And there's been an outbreak of violence, remember, in Jodhpur. You're getting these pictures from Jodhpur. The BJP says this is a planned conspiracy by the Congress, which is in power in the state of Rajasthan. The Congress in turn has come out and said that all of this has been simmering, given that the BJP has been talking about loudspeakers
for days together. Salim Khan from the Congress party is also now joining us. सलीम खान, बीजेपी का ये कहना है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि राजस्थान में जो कि कांग्रेस रूल्ड है वहाँ पर ये कम्युनल क्लैशेस हुए हैं, ये प्री प्लान्ड है, ये कांग्रेस की का एक साजिश है, डिवाइड और रूल पॉलिटिक्स है, ये उसका एक हिस्सा है. I totally contempt it, मैडम. ये कोई भी सरकार, चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस कोई सरकार, किसी भी दंगे को प्रायोजित नहीं करती है. असामाजिक तत्व दोनों ही समुदाय में होते हैं और वो शहर की शांति को भंग करने में आगे रहते हैं. छोटी सी बात थी और दोनों तरफ के असामाजिक तत्वों ने उसको बड़ा तूल दिया और ये छोटा सा इंसिडेंट हो गया. सरकार की ये सतर्कता रही कि इस बड़े दंगे को बड़े रूप में नहीं फैलने दिया. जी, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये कांग्रेस फायदा उठा रही है माहौल का और ये माहौल जो है कांग्रेस बना रही है. अगर सरकार ही बनाती तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, गुजरात में जो दंगे हुए हैं, बिगड़ा है जोधपुर में, उसका ठीकरा अशोक गहलोत क्या फिर से केंद्र पर फोड़ने की कोशिश करेंगे या इसकी जिम्मेदारी वो उठाएंगे? सवाल ये भी पैदा होता है कि कब तक राजस्थान में तुष्टीकरण की राजनीति के चलते कभी मालपुरा में हिंदू परिवारों का पलायन, करौली में हिंदू विरोधी हिंसा, छाबड़ा दंगों में जिस प्रकार से टारगेटिंग की गई, जिस प्रकार से सालासर बालाजी का गेट ध्वस्त किया गया, जिस प्रकार से 300 वर्षीय मंदिर को ध्वस्त किया गया, ऐसी घटनाएं कब तक चलती रहेगी राजस्थान में? इसका जवाब भी अशोक गहलोत की सरकार को और कांग्रेस पार्टी को देना होगा. Spokesperson Shehzad Poonawala there. Salim Khan continues to be with us. Salim Khan, if you heard what the BJP spokesperson said, that this is the Ashok Gehlot government responsible for the complete breakdown of the law and order situation in Rajasthan. Pictures of communal violence coming in from Jodhpur in Rajasthan. The BJP has in fact blamed the Congress. The Congress says that the BJP has been trying to foment trouble, talking about ban on loudspeakers outside mosques, in mosques, and this is what that has led to the clashes that have broken out in Jodhpur just on the day the country is celebrating Eid. A fight, remember, broke out between two communities over the installation of a flag and a loudspeaker at Jalori Gate in Rajasthan's Jodhpur. These are pictures of the police trying to bring the situation under control, as you can see. And this has been simmering for a while. Now, as per reports, people of one community started raising slogans after a flag was put up on the statue of freedom fighter and a banner related to Eid was strung up on a circle at Jalori. The demonstrators removed the flag and banner, and this is what led to the uproar. The members of the other community got angry and clashes broke out between two groups. The police is trying to bring the situation under control. Internet services also continue to remain suspended in this area. Stones have been pelted as well from both sides. Vehicles have been damaged. The crowd even took down the loudspeaker. The police has resorted to lobbing tear gas shells to bring the crowds under control. Live visuals on the left side of your screens that you can see right now, with the police trying to bring the situation under control as we speak. These are protesters being lathi charged, as you can see on the screens right now. Damage being done. Pictures of arson on your screens right now, where vehicles have been broken by protesters. Remember, these are protesters from both sides of two communities that clashed over a loudspeaker and a flag. Ashok Gehlot, meanwhile, the Chief Minister, has responded saying that it is unfortunate that tension has arisen due to clashes between two groups at Jalori Gate in Rajasthan. The administration has been instructed to maintain peace and order at all costs. Protesters have been lathi charged as well, as you can see on your screens right now. These are pictures coming in from Jodhpur city. Ashok Gehlot has gone on to speak about respecting the tradition of love and brotherhood of Jodhpur, Marwar. I appeal rather to all parties to maintain peace
and cooperate in keeping the law and order situation under control, quote unquote. There's heavy police deployment in the area and internet services have been suspended as a precautionary measure. Police says the situation is under control right now. Clashes have broken out in Jodhpur on Eid over loudspeaker. Internet services stand suspended in Jodhpur city. We're getting you all these details of communal tension in Rajasthan's Jodhpur after violent clashes broke out between two communities on Eid. Internet services have been suspended. Clashes erupted after a disagreement over raising religious flags by both communities in Jodhpur's Jalori Gate area. My colleague Sharat is getting us more details on that story. Sharat, इस समय स्थिति कैसे है? पुलिस का ये कहना है कि सिचुएशन जो है अंडर कंट्रोल है, इंटरनेट सर्विसेज सस्पेंड किए गए हैं। अभी अंडर कंट्रोल है। सुबह इसलिए बिगड़ा था कि वहाँ पर जब ये नमाज पढ़ने आए थे, आज ईद की नमाज पढ़ने, तो वहाँ सुबह वापस से भगवा झंडा लगा दिया गया था। अभी किस ट्रेन ने किया? जालोरी गेट का इलाका मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है। इन्होंने कल रात को अपना हरा झंडा लगाया था। अब इनका कहना था हिंदू संगठनों का कि पहले परशुराम जयंती के लिए 2 दिन पहले हमने भगवा झंडा लगाया था, उसके बाद इन्होंने हरा झंडा का लगाया था क्योंकि ये ईद की नमाज की तैयारी करते हैं। मगर आज जो स्वतंत्रता सेनानी हैं वहाँ उनकी मूर्ति लगी हुई है, उनके ऊपर भगवा झंडा लगा दिया था। भगवा झंडा लगाए जाने के बाद कुछ लोगों ने वहां पर पथराव किया, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज करके भगाया है उन्हें। मगर फिलहाल वहां पर अभी शांति है। हालांकि माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है क्योंकि बहुत सारे लोगों की गाड़ियां फूटी हैं, चौकी पर भी पथराव हुआ है, अब कुछ शोरूम पर भी पथराव हुआ है, कुछ एटीएम पे पथराव हुआ है। तो कुल मिलाकर एक अंदर रोष है लोगों के, लेकिन फिलहाल अभी शांति बनी है। शरद, इसमें पॉलिटिक्स तो होना ही था क्योंकि ये एक पॉलिटिकल इशू है, रिलीजियस कम पॉलिटिकल इशू है। बीजेपी का ये कहना है कि इसके लिए कांग्रेस रिस्पॉन्सिबल है। कांग्रेस ये कहती है कि ये माहौल बीजेपी का बनाया हुआ है। देखिए, इसमें क्या गलत है क्या सही है कहा नहीं जा सकता। दोनों तरफ के हालत ऐसे हो गए हैं कि हिंदू हरा झंडा देके भड़क जा रहा है और मुसलमान भगवा झंडा देके भड़क जा रहा है। अब इसमें किसका योगदान है? पॉलिटिकल पार्टीज का है, मीडिया का है, पता नहीं। लेकिन जिस तरह के हालात रहे, परशुराम जयंती, जालोरी गेट का इलाका मुस्लिम बहुल इलाका है, वहाँ पर ईद की नमाज पढ़ी जानी थी, उसके बावजूद वहाँ पर परशुराम जयंती के नाम पर भगवा झंडा क्यों लगाने दिया गया? अगर भगवा झंडा लग भी गया तो क्या बुराई थी? अगर मुसलमानों को हरा झंडा लगाना था, जैसा कि मैं कहना है कैसे लगाते हैं, तो भगवा झंडा के साथ हरे झंडे लग जाता तो क्या बुरा था? हिंदू मुसलमान एकता गंगा में तहजीब की बात हो जाती। मगर उन्होंने भी वहाँ पर भगवा झंडा उतार दिया। जब रात को पुलिस ने सारे झंडे उतरवा दिए तो पुलिस क्या सो रही थी जो वापस जाके लोगों ने भगवा झंडा लगा दिया जिससे वो भड़क गए, और अब जाके पुलिस ने तिरंगा झंडा लगा दिया। तो कुल मिलाकर कहें कि इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किसकी गलती है। जिस तरह का माहौल है, लोग एक दूसरे के खिलाफ दिमाग में इतना नफरत भर लिए हैं, हिंदू मुसलमान के खिलाफ, मुसलमान हिंदू के खिलाफ, कि बेहद टेंस माहौल हो गया है यहाँ पर। और इसमें पुलिस की लापरवाही, प्रशासन की लापरवाही आग में घी डालने का काम कर रही है। पुलिस और प्रशासन की लापरवाही से सब कुछ ये हो रहा है। अगर इतना तनावपूर्ण माहौल था कल रात को, उसके बावजूद पुलिस ने कैसे वहां पर भगवा झंडा लगने दिया जहां पर ईद की नमाज पढ़ी जाती है, ये बड़ा सवाल है। और लग भी क्या तो क्या इस तरह से मुसलमान भगवा झंडा देखकर भड़क जाएंगे, गाड़ियों पर पथराव करेंगे, एटीएम पर पथराव करेंगे? किसकी गलती है? इतनी नफरत दोनों तरफ से फैली हुई है। इस नफरत के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनका प्रशासन अगर इतने हल्के ढंग से लेता है तो निश्चित रूप से प्रशासन की गलती तो सबसे बड़ी है ही, मगर समाज में भी जिस तरह का नफरत है, बेहद मुश्किल माहौल है यहाँ पर। इसीलिए कह रहे हैं कि टेंस माहौल है। अभी पॉलिटिकल पार्टी के नेता भी दौरा शुरू करेंगे। जातीय संगठन जो है, हिंदू संगठन परशुराम जयंती जो है ब्राह्मणों के मनाते हैं, तो वहाँ पर ब्राह्मण भी जुटेंगे। लेकिन कुल मिलाकर कहा जाता है फिलहाल शांति है। अब कब तक शांति बनी रहेगी इसके बारे में यह कहा नहीं जा सकता। शरद, इस पूरे मामले में कितने अरेस्ट किए गए हैं, किसे अरेस्ट किया है पुलिस ने और कितने डिटेंशंस है, इसके बारे में भी बताइए।
शरद बने रहिए हमारे साथ, हम अभी आपके पास वापस आते हैं। जस्ट गो बैक टू शरद। नरेश जोशी ऑफ द कांग्रेस पार्टी इज विद अस। नरेश जोशी, बीजेपी का ये कहना है कि ये कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है और इसके लिए कांग्रेस की सरकार जो कि रिस्पॉन्सिबल है, जो कि अभी पावर में है राजस्थान में, वो रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, पावर में राजस्थान में है, पूरे देश में दंगे आ रहे हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये वो घुसते नहीं अपने आप में, गरेबान में झाँक के नहीं देखते वो। तो यहाँ पे लांछन लगाने की बात करते हैं। किस स्टेट के अंदर असामाजिक तत्व नहीं है जो इस काम को अंजाम देते हैं? ये तो बात करने की बात है कि राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है, संवेदनशील मुख्यमंत्री है, उसको कैसे करा जाए, उसके शहर में कैसे दंगे फैलाए जाए, इसके ऊपर वो विचार करके काम करते हैं। और असामाजिक तत्वों द्वारा किए गए कार्य के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है, ठीक है ना जी। लेकिन बीजेपी के लीडर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुकेश लौढा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं ये सवाल उनसे लेना चाहूँगी। कांग्रेस का ये कहना है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन ये जो माहौल बनाया गया है ये बीजेपी की तरफ से माहौल बनाया गया है। मुकेश लौढा। हेलो जी, ये जो माहौल है कांग्रेस का कहना है कि ये बीजेपी की तरफ से बनाया गया है। बीजेपी की तरफ से क्यों बनाएंगे मैडम? हम तो सर्वधर्म वाले आदमी हैं। और दूसरी बात ये है कि जब हमारे भगवा झंडा लगा हुआ था उसके ऊपर इन्होंने रात को पाकिस्तान का झंडा लगा दिया। अब इसके बाद में ये पुलिस प्रशासन की होती है, पुलिस प्रशासन जब हमारी मेयर आती है उनको धक्का दे के गिरा देती है, तो माहौल तो खराब होना ही है। और ये इसमें जो लोग शांति से बैठे हैं उनके गृह क्षेत्र में ये काम हो रहा है। नहीं, लेकिन अभी हमारे जो ग्राउंड रिपोर्ट से मुकेश लौढा, उससे ये भी समझ में आ रहा है कि हिंदुओं ने ऑब्जेक्ट किया जब हरा झंडा लगाया गया, और वो पाकिस्तान का झंडा नहीं था, वो उनका रिलीजियस झंडा था, ये कहना है। नहीं, रिलीजन झंडे को हटा के नहीं लगाया जाता है। जब सांप्रदायिक सौहार्द अगर रखना है आपको, उसके बाद में ऐसी बात करने का ये तो क्या है कि अशोक गहलोत की खुद की सहमति होगी, बाकी तो कैसे ये लोग कर देंगे? कैसे रिलीजन का झंडा हटा के दूसरे रिलीजन का झंडा लगा देंगे? कल तो भारत के संविधान सांसद में लगा देंगे हरा झंडा के रिलीजन का ही, तो आज लगाना दो। नरेश जोशी, आपका क्या कहना है? मुकेश लौढा जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान का झंडा लगाया गया था। देखो, मुकेश जी मेरे बड़े भाई हैं, मेरे दोस्त हैं। मुकेश जी को ये ज्ञान नहीं है कि झंडा हरा था कि पाकिस्तान का था, ठीक है ना। और रिलीजन के झंडे लगे रहते हैं हर चौराहों पे, रोज झंडे चेंज होते हैं, रोज माहौल चेंज होता है। अब कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अगर कोई कार्रवाई की जाती है उसके लिए सरकार दोषी नहीं है। मैं तो पूछना चाहता हूँ ना बीजेपी से कि पूरे देश के अंदर दंगे हो रहे हैं वो किसके होते हैं? वहाँ तो कांग्रेस की सरकार नहीं है। मुकेश लौढा अगर इसका जवाब दें। जी, एक बात सुनो, जब भगवा झंडा लगा था तो उसके पास में लगा था, उसको हटा के लगाने की क्या जरूरत आई? क्या सौहार्द खत्म, शहर का शांति प्रिय शहर को खराब करना चाहते हैं आप लोग? अभी तत्व होते हैं जो इस तरीके की वारदात करते हैं। वारदात तो अपने बहकावे में आके ही करते हैं वारदात। मुकेश लौढा, एक सवाल पूछना चाहूंगी कि पुलिस इस मैटर को अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन जहां पर अगर हरा झंडा लगा है वहां पर भगवा झंडा लगाने की जरूरत क्या थी? और ये भी सवाल पूछना चाहूंगी कि अगर भगवा झंडा लग जाता है तो हरे झंडे जिन्होंने लगाया उनको प्रॉब्लम क्या है? मैं ये कह रहा हूँ मैडम कि जब भगवा झंडा लगा हुआ था तो उसको हटा के हरा झंडा लगाने की क्या जरूरत आई उसकी जगह? नहीं, एलिगेशंस तो ये है मुकेश लौढा जी कि हरा झंडा लगा हुआ था और उसे हटा के भगवा झंडा लगाया गया। नहीं, हरा झंडा नहीं, भगवा झंडा लगा हुआ था, उसके जगह हरा झंडा लगाया है। ये तो पुलिस प्रशासन का कहना है कि हरा झंडा लगा था और उसे हटा के भगवा झंडा लगाया, बाद में पुलिस ने जाके तिरंगा लगा दिया। ऐसा है कि पुलिस को ये कहेगी क्योंकि वो तो राज्य के साथ, सरकार के साथ चलती है। सरकार का जैसा आदेश आएगा, ऊपर से जैसा आदेश आएगा वैसे ही काम करेगी। ये ऐसा थोड़ी करेगी वहाँ पे हाँ लगा दो।
पुलिस वाले जिम्मेदारी लेते हैं क्या वहाँ पे भगवा मैं फोटो बता देता हूँ, भगवा झंडा पहले लगा हुआ था और बाद में हरा झंडा लगा हुआ था। अच्छा ठीक है, ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि क्लैशेस, कम्युनल क्लैशेस ब्रेकआउट हो गए हैं जोधपुर में। नरेश जोशी और मुकेश लोधा, शुक्रिया इंडिया टुडे के साथ जुड़ने के लिए। वी हैव सम न्यूज़ जस्ट कमिंग इन, लेट्स गो स्ट्रेट टू दैट। This is Mamata Banerjee's big attack on each. She says, and I quote, all of us need to stay together. Divide and rule policy which is happening is not right. Politics of isolation is not good. We want unity. We are Indians. We have right to stay together. Bengal will show the way of peace. Will not do anything that will make you sad. I will not let that happen is what Mamata Banerjee said. It's a big attack on Eid and it comes as we see communal clashes break out in Jodhpur city. She says, and I quote, all of us need to stay together. Divide and rule policy which is happening is not right. Politics of isolation is not good. We want unity. We are Indians. We have right to stay together. Bengal will show the way of peace. Reaction from the Chief Minister. Listen in. आने वाला दिन हमको एक साथ में लड़ना है और जो शक्ति देश को टुकड़ा करने चाहते हैं, जुलूम करते हैं, प्यार मोहब्बत को टुकड़ा करते हैं, उसका खिलाफ भी यूनाइटेड लड़के उसको हम हटाएंगे, उसको हम हटाएंगे, उसको हम हटाएंगे। ये अल्लाह का पास हम दुआ मांगते हैं। ये दुआ आपको सबको लिए। For a break here on the other side, loudspeaker debate gets louder. Owaisi is slamming Raj Thackeray over his ultimatum, demands the arrest of the MNS chief. India Today TV wins big awards at ENBA 2021. Bags the best channel of the year, shines bright with 15 goals. Gaurav Sawant, Best Anchor, English. Preeti Chaudhary, Best Continuing Coverage by a Reporter, English. Shivarur, Best Anchor, English. Udayan Mukherjee, Best Business Program, English. Rahul Kamal, News Director of the Year. India Today Group sweeps with a record 90 awards. India Today Group, the gold standard of journalism. You are watching India Today.
touch screen enables users to interact directly with the display monitor. They become a feature of everyday life at supermarket checkouts, ATM machines, on GPS devices, and most commonly with tablets and smartphones. There are two common types of touchscreen technology. One is called resistive. Two transparent sheets are coated with a conducting material and separated by tiny dots called spacers. When the two layers are pressed together, they create an electrical circuit that indicates the point of contact. Uses include cash and ticket machines. The other capacitive touch technology is most commonly used in tablets and smartphones. A layer of insulating material like glass is coated with a fine grid of electrodes thinner than human hair. This is sandwiched between an outer protective glass layer and an LCD screen that displays the images. As the human body is also an electrical conductor, touching the screen with a finger results in a change in the electrostatic field, indicating the point of contact. More recently, smartphone manufacturers have moved towards so-called on-cell and in-cell technologies. On-cell locates the touch technology onto the outer glass, whereas with in-cell, the touch sensors are built into the actual display panel. Both approaches allow devices to be thinner and lighter. New applications for touchscreen technology now include unlocking smartphones using a biometric fingerprint scanner. When a capacitive sensor is activated, it takes a high-resolution snapshot of a fingerprint, which is compared against the information stored inside the phone. If the unique characteristics in the arches, loops, or whorls match the device, it will unlock. Some news just coming in. Maharashtra Home Minister Bhalaswa Patil to review law and order situation in the state in a meeting with DGP and senior IPS officers in Mumbai city. The meeting assumes significance on the backdrop of MNS Chief Raj Thakre's rally held in Aurangabad and his ultimatum to remove loudspeakers from religious places, especially mosques. Home Minister will seek reports from Aurangabad police regarding any rules flouted in the rally held by MNS and will initiate action if necessary. Reports from different local branches will be sent to Home Ministry today. Meanwhile, shortly, meeting of MNS leaders at Raj Thakre's residence is expected. There are concerns over the law and order situation in the state of Maharashtra after the ultimatum was served by MNS Chief Raj Thakre, who said that the Uddhav Thakre government must remove loudspeakers from all mosques by the 4th of May, which is tomorrow. Given the situation in Rajasthan as well, could there be tensions in Maharashtra is the big question, and because of which no chances are being taken, and there is a crucial meeting that is being held. Maharashtra Home Minister Bhalaswa Patil is going to be reviewing the law and order situation in a meeting with DGP and senior IPS officers today in Mumbai. The meeting, remember, stands significant on the backdrop of MNS Chief Raj Thakre's rally on Sunday in Aurangabad, in which he issued an open threat saying that there will be consequences. Hanuman Chalisa is going to be played louder outside mosques in loudspeakers. If mosques do not do away with loudspeakers and do not stop playing Azan on loudspeakers, is what Raj Thakre said. In view of this, there is a meeting that is being held to look at the law and order situation, to review this, and this is being done in view of the threats issued by Maharashtra Navnirman Sena Chief Raj Thakre. The debate over loudspeakers is just getting louder. In Maharashtra Navnirman Sena Chief Raj Thakre has reiterated his 3rd of May ultimatum to remove loudspeakers from mosques, threatening to play Hanuman Chalisa outside mosques.
on double the volume if this demand was not met with. Owaisi has hit out both at Shiv Sena and BJP over Thakre's comments, saying the government can't take action against the Chief Minister's brother. Owaisi also said it was all part of BJP RSS plan. Now the loudspeaker debate has reached the national capital. Delhi BJP MP Parvez Sahib Singh has written to the governor demanding UP-like crackdown on loudspeakers, saying that the Supreme Court order on loudspeakers is not being strictly followed in Delhi. He also said that UP-like treatment is required for the law to take its own course. जब वहां की मुकामी पुलिस ने इनको कंडीशन के साथ परमिशन दिया है तो उनको चाहिए कि फौरन सो मोटो एक्शन ले कि एक बार हो जाने दो। क्या हो जाने दो? क्या एक शख्स पूरे स्टेट के पीस को दांव पे लगाएगा? क्या एक शख्स थ्रेटन करेगा औरंगाबाद की हिंदू मुस्लिम दलित के भाईचारगी को? तो पुलिस क्या कर रही है? और क्या ये क्या मतलब है कि एक बार हो जाने दो? क्या हो जाने दो? क्या सो मोटो एक्शन पुलिस नहीं लेगी? लगाइए 153 to 95 और अरेस्ट करके जेल को भिजाइए, क्योंकि शिवसेना की सरकार है और वो अपने भाई के खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। वही एक नवनीत राणा अगर उद्धव ठाकरे घर पर जाकर कुछ पढ़ना चाहती थी तो आपने उसको अरेस्ट करके सेडेशन लगाया। यहाँ आपके भाई का मामला आ रहा, वो बकवास कर रहा है, पूरे पीस को बर्बाद करना चाहता है, धमकी दे रहा है। 4 तारीख क्या स्टेट को कोई रैंसम पे होल्ड कर सकता है क्या? मैं आपके जरिए उनको कहना चाह रहा हूं कि हमारा मजहब भी ये कहता है, हमारी तहजीब भी ये कहती है कि वो हमारे मेहमान हैं। अगर वो आ रहे हैं यहाँ पर तो आप सभा में जाने से पहले हमें बताइएगा कि हम सब साथ में मिलकर है, तो आप स्टेज पर जाकर आपको जो बोलना है आप बोलिएगा उसमें है? लेकिन हम दुश्मन नहीं है। आपकी अलग राजनीतिक पार्टी का एजेंडा है, हमारी अलग राजनीतिक पार्टी का, दूसरों की राजनीतिक पार्टी का अपना अपना एक एजेंडा है इसके अंदर। तो आपके जरिए मैं आपको ये दावत दे रहा हूँ कि आप आइए, हमारे साथ इफ्तार करिएगा, उसमें हम सब साथ में मिलकर करेंगे। Maharashtra Home Minister Dilip Valse Patil is to review the law and order situation in a meeting with DGP and senior IPS officers in Mumbai. Paras Dama is getting us more details on that. The Maharashtra government, they're taking no chances. Paras, given the situation that we've seen in Jodhpur city in Rajasthan, Raj Thakre has issued an ultimatum saying that he's giving the government time up until Eid. And on the 4th of May, action is going to be taken by Raj Thakre. Of course, the situation all over Maharashtra and all over country is very critical right now. The situation which is occurring in different part of the country is a very matter of concern. But in Maharashtra, the Sarkar, Maharashtra Sarkar is taking no chances, and that's why they are having a review meeting today. Right now, after some time, Maharashtra Home Minister Dilip Valse Patil will take a meeting in which he will just discuss about the point which is very important, how to stop this, because if anything bad happens, it will be very difficult to control the situation. So that's why Dilip Valse Patil will be taking a meeting at 11 with all the senior officers, IPS officers and DG. This is the main important development right now in the whole story. And one more thing, MNS leader Raj Thakre is taking an important meeting inside his residence and standing outside the residence, and over here he is taking a meeting with the senior leaders and he is discussing what to do tomorrow. So main point right now is Raj Thakre is preparing for his things and Maharashtra Sarkar is preparing for their things. So that's why the situation can be tense. All the precaution will be taken by Maharashtra Sarkar. They are taking a meeting with police officials, and over here the ultimatum which was given by Raj Thakre, he is preparing for their inside. The MNS senior leaders are inside and meeting is underway. Sneha. All right, Paras, we'll come back to you for more on that story. A review meeting is being taken to look at the law and order situation in the state of Maharashtra. With that, it's time for a break. Here on the other side, we're getting you details of the Prime Minister's visit to Europe. After a massive outreach in Berlin, Prime Minister Modi heads to Denmark on day 2 of his Europe visit.
bazë ajrore të Kuçovës në një bazë taktike të NATO-s. Kjo ndihmon jo vetëm pjesën ushtarake të Shqipërisë, por edhe për Ballkanin Perëndimor, e cila jep një siguri shtesë. Well, it's day 2 of Prime Minister's visit to Europe. Prime Minister Modi is going to be arriving in Denmark's Copenhagen to hold a bilateral meeting with his Danish counterpart. The Prime Minister will also be participating in the Second India-Nordic Summit. He will reach Copenhagen around 2 p.m. and will visit Denmark Prime Minister's residence immediately after his arrival to Denmark. The Prime Minister is going to be part of a business roundtable later in the evening. An interaction with the diaspora is again scheduled at 8 p.m. Indian Standard Time. He's also to meet the Danish Queen and attend a dinner hosted by Queen Margaret II. On the 2nd of May, the first leg of the trip, the Prime Minister received a rousing welcome from the Indian diaspora in Berlin. The Prime Minister addressed the Indian diaspora as well, saying that innovators are boasting in India and it has become a land of startups with over 60,000 startups operating in the country. He said India has registered the highest real-time payment transactions in 2021, accounting for over 40% of the world's real-time payments. आठ साल पहले 200, 300 या 400 स्टार्टअप्स आज 68,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स दुनिया के सारे पैरामीटर्स कह रहे हैं कि इसमें दर्जनों स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बन चुके हैं। पिछले साल पूरी दुनिया में हुए रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स, कान खोल दो, रियल टाइम डिजिटल पेमेंट में से मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। अब भारत छोटा नहीं सोचता है। रियल टाइम डिजिटल पेमेंट में से 40% भागीदारी भारत की है। पहले तो हमारा देश की विशेषता देखिए साहब, देश एक संविधान दो थे, मालूम है ना, 2 संविधान थे। सात दशक हो गए तो 7 दशक हो गए एक देश एक संविधान लागू करते करते। अब लागू हुआ दोस्तों। पिछले 7-8 साल में भारत सरकार ने डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीधा एक क्लिक किया, जो हकदार है उसके खाते में पैसे चले गए। डायरेक्ट जो डीबीटी के द्वारा हमने पैसे भेजे वो अमाउंट है
22 लाख करोड़ रुपए से अधिक, यानी अब आप जर्मनी में हैं तो आपको बता दूं, $300 बिलियन से भी ज्यादा बेनिफिशियरीज के खाते में पैसे पहुंचे हैं। बीच में कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट की कंपनी नहीं, कहीं कट मनी नहीं। That's a wrap on this bulletin. For all news and updates, do log on to our website. That's indiatoday.in. You can also download the India Today app. Thank you for watching. Yes, I call it genocide because it's become clearer and clearer that Putin is just trying to wipe out the idea of even being able to be a Ukrainian. Since the invasion of Russia on Ukraine, more than 13,000 people have been killed. Several reports say many women have been raped. The Bucha massacre was an eye-opener to the devastation spread across Ukraine. Amid the deaths and casualties, world leaders proclaim that Putin is committing genocide. Genocide is when a mass murder is committed against a particular group of people. It's seen as the most serious crime against humanity. An example would be the killing of 6 million Jews during the World War. So can Russia's Putin be charged with genocide? American President Joe Biden has openly stated how Putin is a war criminal and cannot remain in power. Oh, I think he is a war criminal. He's a butcher. For God's sake, this man cannot remain in power. Your family budget, your ability to fill up your tank, none of it should hinge on whether a dictator declares war and commits genocide half a world away. Believe it or not, even war has rules to follow. The rules are in treaties of Geneva and in other international laws and agreements. Under war, civilians cannot be deliberately attacked. Many weapons are banned due to the suffering they cause. This includes chemical and biological weapons. Many investigations state that killings in Bucha were deliberate. Evidence states that civilians were shot dead with their hands and feet bound. Many Ukrainian women were raped by Russian soldiers. The UK confirmed that Ukraine has used thermobaric weapons. These weapons are not banned, but their deliberate use near civilians breaks the rules of war. The International Criminal Court and the International Court of Justice are set to prosecute suspected war criminals. ICJ has rules for disputes between states, but it cannot prosecute individuals. Ukraine has begun a case against Russia, but it's noteworthy that it's easier to prosecute the soldier who committed the war crime than the leader who ordered him to do so. The UN Security Council could ask the ICC to investigate this offense, but Russia also holds the power to veto it. Presented by Berger Easy Clean. No dog, no dhabba, only beautiful walls. Watching India Today. Hello, very good morning. You're watching India Today TV. I'm Sneha Mordani. The headlines first.
Fresh violence in Jodhpur after midnight clashes of a flag and loudspeaker. Miscreants spell stones at cops. Police resort to lathi charge and tear gas shells. Gehlot government under fire over Jodhpur clashes. BJP blames Rajasthan government for violence. Congress calls the clashes choti si baat. Loudspeaker debate gets louder. Owaisi slams Raj Thackeray over his ultimatum, demands the arrest of the MNS chief. BJP MP Parvesh Verma demands UP loudspeaker model in Delhi city as well. After a massive outreach in Berlin, Prime Minister Modi heads to Denmark on day 2 of his Europe visit. He will meet Prime Ministers of all Nordic nations. Home Minister Amit Shah in Karnataka amid cabinet rejig speculation ahead of the crucial polls in 2023. Chief Minister Bommai is going to be holding a dinner meeting with Shah. China's inhumane and most brutal COVID lockdown. Citizens beaten, confined and coerced into homes. Protest erupts amid looting and unrest in the city. Some news just coming in. Congress MP Rahul Gandhi's foreign nightclub videos have gone viral. Mega political eruption over Rahul Gandhi's nightclub videos caught on camera partying abroad. Rahul is under huge attack. He's been filmed partying in Kathmandu nightclub. Jeering BJP labels Rahul a partying time neta. First reaction from the BJP. Listen in. Shehzad Poonawalla is in fact on the phone line. Your reaction to these videos that have gone completely viral? With Rahul Gandhi, in fact, these videos appear to be from Kathmandu. Look, there is no problem with what Rahul Gandhi does in his personal life. That's his own choice. But having said that, on the one hand, Rajasthan is burning. He has a government in Rajasthan. But instead of addressing the issues that are going on in Rajasthan as a leader of the opposition, as a member of parliament, as an important leader of the Congress party, it seems that Rahul Gandhi is more interested in bars than the people of Bharat. Here is Rahul Gandhi who tweets that there are so many crises that are affecting the country according to him. But he prefers to be in a nightclub in Nepal than to be amongst the people of India solving those crises. This is not the first time. You'd remember that even after 26/11, Rahul Gandhi preferred to be in party mode rather than to be with the people of India. And therefore, the question that is being asked, not by us, but in fact by many Congress party leaders, is that is Rahul Gandhi committed? Is Rahul Gandhi serious towards the people of India, towards his party, or is he more serious towards party? People are saying he's not a part-time neta, he's a party-time neta. And perhaps that allegation made by senior Congress leaders is perhaps true, because time and again, Rahul Gandhi prefers vacation mode rather than to be amongst the people of India and to address or to articulate their issues. Therefore, he was even removed as the MP of Amethi. People kicked him out. Now, even the people of Wayanad are asking, where is our MP? Little did they know that they would be more likely to find him in a nightclub in Nepal. Shehzad Poonawalla, we'll try and also get a Congress spokesperson on these videos, because you are talking about how Rajasthan is burning right now. There are huge concerns when it comes to the communal clashes in Jodhpur city. And we have the Congress MP who's been the president of the Congress party also, who's been partying. And not just that, within the Congress party also, there is so much turmoil as far as the organization, Mr. Poonawalla, of the Congress party is concerned, concerns about leadership. These are issues that remain unaddressed. Absolutely. Look, here is a leader who has taken his party to perhaps the most number of defeats as per, and it might be a Guinness Book of World Records, 35 or 40 defeats on the trot. Party खत्म हो गई है, परंतु राहुल गांधी की पार्टिंग यूं ही चलेगी. And this is the level of commitment he has towards his own party. Forget the people of India. And therefore, a lot of voices, including the G23 and many others, the likes of Himanta Biswa Sarma and others who are in the Congress, always articulated that Rahul Gandhi is a completely non-serious politician. He does not have it in him to be amongst the people of India. He prefers vacations and parties more than his own party. And this has been highlighted even today. Today, Rajasthan is in the midst of a crisis. Today, you tweeted about how India is facing a large number of crises.
But where are you? And on the other hand, the Congress party has the gall of mocking a prime minister who's working 24/7 on Indian soil or on foreign soil for India's interest. They mock the prime minister who goes on a foreign visit for India's interest. But here is their Neta partying in a nightclub in Nepal, and they will shamelessly not tell us that is this the way an MP should be absconding when Rajasthan, their state, is burning. Well, I'm thanking you for the moment. We'll try and also go across to Congress for more on that. But remember, these developments come at a time when there are internal deliberations on the Congress party and what really is the future of the grand old party. Ashutosh Mishra is also with us. For more on that, Ashutosh, obviously this has given enough ammunition to the BJP and more. And not just that, here we have an MP of the Congress party who has led the party in the past. He's been the president of the Congress party, and today, when the party is in so much turmoil, a Congress-ruled state, Rajasthan is in turmoil. We have these videos. They really don't do any good when it comes to the own reputation of Rahul Gandhi. Well, it's all about perception, as you rightly said, Sneha. It's all about perception that when the party is in turmoil, when your state governments are in turmoil, and clearly one who's leading the charge, leading from the front, should be seen on the ground. But at the same time, there is another aspect as well. Being an MP since Rahul Gandhi, and the sources what we're learning, that he was in Kathmandu to attend the wedding ceremony of his journalist friend. He was in a hotel and then went to with some friends to a club. Now, clearly those visuals that could be, given that there has to be a privacy, there has to be, being a member of parliament, he has his own life to live. But clearly, on the domestic ground, the behavior, the public approach and also the functioning of a public leader indeed always calculated, always talked about. And that's exactly why the opposition is now in fact has gotten ammunition to target Rahul Gandhi, and that's what we are saying, that east, west, north, south, all the leaders are attacking Rahul Gandhi. But again, the reason you rightly mentioned, it is all about the internal affairs of the Congress party and also the state governments, how they are performing. And that's clearly where the Rahul Gandhi is being targeted. Look what is happening in India, and you are partying there in Nepal, in Kathmandu. But what we're learning, the Rahul Gandhi, he reached early morning 4:30 yesterday, and then he has to attend an event. In fact, I've been speaking to some of my sources in Kathmandu, the journalists. The event, the mega event of this ceremony where it is organized, no cameras are allowed. Even very few journalists locally from Kathmandu are being invited. We're also trying to contact the person. Ashutosh, I'll just come back to you for more on that. Be with us. Anila Singh of the BJP is also with us. Anila Singh, not the first time that Rahul Gandhi's foreign vacations have come under scanner, because it always comes at a time when there is some crisis either within the Congress party, which has been in a crisis since 2014 essentially, but also at a time when there are huge concerns in Congress-ruled Rajasthan. My ram to everyone, and we are not surprised the way Rahul Gandhi is behaving. He's partying around, he's having lots of fun, knowing very well that what is the internal condition of Congress. His mother is so much worried. She's trying to reach some political strategists. She's trying to do some brainstorming. But here, the son is playing around. He's partying. So this shows that how serious he is, how dedicated he is towards his political party, towards his constituents. So this is the reality of the Congress party. I mean, senior leaders, they are, partying around. They do not have any concern. But Ma Sonia Gandhi has got all the love for her putra, Rahul Gandhi. And for that, if the Indian National Congress Party, it sees the doomsday, she will not mind about that. Okay. So, Anila Singh, also the Kathmandu Post is reporting, and I'm just going to quote from the Kathmandu Post essentially, that Rahul Gandhi is attending a wedding. He's attending his friend's wedding, who happens to be a journalist. You think there's a problem with that as well? The Bharatiya Janata Party doesn't have any problem from Indian National Confused Party. Not at all. Indian National Confused Party is harming itself. It doesn't need any outsider to damage it. They have got enough elements. Sure, whether he's Anila Singh, be with us. We'll just go across to Amit Malviya, in fact. Okay, Anila Singh, do continue. In fact, I was asking you a question.
All right, we'll get more reactions on that story. This is a video that has gone completely viral. These are pictures of Rahul Gandhi in a club. Evidently, this is Kathmandu, the capital city of Nepal, and Ashutosh is in fact with us for more on that. Ashutosh, you were in fact telling us that this, in fact, he is in Nepal, in fact, for the wedding of his friend, who happens to be a journalist, and this is a part of the extended celebrations. Well, the name is Somnima Das. And he has been, as Rahul Gandhi, what the reports are saying, that he has been good friend to Rahul Gandhi, who was a former CNN correspondent. And now the Somnima's father, who has also worked as a Nepali ambassador to Myanmar. Now clearly he is attending the marriage, and the ceremony will take place today, this afternoon at around 2:30 in Kathmandu itself. And there is a grand reception which is planned on 5th of this month. But here it is not Rahul Gandhi. Several other VIPs have been invited, not only from Nepal, not only from parts of Nepal, but also from India, and Rahul Gandhi is amongst the VVIP who's attending this ceremony. But clearly, Amit Malviya of the BJP is with us. Ashutosh, I'll just come back to you. Amit Malviya, your reaction to this video that has gone completely viral, though this is Rahul Gandhi, it's an extended celebration. He is in fact in Kathmandu for his friend's wedding. Well, look, it is none of our business whether Rahul Gandhi wants to party at a nightclub or holiday in Bangkok or travel to Italy, which he does quite routinely. The question here is that every time there's a problem, he's missing. When Mumbai was under attack, he was at a nightclub. When his party is exploding and there are several instances of communal flare-up in the states governed by the Congress, he's attending a wedding party, as you tell me, in a nightclub. So there is something amiss. His priorities are completely out of sync. But that's for the Congress party to decide. I am told that they still want to make him the president of the party. They should just go ahead and anoint him as one. He is rightly, deservingly the right candidate to become their president. Do you think the Congress has serious answering to do, also given that state ruled by the Congress party, Rajasthan, there are communal tensions? We've been reporting on it since morning. Amit Malviya. Well, the Congress party definitely has answering to do. But like I said, the Congress is a private property of the Gandhis. So if the owner's son wants to have a good time, it's the employees of the Congress party who have to work. I don't know why the Congress leaders don't understand this. That Rahul Gandhi is born to party, to have a good time, while they have to slog it out. They keep looking at Rahul Gandhi to give them direction. He is the right person to become the president of the party. The work has to be done by the other people in the Congress party. Amit Malviya, I know you'll say this is not really in your domain, but I still want to ask you, the Congress is looking at leadership change, and there are serious deliberations that have been happening. Do you think this really is the time for the Congress to now look beyond the Gandhis in that sense? Well, you know, it is for the Congress party to decide whether they want to look beyond the Gandhis, or they want to stick with the Gandhis, or they want to pick up the next generation of the Gandhis. It's entirely for them to decide. But at the moment, Rahul Gandhi is having a good time wherever he is. He's entitled to it. Okay. All right, Amit Malviya, we leave it at that. Thank you for joining us. Ashutosh Mishra is with us. Ashutosh, as is in life, in politics too, perception is very important. Rahul Gandhi is there for a friend's wedding in Kathmandu. That's what the Kathmandu Post is reporting on. And we are also getting details of the same. We are confirming this for our viewers. This is the wedding of a journalist friend who works with the CNN, like you were telling us. But these videos send out a message that here we have somebody who's non-serious about the state of affairs of his party back home in India. Ashutosh, yes. Well, in the meanwhile, Sneha, let me tell you that I'm also trying to reach out to Bhim Udas, who is in Kathmandu, and probably will have first words from him, as he's the host. He has invited Rahul Gandhi for his daughter's ceremony. In the meanwhile, several reports that I'm getting from Kathmandu. Rahul Gandhi is still there in Kathmandu, and he's one of the VVIP, the posh hotel in the town, and several other also dignitaries from India have also been invited. May not be minister or the politician, but what I'm being told, that several
dignitaries from India are being invited, including some businessmen as well. So this entire incident, what has unfolded in Kathmandu, perhaps it could be the personal life of a politician, but at the same time, yes, the larger perspective, as now as you're hearing the opposition leader, clearly when there is a mess, particularly in your own political party, then clearly this kind of videos or pictures coming out may not be a good optics or setting good perception, and particularly when just in few months there will be 2 crucial assembly elections, and this will give emanation, and this has already, where you are already seeing the BJP leader, the opposition leader started attacking Rahul Gandhi, and then clearly, of course, it will be for the Congress party to clarify, and of course soon there will be some answer, some clarification will be coming out from the party as well. Yes, we haven't heard from the Congress party, Ashutosh, but several times in the past, including that one long holiday that Rahul Gandhi had taken in the year 2014 after that Lok Sabha debacle, the Congress has been really at pains to explain Rahul Gandhi's whereabouts. We'll just come back to you, Ashutosh, for more on that. Meanwhile, Nalin Kohli of the BJP is with us. Nalin Kohli, your reaction to this video of Rahul Gandhi from a pub that has gone viral? There are multiple things that need to be taken note of. Rahul Gandhi ji wishes to travel outside the country, have a good time, party. That is his individual choice, whether it has been to other destinations over the years. But the important thing is that he has to also not have this kind of standard that before he starts partying, he puts out a tweet. Every time, consistently, when he disappears to some foreign location, he'll put out a tweet either criticizing the BJP government or criticizing Prime Minister Modi or creating a false narrative that this country is in disaster or things are not good. So this can't be his brand of politics, that he wishes to party and just to show that he's a politician who's keeping track, before his party he'll put out a tweet. This is political duplicity. I mean, if he was really serious, he would be working for the people. Look at Prime Minister Modi from morning to night, 7 days a week, every month, 365 days a year, constantly working, sabka saath, sabka vikas, sabka vishwas. He's there for just serving India as a Pradhan Sevak. On the other hand, you have this model where just before you party, you'll put out a tweet. So I think this duplicity is getting exposed with all these videos and other things that are coming out. Nalin Kohli, this also comes on a day when we have a Congress rule state, and Rahul Gandhi has been somebody who's led the Congress party in the past. Right now is MP from Wayanad, but previously has been the Congress president. The state of Rajasthan is in turmoil vis-a-vis the communal tensions that we've seen in Jodhpur this morning. What is his view on anything important concerning the Congress party? Things are not going right in Rajasthan. Each day there is an incident there. Has he addressed it? Has he shown that he's serious about it? Does his heart bleed for the people who are suffering in Rajasthan? But he will create a false narrative or a narrative to somehow deflect attention. So therefore, as I said, these are standards of political duplicity. Now, if the Congress party is happy with those standards, that is for the Congress party. Perhaps that would explain why this so-called G23 has been literally breaking its head against the wall in terms of the leadership issues that they keep raising about in the Congress party. But that's for the Congress party's internal politics and for them to decide how they wish to treat their brand of politics, how they wish to serve the people of India, how they wish to send a message about Mr. Rahul Gandhi's style of leadership. That is for them to decide. Nalin Kohli, thanking you for the moment. We have a reaction also coming in from Mukhtar Abbas Naqvi. Listen in. फैमिली फ़ोटो फ्रेम में जो पार्टी फिक्स है उसके ये पप्पू जी जो हैं वो फुल टाइम पर्यटन करते हैं और पार्ट टाइम जो है वो परिश्रम भी पाखंड से भरा हुआ परिश्रम होता है। और उसके बाद जब ये फुल टाइम पर्यटन से फ्री होते हैं तो जो है वो फेक फैब्रिकेटेड कहानी किस्से करते हैं, बयानबाजी करते हैं और कैसे जो है वो देश के लोगों को गुमराह किया जाए तो उसकी कोशिश करते हैं। खुद तो देश तो गुमराह होता नहीं, खुद उनकी पार्टी के लोग गुमराह होते हैं कि उनके पप्पू जी क्या रहे हैं। Ashutosh continues to be with us. Ashutosh, any reaction just yet from the Congress party? Like I said, they've been at pains to explain Rahul Gandhi's whereabouts and his vacations after poll debacles like the one we saw in 2014 in the past as well.
Well, there can't be just quick or spontaneous reaction, Sneha, given to understand the kind of attack, it is receiving from the BJP. And clearly there will be some strategy. After all, your top leadership is being seen in certain picture, which is politically being used by your opponent. So clearly there will be some strategy. And of course, there will be some reason that it was a personal event. It was a personal occasion on a gesture. He was invited and he has to go there. This will be, of course, clearly. But as we're talking about the larger political dimension of it, that despite the mess, you are not on the ground, you are attending some function, and moreover in a nightclub. Clearly, privacy for VIPs, VVIPs, it could be a matter. You have a right to private life. But at the same time, largely it is about the politician, and that too as top leader as Rahul Gandhi. And when you have the party like BJP attacking you, targeting you, then clearly certain answers even from the party, that takes a lot to sit, decide, and then come out with a strategy that how you are going to counter, particularly when it comes to setting up a narrative, a political narrative just few months ahead of the crucial 2 state assembly elections in Himachal Pradesh and Gujarat. But moreover, again, the first logic, of course, it could be coming from the Congress party, that it was an event, he was invited, he went there, he's attending the ceremony which is scheduled tomorrow this afternoon at 2:30. In fact, I've been speaking to certain journalists in Kathmandu. They are also attending this ceremony. On 5th, there is a grand reception party. Some more Indians have been invited from the business and other communities. But clearly, the charges and the kind of attack it is receiving from the BJP, it will be a bit difficult for the Congress to defend and then hit back on the BJP. That we'll have to see when the first response comes from the party. This is a wedding celebration, Ashutosh, at the end of the day, but we've been talking about this, how perception really matters in life and in politics as well. And the perception is that here we have somebody who's non-serious, isn't it? I'm also asking you this question from the point of view of horrific pictures of communal clashes in Jodhpur, in Rajasthan, which is Congress ruled. And that too, when we have seen many recent other clashes in Rajasthan. Now this has triggered in Jodhpur. This perhaps, really set a bad picture for a leader where the state is in turmoil, the domestic politics is in turmoil, a lot of affairs within the party from top leadership to the cadre that need to be handled, that need to be addressed. And then, such pictures which is, giving an ammunition to the opponents, then exactly where the questions are being asked. And that's exactly why being asked. That look where you have to be and where you are at the moment. Clearly for last few days, Rahul Gandhi was only seen was the social media posting against the government, central government, asking questions. So that exactly the last few political activities when it comes to the Rahul Gandhi, it was only on social media. And when he appears or such photos appears, video appear, then something which is clearly contrary to the political perception that one requires here in India and in Indian politics under the current circumstances. And that's exactly where the responsibility will now come to the Congress party, the spokespersons, the leaders, to come clarify, answer over the accusations being made, answers what the charges are being leveled against you, and answers why the non-seriousness of Rahul Gandhi as it is being called by the opponents. And they will ask, of course, when of course lot of things we are talking about what is happening in the Congress and where is RG. Is Rahul Gandhi is a question that many had been asking for days together. These are pictures coming in from Kathmandu to tell our viewers there's a wedding celebration that Rahul Gandhi is in fact a part of in Kathmandu, the capital of Nepal, and this is a journalist who's getting married. There are several high-profile people in Delhi, Ashutosh is telling us, who are in fact a part of those wedding celebrations. These are videos of Rahul Gandhi that have come from a club in Kathmandu where he is seen partying, and this comes at a time when questions are being raised about leadership tussles, turmoil within the Congress party. And these videos, of course, have gone completely viral. The BJP has said this just speaks volumes of how serious Rahul Gandhi as a politician is. And this is for the Congress party to see. It's a 12-second video that has been doing the rounds. It's gone completely viral. Rahul Gandhi with his friends in a club in Kathmandu. Ashutosh Mishra continues to be with us. Ashutosh, in fact, you did mention that there were several high-profile people who are part of the wedding celebrations. If you could tell us a little more about that as well.
Well, I'm just trying to access the information who all are other dignitaries from India have been invited, whether there are also some politicians. But remember, the person, Udham Das, whose daughter is getting married, he has been envoy, a diplomat as well, the Nepali diplomat in Myanmar. So he's quite influential. As far as the journalist herself is concerned, she has been close friend to Rahul Gandhi. She has worked with, the foreign some foreign media organizations, and now this ceremony where the Rahul Gandhi is invited, only one video of 12 seconds that we are seeing, and this could be probably, Congress may hit out that look, this was an agenda to just defame Rahul Gandhi. Clearly you can anticipate all sort of response that could be probably coming from the Congress party, that in 12 seconds video, several questions, particularly from the Delhi BJP leader to the central leadership, everyone is questioning that where is Rahul Gandhi, particularly in the light of what is happening in Congress, what has happened in Jodhpur, and this is really giving a serious picture and serious question that is being raised on the Congress party, and yet we have to hear a response, official response from the Congress spokesperson as what they have to clarify over the charges or over the the allegations that BJP is leveling on on this visit of Rahul Gandhi to Kathmandu. Right, Rahul Gandhi is in Kathmandu for the wedding of a friend, and this is a video that has gone completely viral that you see on your screens right now in a club in Kathmandu where Rahul Gandhi is seen. In fact, partying. The BJP says in fact that this speaks volumes of how non-serious Rahul Gandhi is as a leader. Here somebody was leading the Congress party, and the BJP says, look at Rahul Gandhi's responsibility, his accountability coming at a time when Rajasthan, the state that is ruled by the Congress party, is burning. There are communal clashes that we've been reporting on from Jodhpur city in Rajasthan. Not the first time, Ashutosh, that the Congress has had to defend these vacations of Rahul Gandhi in the past as well, and often it comes after poll debacles, doesn't it? That's exactly. And in fact, what has happened in Punjab, what has happened in Uttar Pradesh, and then suddenly disappearance of Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi Vadra. If all top leadership are not on the ground, particularly after poll debacle, then how you are going to mobilize your cadre back, particularly in the poll-bound states? Clearly, when there is a, the BJP ruling for 5 years in Himachal Pradesh, possibly there could be some anti-incumbency. This is where exactly you go on the ground, mobilize your cadre and then fight against your opponent. But here again, this is not the first time, as you rightly mentioned. This is not just Kathmandu, several other vacations, be it pre-elections or it post-elections. Then these questions are being raised, and that's exactly where the opponents get an opportunity to attack you, that look, this is your non-seriousness. If your party top leaders are not serious about the party affairs, not serious to lead the party clearly when there is some leadership is required, then essentially, then you form G7, then you form G5, G20, all these, the organizations within organizations, formations within formations, these all sorts of actions are being taken. We have seen what had happened after Punjab, certain other committees are being formed. But end of the day, it is the leadership who has to be with the cadre, with the leadership, take call, take decisions. If there are some rebel, take action against them. If there are some good work with the cadre, praise them, mobilize them, and then certain strategies need to be coming out, particularly in politics. It is after all winning the elections. So shall just come back to you for more on that. Kapil Mishra of the BJP is with us. Kapil Mishra, you spoke about the fact that there are Chinese agents with Rahul Gandhi. Do tell us a little more about that. No. I am asking who are these people? राहुल गांधी कहाँ पर हैं और किसके साथ है? ये बात केवल राहुल गांधी की निजी जिंदगी का मामला नहीं है, ये केवल कोई पर्सनल लाइफ की बात नहीं है। बात ये है कि अगर ये चीन के लोगों के साथ है तो सवाल बहुत गंभीर खड़े होते हैं। फिर सवाल ये भी खड़ा होता है कि राहुल गांधी ने जो संसद में और ट्वीट में देश के खिलाफ और चीन के पक्ष में बयान दिए, क्या वो इन्हीं लोगों के दबाव में दिए हैं? मुझे ये लगता है कि सवाल अभी राहुल गांधी का नहीं है, सवाल देश का है। और इस वीडियो में राहुल गांधी किन लोगों के साथ है, ये जो लड़की है ये कौन है, ये किस देश के नागरिक हैं, उनका उस देश की सरकारों से क्या संबंध है, ये सारे सवालों के जवाब तो देश को सार्वजनिक तौर पर मिलने चाहिए। नहीं कपिल मिश्रा जी, वो तो आपका एलिगेशन है, लेकिन ये सुनने को आ रहा है कि ये चाइनीज एम्बेसडर टू नेपाल है, और अगर ये सच है, हम इसे वेरीफाई जरूर करेंगे क्योंकि आपने ये मुद्दा उठाया है, तो क्या ये कोई प्रॉब्लमैटिक बात है कि राहुल गांधी चाइनीज एम्बेसडर टू नेपाल के साथ देखे गए?
क्या इस बात से बीजेपी को प्रॉब्लम है? इस बात से देश को प्रॉब्लम है। अगर राहुल गांधी गुप्त रूप से चीन के लोगों के साथ पार्टी करते हैं तो मेरे को लगता है कांग्रेस पार्टी के भी हर कार्यकर्ता को प्रॉब्लम होगी इस बात से। इसमें भाजपा की बात नहीं है, ये देश की बात है। देश से बाहर अगर आप जाएं और देश के दुश्मनों के साथ पार्टी करें, ये कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं हो रही है, दो देशों के बीच संवाद नहीं हो रहा है। तब तो ये समस्या सबको होनी चाहिए, सबके पास ये हक है सवाल पूछने का। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एलिगेशन नहीं लगा रहे, सवाल पूछ रहे हैं। किसके साथ है राहुल गांधी, क्यों है, कौन है ये लोग? वो राहुल गांधी कोई साधारण नागरिक नहीं है। जिन जिम्मेदार पदों पर वो बैठे हैं और देश के ऊपर जिस प्रकार के सवाल वो संसद के अंदर और ट्विटर पे और दुनिया भर में जिस प्रकार के सवाल वो उठाते हैं, उसके बाद उनकी संगत क्या है, उनके आसपास लोग कौन है, किसके दबाव में वो काम करते हैं, इन सवालों का जवाब जानना देश का हक है। इसके अलावा कपिल मिश्रा, आप क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि ये पहली बार नहीं है राहुल गांधी ने इस तरह से वेकेशन किया है। ये एक शादी अटेंड करने को जा रहे हैं और अटेंड किया है इन्होंने काठमांडू में, और उसके बाद ये शायद कोई आफ्टर पार्टी है, ये कहा जा रहा है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसके साथ है, क्यों है, कहाँ पर गए थे, किन लोगों और इन लोगों से राहुल गांधी का संबंध क्या है, ये सार्वजनिक होना चाहिए। अगर वो आफ्टर पार्टी है, प्री पार्टी है, राहुल गांधी की जिंदगी में महीने में 30 में से 28 दिन पार्टी है, 2 दिन कांग्रेस पार्टी है, 28 दिन पार्टी है। इसके अलावा राहुल गांधी का जीवन क्या है? लेकिन जब वो देश की संसद में खड़े होकर चीन के पक्ष में बयान देते हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में इस पार्टी को देखना चाहिए, और ये भी कि उनकी गंभीरता का स्तर क्या है। देश में आएंगे तो अभी छाती पीटनी शुरू कर देंगे, पेट्रोल महंगा हो गया, बेरोजगारी हो गई, महंगाई हो गई, और वहां पर जो सुरा, सुंदरी और संगीत के बीच में खड़े हुए हैं, उसके बारे में देश जरूर सवाल पूछेगा। ठीक है कपिल मिश्रा जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सो यू हर्ड फ्रॉम द बीजेपी दैट प्रीवियसली वी आल्सो स्पोक विद शहजाद पूनावाला, spokesperson of the Bharatiya Janata Party, listening to what he had to say. Rajasthan is burning. He has a government in Rajasthan, but instead of addressing the issues that are going on in Rajasthan as a leader of the opposition, as a member of parliament, as an important leader of the Congress party, it seems that Rahul Gandhi is more interested in bars than the people of Bharat. Here is Rahul Gandhi who tweets that there are so many crises that are affecting the country according to him, but he prefers to be in a nightclub in Nepal than to be amongst the people of India solving those crises. This is not the first time. You'll remember that even after 26/11, Rahul Gandhi preferred to be in party mode rather than to be with the people of India. And therefore the question that is being asked, not by us, but in fact by many Congress party leaders, is that is Rahul Gandhi committed? Is Rahul Gandhi serious towards the people of India, towards his party, or is he more serious towards party? People are saying he's not a part-time Neta, he's a party-time Neta. You're not surprised the way Rahul Gandhi is behaving. He's partying around, he's having lots of fun, knowing very well that what is the internal condition of Congress. His mother is so much worried. She's trying to reach some political strategists. She's trying to do some brainstorming. But here, the son is playing around. He's partying. So this shows that how serious he is, how dedicated he is towards his political party, towards his constituents. So this is the reality of the Congress party. I mean, senior leaders, they are, partying around. They do not have any concern. But Ma Sonia Gandhi has got all the love for her putra, Rahul Gandhi. And for that, if Indian National Congress Party, it sees the doomsday, she will not mind about that. Try connecting with Ashutosh for more on that. Meanwhile, this is the story breaking at this hour. The video of Rahul Gandhi partying at a club in Kathmandu has gone completely viral. Rahul Gandhi was in Kathmandu to attend his friend's wedding, is what we know, and many Indian VVIPs are in fact in Nepal, are in Kathmandu to attend this wedding. But this video that has gone viral, it's a 12-second video. The Congress has not responded, but the BJP is up in arms, saying that this speaks volumes of the seriousness of the Congress party. The BJP says that this speaks volumes of Congress party's accountability, its leadership's accountability when it comes to the tensions in Rajasthan as well as the turmoil within its own party. It's time for a quick break here.
Fresh violence in Jodhpur after midnight clashes over flag and loudspeaker. We're getting all the details in 2 minutes. You are watching India Today. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com or call 9999892171. NASA beamed doctors into the middle of the International Space Station while they were physically on Earth. This might seem like a scene from a sci-fi movie, but this technology now exists. NASA tried this new method to ensure medical help is provided to people in adverse situations. This is being called the first holoportation handshake from Earth in space. So what is holoportation and how does it work? According to NASA, it is a capture technology that allows high-quality 3D models of people to be reconstructed, compressed, and transmitted live anywhere in real time. When these images are combined with mixed reality displays such as HoloLens, it allows users to see, hear, and interact with remote participants in 3D. The technology gives a feeling as if the person is right in front of you. NASA says that the technology could be highly effective in deep space where communication lag is a major problem due to the immense distance between Earth and other objects. Using the Microsoft HoloLens Kinect camera with custom software, NASA flight surgeon Dr. Joseph Schmid and their teams were holoported. They interacted with astronaut Thomas Pesquet in a two-way conversation. Holoportation is not new. It has been in use since at least 2016 by Microsoft. But this was the first use in such an extreme and remote environment as space. You are watching. Everyone said the road was impossible. Everyone said not in our lifetime. Everyone said the battle was unwinnable. Only KCR believed and made it possible. And how? Not everything is well for the war supremo Putin. He will soon have to give up control of the war because of his allegedly worsening health. There has been widespread speculation about his health since the start of the war. A recent video surfaced that raised suspicion over his health. It shows him clenching the table and slouching in his chair. Some analysts have pointed out that his behavior became increasingly erratic. As reported by Telegram channel General SVR, which was tipped by a Kremlin insider, he is preparing for cancer surgery. It is also reported that he delayed his surgery and it will no longer take place before the commemoration of Russia's World War II Victory Day in Red Square on May 9. So what's next for the war? He's not leaving the battlefield empty. Nikolai Patrushev, his current spy chief, will take temporary control of the war. The 70-year-old has been seen as the chief architect of the war. He planted the idea of Kyiv being flushed with neo-Nazis and drove Putin to start the Russia-Ukraine war. Putin was unlikely to agree to transfer power, but was ready to place a representative to control the war effort. This comes as a surprising move, as ideally the power should be transferred to the Prime Minister.
Nikolai has been described as a hawk's hawk and the most dangerous man in Russia. In a recent interview, he said Europe and European civilization have no future, and also hinted at dismembering Ukraine. Washington describes him as a true spy czar, who's a master of dark arts and has an enduring impulse for aggression. The news also comes at a time when Putin reportedly will launch an all-out war across Ukraine and order mass mobilization of military-age men. But sources point out that Vladimir Putin's absence would be brief and he will be back soon to lead the war from the front lines. When it's the world's biggest news story, there's only one gold standard of journalism. When it's the world's biggest news story, there's only one gold standard of journalism. You are watching India Today. News just coming in. These are chilling images of Jodhpur mob fury. The moment when the mob went on a rampage. Vandals of Jodhpur caught on camera. You can see these pictures on your screens right now. The time when the mob went on a rampage. These are vandals of Jodhpur caught on camera. Getting all the details of the CCTV footage where the mob went on a rampage. Remember, we're getting you these pictures from Jodhpur, where communal clashes broke out between two communities over a loudspeaker and over hoisting of a flag. Stone pelting took place, as you can see in these pictures. This is CCTV footage from the Jalori gate in Jodhpur city, where the clashes broke out during Eid prayers. Pictures of stone pelting. CCTV footage that India Today has access. Sharat is getting us more details on that story. Sharat, ये जो CCTV footage है, इसके बारे में हमें बताइए. ये देखिए, जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है, ये पूरी घटना वहाँ पर जालोरी गेट पे जो सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ था उसमें ये कैद हुई है घटना। और ये घटना अपने आप में दिखाती है कि किस तरह से यहाँ पर जो टेंस माहौल बना हुआ था पिछले 2 दिनों से, अब इसमें साजिश कह लीजिए या फिर अचानक कह लीजिए, लेकिन 2-3 दिनों से लगातार ये टेंस माहौल बना हुआ था और प्रशासन इसको भांप नहीं पाया। प्रशासन की गलती की वजह से हुआ है। झंडा पहले लगाया गया, वो भी प्रशासन की गलती रही। रात को झंडा बदला, उखाड़ा गया, वही प्रशासन की गलती रही। और रातों रात फिर भगवा झंडा लगा, वही प्रशासन की गलती रही। तो कुल मिला के प्रशासन की लापरवाही से जिस तरह का एक टेंस माहौल बना हुआ था, जिसकी वजह से ये सारा दंगा फसाद हुआ है। दोनों ही समुदायों में इतनी वैमनस्यता ज़्यादा हो गई थी ईद को लेकर और परशुराम जयंती को लेकर कि ऐसा वहाँ लग रहा था कि कोई विस्फोटक माहौल हो सकता है। देखिए, ईद जो है वो त्यौहार ऐसा होता है कि हम एक दूसरे को बधाई देते हैं, लोग सेवैयाँ खाते हैं, ये मीठी ईद का त्यौहार है। लेकिन उस पर ये कड़वाहट हुई है क्योंकि दोनों समुदायों के बीच नफरत इतना ज़्यादा फैल गया है। अब इसके लिए कोई जिम्मेदार हो, चाहे राजनेता जिम्मेदार हो, मीडिया जिम्मेदार हो, लेकिन दोनों समुदायों के बीच इतना ज़्यादा नफरत फैल गया है कि एक दूसरे के झंडे को देखकर किस तरह से ये आग बबूला हो जाते हैं, ये दिखाता है। भगवा झंडा देखकर मुसलमान नाराज़ हो जाते हैं, हरा झंडा देखकर हिंदू नाराज़ हो जाते हैं। ये स्थिति हो गई है समाज में, जिसकी वजह से इस तरह से विस्फोटक स्थिति हुई है। अब उसमें जब स्थिति इतनी ख़राब हो गई है तो निश्चित रूप से प्रशासन को देखना चाहिए था, क्योंकि ये इलाका जो है खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृहनगर है जोधपुर। उसके बावजूद प्रशासन ने बेहद हल्के में लिया। रात के तनाव के बाद भी सुबह जब वहां पर आते हैं नमाज पढ़ने के लिए तो भगवा झंडा लगा हुआ दिखता है, जिससे नाराज होकर पथराव कर देते हैं। अब ये भगवा झंडा किसी स्वतंत्रता सेनानी के मूर्ति पर लगा हुआ है, इसे देखकर नाराजगी जताकर पथराव करना कहाँ तक उचित है। लेकिन प्रतिक्रिया है, देखिए प्रतिक्रिया ये है कि कल जिस तरह से आप दृश्यों में देख रहे होंगे, लाउड स्पीकर को खींचकर उतारते हुए, जो उनका झंडा था हरा झंडा, उसे खींचकर उतारते हुए
इस दृश्य को देखकर धर्म के आधार पर लोग प्रतिक्रियावादी हो जा रहे हैं, रिएक्शनरी हो जा रहे हैं। इसमें इस तरह का माहौल जो हो गया है, यही सबसे बड़ी वजह है कि हम एक दूसरे समुदाय के प्रति जब देखते हैं कि हमारा झंडा उतारा जाता है, तुम्हारा झंडा उतारा जाता है, तो हम भावुक लोग हैं। आप देखेंगे सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाते हैं तो आज भी हमारे पिक्चर में हीरो हीरोइन का माँ बाप मरता है तो पढ़ा लिखा आदमी भी रो देता है बैठकर। तो ये देश जो है इमोशनल लोगों का देश है और इमोशन के साथ खेला जा रहा है। कौन खेल रहा है पता नहीं, लेकिन पूरी तरह से इमोशन से खेलने का ये कारोबार पूरे देश में चल रहा है। झंडे के नाम पर इस तरह से हरा झंडा देखकर कोई हिंदू भड़क जाए और भगवा झंडा देखकर कोई मुसलमान भड़क जाए, ये अपने आप में पहले कभी ऐसा नहीं होता था। कितना अच्छा होता अगर ईद के दिन हिंदू और मुसलमान मिलकर वहाँ त्यौहार मनाते, मगर ऐसा लगता है कि एक तरह से कहीं ना कहीं अंदर जिस तरह के पूरे देश में माहौल बना हुआ है, एक रिएक्शन हो रहा है मुसलमान युवाओं के मन में भी, हिंदू युवाओं के मन में भी, कि बहुत सारा बेरोजगारी में राजस्थान जो है देश में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। अगर बेरोजगार युवक इस तरह से बैठे रहेंगे और इस तरह के जो धार्मिक भावनाएं हैं, इमोशन हैं, वो भड़काए जाते रहेंगे तो उनके पास तो कोई काम है नहीं। पथराव का गए थे नमाज पढ़ने ईद का और पथराव करके लौटे और माहौल खराब हो गया। अब जिनकी गाड़ियां टूटी है, जिनका शीशा टूटे हैं, जिन हिंदुओं के शोरूम पे पत्थर फेंके गए हैं, वो हिंदू और मुसलमानों के खिलाफ भड़केंगे। कल रात जिस तरह से उन्हें झंडा उतारा गया था, मुसलमान युवक भड़क गए थे। तो ये भड़कने और भड़काने वाला खेल जो खेल चल रहा है, इसमें अब ये देश को कहाँ लेकर जाएगा ये तय करना है और इसे कैसे मुक्ति मिलेगी समाज को, इसे तय करना है। क्योंकि जिस तरह से समाज एक दिशा में निकल गया है, बहुत मुश्किल है कि हम इस इमोशन को काबू में रखकर काम कर पाएं। फिलहाल वहाँ पर शांति है, शांति समिति की बैठकें हो रही हैं, जो वहाँ मुफ्ती हैं वो अपील कर रहे हैं, लेकिन हिंदू संगठन सुबह की घटना के बाद नाराज हैं। अभी पॉलिटिशियनों का दौरा शुरू नहीं हुआ है, माहौल और बिगड़ सकता है। हालांकि कोशिश कर रहे हैं प्रशासन किसे काबू में किया जाए। जी बने रहिए हमारे साथ शरद, हम फिर बातचीत करेंगे आपसे। वी हैव अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस कमिंग इन, लेट्स गो स्ट्रेट टू दैट। यहाँ से जालूरगढ़ से पत्थर मारते हुए आ रहे थे, यहाँ पे 2 ट्रैफिक पुलिस खड़ी थी, उनको हमने यहाँ पे बचाया। उनको जब मारने के लगे यहाँ पे पत्थर मारते आए तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं, उनको रोकिए। उन्होंने कोई रोका नहीं, सब पत्थर मारते आते रहे और मेरी गाड़ी के ऊपर भी पत्थर मारा। उसके बाद ऊपर से यहाँ पे इस गली के अंदर से एक लेडी खड़ी थी, उसने क्या हो रहा उसने ऊपर से मटका फेंका। जब वो इधर से निकल के पास वाली गली के अंदर गए और यहाँ पे पुलिस वालों को मारा उन्होंने। 2 पुलिस वाले ट्रैफिक वाले खड़े थे, उनको मारा। एक सुनील जी बाफना भी थे, उन्होंने उन दोनों पुलिस वालों को बचाया। जब उन्होंने वापस वहाँ पे टेलीफोन किया कि यहाँ पे पुलिस फोर्स भेजी, इस तरह से हो रहा है, उसके 3 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद यहाँ पे पुलिस आई। उसके पहले कोई नहीं आया और सब पत्थर मारते हुए निकल सके। हमारे यहाँ पे अभी जो सिचुएशन है अंडर कंट्रोल है, हमने सफिशिएंट जाब्ता लगाया हूँ। अभी हम फ्लैग मार्च के लिए भी निकल रहा हूँ, सभी प्रकार से व्यवस्था है। मुझे लगता है हम इसको ये लॉ एंड ऑर्डर स्थिति जो है बनाए रखने के लिए हम इस पे जो भी केस दर्ज होंगे उस पे हम कार्रवाई करेंगे। जो भी अगर कोई गैरकानूनी काम किया है, जो जिस पे कानून के खिलाफ है, उसके विरुद्ध कानून के तहत कार्रवाई की जाए। मैं यही अपील करूँगा सभी को शांति बनाए रखें। शरद continues to be with us. शरद, इन क्लैशेस में किसे अरेस्ट किया गया है, क्या एक्शन लिया गया है? इंटरनेट सर्विसेज अभी भी जोधपुर में सस्पेंडेड है, इसके बारे में हमें बताएंगे। देखिए, चूंकि आज ईद का फेस्टिवल है, त्यौहार है, इसलिए प्रशासन बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी बताया जा रहा है कि 15 से 20 लोगों को राउंड अप किया गया है, जिसे पूछताछ की जा रही है। कहीं ये पुराना कोई षड्यंत्र तो नहीं है, कोई साजिश तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर झंडा लगाया गया और उस झंडे के हटाकर दूसरा झंडा लगाया गया, फिर तीसरा झंडा लगा के सुबह लगा दिया गया, तो प्रशासन इस एंगल पे भी जांच कर रहा है कि क्या केवल इमोशन की वजह से ये सारा कांड हुआ है या फिर कोई पहले से डिजाइन था, पहले से इस तरह की साजिश थी। क्योंकि देखिए, इस तरह से अचानक से मुस्लिम युवक पहुंचते हैं, वो कहते हैं ईद मनाई जाएगी। हालांकि वो अल्पसंख्यक इलाका है जालोरी गेट, और वहां पर जो परशुराम जयंती का झंडा लगा हुआ था उसे हटाकर ईद का झंडा लगा देते हैं। ईद जो है खुशियों का त्यौहार है, अच्छा होता कि दोनों झंडा लगते, लेकिन उसके बाद जो हिंदू युवक पहुंचते हैं वो लाउड स्पीकर खींच के उतार देते हैं और वहाँ से झंडे उतार देते हैं।
और उसके बाद पुलिस पहुंचती है और कहती है कि सब कुछ ठीक हो गया, अब जो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन पुलिस को समझना चाहिए कि जो विजुअल सोशल मीडिया पर घूम रहे थे कि मुस्लिम युवकों के झंडे को उतारने का और लाउड स्पीकर हटाने का, वो जो है वो विजुअल जो है इमोशन क्रिएट कर सकता है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि लोग धर्म के नाम पर, रिलीजन के नाम पर काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। वहाँ पर प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, उसके बाद इंटरनेट बंद कर दिया। अब हुआ क्या कि प्रशासन सो गया, कहाँ गया पता नहीं। एक स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति लगी हुई थी, वहाँ पर भगवा झंडा जाकर लहरा दिया गया, जहाँ से वो नमाज पढ़ के आ रहे थे। अब जो कल रात को घटना हुई थी कि उनके झंडे को उतारा गया था, लाउड स्पीकर नोचकर हटाया गया था, उसकी प्रतिक्रिया में नमाज के बाद वो लोग कुछ विरोध दर्ज कर रहे थे, उसी में से कुछ युवकों ने पत्थर फेंक दिया। अब पत्थर फेंके गए हिंदुओं के गाड़ी पर, तो आप समझिए कैसी ये चेन रिएक्शन होता है, किस तरह से एक छोटी सी घटना जो है इमोशन को, पेंटअप इमोशन से निकलता है और फिर वो इतना बड़ा बवाल मच जाता है। और इसमें पूरा का पूरा जो दोष है वो प्रशासन का है। जब वहाँ पर मुस्लिम लोग झंडा लगा रहे थे तो हिंदुओं को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, और जब हिंदू लोग उनका झंडा उतार कर फेंक रहे थे, लाउड स्पीकर उतार कर फेंक रहे थे, तो क्या प्रशासन वहाँ पर हिंदुओं को कॉन्फिडेंस में लेकर, मुसलमानों को कॉन्फिडेंस में लेकर आज ईद के लिए उनका त्यौहार मनाने नहीं दिया जाता? तो ईद का त्यौहार मनाना क्या इस देश में गुनाह है? क्यों इस तरह से लाउड स्पीकर और झंडे हटाए गए मुस्लिम इलाके से? खैर वो हटा दिए गए, उसके बाद वहाँ पर भगवा झंडा लगा दिया गया। उसके बाद भी प्रशासन को ये समझ में नहीं आया कि मुस्लिम युवक जो है वो इमोशनल होकर पथराव कर सकते हैं, और वहाँ पर भी कोई इंतजाम नहीं किया गया, पथराव जारी रहा। देखिए, जहाँ पर नमाज थी वहाँ तो पुलिस थी जावलोरी गेट पर, पीछे की तरफ जहाँ पर पथराव हुआ वहाँ पर पुलिस नहीं थी। जब इतना बड़ा कांड रात भर हुआ है और कमिश्नरेट है मुस्लिम, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इलाका है, वहीं से वो चुनाव जीत कर आते हैं सरदारपुरा जोधपुर से, तो फिर पुलिस के बंदोबस्त क्यों नहीं था? तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि अशोक गहलोत ये कह सकते हैं कि बीजेपी नफरत फैलाना चाह रही है, बीजेपी कह सकती है कि मुस्लिम तुष्टीकरण का खेल चल रहा है, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती है। सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया है। जहां पर जिस तरह सख्ती बरतनी चाहिए थी, कल रात से ही वो सख्ती नहीं बरती गई है, अब जाके बरती गई है। अभी फिलहाल शांति है, मगर मैं फिर कहता हूं कि ये रिलीजन जो हैं, ये धर्म जो हैं, उनको इमोशन के आधार पर ऐसा प्ले आउट किया जाता है कि कब कौन भड़क जाए पता नहीं। इतने बेरोजगार लोग रोजगार के अभाव में घर बैठे हुए हैं कि वो किसी भी हाथ में किसी दिन पत्थर उठा सकते हैं, और रिलीजन सबसे इसका आसान काम होता है कि ये विजुअल जो मोबाइल पे घूमते हैं, वो विजुअल को देखकर जो कम पढ़े लिखे लड़के हैं वो इसमें शामिल हो जाते हैं और पथराव करने लगते हैं। तो ये जो घटना हुई है, मेरा कम से कम ऐसा मानना है, ये एडमिनिस्ट्रेशन फेल्योर है, सरकार की लापरवाही है। एक दूसरे पर दोष देकर हाथ बच नहीं सकते हैं, क्योंकि ईद एक बड़ा त्यौहार होता है और मुस्लिम इलाका है वो, वहाँ पर अगर तनाव था तो कम से कम सुरक्षा का इंतजाम किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया था, अब जाकर किया गया है। और अब समझाइश की जा रही है जो ईद है उसे ठीक से मनाया जाए, कैसे घर में लोग रहें। आज हालांकि सड़कों पर निकलकर एक दूसरे को बधाई देने का ये त्यौहार है, हम बचपन से देखते आए हैं, मगर वो जो इकोसिस्टम है, एनवायरनमेंट है, वो सारा बदल चुका है। इतना अविश्वास की खाई हो गई हिंदुओं मुसलमानों में कि वहाँ जो मुफ्ती हैं उन्होंने सबसे ये आग्रह किया है कि अपने घरों में ही ईद मनाएं, बाहर आकर ईद नहीं मनाएं सड़कों पर, ताकि कोई माहौल ख़राब नहीं हो। लेकिन कुल मिलाकर धर्म के आधार पर इतना हम बढ़ चुके हैं कि मुस्लिम टोपी हरा झंडा देखकर हमें डर लगता है और भगवा झंडा देखकर मुसलमानों को डर लगने लगा है। ये विस्फोटक स्थिति कहीं भी किसी दिन इस तरह के दृश्य सामने ला सकता है। जी बिल्कुल, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शरद, विद दैट ग्राउंड रिपोर्ट फ्रॉम जोधपुर where clashes have broken out between two communities. We're tracking that story and much more very closely. For the moment, we're wrapping up this bulletin. For all news and updates, do log on to our website, that's indiatoday.in. You can also download the India Today app. News continues on the other side. Thanks for watching. You are watching India Today.
จุดประสงค์ตอนแรกมันไม่ได้คิดอะไรกันคือมันเริ่มจากอยากทำแล้วก็ถ่ายด้วยมือถือพอถ่ายแล้วภาพมันออกไปเนี่ยมันเริ่มมีคนสนใจเข้ามาก็มีการสร้างกลุ่มคนก็เริ่มเฮ้ยผมอยากต่อยแบบนี้บ้างแบบนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มจากตรงนี้ถ้าในเรื่องของพรบมวยคือเราไม่ได้เข้าพรบมวยเราไม่ได้จัดมวยเถื่อนผมตอนนี้คือขึ้นอยู่กับกรมปกครองซึ่งเป็นกิจกรรมไฟท์คลับเราไม่ได้เป็นมวยเราไม่ได้เป็นกีฬาเราเป็นกิจกรรมหนึ่งซึ่งมีสมาคมของเราสมาคมไฟท์คลับไทยแลนด์When it's the world's biggest news story, there's only one gold standard of journalism. You are watching India Today. As Russia declared war on Ukraine, as the world was plunged again into crisis, with the only Indian team in the real war zone. This is Mariupol. You hear a series. Hear this sound. I will show you a quick, so to say, bombshell room tour. I can smell the gunpowder in the air. And without pause, India Today totally dominates viewership and smashes the competition. When it's the world's biggest news story, there's only one gold standard of journalism. You are watching India. Everyone said the road was impossible. Everyone said not in our lifetime. Everyone said the battle was unwinnable. Only KCR believed and made it possible. And how?
watching India Today TV. I'm Sneha Mordani. The headlines in this edition first. Fresh violence in Jodhpur after midnight clashes over flag and loudspeaker. Miscreants pelt stones at cops. Police resort to lathi charge and tear gas. Gehlot government under fire over Jodhpur clashes. BJP blames Rajasthan government for violence. Congress Neta calls the clash choti si baat. Loudspeaker debate gets louder. Owaisi slams Raj Thackeray over his ultimatum, demands the arrest of the MNS chief. BJP MP Parvesh Verma demands UP loudspeaker model in Delhi as well. Political showdown over Rahul Gandhi's viral Kathmandu nightclub party video. Jeering BJP labels Congress MP party time Neta and full-time tourist. Home Minister Amit Shah in Karnataka amid cabinet rejig speculation ahead of the crucial polls in 2023. Chief Minister Bommai is going to be holding a dinner meeting with Shah. After a massive outreach in Berlin, Prime Minister Modi heads to Denmark on day 2 of his Europe visit. He will meet Prime Ministers of all Nordic nations. Some news just coming in. The Congress has jumped in to defend Rahul Gandhi's party video. Manikam Tagore has said, what is wrong in it when he attends a marriage reception? Why are Sanghis afraid about him? Why Sanghis are spreading lies? These are questions being raised by a Congress leader. Every one of us attend private functions. This is Manikam Tagore speaking about Rahul Gandhi's party video, asking what is wrong with somebody attending a wedding. That's the question that he is asking. Manikam Tagore is a member of parliament and he's also the AICC in charge of Telangana. He's spoken about this entire controversy, asking whether there is a problem in anybody attending a wedding. What is wrong in it when he attends a marriage reception? Why are Sanghis afraid? Why are they spreading lies? All of us attend private functions is what he said. This is the Congress's reaction. Remember, the Congress in the past too has made attempts to defend Rahul Gandhi and his several vacations that he's taken, many of them after poll debacles like the one he took in the year 2014. This is a video that has gone viral from Kathmandu. Rahul Gandhi was in Nepal to attend the wedding of a prominent journalist from CNN. It is also being said that Indian VVIPs were present for the wedding function, for the festivities, for the celebrations. And Rahul Gandhi is a friend of the journalist. He was there as well. These are in fact pictures of a video that has gone viral from a club in Kathmandu where Rahul Gandhi was. The BJP has raised questions about the accountability of the Congress MP who was at one point in time also leading the Congress party. Whether this comes at a time also when Rajasthan is seeing, Congress-ruled Rajasthan is seeing communal clashes. The question the BJP is asking is that whether this speaks the volumes of the accountability of Rahul Gandhi, who's led the Congress party in the past. This also comes at a time when the Congress party itself is in a bit of a turmoil when it comes to leadership issues within the Congress. Why are Sanghis spreading lies? That's the question the Congress is asking. Reaction from Manikam Tagore of the Congress party. We'll wait to hear for more from the official spokesperson also of the Congress on how they respond to this video that has gone completely viral. It's a 12-second video. Questions are being raised. Congress says it's a wedding he was there for. What's wrong if Rahul Gandhi attends a wedding?
Manikam Tagore, the AICC in charge of Telangana, has asked these questions of the BJP that has responded to this video that has gone viral. Well, as the Congress party is in complete disarray when it comes to its own organization, Rahul Gandhi was spotted partying in a nightclub in Kathmandu. We just got you that video. Rahul Gandhi was in Kathmandu to attend his journalist friend's wedding ceremony that was held on Monday. Various BJP leaders have launched scathing attack at the Congress leader after his video of partying in a nightclub went viral. BJP is hit out at Gandhi for partying while there is serious crisis not only internally within the party but also in Rajasthan. And this comes, remember, after a massive defeat of the Congress in Punjab. Some BJP leaders have called him partying time Neta. Others have questioned the seriousness of Rahul Gandhi. सवाल यह है कि राहुल गांधी कहां पर हैं और किसके साथ हैं। सवाल यह भी है कि क्या चाइना के एजेंटों के साथ राहुल गांधी पार्टी कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी जो ट्वीट करते हैं या संसद में जो भाषण देते हैं चाइना के पक्ष में और भारत की सेना के खिलाफ, क्या वो इन्हीं लोगों के दबाव में दिया जाता है जिनके साथ वो पार्टी करते हुए दिख रहे हैं। देश विरोधी जो एजेंडा राहुल गांधी के द्वारा पुश किया जा रहा है, क्या उसके पीछे चाइना है। फैमिली फ़ोटो फ्रेम में जो पार्टी फिक्स है उसके ये पप्पू जी जो हैं वो फुल टाइम पर्यटन करते हैं और पार्ट टाइम जो है वो परिश्रम भी पाखंड से भरा हुआ परिश्रम होता है। और उसके बाद जब ये फुल टाइम पर्यटन से फ्री होते हैं तो जो है वो फेक फैब्रिकेटेड कहानी किस्से गढ़ते हैं, बयानबाजी करते हैं और कैसे जो है वो देश के लोगों को गुमराह किया जाए तो उसकी कोशिश करते हैं। खुद तो देश तो गुमराह होता नहीं, खुद इनकी पार्टी के लोग गुमराह होते हैं कि उनके पप्पू जी कह क्या रहे हैं। Rajasthan is burning. He has a government in Rajasthan. But instead of addressing the issues that are going on in Rajasthan as a leader of the opposition, as a member of parliament, as an important leader of the Congress party, it seems that Rahul Gandhi is more interested in bars than the people of Bharat. Here is Rahul Gandhi who tweets that there are so many crises that are affecting the country according to him. But he prefers to be in a nightclub in Nepal than to be amongst the people of India solving those crises. This is not the first time. You'd remember that even after 26/11, Rahul Gandhi preferred to be in party mode rather than to be with the people of India. And therefore, the question that is being asked, not by us, but in fact by many Congress party leaders, is that is Rahul Gandhi committed? Is Rahul Gandhi serious towards the people of India, towards his party, or is he more serious towards party? People are saying he's not a part-time Neta, he's a party-time Neta. It is none of our business whether Rahul Gandhi wants to party at a nightclub or holiday in Bangkok or travel to Italy, which he does quite routinely. The question here is that every time there's a problem, he's missing. When Mumbai was under attack, he was at a nightclub. When his party is exploding and there are several instances of communal flare-up in the states governed by the Congress, he's attending a wedding party, as you tell me, in a nightclub. So there is something amiss. His priorities are completely out of sync. You're not surprised the way Rahul Gandhi is behaving. He's partying around, he's having lots of fun, knowing very well that what is the internal condition of Congress. His mother is so much worried. She's trying to reach some political strategies. She's trying to do some brainstorming. But here, the son is playing around. He's partying. So this shows that how serious he is, how dedicated he is towards his political party, towards his constituents. So this is the reality of the Congress party. I mean, senior leaders, they are, partying around. They do not have any concern. But Ma Sonia Gandhi has got all the love for her putra, Rahul Gandhi. And for that, if Indian National Congress Party, it sees the doomsday, she will not mind about that. Multiple things that need to be taken note of. Rahul Gandhi ji wishes to travel outside the country, have a good time, party. That is his individual choice, whether it has been to other destinations over the years. But the important thing is that he has to also
not have this kind of standard that before he starts partying, he puts out a tweet every time consistently when he disappears to some foreign location. He'll put out a tweet either criticizing the BJP government or criticizing Prime Minister Modi or creating a false narrative that this country is in disaster or things are not good. So this can't be his brand of politics, that he wishes to party and just to show that he's a politician who's keeping track. Before his party, he'll put out a tweet. This is political duplicity. I mean, if he was really serious, he would be working for the people. Look at Prime Minister Modi from morning to night, 7 days a week, every month, 365 days a year, constantly working, Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas. He's there for just serving India as a Pradhan Sevak. On the other hand, you have this model where just before you party, you'll put out a tweet. So I think this duplicity is getting exposed with all these videos and other things that are coming out. The BJP hitting out the Congress has had a reaction in the form of Manikam Tagore, who said that what is wrong in attending somebody's wedding. Remember, Rahul Gandhi is in Kathmandu to attend a wedding that reportedly took place on Monday, after which this party seems to have been organized in a club in Kathmandu, and Rahul Gandhi in these pictures can be seen with the Chinese ambassador possibly to Nepal. We'll try and get more details on that as well, but this is an issue that has been raised by Kapil Mishra of the BJP as well. Well, after the clashes ahead of Eid in Rajasthan's Jodhpur, fresh violence was reported once again in the city on Eid. After the morning Eid prayers, a mob was seen raising religious slogans and clashed with cops. The mob also pelted stones at the police at Jalori Gate, compelling the police to resort to lathi charge. Cops sustained injuries in the clashes. Vehicles were damaged. In a crackdown on rioters, 3 people have been arrested. On Monday, a dispute started over the removal of a religious flag and installation of another religious flag at the Jalori Gate intersection. Both the groups then resorted to stone pelting and vandalism. The mob also tried to remove loudspeakers from the location. The mob vandalized property in the area. Many also sustained serious injuries. Cops reached the spot immediately, used force to control the crowds. Lathi charge was done, tear gas shells were used. यहाँ से जालूरीगढ़ से पत्थर मारते हुए आ रहे थे। यहाँ पे 2 ट्रैफिक पुलिस खड़ी थी, उनको हमने यहाँ पे बचाया, उनको जब मारने के लगे यहाँ पे पत्थर मारते आए तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं, उनको रोकिए। उन्होंने कोई रोका नहीं, सब पत्थर मारते आते रहे और मेरी गाड़ी के ऊपर भी पत्थर मारा। उसके बाद ऊपर से यहाँ पे इस गली के अंदर से एक लेडी खड़ी थी, उसने क्या हो रहा, उसने ऊपर से मटका फेंका। जब वो इधर से निकल के पास वाली गली के अंदर गए और यहाँ पे पुलिस वालों को मारा उन्होंने। 2 पुलिस वाले ट्रैफिक वाले खड़े थे, उनको मारा। एक सुनील जी बाफना भी थे, उन्होंने उन दोनों पुलिस वालों को बचाया। जब उन्होंने वापस वहाँ पे टेलीफोन किया कि यहाँ पे पुलिस फोर्स भेजिए, इस तरह से हो रहा है, उसके 3 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद यहाँ पे पुलिस आई। उसके पहले कोई नहीं आया और सब पत्थर मारते निकल सके। हमारे यहाँ पे अभी जो सिचुएशन है अंडर कंट्रोल है, हमने सफिशिएंट जाब्ता लगाया हूँ। अभी हम फ्लैग मार्च के लिए भी निकल रहा हूँ, सभी प्रकार से व्यवस्था है। मुझे लगता है हम इसको ये लॉ एंड ऑर्डर स्थिति जो है बनाए रखने के लिए हम इस पे जो भी केस दर्ज होंगे उस पे हम कार्रवाई करेंगे। जो भी अगर कोई गैरकानूनी काम किया है, जो जिस पे कानून के खिलाफ है, उसके विरुद्ध कानून के तहत कार्रवाई की जाए। मैं यही अपील करूँगा सभी को शांति बनाए रखें। Is getting us more details on that story. Joining us from Jodhpur right now, Dev, an idea of the current situation. Internet services, I believe, continue to remain suspended. Well, the situation continues to be tense, Sneha, in Jodhpur, but it is under control. There is an uneasy calm which currently prevails in Jalori Gate area where the clashes had broken out post-midnight on May 3 during the wee hours. An internet ban currently remains in place. There is heavy police patrolling which is happening in the area. The police does not want any large gatherings of the people, and the latest that we have received is that the Rajasthan Chief Minister has cancelled all his birthday plans. Today is his birthday as well, so he has cancelled all his birthday plans, and an urgent meeting has been called at the Chief Minister's office to discuss the situation currently prevailing in Jodhpur. In fact, senior police, including the
the Director General of Police of Rajasthan has also been summoned. He will be present at the meeting where the entire situation in Jodhpur can be reviewed. Neha. Meanwhile, Dev, these are allegations that are flying thick and fast. The BJP says that Pakistan flag was put up by members of a particular community. The Congress is saying it was a religious flag. Who started all of this? How did these clashes take place? What did the government do? What did the administration do after clashes were reported last night itself? These are questions that need serious answers. Well, Sneha, things are under purview and are in the realm of the investigations that are supposed to be considered by senior police officials. But I can tell you that the information that we have is that around 2 days ago, on the occasion of Parshuram Jayanti, there were several flags which were put up, saffron flags which were put up, and today is Eid. So some of the people from the minority community in Jodhpur wanted to, hoist green color flags out there. That is, and allegedly, this is the allegation which has been doing the rounds, that some of the saffron flags were removed, and thereafter the green colored flags were hoisted in their place, and that is how the entire clash began. The truth is completely yet to be, the district administration is yet to come out with the complete picture of what actually happened, how the clashes ensued, but this is what we have been gathering on the ground. The police has been trying to maintain calm out there. The situation remains tense and volatile right now, but it has gotten better than it was post-midnight. Neha? Dev, be with us. Just coming back to you for more on that. We're talking about Jodhpur on the boil, but there's no end to politics. Well, we did see politics break out after violent communal clashes in Rajasthan's Jodhpur on the occasion of Eid. The BJP has hit out at Ashok Gehlot government for the clashes that broke out between two communities on Eid, calling the cops irresponsible. The mayor called out the Congress government, accusing them of fueling communal tensions. Congress netas, while speaking on the communal clash, called it a small issue, saying it could have been resolved easily. Rajasthan Chief Minister Gehlot appealed to maintain peace in the violence hit area and has urged to maintain law and order. राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री के गृह जिले जोधपुर में जिस प्रकार से जालोरी गेट में सांप्रदायिक हिंसा और तनाव फैला और उसको फैलाने दिया गया, इसके पीछे का कारण केवल इंटेलिजेंस फेलियर है या तुष्टीकरण की राजनीति में लीन हुई सरकार का संपूर्ण फेलियर है। ऐसी घटनाएं कब तक चलती रहेगी राजस्थान में, इसका जवाब भी अशोक गहलोत की सरकार को और कांग्रेस पार्टी को देना होगा। जोधपुर में स्थिति कंट्रोल में है और जो जिस तरह से दंगा हुआ ये तय कर लेना चाहिए, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कांग्रेस, बीजेपी किसी का कार्यकर्ता हो, किसी जाति धर्म का व्यक्ति हो, दंगा फैलाने का, दंगा भड़काने का, दंगा करने का किसी को हक नहीं है। स्थिति कंट्रोल में है, सख्त कार्रवाई करेंगे। पुलिस वहां पर मौजूद है और किसी भी कीमत पर किसी भी दंगाई को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी दंगा फैलाने का हक नहीं है। आमने सामने लोग हुए, इसमें कोई दोहराई नहीं है, दंगा भड़का है। और जिन लोगों ने ये कार्रवाई की है, जो जिस तरह से प्लान वे में आज आखाती है, हिंदुओं का बड़ा त्योहार है, ईद भी है, मुसलमानों का बड़ा त्योहार है, सबकी जिम्मेदारी है अमन चैन और भाईचारे से रहने की। अशोक गहलोत जी से कांग्रेस के शासन में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है और खास तौर पर जो अपीजमेंट की राजनीति इन्होंने शुरू की है, उसी का नतीजा है कि इस तरीके से धर्म के नाम पर या किसी भी समारोह के नाम पर स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति पे झंडा लगाना और परशुराम जी के झंडे उतारना, उसके बाद लगातार जिस तरीके से करौली की घटनाओं के बाद जो घटनाएं सीक्वेंस से हुई, एक तरफ तो सरकार बैन करती है रामनवमी के जुलूस को, 144 इम्पोज करती है 17 जिलों में और लोगों पर 107 और 16 की कार्रवाई करती है, और दूसरी तरफ पीएफआई को परमिशन देती है। तो ये अपीजमेंट के कारण ये हौसला इस तरीके के जो अराजक तत्व उनका बढ़ा है। देखिए, कहीं भी दंगा नहीं होना चाहिए और दंगे को रोकने के लिए मेरी अपील है वहाँ के जितने भी लोग हैं, इससे कुछ लोगों को लाभ हो सकता है
लेकिन दंगे से समाज का, प्रदेश का और देश का बड़ा नुकसान होता है। और हमारे देश की संस्कृति रही, हम मिलके रहते हैं। और ईद के दिन ये त्योहार ऐसा है, गले मिलने का है, एक दूसरे के करीब आने का, एक दूसरे से बातचीत का है। इसलिए जो दंगा हुआ है मैं उसकी निंदा करता हूँ। वहाँ पे किसी ने दंगा नहीं भड़काया था। जो पत्रकार थे वहाँ पे वो निकल रहे थे, उस समय रात को भजन संध्या थी। वो अंदर से जब बाहर आए हैं, उससे पहले दोपहर में पुलिस वालों ने उनको कहा है कि यहाँ पे परशुराम जयंती के और वो है जालोरी गेट चौराहे पे आपने भगवे झंडे सजाए हुए हैं। उन्होंने सारे उतारे हैं कि कल नमाज का दिन भी है और ईद की है, इसलिए ये झंडे हटा देते हैं। और वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी दंगे भड़का रही थी, उनको शर्म आनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने वो झंडे दोपहर में हटा दिए ताकि चौराहे पे जो है वो कोई ऐसी बात नहीं रहे। The investigations continue in this matter as the blame game also continues. Dev Ankur continues to be with us. Dev, like we said, the BJP is accusing the Congress of allowing this sort of violence to break out. The Congress says that this environment has been created by the BJP as far as the loudspeaker debate and the controversy, not just in Rajasthan, but in different parts of the country like UP is concerned as well. Well, Sneha, clearly the Rajasthan state BJP chief went on record mentioning that during a press conference in Madhya Pradesh that if BJP comes to power in Rajasthan, then in Rajasthan too the loudspeakers will be removed. Now, what has happened is that Rajasthan, which was earlier considered largely a peaceful state, there have been a series of communal clashes in the recent times. Last month there was the Karoli communal clash which erupted on the occasion of Nav Samvatsar or the Hindu New Year. Thereafter, the Congress had accused the BJP, mentioning that the national BJP president JP Nadda were to visit Rajasthan, and that is why the BJP had prepared the ground for communal clashes. And Rajasthan Chief Minister, in fact, Ashok Gehlot, went on record mentioning that these kind of things will keep on happening. The BJP has gotten into election mode. The BJP had hit back, claiming that the violence had erupted because of the intelligence failure of the administration which worked under the Rajasthan government. So there have been a lot of accusations and counter allegations which have been flying thick and fast. The elections in Rajasthan are will be happening next year, and before that clearly seems that a lot of made at trying to reap political benefits out of clashes, which is really Dave, be with us. Just come back to you for more on that. Meanwhile, Randeep Singh Surjewala, the chief spokesperson of the Congress party, has responded to what has happened in Jodhpur in Congress-ruled Rajasthan. Listen in. भारतीय जनता पार्टी जहां जहां चुनाव होगा, आप समझ लीजिए, अब उत्तर प्रदेश में कोई हिंसा नहीं होगी क्योंकि वहां चुनाव खत्म हो चुका। अब उत्तराखंड में कोई हिंसा नहीं होगी, कोई दंगे नहीं होंगे, कोई भड़काऊ बयानबाजी नहीं होगी क्योंकि वहां चुनाव खत्म हो गया। अब अगला टारगेट जो है वो राजस्थान है, कर्नाटक है और धीरे धीरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। अब जब तक यहां चुनाव नहीं होंगे, यहां हर रोज हिंदू मुसलमान का दंगा होगा, हर रोज कोई ना कोई भड़काऊ बातें कहेगा और हर रोज झगड़े करवाएगा। मैं इस वक्त खड़ा हूँ जालोरी गेट चौराहे पर। आप देख सकते हैं कल रात इसी जगह पर एक दो समुदाय का गुट था। उस गुट में झंडा लगाने को लेकर, लाउड स्पीकर को लेकर विवाद हुआ है, जो तनाव इतना बढ़ चुका है कि पत्थरबाजी हुई, लाठीचार्ज हुआ और लाठीचार्ज होने के बाद आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। इस समय मैं इस चौराहे पर खड़ा हूँ, यहाँ पर आरएससी तैनात है और आज सुबह भी इसी जगह पर जैसे ही नमाज अदा करके लोग बाहर निकले तो इन्होंने गाड़ियाँ के कांच फोड़े, तकरीबन 15 से 20 गाड़ियों के कांच फोड़े हैं और इस समय तनाव का माहौल है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पुलिस जाब्ता लगा रखा है, तकरीबन 3 से 4 पुलिसकर्मियों के चोटें भी आई है, लेकिन प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें भेज दिया गया है। इस दंगे पर जहां झंडा लगाया गया था, अब उस पर प्रशासन द्वारा तिरंगा झंडा लगा दिया गया है। अब इस समय पुलिस जाब्ता तैयार है, हर जगह तैनात है। शहर में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। जिस तरीके से कल रात और आज सुबह जो शहर में जिस तरीके से हुड़दंग हुआ है, उसको लेकर तनाव का माहौल है। कमिश्नर, डीसीपी ईस्ट वेस्ट दोनों मौके पर हैं और मोर्चा संभाले हुए हैं। Getting the details of the clashes that broke out in Jodhpur, this comes, remember, at a time when two different areas in Karoli and Alwar
in Rajasthan had seen clashes between two communities. We now have these clashes being reported on Eid day from Jodhpur city. Pictures of the violence that broke out last night and spilled over today, essentially, where two communities clashed over installation of the loudspeaker and also a flag, a village's flag that was hoisted. To bring the situation under control and as a precautionary measure, internet services have been suspended in this area. The police say that the situation now is under control, but not before protesters were lathi charge and tear gas shells were used to bring the crowds under control. There was arson, there was violence in which cops were also injured. We're putting out all of those pictures for our viewers from Jodhpur city in Rajasthan. Meanwhile, a political blame game as expected. वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूँ कि हमारी राजस्थान की और मारवाड़ की परंपरा रही है। सभी समाज के सभी धर्मों के लोग हमेशा हर त्योहारों के अंदर भी प्रेम से भाईचारे से रहते आए हैं। मैं अपील करना चाहूँगा कि तमाम लोग शांति बनाए रखें और तनाव समाप्त करें, क्योंकि ये तनाव हिंसा का माहौल हित में नहीं है जोधपुर वासियों के भी। और जो लोग फिर भी ऐसे कोई तत्व एंटी सोशल एलिमेंट आते हैं तो सख्ती से निपटा जाएगा, ये मैंने पुलिस को निर्देश दे दिए हैं। और समय रहते हुए मैं समझता हूँ कि सबको समझना चाहिए कि सब मिलजुल करके जो हमारा भाईचारा बनाए रखें, ये मेरी बहुत मार्मिक अपील है। जो मैंने सुना है कि वहाँ पर कुछ लोगों ने और कुछ नेताओं को मैं अपील करना चाहूँगा, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी नेता हो, कि जो राजनीति में कार्यकर्ता है या नेता है, जनप्रतिनिधि है किसी पार्टी का हो, पहला उसका धर्म होता है कि कैसे वो अपनी पार्टी के लोगों को, अपने मिलने वाले लोगों को, सबको संदेश करे कि किसी भी कीमत पर झगड़ा नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि इस परंपरा का निर्वहन करने के लिए तमाम पार्टी के लोग एकजुट रहेंगे, ये मैं उनसे अपील करना चाहूँगा। Coming in from Ashok Gehlot, the Chief Minister of Rajasthan, Sharad Kumar, is also with us. For more on that, Sharad, इस समय स्थिति कैसी है? लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, सरकार का ये कहना है कि अभी अंडर कंट्रोल है। ग्राउंड जीरो में क्या देख रहे हैं? इंटरनेट सर्विसेज अभी भी सस्पेंडेड है, प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं कि फर्दर क्लैशेस ना हो। देखिए, इंटरनेट सर्विसेज आगे भी सस्पेंडेड रहेंगे फर्दर ऑर्डर तक। अभी चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने, आज उनका बर्थडे था, जन्मदिन था और आज उनके घर पर मेला लगने वाला था, लेकिन सारे कार्यक्रम आज जन्मदिन के बर्थडे का उन्होंने कैंसिल कर दिया है और सीएमओ ऑफिस में चले गए हैं, जहां पुलिस के अधिकारियों और सचिवों के साथ बैठक कर रहे हैं जोधपुर हिंसा को लेकर कि कैसे वहाँ पर क्या हुआ है, कैसे काबू में पाया जाए। फिलहाल ग्राउंड पर शांति है, लेकिन बड़ा सवाल है कि ईद के दिन, त्यौहार के दिन, खुशियों के त्यौहार के दिन, आपसी भाईचारा और विश्वास के त्यौहार के दिन, जिस दिन सुबह कुछ मुस्लिम युवकों ने पथराव किया है, उसे लेकर वहाँ पर तनाव है। और उसी तनाव को देखते हुए गजेंद्र सिंह जो यूनियन मंत्री हैं, वाटर रिसोर्सेज मंत्री, वो गए थे और वहाँ पर कुछ लोगों ने नारेबाजी भी की। हालांकि उन्होंने कहा कि आप यहाँ से डिस्पर्स हो जाइए, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। लेकिन कुल मिला के यही कहा जा सकता है कि क्या ईद के दिन इस तरह का पथराव करना उचित था? और उससे भी बड़ा सवाल है, क्या इस देश में मुसलमानों को अपना त्यौहार मनाने का हक है कि नहीं? दिवाली में हम देखते हैं कि 10-10, 15 दिन पूरे बाजार में सजावट होती है और 15 दिन तक लोग हिंदू जश्न मनाते हैं। और ईद के दिन वो अपना झंडा लगा रहे थे, लाउड स्पीकर लगा रहे थे और कुछ युवकों ने वहाँ पहुँचकर झंडा उतार दिया, लाउड स्पीकर उतार दिया। उसके बाद ये वीडियो वायरल हुआ और मैंने आपसे कहा कि इमोशनल लोग हैं, अनएम्प्लॉयड लोग हैं, लंपेन लोग हैं, उन लोगों ने पथराव किया। बड़ा सवाल है कि किस तरह से ये घटनाएं घटित होती है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन रहता कहाँ है? जब देश में इतना विस्फोटक माहौल है, इस विस्फोटक माहौल में भी आप सबको पता है कि अक्षय तृतीया है आज। अक्षय तृतीया सबसे पवित्र दिन माना जाता है हिंदुओं के हिसाब से और राजस्थान में तो सबसे ज़्यादा शादियाँ पूरे देश, पूरे साल में जितनी शादियाँ होती है उसका 1/3 आज ही हो जाती है। आप ये समझिए इतना शुभ दिन है आज हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। उसके अलावा परशुराम जयंती भी है, उसी दिन ईद पड़ी है।
होना तो चाहिए था कि कितना बड़ा मौका था कि हिंदू मुसलमान मिलकर इसको सेलिब्रेट करते, लेकिन पहले से ये था कि ये तनाव हो सकता है क्योंकि इस तरह का विस्फोटक माहौल इस देश में बना हुआ है। उसके बाद भी प्रशासनिक लापरवाही से, एडमिनिस्ट्रेशन के फेल्योर से पत्थरबाजी हुई है, जिससे हिंदुओं में रोष है और मुसलमानों में रोष है कि क्या एक दिन अपना वो ईद नहीं मना सकते, क्या ईद का झंडा नहीं लगा सकते, क्या ईद के लिए लाउड स्पीकर नहीं लगा सकते, क्या ये उनका देश नहीं है। इस तरह के अगर उनके झंडे और लाउड स्पीकर लोग अपने हाथ कानून में लेकर उतारेंगे बाजार में और वीडियो वायरल होंगे तो क्या इस तरह से हिंसा को हम रोक पाएंगे? अगर नहीं रोक पा रहे हैं तो क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन फेल्योर नहीं है, क्या इंटेलिजेंस फेल्योर नहीं था सरकार का? क्योंकि सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र जोधपुर से, वहीं से हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आते हैं। फिलहाल भले ही शांति है, लेकिन जिनके गाड़ियां टूटी है, जिनके शोरूम पे पत्थर पड़े हैं, जिन्हें चोट लगी है, वो कभी नहीं भूल पाएंगे कि वो पत्थर चलाने वाला मुसलमान युवक था और वो मुस्लिम युवक जो साल भर से ईद मनाने की तैयारी करते हैं वो कभी नहीं भूल पाएंगे कि कैसे हमारा झंडा उतार दिया गया, कैसे हमारा लाउड स्पीकर उतार दिया गया। हमें तय करना है कि हम देश को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं, क्या हम साथ रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं। कानून व्यवस्था अगर इस तरह के हालात रहें तो बिगड़ते रहेंगे। पुलिस जो है उसे कंट्रोल करना सीखना होगा, क्योंकि इस तरह का माहौल में जब हर तरफ ऐसा माहौल है तो वहाँ पर पुलिस की मौजूदगी होनी चाहिए थी। आज जब रात को इतना बड़ा कांड हुआ है तो सरकार, अभी जैसे ही ईद की नमाज 8:30 बजे की ख़त्म हुई, प्रशासन की तरफ से मैसेज आया कि पीसफुल नमाज ख़त्म हो गई है और थोड़े ही दूर पर जाकर पथराव हो जाता है और वो पथराव के जो वीडियो हैं वो वायरल हो जाते हैं। वहाँ पर इंटरनेट बंद है मगर ब्रॉडबैंड चालू है। ज़्यादातर लोग अपने घरों में आजकल ब्रॉडबैंड लेकर काम कर रहे हैं, इसलिए वीडियोज़ को वायरल करने में इंटरनेट बंद करने से कोई दिक्कत होती नहीं है। वहाँ से सारे फीड आ ही रहे हैं, आप देख ही रही हैं स्नेहा। तो वहाँ पर जो माहौल है फिलहाल शांतिपूर्ण है, मगर हमारे साथ वनिता सेठ जो है जोधपुर की मेयर हमारे साथ अब इस समय फोन लाइन में है। वनिता सेठ, इस समय सिचुएशन जोधपुर में कैसा है और जो हुआ है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? उसके लिए एक बात मुझे बताइए। सुबह 6 बजे कलेक्टर और कमिश्नर से हमारी बात हुई थी। हमने ये कहा कि हमारे सारे लोग यहाँ से हट गए सिर्फ इसलिए कि 1 महीने से उन्होंने रोजा रखा है, वो अपनी नमाज अदा कर दें। उसके बाद रात 9 बजे वो नमाज पढ़ने के बाद में जालोरी गेट से निकलते हैं और जितनी गाड़ियां खड़ी हैं, जितने कांच के शोरूम हैं, उन सबको उन्होंने पत्थर मार के तोड़ा। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है ना, ये तो पुलिस ध्यान रखेगी। और इसका मतलब वो टारगेट लेके थे, वो नमाज पढ़ने आए, उसके साथ भी वो पत्थर लेके चल रहे थे। और आप पत्थर देखिए कि एक ही तरह के बने हुए हैं और उनपे स्काई ब्लू कलर किया हुआ है। दूसरी बात ये हुई कि शहर में मेरे पास कंप्लेन आई, जब मैं वहां गई तो पता चला हमारे सिटी के अंदर एक कबूतरों का चौक है, वहाँ एक महिला अपनी बच्ची को लेके खड़ी थी, उसके जाते हुए पत्थर मार दिया। भाई क्या मजाक है, कोई अपने घर के बाहर खड़ा नहीं हो सकता। और अभी अभी आया है शहर में 3-4 जगह हैं जहाँ कहीं पे दुकान तोड़ दी है, जो बंद दुकान है, किसी के ऊपर हमला कर दिया है। अब सिटी में कर्फ्यू लगाना पड़ा है। तो हम तो रात से कह रहे थे कि ये प्री प्लान्ड हो रहा है, आप इनको रोको। ये नमाज के बाद कौन पत्थर चला रहे हैं ये तो पुलिस देखेगी ना कि ये कौन कर रहे हैं। वनिता सेठ, ये कहा जा रहा है कि एक इस्लामिक फ्लैग, जो रिलीजियस फ्लैग है, वो हरा झंडा लगाया गया और उससे रिप्लेस किया गया भगवा फ्लैग से। क्या ये सच है? बिल्कुल किया गया, बिल्कुल सच है। सवाल ये कांग्रेस उठा रही है कि ऐसा क्यों किया गया, क्या ये जानबूझ के किया गया, माहौल बिगाड़ने के लिए किया गया? ये कांग्रेस को उठा रही है सवाल। ये कांग्रेस उठा रही, तो कांग्रेस को ये पूछो कि उस समय उसका नाम लेते हैं जो ईदगाह से पत्थर चल रहे थे, वो कौन कर रहा था? तो पत्थर चलाने का रीजन, पथराव करने का रीजन क्या था? जालोरी गेट के चौराहे पे भगवा लगे हुए थे, वो दोपहर में पुलिस के साथ मिलके सारे परशुराम जयंती पे जो ब्राह्मण थे उन्होंने हटाए हैं कि कल इनका त्योहार है, इसलिए ये अपने तरीके से इस सर्कल को सजा लें। दोपहर में कल 12 बजे सारे झंडे वहां पे हटाए गए हैं और किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं, खुद ने हमने हटाए। मतलब हमसे मतलब है पुष्करना समाज ने, और जो ब्राह्मण थे परशुराम जयंती का, उन्होंने कहा कि क्योंकि इनका भी त्योहार आ रहा है, उन्होंने अपने हटा दिया, हमने मना लिया। एक झंडा लगा हुआ था, उससे क्या दिक्कत है मुझे ये बताइए, नंबर 1। दूसरी बात, उन्होंने जो स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति लगी हुई थी उसके चारों तरफ ब्लैक कलर की टेप लगाई। सबसे ज्यादा इशू झंडा नहीं है, ये है, ये उनके मुंह के ऊपर ब्लैक टेप लगाने का क्या मतलब है?
लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगी और हम कनेक्ट करेंगे कांग्रेस के किसी स्पोक्स पर्सन के साथ भी। पहले कांग्रेस के नेताओं का ये कहना था कि ये जो माहौल बना रहे हैं, डर का माहौल जो बनाया जा रहा है, लाउड स्पीकर्स को लेके ऑब्जेक्शन है, हरे झंडे को लेके ऑब्जेक्शन है, ये माहौल बीजेपी बना रहा है। जी प्लीज बीजेपी ने कल कोई नहीं था, बीजेपी का कोई नेता उस समय मौजूद नहीं था। रात को 12 बजे से कंटिन्यू मैं ही थी। 3 बजे के बाद में सूर्यकांता जी जो सिटी में ही रहती हैं, विधायक हैं, वो हैं, वो भी उन सबके बुलाने पे 7 पत्रकारों को चोटें आई हैं। आप क्या मजाक कर रहे हो? इसमें कहाँ बीजेपी है? पत्रकारों को मारा है उन्होंने, लाठीचार्ज किया पुलिस ने, और पत्थर मारे हैं मुस्लिम समुदाय ने। इसमें बीजेपी ने क्या कर लिया और बीजेपी का कौन सा नेता है ये बता दे। ये कांग्रेस का कहना है वनिता सेठ, ये सवाल कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस कुछ भी कह दे, आप अपनी प्रशासन को नहीं संभाल पाए, आपका एडमिनिस्ट्रेशन फेल गया, इसका मतलब आप बीजेपी के दोष दोगे? बीजेपी का कौन सा नेता वहां थे रात भर में? आज सुबह अब आए हैं जब लोगों ने ये शिकायत की है कि भाई बीजेपी वाले आ क्यों नहीं रहे हैं, हमारी कारें तोड़ दी हैं, हमारे साथ मिसबिहेव हो रहा है, तब हमारा जिलाध्यक्ष, मंत्री और सब आए हैं। जबकि रात को ये तय हो गया कि जब मैं वहां पे हूँ किसी को आने की जरूरत नहीं, शांतिपूर्ण रखना है, इनकी नमाज सुबह हो जाए। हम तो इतना कोऑपरेट कर रहे हैं और उसके बाद बीजेपी पे दोष दिए जा रहे हैं। क्या मजाक बना रखे हैं? बने रहिए वनिता सेठ हमारे साथ। हमारे सीनियर पत्रकार शरद कुमार हमारे साथ अलवर से हैं। शरद, आप पूछना चाहेंगे? वनिता सेठ मेयर जोधपुर के हमारे साथ फोन लाइन पे है। जी वनिता जी, ये जो दृश्य वायरल हो रहे हैं, सारे चैनलों पर चल रहे हैं, झंडा उतारा जा रहा है उनका और लाउड स्पीकर खींच कर उतारा जा रहा है, वो कौन लोग उतार रहे थे और ये वीडियो कहाँ का है? रात की 1 मिनट आप बात सुनिए, ये अभी सुबह की घटना है। ये अभी क्या हुआ है कि रात को इन्होंने के लिए सर्कल खाली किया हुआ था, वहां पे इन्होंने क्या किया कि जो एक स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति थी उसके ऊपर टेप लगा दी, मुंह के ऊपर काली टेप, और उसको ढक रहे थे। तो आपके कोई जर्नलिस्ट वहां से निकल रहे थे, वो उसमें GTV वाले भी थे, उसमें फर्स्ट इंडिया न्यूज के भी, यहाँ आप उनसे बात कर सकते हैं। उन लोगों ने वहां पे रुक के कहा कि भाई ये क्यों कर रहे हो ऐसे। उन्होंने उस समय पत्थर मारने शुरू कर दिए। ये लाउड स्पीकर वगैरह पुलिस के प्रेजेंस में लगे हैं, तो लाउड स्पीकर की कोई इशू नहीं है, ये जानबूझ के इशू बनाया जा रहा है। रात को कोई लगाने का तुक नहीं था और हमने तो सर्कल खाली करवाया था। पूछ रहा हूँ कहाँ के है उतारते हुए झंडे और लाउड स्पीकर? अब वो कहाँ, वो तो आपके पास है, हमारे यहाँ तो नेट सुबह से बंद है, मैंने तो कोई वीडियो ही नहीं देखा। मैं तो मौके पे थी, वो घटना चैनलों पे चल, आप देख सकती हैं लाउड स्पीकर उतारा जा रहा है, झंडे उतारा जा रहा है। अच्छा, तो मेरे सिटी में जो लाठियां चल रही हैं उनको छोड़ के मैं आप चैनल देखूं? क्या मजाक कर रहे हो आप? पत्रकार हो, आप भी समझो। आपके 7 पत्रकारों को चोटें आई हैं, पुलिस ने लाठीचार्ज में मारा है, और वहाँ पे जितने पत्थर पड़े हैं ना उनके साइज, उनसे फोटो मंगा के देख लो। यही तो कह रहे हैं कि रात में जो कांड हुआ है पुलिस ने, सुनिए, रात में जो कांड हुआ उसमें कोई ऐसा नहीं था। रात में सिर्फ उनकी तरफ से ही आपको पत्थर मारे गए इधर, और जब पत्रकार गए उन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। और उन्होंने कहा है कि हम कवरेज करने आए तो भी बुरी तरह से मारा। मेरे पास जब रात को 1 बजे फोन आया तब मैं गई हूँ, क्योंकि मैं पास में ही रहती हूँ। बाकी हमारे सब नेता दूर से, उनका एक फोन आया कि एक बार जाके देखो, क्योंकि कुछ कार्यकर्ता वहाँ गए हैं, क्या मैसेज है। तब वहाँ पता चला कि सिटी के लोग वहाँ से निकल रहे हैं 12 बजे रात को, और वो उन्होंने पत्थर मारने शुरू कर दिया और पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। जो पत्थर मार रहे हैं उनको लाठीचार्ज नहीं किया, आपके पत्रकारों को किया, और जो पास में खड़े थे उनको मारा है। और अभी की सिचुएशन ये है, सिटी के अंदर हर गली में उसका नाम देते उन्होंने हुड़दंग मचाया, और उसको ये है कि सिटी के अंदर अभी कर्फ्यू लगाना पड़ा है। वनिता सेठ, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यू हर्ड फ्रॉम द मेयर ऑफ जोधपुर। Sharath, I'm thanking you also for the moment. We have some more news that's just coming in from Rajasthan. Let's go straight to that. Chief Minister Ashok Gehlot has called for key meeting over Jodhpur clashes. Gehlot's huddle on law and order situation, DGP top officials part of the meeting. Remember, these after clashes took place in Jodhpur. Now a meeting is being called by the Chief Minister to assess the law and order situation in Jodhpur. Rajasthan has been in news for the wrong reasons for the last 2 weeks or so. First there were clashes in Karoli, in Alwar, then now in Jodhpur on the occasion of Eid. We've reported on clashes between 2 communities.
A meeting has been called to assess the law and order situation in Jodhpur city and in Rajasthan. Chief Minister Ashok Gehlot has called for a meeting over the clashes that have taken place in Jodhpur to assess the law and order situation in the city of Jodhpur, where internet services continue to be suspended. Remember, violent clashes broke out between two groups. Cops who tried to bring the situation under control were also hurt in the violence. We've also had reports of arson in Jodhpur city, where there is a curfew right now. Internet services continue to be suspended. Authorities say the situation is tense, but continues to be calm right now, and that things are under control, but it could go out of hand. Remember, the situation went from bad to worse this morning after there were allegations that a loudspeaker was being removed by sections of a particular community, also over hoisting of a particular flag, a religious flag. There were clashes that broke out in Jodhpur. There were tensions last night, and clashes broke out after the prayers, Eid prayers this morning. There have been reactions that have come over from political leaders across the country. We've also heard from the Chief Minister of West Bengal, who's spoken about the need for peace. Ashok Gehlot, the Chief Minister of Rajasthan too, has said that the need of the hour is to maintain peace and ensure that law and order does not get disturbed. It's time for a quick break here. On the other side, loudspeaker debate is getting louder. Owaisi has slammed Raj Thackeray over his ultimatum, demanding the arrest of the MNS chief. India Today TV wins big awards at ENBA 2021. Bags the best channel of the year. Shines bright with 15 goals. Gaurav Sawant, Best Anchor, English. Preeti Chaudhary, Best Continuing Coverage by a Reporter, English. Shivarur, Best Anchor, English. Udayan Mukherjee, Best Business Program, English. Rahul Kamal, News Director of the Year. India Today Group sweeps with a record 90 awards. India Today Group, the gold standard of journalism. These are pictures of him from Denmark. He's meeting again with members of the Indian diaspora. This is day 2 of the Prime Minister's visit to Europe, after wrapping up his visit to Germany, where he met members of the diaspora as well. In Copenhagen, these are pictures from Copenhagen in Denmark, where the Prime Minister again is meeting. He is in fact heading to Denmark. There's a correction there. The Prime Minister is in Berlin right now. These are pictures of him leaving for Copenhagen. These are pictures coming in from Berlin, where he is in fact headed to Denmark. He's wrapping up his visit to Germany. On his way to Denmark, he is in fact meeting members of the diaspora. As you can see in these pictures, the Prime Minister wrapping up his visit to Germany and headed to Copenhagen in Denmark. In fact, this is day 2 of the Prime Minister's visit to Europe, where he is in fact going to be arriving in Denmark in some time from now to hold a bilateral meeting with his Danish counterpart. The Prime Minister will also be participating in the Second India-Nordic Summit. He is going to be reaching Copenhagen in some time from now at 2 p.m. and will visit the Denmark Prime Minister's residence immediately after arrival to Denmark. We have some reactions that have come in. Listen in. मगर आज बहुत कुछ हो गया. Thank you so much
हम यही दुआ करते हैं कि उनको और भी ऐसा डेलीगेशन आकर हमको खुशी कर कर लोगों को सोचकर. थैंक यू सो मच. I am very happy to meet Modi ji. I love Modi ji. It's really a wonderful day today. We met Modi ji. We are very blessed. It was a nice opportunity to meet Modi ji today at this hotel in Berlin. We are very happy and super excited. We love you, Modi ji. My name is Rahul Agarwal. I am from Munich and we are in Berlin today. We are very, very excited and very, very happy to receive Modi ji here. We are very, very blessed also. And the messages that he gave to Indian diaspora today was really great. He talked about zero defect, zero effect, which is extremely nice. He talked about promoting global, vocal for local, which is very nice. And we really want to take his messages. We want to promote Khadi. He promoted a lot of Khadi content here. So we are really blessed. This entire Indian diaspora is excited. And we are excited about the way he promoted India. So thank you so much, Modi ji, and we hope to see you again very soon here. Thank you so much. Manisha. Minister is on his way to Copenhagen, Denmark. The Prime Minister is to be a part of a business roundtable later in the evening today. First, he meets with his Danish counterpart. An interaction again with the diaspora is scheduled at 8 o'clock Indian Standard Time. The Prime Minister is also to meet the Danish Queen and attend a dinner hosted by the Queen today. Remember, this is day 2 of the Prime Minister's visit to Europe. जो सुबह में भी उनके साथ जो मुलाकात हुई वो भी बहुत ही सुखकारक थी और जो शाम में उन्होंने जो मैसेज दिया, उन्होंने जो स्टार्टअप्स की बात की, उन्होंने जो एनवायरनमेंट की बात की, उन्होंने जो रिडक्शन इन कार्बन की बात की, सोलर एलईडीज की बात की, तो ये सब हमें एक अच्छा मैसेज देता है. इससे हमें ऐसा पता चलता है कि मोदी जी एक तरह खादी की भी बात करते हैं और स्टार्टअप्स की भी बात करते हैं. ऐसा मैसेज लेके हम जो उन्होंने हमें एक्शन करने को बोला है वो हम करने की अभी तैयारी करेंगे और उनका मैसेज एक्शन में परिवर्तित करने के हम हमारे तरफ से पूरा प्रयास करेंगे. आज सुबह भी उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा. उन्होंने हमारी टीम को आप गए कितने दिनों से यहाँ पे लगे हो और क्या प्रयास कर रहे हो इसके बारे में पूछा और उसकी वजह से हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत बढ़िया. धन्यवाद. Day 2 of the Prime Minister's visit to Europe. Today he is in fact headed to Copenhagen in Denmark after wrapping up his visit to Germany. The Prime Minister is also to meet the Prime Minister of Denmark and also will be meeting the Queen today as he visits the city of Copenhagen. There's also an interaction that has been lined up with the Indian diaspora at 8 p.m. Indian Standard Time. When it's the world's biggest news story, there's only one gold standard of journalism. When it's the world's biggest news story, there's only one gold standard of journalism.
Everyone said the road was impossible. Everyone said, not in our lifetime. Everyone said the battle was unwinnable. Only KCR believed and made it possible. And how? The debate over loudspeakers is just getting louder. In Maharashtra, MNS Chief Raj Thackeray has reiterated his 3rd of May ultimatum to remove loudspeakers from mosques, threatening to play Hanuman Chalisa outside mosque and double the volume if his demand wasn't met with. Owaisi has slammed both Shiv Sena and the BJP over Raj Thackeray's comment, claiming that government can't take action against Chief Minister's brother. He's also said it was all part of BJP RSS plan. Now the loudspeaker debate has reached national capital as well, where Delhi BJP MP Parvez Sahib Singh has written to the governor demanding UP-like crackdown on loudspeakers. He said the Supreme Court order on loudspeakers is not being strictly followed in Delhi city. He's also said that UP-like treatment is required for law to take its course. जब वहां की मुकामी पुलिस ने उनको कंडीशन के साथ परमिशन दिया है तो उनको चाहिए कि फौरन सो मोटो एक्शन ले कि एक बार हो जाने दो। क्या हो जाने दो? क्या एक शख्स पूरे स्टेट के पीस को दांव पे लगाएगा? क्या एक शख्स थ्रेटन करेगा औरंगाबाद की हिंदू मुस्लिम दलित के भाईचारगी को? तो पुलिस क्या कर रही है? और क्या ये क्या मतलब है कि एक बार हो जाने दो? क्या हो जाने दो? क्या सो मोटो एक्शन पुलिस नहीं लेगी? लगाइए 153 295 और अरेस्ट करके जेल को भिजाइए, क्योंकि शिवसेना की सरकार है और वो अपने भाई के खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। वही एक नवनीत राणा अगर उद्धव ठाकरे घर पर जाकर कुछ पढ़ना चाहती थी तो आपने उस पर अरेस्ट करके सेडेशन लगाया। यहाँ आपके भाई का मामला आ रहा, वो बकवास कर रहा है, पूरे पीस को बर्बाद करना चाहता है, धमकी दे रहा है। 4 तारीख क्या स्टेट को कोई रैंसम पे होल्ड कर सकता है क्या? मैं आपके जरिए उनको कहना चाह रहा हूं कि हमारा मजहब भी ये कहता है, हमारी तहजीब भी ये कहती है कि वो हमारे मेहमान हैं। अगर वो आ रहे हैं यहाँ पर तो आप सभा में जाने से पहले हमें बताइएगा कि हम सब साथ में मिलकर है, तो आप स्टेज पर जाकर आपको जो बोलना है आप बोलिएगा उसमें है? लेकिन हम दुश्मन नहीं है। आपकी अलग राजनीतिक पार्टी का एजेंडा है, हमारी अलग राजनीतिक पार्टी का, दूसरों की राजनीतिक पार्टी का अपना अपना एक एजेंडा है इसके अंदर। तो आपके जरिए मैं आपको ये दावत दे रहा हूँ कि आप आइए, हमारे साथ इफ्तार करिएगा, उसमें हम सब साथ में मिलकर करते हैं। Report brings us to the end of this edition. For all news and updates, do log on to our website. It's indiatoday.in. You can also download the India Today app. News continues on the other side. Thanks for watching. Climate change is real. The long-term shifts in temperatures and weather patterns are constantly taking place, and it will affect you. If you are still not bothered about it, here are some facts which you should know. The world's polar ice caps are shrinking little by little. The Arctic is heating up twice as fast as the rest of the planet, with Greenland's glaciers receding particularly quickly. This process is speeding up all by itself. Melting snow exposes ice underneath, which then absorbs the sun's rays and increases thawing. At the opposite end of the Earth, 90% of the ice shelves on the Antarctic Peninsula are starting to disintegrate. Ice melt is also being observed in mountain ranges like the Himalayas, Kilimanjaro, the Alps, and Pyrenees. In the Andes, glaciers are retreating and risk disappearing altogether. Ocean levels are rising due to the combination of melting ice and warmer sea temperatures, as warm water has a greater volume than cold water. At the current rate, it is predicted that by the year 2100, sea levels will rise between 26 centimeters and a meter.
Islands in the Pacific or Indian Oceans like the Maldives will be submerged. Densely populated, low-lying coastal areas like Bangladesh, Vietnam, the Netherlands, and the east coast of the United States are all under threat. You are watching India Today. Watching India Today. Everyone said the road was impossible. Everyone said not in our lifetime. Everyone said the battle was unwinnable. Only KCR believed and made it possible. And how? There's nobody closer to the battle. Massive shelling. This entire camp was attacked. And now we'll see how fierce the fighting is at the border. Nobody closer to the line of fire. One team has the world riveted. Visiting journalist Satya Rautre in Golvanaka, Geeta Mohan for India Today. Hello, very good afternoon. You're watching Lunch Break. I'm Sneha Mordani. Let's get started with the headlines in this edition first. Political showdown over Rahul Gandhi's viral Kathmandu nightclub party video. Jeering BJP labels the Congress MP party time neta. Congress defense says what's wrong in attending a wedding. Fresh violence in Jodhpur after midnight clashes of a flag and loudspeaker. Miscreants spell stones at cops. Police resort to lathi charge and tear gas. अब वो कोपेनहेगन के लिए निकल रहे हैं। अभी कल ही उनका औपचारिक स्वागत किया गया था और अब इस वक्त वो बर्लिन की सरजमीन से विदाई लेते हुए कोपेनहेगन के लिए निकल रहे हैं
और बहुत अहम उन्होंने अपनी इस यात्रा को ट्वीट में बताया और प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि जो ओलाफ शोल्ज से उनकी मुलाकात रही उसके लिए उन्होंने धन्यवाद दिया और काफ़ी बेहतरीन वो मुलाकात रही है। और यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से कुछ ही देर पहले भी भारतीय समुदाय के साथ प्रधानमंत्री ने मुलाकात की और बहुत गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। अभिवादन करते हुए और नमस्कार की मुद्रा में हाथ जोड़ते हुए प्रधानमंत्री वापस बर्लिन से अब कोपेनहेगन की तरफ 3 देशों की यात्रा, पहली विदेश यात्रा हम मान रहे हैं इस साल की इन 3 देशों की अगर बात की जिसमें पहला पड़ाव था बर्लिन, दूसरा कोपेनहेगन और फिर फ्रांस की यात्रा पर प्रधानमंत्री इस वक्त है और डेनमार्क के लिए रवाना हो रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि वहां पर ग्रीन पार्टनरशिप को लेकर बहुत सी बैठकें होंगी और प्रधानमंत्री की यूरोप यात्रा का दूसरा दिन बर्लिन से विदा लेते हुए अब The Prime Minister on his way to Copenhagen. Remember, this is day 2 of the Prime Minister's 3-day visit to Europe. Yesterday, he was in fact in Germany. Today, he is just leaving Berlin on his way to Copenhagen in Denmark. Tomorrow, he is going to be in France. Today, he meets his Danish counterpart. He is also going to be participating in the Second India-Nordic Summit with the Prime Ministers of several other countries, Denmark, Iceland, Finland, Sweden and Norway. उन्होंने अपनी इस यात्रा को ट्वीट में बताया और प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि जो ओलाफ शोल्ज से उनकी मुलाकात रही। The Prime Minister's trip to Europe, the EMEA in fact has spoken about the various elements of India-Denmark ties, also about the green strategic partnership. Remember, today, as always, the Prime Minister is also going to be engaging with the Indian diaspora in Copenhagen. This is going to be at 8 o'clock Indian Standard Time. During the visit to Denmark, the Prime Minister is also going to be meeting with Queen Margaret II, attend the India-Denmark Business Forum and address the diaspora in the evening. At the Second India-Nordic Summit, the Prime Minister will be talking to the Nordic nations to strengthen the areas of climate change, renewable energy and innovation and technology. He will also be holding bilateral talks with Prime Ministers of other Nordic nations, Iceland, Norway, Finland and Sweden. On the first leg of his visit, the Prime Minister met with the German Chancellor. Yesterday also was crucial from the point of view of him engaging with business honchos. He's also engaged with the diaspora like he always does, and he's going to do so today as well in Copenhagen. The Prime Minister is leaving from Berlin right now for Copenhagen. This is the second leg of his visit. The Prime Minister, remember, is on a 3-day visit to European nations, is scheduled now to reach Denmark, in fact, at around 2 o'clock. He's going to be meeting the Danish Prime Minister. He will also be participating in the Second India-Nordic Summit with the Prime Ministers of Denmark, Iceland, Finland, Sweden and Norway. बहुत गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। अभिवादन करते हुए और नमस्कार की मुद्रा में हाथ जोड़ते हुए प्रधानमंत्री वापस बर्लिन से अब कोपेनहेगन की तरफ 3 देशों की यात्रा। Well, as the Congress party is in complete disarray, Rahul Gandhi was spotted partying in a nightclub in Kathmandu. Many BJP leaders have launched scathing attack at the Congress leader after this video of him partying in a nightclub went viral. The BJP has hit out at Rahul Gandhi for partying while there is a serious crisis not only internally within his party but also in Congress-ruled states like Rajasthan, and this comes after a massive defeat in Punjab. Some BJP leaders have called him a partying time neta. Others have questioned the seriousness of the Congress leader. Rahul Gandhi was in Kathmandu to attend his journalist friend's wedding ceremony that was held on Monday. Meanwhile, Smriti Irani is visiting Rahul Gandhi's constituency of Wayanad in Kerala. Irani, who defeated Rahul Gandhi in his home constituency of Amethi, has now gone to Wayanad on the day when Rahul Gandhi's video of partying in Kathmandu has gone viral.
फैमिली फ़ोटो फ्रेम में जो पार्टी फिक्स है उसके ये पप्पू जी जो हैं वो फुल टाइम पर्यटन करते हैं और पार्ट टाइम जो है वो परिश्रम भी पाखंड से भरा हुआ परिश्रम होता है। और उसके बाद जब ये फुल टाइम पर्यटन से फ्री होते हैं तो जो है वो फेक फैब्रिकेटेड कहानी किस्से गढ़ते हैं, बयानबाजी करते हैं और कैसे जो है वो देश के लोगों को गुमराह किया जाए तो उसकी कोशिश करते हैं। खुद तो देश तो गुमराह होता नहीं, खुद इनकी पार्टी के लोग गुमराह होते हैं कि उनके पप्पू जी क्या रहे हैं। सवाल यह है कि राहुल गांधी कहां पर हैं और किसके साथ हैं। सवाल यह भी है कि क्या चाइना के एजेंटों के साथ राहुल गांधी पार्टी कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी जो ट्वीट करते हैं या संसद में जो भाषण देते हैं चाइना के पक्ष में और भारत की सेना के खिलाफ, क्या वो इन्हीं लोगों के दबाव में दिया जाता है जिनके साथ वो पार्टी करते हुए दिख रहे हैं। देश विरोधी जो एजेंडा राहुल गांधी के द्वारा पुश किया जा रहा है, क्या उसके पीछे चाइना है। अच्छी बात है, पार्टी तो कर ही सकते हैं वो। अब वो किसके साथ पार्टी करें उसमें हम लोगों को क्या एतराज है। हम लोग तो पार्टी का काम करते हैं, वो पार्टी करते हैं, इतना ही अंतर है। पार्टिंग ज्यादा जरूरी है और पार्टी कम, और इसीलिए इनके ही पार्टी के लोग उन्हें कहते हैं कि ये पार्ट टाइम नेता नहीं, ये तो पार्टिंग टाइम नेता है। ये सारी चीजें बताती है कि राहुल गांधी ट्विटर पर प्रोपेगेंडा तो भरपूर करेंगे, परंतु जनता के बीच, प्रजा के बीच रहने का या जनता के बीच रहकर वहां पर उनके बीच गंभीरता से मुद्दों को उठाने का दमखम उनमें नहीं है। The Congress has defended Rahul Gandhi, saying that attending a wedding of a friend is part of culture and not a crime. इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे कि देश के लोग दूध क्यों नहीं खरीद पा रहे, दाल क्यों नहीं खरीद पा रहे, सब्जी क्यों नहीं खरीद पा रहे, शिकंजवी क्यों नहीं पी पा रहे। पर आपको राहुल गांधी जी को गाली देने से फुर्सत मिले, वो प्रधानमंत्री हूं या भाजपा के नेता हूं, आसमान के जहाज से लेकर टेलीफोन की तरंगों से लेकर जमीन के नीचे पाताल में कोयले तक सब मोदी जी ने बोली पर लगा रखा है। और सवाल हमसे पूछ रहे हैं। ऐसा है कि वो पार्टी कब नहीं करते और अच्छी पार्टी करते हैं, तभी उसके बाद ऐसे वक्तव्य आते हैं उनके। Himanshu Mishra is getting asked more details on that story. Himanshu, is expected the BJP is using this as an opportunity to hit out at the Congress leader, the leadership particularly, given the concerns of turmoil within the Congress party. And this is not the first time that the party, the BJP, has questioned Rahul Gandhi's vacation, especially after poll debacles. देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी को लेकर बीजेपी हमलावर है और वो किसी भी तरीके का कोई मौका जो है वो नहीं छोड़ना चाहती है राहुल गांधी पर हमला करने का। और ये एक तरीके से राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार विदेशी दौरों पे रहते हैं उसको लेकर बीजेपी सवाल उठाती ही रही है, लेकिन ये पहला ऐसा वीडियो है जिसके अंदर राहुल गांधी पार्टी करते हुए नजर आ रहे हैं। भले ही वो किसी शादी में गए हों, लेकिन बीजेपी इस मौके को किसी तरीके से छोड़ेगी नहीं और वो हमेशा ये सवाल उठाती है कि राहुल गांधी जो हैं वो पॉलिटिक्स जो है वो पार्ट टाइम की करते हैं। और आप देखिए कि एक तरफ राहुल गांधी जो है काठमांडू में पार्टी के अंदर हैं, तो दूसरी तरफ स्मृति ईरानी जो हैं वो वायनाड चली गई हैं, जो राहुल गांधी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। वो वहाँ पे जो विकास कार्य हो रहे हैं उसको वहाँ पर देखने गई है, उसकी समीक्षा कर रही हैं। वो एक केंद्रीय मंत्री के नाते वहाँ गई हैं क्योंकि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का काम जो है प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों को दिया है, उनकी ड्यूटीज़ लगाई हैं कि उन 120 जिलों के अंदर जाएं जो पिछड़े हुए हैं। तो स्मृति ईरानी वायनाड चली गई हैं और जिन्होंने उनको अमेठी के अंदर हराया था। दूसरी तरफ राहुल गांधी अगर काठमांडू में है तो बीजेपी इसको लेकर कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा जरूर उठाएगी और कांग्रेस की दुखती रग है राहुल गांधी, और शायद इसीलिए जो है उनके पार्टी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि जो असल मुद्दे हैं, जो मूल मुद्दे हैं, उनसे ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी जो है हमेशा राहुल गांधी को टारगेट करती है। बीजेपी को भी यह सूट करता है क्योंकि राहुल गांधी एक सॉफ्ट टारगेट के रूप में जो है हमेशा वो बीजेपी के हाथ उनके कोई ना कोई चीज़ नज़र आ जाती है, जिससे कांग्रेस के ऊपर बीजेपी जो है पलटवार करने से कहीं नहीं चूकती है। तो एक तरीके से ये बीजेपी को एक सॉफ्ट टारगेट मिला है, ना सिर्फ राहुल गांधी पे बल्कि पूरी कांग्रेस को घेरने के लिए।
जी बिल्कुल हिमांशु, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हिमांशु, विद दैट रिपोर्ट ऑन हाउ द बीजेपी ऑब्वियसली इज गोइंग ऑल आउट अगेंस्ट द वायनाड एमपी फॉर दीज वीडियोज दैट हैव नाउ गॉन कंप्लीटली वायरल। Well, after the clashes ahead of Eid in Rajasthan's Jodhpur, fresh violence was reported once again in the city on Eid. After the morning Eid prayers, a mob was seen raising religious slogans and clashed with the cops. The mob also pelted stones at the police at Jalori Gate, compelling them to resort to lathi charge. Cops have also sustained injuries in the violent clashes. Many vehicles were damaged in the violence. In a crackdown on the rioters, 3 people have been arrested. On Monday, a dispute started over the removal of a religious flag and installation of another religious flag at the Jalori Gate intersection. Both groups then resorted to stone pelting and vandalism. The mob also tried to remove loudspeakers from the location. The mob allegedly vandalized property in the area. Many also sustained injuries. Cops reached the spot immediately and used force to control the crowds. They had to resort to lathi charge and use tear gas shells. इन सबको जवाब देना पड़ेगा। मेरे जो चोट लगी है किसी को कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इनको इनके भगवे की फिक्र है। क्यों? इनका माई बाप है या भगवा? हेलो हेलो इन सबको जवाब देना पड़ेगा। मेरे जो चोट लगी है किसी को कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इनको इनके भगवे की फिक्र है। क्यों? इनका माई बाप है या भगवा? हेलो हेलो यहाँ से जालूरगढ़ से पत्थर मारते हुए आ रहे थे। यहाँ पे 2 ट्रैफिक पुलिस खड़ी थी, उनको हमने यहाँ पे बचाया। उनको जो मारने के लिए गए यहाँ पे पत्थर मारते आए तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं, उनको रोकिए। उन्होंने कोई रोका नहीं, सब पत्थर मारते आते रहे और मेरी गाड़ी के ऊपर भी पत्थर मारा। उसके बाद ऊपर से यहाँ पे इस गली के अंदर से एक लेडी खड़ी थी, उसने क्या हो रहा उसने ऊपर से मटका फेंका। जब वो इधर से निकल के पास वाली गली के अंदर गए और यहाँ पे पुलिस वालों को मारा उन्होंने। 2 पुलिस वाले ट्रैफिक वाले खड़े थे, उनको मारा। एक सुनील जी बाफना भी थे, उन्होंने उन दोनों पुलिस वालों को बचाया। जब उन्होंने वापस वहाँ पे टेलीफोन किया कि यहाँ पे पुलिस फोर्स भेजिए, इस तरह से हो रहा है, उसके 3 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद यहाँ पे पुलिस आई। उसके पहले कोई नहीं आया और सब पत्थर मारते हुए निकल सके। हमारे यहाँ पे अभी जो सिचुएशन है अंडर कंट्रोल है। हमने सफिशिएंट जाब्ता लगाया हूँ। अभी हम फ्लैग मार्च के लिए भी निकल रहा हूँ। सभी प्रकार से व्यवस्था है। मुझे लगता है हम इसको ये लॉ एंड ऑर्डर स्थिति जो है बनाए रखने के लिए हम इस पे जो भी केस दर्ज होंगे उस पर हम कार्रवाई करेंगे। जो भी अगर कोई गैरकानूनी काम किया है जो जिस पे कानून के खिलाफ है उसके विरुद्ध कानून के तहत कार्रवाई की जाए। मैं यही अपील करूँगा सभी को शांति बनाए रखें। All right, viewers, let's quickly do all the reactions that are coming in. Rajasthan's Chief Minister Ashok Gehlot has appealed to maintain peace. He's also added that antisocial elements will be dealt with strictly. Listen in. जोधपुर में जो तनाव पैदा हुआ है कल देर रात से वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूँ कि हमारी राजस्थान की और मारवाड़ की परंपरा रही है। सभी समाज के सभी धर्मों के लोग हमेशा हर त्योहारों के अंदर भी प्रेम से भाईचारे से रहते आए हैं। मैं अपील करना चाहूँगा कि तमाम लोग शांति बनाए रखें और तनाव समाप्त करें, क्योंकि ये तनाव हिंसा का माहौल हित में नहीं है जोधपुर वासियों के भी। और जो लोग फिर भी ऐसे कोई तत्व एंटी सोशल एलिमेंट आते हैं तो सख्ती से निपटा जाएगा। ये मैंने पुलिस को निर्देश दे दिए हैं और समय रहते हुए मैं समझता हूँ कि सबको समझना चाहिए कि सब मिलजुल करके जो हमारा भाईचारा बनाए रखें। ये मेरी बहुत मार्मिक अपील है। जो मैंने सुना है कि वहाँ पर कुछ लोगों ने
और कुछ नेताओं को मैं अपील करना चाहूँगा, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी नेता हो, कि जो राजनीति में कार्यकर्ता है या नेता है, जनप्रतिनिधि है किसी पार्टी का हो, पहला उसका धर्म होता है कि कैसे वो अपनी पार्टी के लोगों को, अपने मिलने वाले लोगों को, सबको संदेश करे कि किसी भी कीमत पर झगड़ा नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि इस परंपरा का निर्वहन करने के लिए तमाम पार्टी के लोग एकजुट रहेंगे। ये मैं उनसे अपील करना चाहूँगा। मैं इस वक्त खड़ा हूँ जालोरी गेट चौराहे पर। आप देख सकते हैं कल रात इसी जगह पर एक दो समुदायों का गुट था। उस गुट में झंडा लगाने को लेकर, लाउड स्पीकर को लेकर विवाद हुआ है, जो तनाव इतना बढ़ चुका है कि पत्थरबाजी हुई, लाठीचार्ज हुआ और लाठीचार्ज होने के बाद आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। इस समय मैं इस चौराहे पर खड़ा हूँ, यहाँ पर आरएससी तैनात है और आज सुबह भी इसी जगह पर जैसे ही नमाज अदा करके लोग बाहर निकले तो इन्होंने गाड़ियाँ के कांच फोड़े, तकरीबन 15 से 20 गाड़ियों के कांच फोड़े हैं और इस समय तनाव का माहौल है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पुलिस जाब्ता लगा रखा है, तकरीबन 3 से 4 पुलिस कर्मियों के चोटें भी आई है, लेकिन प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें भेज दिया गया है। इस दंगे पर जहां झंडा लगाया गया था, अब उस पर प्रशासन द्वारा तिरंगा झंडा लगा दिया गया है। अब इस समय पुलिस जाब्ता तैयार है, हर जगह तैनात है। शहर में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। जिस तरीके से कल रात और आज सुबह जो शहर में जिस तरीके से हुड़दंग हुआ है, उसको लेकर तनाव का माहौल है। कमिश्नर, डीसीपी ईस्ट वेस्ट दोनों मौके पर हैं और मोर्चा संभाले हुए हैं। अशोक शर्मा, आज तक, जोधपुर। Our Rajasthan Bureau Chief and my colleague Sharad Kumar is reporting live from Jodhpur. He's joining us live with the latest update. शरद जी, अभी स्थिति क्या है और आप हमें जरा विस्तार में बताएं कि ये पूरा भड़का कैसे? देखिए, अब फिलहाल अभी शांतिपूर्ण स्थिति है, मगर कहते हैं ना, अहले सियासत की सियासत देखिए, ईद से बुतखाना गया, शेख से मस्जिद गई। आज ईद का त्यौहार था, ईद की नमाज पढ़ी गई, लेकिन अब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह वहां जोधपुर की सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। नहीं, सियासत शरद आप ना उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है, उसको जरा ठीक करिएगा। ग्लिच आ रहा है, ऑडियो ग्लिच, अगर मैं आपको बता पाऊँ, आपके माइक में आ रहा है, जरा उसको ठीक करिएगा। हम एक न्यूज ब्रेक में जा रहे हैं, फिर बस आपके पास वापस लौटते हैं, तब तक वो ठीक कर लीजिए। द लेटेस्ट न्यूज ब्रेक। In Jodhpur have recited the Hanuman Chalisa. All of this after Allahu Akbar slogans were chanted last night during communal clashes. Protesters were seen with sticks and stones in their hands. The latest incident comes of protesters chanting Hanuman Chalisa. Tension escalating in Jodhpur. Where exactly has this particular incident taken place? We're going to try and get a larger picture from my colleague Sharad, who is right now joining us from Jodhpur. शरद, अभी स्थिति क्या है? ये जो नया वाकया आया है कि हनुमान चालीसा पढ़ी गई, ये कहाँ पढ़ी गई? ये हनुमान चालीसा वहां पर जालोरी गेट पर गए थे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, वो बैठकर पढ़े हैं। हालांकि उन्होंने भीड़ से कहा कि आप यहां से डिस्पर्स हो जाइए, भीड़ को हटा दिया था, लेकिन वहां पर उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ा। निश्चित देखिए, जिस तरह की वहां पर सियासत हो रही है, हम सुबह से कह रहे हैं, भले ही माहौल शांतिपूर्ण हो, मगर नेताओं के लिए अब चारागाह मिल गया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपनी राजनीति करेंगे। देखिए, घटनाक्रम प्रीति जानना बहुत जरूरी है। इस घटनाक्रम को लेकर के हुआ क्या है? 2-3 दिन पहले परशुराम जयंती मनाई गई, वहां पर भगवा झंडा लगाया गया जालोरी गेट पर। जालोरी गेट वो इलाका है जहां पर मुसलमान रहते हैं और ईद की नमाज पढ़ी जाती है। उसके बाद रात को कल प्रशासन ने तय किया कि चूंकि ईद है तो ईद की वजह से वहां पर मुसलमानों को त्यौहार मनाने दिया जाए। हम भी दिवाली के दिन हमारी सड़कें हिंदू सजाते हैं और 10-10 दिन सजाते हैं, लाउड स्पीकर लगते हैं, सजावटें होती हैं, झंडियाँ लगती हैं। इसी तरह ईद की भी लगाई जाती है, उनकी भी ईद मनती है। अचानक से, जैसा कि वनीता सेठ जो जोधपुर की बीजेपी के मेयर हैं, उनका कहना है कि 2 पत्रकारों का फोन आता है, स्थानीय पत्रकारों का, कि स्वतंत्रता सेनानी की जो मूर्ति थी उसे मुसलमानों ने खराब कर दिया। यह बात जंगल के आग की तरफ फैल जाती है और हिंदू युवक आते हैं और जो मुसलमान झंडा लगाए थे ईद के लिए, वो झंडे
उखाड़ दिए जाते हैं और लाउड स्पीकर निकाल कर हटा दिया जाता है। यह बात जैसे ही मुसलमानों में फैलती है, मुसलमान वहाँ से निकल के आते हैं और दोनों गुट में पथराव शुरू हो जाता है। तो वहाँ पर रात को तो झगड़ा खत्म हो गया, झंडा हटा दिया गया, मुसलमानों के लाउड स्पीकर हटा दिए गए। उसके बाद ये तय किया गया कि वहाँ पर जो ईद की नमाज होगी वो शांतिपूर्ण होगी। मगर ईद जैसे त्यौहार में जहां पर हम लोग भाईचारे के लिए इस त्यौहार को जानते हैं, सुबह जैसे ही नमाज खत्म हो गई मुसलमान युवकों ने पथराव शुरू कर दिया। कल रात की जो तस्वीर वीडियो वायरल हुई थी किस तरह से झंडे उखाड़ कर फेंके गए, ईद के लाउड स्पीकर हटाए गए सड़कों से, उससे वो उद्वेलित थे और उन्होंने पथराव किया। पथराव करने के बाद हिंदुओं के खूब सारी गाड़ियां टूटी, दुकान के शीशे टूटे और कई लोग घायल हुए। इसे लेकर हिंदुओं में आक्रोश हो गया और वो वहां पर जुटने लगे। फिलहाल पुलिस ने समझाइश करके उन्हें रोक दिया है। 15-20 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या ईद जैसे भाईचारे के त्यौहार के दिन भी इस देश में पथराव होगा? क्या मुसलमान युवक ईद के दिन भी पथराव करने के लिए निकलेंगे? और क्या इस देश में मुस्लिम ईद नहीं मना सकते? हम दिवाली के दिन 15 दिन तक सड़कों पर सजावट करते हैं, क्या मुसलमान एक दिन भी ईद की सजावट नहीं कर सकते? ये इस तरह के सवाल हैं जो हम लोगों को खुद से पूछना चाहिए। शरद मैं आपसे एक सवाल फिर पूछूंगी, जरा ये विस्तार में बताइए। ये जो आपने पूरा घटनाक्रम बताया, ये जो फ्लैश पॉइंट अगर हम अंग्रेजी में कहें कि बिल्कुल आग भड़क गई, ये एक जो आप कह रहे हैं एक फोन कॉल किया गया कि एक मूर्ति है उसको वैंडलाइज किया गया, उसको खंडित किया गया, वो ये बात वाकया हुआ था, ये क्या बात थी? देखिए, जैसा कि बीजेपी की जो मेयर हैं वो वनीता सेठ, उनका कहना है कि हम लोगों ने तय किया कि मुसलमानों का एक त्यौहार आता है और यहाँ पर ईद मनाने दिया जाए और वहाँ पर और झंडा लगा दिए थे, लाउड स्पीकर लगा दिए थे। इतने में 2 स्थानीय पत्रकारों का फोन आता है उनके पास कि जो स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति वहाँ पर लगी है उस मूर्ति को काले टेप से बांधा जा रहा है, उसको ढका जा रहा है। यह सुनते ही हिंदू युवक वहाँ पहुँचते हैं और भड़क जाते हैं, दोनों में आपस में बहस होती है। उसके बाद हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी उस वक्त, आधी रात का वक्त था, वो झंडा वहाँ से उखाड़ देते हैं ईद का और लाउड स्पीकर वहाँ से हटा देते हैं। ये खबर फैलती है तो मुसलमान युवक पहुँच जाते हैं और झगड़ा शुरू हो जाता है। मगर सुबह जब वहाँ पहुँचते हैं वो नमाज के लिए तो वहाँ पर भगवा झंडा लगा रहता है। मैं फिर कह रहा हूँ प्रीति, ये प्रशासनिक फेल्योर है, ये अशोक गहलोत का फेल्योर है कि इतना विवाद होने के बाद भी सुबह मुसलमान जब जाते हैं नमाज पढ़ने तो वहाँ भगवा झंडा लगा था। क्या पुलिस सो रही थी? क्या कर रही थी पुलिस की? इतना ज्यादा विवाद होने के बाद भी आप जोधपुर के विधायक हैं, जोधपुर से मुख्यमंत्री हैं और आपका इंटेलिजेंस फेल्योर है। इतना बड़ा विवाद होने के बाद भी वहाँ पर पुलिस नहीं थी और भगवा झंडा लहरा रहा था। आप आनंद फानंद में सरकार पुलिस क्या करती है कि भगवा झंडे को हटाती है, देती है। मगर जो धर्म के बारे में कहा जाता है कि इमोशन पर चलता है और राजस्थान बेरोजगारी में दूसरे नंबर पर है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब बेरोजगार बैठे हुए हैं और जैसे ही इमोशन का ये कारोबार शुरू होता है अपने घर से पत्थर लेके निकल जाते हैं और इसी की परिणति जोधपुर में देखने को मिली है। प्रीति, शरद एक और सवाल पूछूंगी। अभी जैसे नए वाक्य आ रहे हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है, तो अभी स्थिति कंट्रोल में नहीं है, अभी भी लोग भावुक हैं, इमोशंस बहुत हाई हैं। शायद बने रहिए हमारे साथ, हम आपके पास अभी आ रहे हैं जस्ट 2 मिनट में। जो हमारे दूसरे कॉलीग हैं अशोक शर्मा, he has filed this report from ground. Things are nearly not settled there is what we are getting an indication of, but let's cut in and listen. कल शाम को जोधपुर के जालोरी गेट पर हुए 2 समुदायों के झगड़े के बाद शहर के भीतरी इलाके जो रावतों का बास है, इसमें आप देख सकते हैं इधर एक कम्युनिटी के लोग हैं और पुलिस ने इनको रोक रखा है और इधर मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दूसरी तरफ दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं जिनको पुलिस रोक रही है। आपस में पत्थरबाजी भी हो रही है और गाड़ियों की भी तोड़फोड़ की गई है। इस समय गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, पूर्व महापौर घनश्याम ओझा, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, ये सब लोग पुलिस से भारी मशक्कत कर रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस समय मैं बताना चाहूँगा कि ये उपद्रवियों ने एक कार को तोड़ा है। इधर दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं जो वो नारे लगा रहे हैं, इधर अशोक गहलोत के खिलाफ नारे लग रहे हैं। कुल मिलाकर तनाव है, पुलिस का जाब्ता मौजूद है इस समय और लगातार तनाव चल रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि ये दोनों पक्षों में जो समझाइश का भी दौर चल रहा है, लेकिन इस समय तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस का जाब्ता लगा रखा है। मैं इस समय भीतरी शहर इलाके में हूं और यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। अशोक शर्मा।
All right, so this is the current situation right now. Things are really not under control. We're going to try and get a larger picture, but let's try and get some political reactions. I have with me Jyoti Khandelwal. She's joining us on the phone line for more. Ms. Khandelwal, the fact is it's an abject failure of your government when you knew there was tension this morning, even when, the members of the minority community went to read namaz. There were still saffron flags there outside the masjid. देखिए मैं आपको बहुत साफ कहना चाहूंगी प्रीति, मैं आपको बहुत साफ कहना चाहूंगी कि आवाज आ रही है मेरी? आपकी आ रही है मैडम, बोलिए। हाँ, कि देखिए पुलिस प्रशासन की अगर हम बात करें तो उन्होंने सिचुएशन को अंडर कंट्रोल किया है, करने की कोशिश की। रात को भी घटना हुई, उसके बाद भी उन्होंने स्थिति को कंट्रोल किया, जिससे इजीली नमाज जो है वो वहां पर अदा हो सके और जो ईद जो एक भाईचारे का त्योहार है, एक बड़ा त्योहार है, उसे मनाया जा सके। अब यहाँ पर एकदम से ये कह देना कि मुस्लिम लोगों ने पथराव किया था या हिंदू लोगों ने पथराव किया था या उनमें आपस में झगड़ा हुआ, इस तरह के लाठीचार्ज उन पर किया गया, मैं ऐसी बातों को बिल्कुल सिरे से नकारती हूँ। कुछ उपद्रवी जो यूं कहें कि असामाजिक तत्व होते हैं, उनको शायद ये भाईचारा, ये जो स्थितियां जो सब कुछ कंट्रोल में आई वो नहीं सुहाई और उन्होंने ये कोशिश की कि वापस से सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की जाए। लेकिन पुलिस ने बहुत ज्यादा धैर्य से काम लिया और उन्होंने दोनों पक्षों को उस समय भी, जब पथराव की घटना हुई उस समय भी रोका, हल्का उन्होंने लाठीचार्ज करके लोगों को, भीड़ को जो है इधर उधर किया और अभी भी वो यही कह रहे हैं। We seem to have lost Ms. Khandelwal. We're going to try and get her back. She's back with us, I believe. Khandelwal जी, ज्योति जी, बात के आप कह रही हैं कि जो एलिमेंट्स हैं उन्होंने किया, पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी ज्योति खंडेलवाल जी। सरकार तो आपकी है, पुलिस भी आपकी है, चाहे ये अनवांटेड एलिमेंट्स, फ्रिंज एलिमेंट्स इन्होंने आके झंडे लगा दिए, क्या आपकी पुलिस को पता नहीं था कि निकाल दें, आज ईद है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि राजस्थान में ऐसी सिचुएशंस भी होती है जहां हम एक दूसरे के धर्म का सम्मान नहीं करते, एक दूसरे के बहुत सौहार्द और भाईचारे पूर्ण व्यवहार से हम रहते भी हैं। मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है, यूनियन मिनिस्टर जो बहुत जिम्मेदार पद पर हैं, ज्योति जी, 1 महीने पहले करौली में हुआ है, जाते हैं 1 महीने पहले करौली में हुआ है, फैलाने की कोशिश करते हैं। ज्योति जी, 1 महीने पहले करौली में हुआ है, राजस्थान में हुआ है, जहां पे आपकी सरकार है। यूनियन मिनिस्टर की इसमें क्या बनती है? नहीं, आज अगर आपकी घटना देखेंगे तो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, राजस्थान के हर एक नागरिक की, देश के हर एक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि तनाव वाली स्थिति को कम करने की कोशिश करें और भाईचारा और सौहार्द की स्थिति को बनाने की कोशिश करें। लेकिन आपने देखा कि मौके पर पहुंच करके उन्होंने इस स्थिति को कंट्रोल में, जो कंट्रोल्ड स्थिति थी बल्कि उसको भी बिगाड़ने का काम जो है वो वहां पर किया और वहां पर जो है ये और ज्यादा तनाव जो है वो उसको दोबारा पैदा करने की कोशिश की। तो समन्वय, सौहार्द बनाना सबकी जिम्मेदारी होती है, हर एक जने की जिम्मेदारी होती है, हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है और वही जिम्मेदारी निभाई जानी चाहिए। और मैं तो फिर अगर ऐसी बातें हैं तो फिर अलवर की घटना को क्यों भूल जाते हैं, जहां पर बीजेपी का ही जो है अध्यक्ष था, वहां पे 35 में 34 पार्षद बीजेपी के थे और वहां पर भी आप मंदिर तोड़ने की घटना, खुद प्रस्ताव पास करते हैं, खुद मंदिर तोड़ने की घटना को वहां पर करते हैं, आपकी सहमति होती है, फिर खुद ही वहां पर आकर के विरोध भी कर देते हैं, खुद ही वहां पर आकर के उसको माहौल को। ज्योति खंडेलवाल जी, मैडम देखिए, बात एक बात तय है, सरकार आपकी है। अगर आप कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये सारी चीजें भड़का रही है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ये भड़के ना, तो अब आप बीजेपी को तो इस पे दोष नहीं दे सकते क्योंकि अभी सरकार आपकी है, पुलिस आपके हाथ में है। बिल्कुल, निश्चित रूप से हम हमारी जिम्मेदारी से कभी पीछे हटते भी नहीं है और आपने खुद ने भी अभी, आपने शायद दिखाई भी होगी अपने चैनल पर, माननीय मुख्यमंत्री जी की अपील को भी दिखाया होगा। उन्होंने अपना जन्मदिन का जो लोग जो सेलिब्रेशन कर रहे थे उसको रोका भी, उन्होंने रिव्यू मीटिंग भी ली, वहां से हर एक व्यक्ति से उन्होंने वहां पर चर्चा भी की और कैसे स्थिति को अंडर कंट्रोल किया जा सकता है इस बारे में भी उन्होंने बात की और साथ ही साथ लोगों से भी अपील की। और उन्हें हर एक राजनीतिक दल, बिना किसी पार्टी के, उन्हें हर एक राजनीतिक दल के प्रतिनिधि से यही बात कही कि ये समय, आज का दिन त्योहार का दिन है, चाहे वो परशुराम जयंती हो, चाहे वो ईद हो, अक्षय तृतीया हो, ये आज त्योहार का दिन है, इसे हमें सौहार्दपूर्ण भाईचारे तरीके से बनाना चाहिए और हमको सबको अपने संयम में रहते हुए हमारी राजस्थान की जो परंपरा है उसके अनुरूप इस त्योहार को मनाया जाना चाहिए, तनाव को कम किया जाना चाहिए। तो राजस्थान की न तो सरकार, न तो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, न प्रशासन ये चाहता है कि यहाँ पे इस तरह की घटनाएं हों, लेकिन चाहता कौन है ये सब जानते हैं। लेकिन बीजेपी के पास चूंकि कोई मुद्दा नहीं होता, यहाँ पे बजट बहुत अच्छा आता है, बजट पे वो कोई सवाल खड़े नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे जैसे निरोगी राजस्थान की अभी तो खंडेलवाल जी शुक्रिया कि आप मुझसे जुड़ी हैं, पर आपको भी पता है सवाल
आज सिर्फ आपकी सरकार से किए जाएंगे, चाहे जो भी हो। पुलिस आपकी है, सरकार आपकी है। अगर एक बिल्कुल कम्युनल फ्लेयर अप अगर हो रहा है, बार बार आप ही की स्टेट में हो रहा है, कंट्रोल आप ही को करना है। बहुत शुक्रिया मैडम हमसे बात करने का। जी, आपको उतनी केंद्र के भी मंत्री से भी आपको सवाल करने चाहिए कि आप वहां पर सौहार्द बनाने गए थे, भाईचारा मनाने गए थे, या तनाव को और मैडम सवाल हमारा जो जॉब कहते हैं ना, सवाल दोनों पक्ष से करना है, हम दोनों पक्ष से करेंगे, आपसे कर रहे हैं और सरकार आपकी है। शुक्रिया खंडेलवाल जी, आप हमसे जुड़ी। आई वांट टू गो बैक राइट नाउ टू शरद कुमार एंड आई वांट टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज द सिचुएशन राइट नाउ ऑन ग्राउंड। शरद, इस वक्त स्थिति क्या है? क्या अभी थम गई हैं चीजें, या अभी भी जो इमोशंस कह रहे हैं काफी हाई हैं, भड़का हुआ माहौल है, हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है? देखिए, इमोशन हाई है लेकिन ग्राउंड पर स्थिति शांतिपूर्ण है। इमोशन इसलिए हाई है कि सुबह सुबह जिस तरह से पथराव हुआ है वो निश्चित रूप से हिंदुओं की गाड़ियों पे हुआ है, दुकानों पर हुआ है, और बीजेपी उसको प्ले अप करेगी। आपको पता है क्योंकि चुनाव भी आ रहे हैं और वहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इलाका है और बीजेपी वो काम कर भी रही है। दूसरी तरफ आप जो मुसलमान हैं उन्हें लगता है कि एक हमारा ईद आता है, साल भर इसकी हम तैयारी करते हैं और आज हमें ईद नहीं मनाने दी गई। झंडे उखाड़ दिए गए, लाउड स्पीकर हटा दिए गए, जिस तरह से सड़कों पर जश्न का नज़ारा होता है ईद का, वो आज नहीं दिखा। तो ये दोनों तरफ से इमोशन हाई हैं। लेकिन फिलहाल ये जो आप कह रही थी, ये बिल्कुल प्रशासनिक फेल्योर है, एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर है ये, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। रात को जब ये घटना घटी है उसके बाद भी सुबह भगवा झंडा लग गया और प्रशासन को पता नहीं। उसके बाद पथराव हो जाता है और प्रशासन वहां मौके पर मौजूद नहीं रहता। इंटेलिजेंस फेल्योर भी है। आप किसके साथ मिलकर काम कर रहे थे, क्यों काम कर रहे थे? जिस तरह से झंडे उखाड़े जा रहे हैं ईद के और लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं, वो वीडियो वायरल। शरद, आपके वीडियो लिंक में एक दिक्कत है, उसको हम अभी थोड़ा साफ उसको ठीक करिएगा, वापस आपके पास आते हैं। There's a problem with my colleague Sharad's video link. We're going to try and rectify that and come back to our viewers for more. But these are the 6 images that we're giving out right now. The fact is, Rajasthan's Jodhpur is right now on the edge, tense. There is no end to politics. All of the politics broke out after communal clashes in Rajasthan's Jodhpur on the occasion of Eid. BJP has slammed Ashok Gehlot government for the clashes that broke out between two communities on Eid. Irresponsible is what the BJP calls the Jodhpur government. The Jodhpur mayor called out on Congress government, accusing them of fueling the clashes. Congress netas, while speaking on the communal clashes, have called it a small issue and said that it could be easily resolved. Meanwhile, Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot has called a high-level meet to take stock of the law and order and has appealed to maintain peace in the violence-hit area. What is also important to understand here, viewers, is that Ashok Gehlot represents Jodhpur. हिंसा करवानी थी, धारा 144 लगाई, जहाँ जहाँ रामनवमी के रथ यात्रा निकल रही थी, एक ही समुदाय के ऊपर धारा 144 लगाई जा रही है। दूसरी जगह रोज़े बनाए जा रहे हैं, उसके लिए एक अलग से राजस्थान सरकार विशेष आदेश निकालती है कि बिजली की कटौती कतई नहीं होगी। तो उस समय रामनवमी भी थी, लेकिन सिर्फ एक खास समुदाय के लिए ही कहा गया कि बिजली की कटौती यहाँ पर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति है। राजस्थान को ये तालिबान बनाने पर आमदा हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री के गृह जिले जोधपुर में जिस प्रकार से जालोरी गेट में सांप्रदायिक हिंसा और तनाव फैला और उसको फैलाने दिया गया, इसके पीछे का कारण केवल इंटेलिजेंस फेलियर है या तुष्टीकरण की राजनीति में लीन हुई सरकार का संपूर्ण फेलियर है? ऐसी घटनाएं कब तक चलती रहेगी राजस्थान में? इसका जवाब भी अशोक गहलोत की सरकार को और कांग्रेस पार्टी को देना होगा। वहाँ पर इस तरह के जो क्रिमिनल एलिमेंट हैं, जो क्रिमिनल एलिमेंट की कम्युनलिज्म का झंडा लेकर के और अपने क्राइम को करते हैं, उनको प्रश्रय मिलता है, उनको संरक्षण मिलता है, और उसका नतीजा है कि वो एक के बाद एक इस तरह की घटनाओं को बेशर्मी और बेदर्दी के साथ कर पाते हैं। इसलिए हमारा तो उनको बिना मांगी सलाह यही है कि सेकुलरिज्म जो है वो सियासी वोटों का सौदा नहीं होना चाहिए, बल्कि संवैधानिक संकल्प का मसौदा होना चाहिए। और जब तक आप सेकुलरिज्म को संवैधानिक संकल्प नहीं मानेंगे और सियासी वोटों का सौदा मान के काम करेंगे,
तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी और आप मूक दर्शक बने हुए देखते रहेंगे। ये जो घटना की जा रही है लगातार और राजस्थान का माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें सबसे बड़ी विफलता कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण की नीति, सोची समझी साजिश के तहत ही मैं फिर आरोप लगा रहा हूँ कि तुष्टीकरण की नीति के कारण ही सरकारें न्याय नहीं कर पाती। अशोक गहलोत जी से कांग्रेस के शासन में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है और खास तौर पर जो अपीजमेंट की राजनीति इन्होंने शुरू की है, उसी का नतीजा है कि इस तरीके से धर्म के नाम पर या किसी भी समारोह के नाम पर स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति पे झंडा लगाना और परशुराम जी के झंडे उतारना, उसके बाद लगातार जिस तरीके से करौली की घटनाओं के बाद जो घटनाएं सीक्वेंस से हुई, एक तरफ तो सरकार बैन करती है रामनवमी के जुलूस को, 144 इम्पोज करती है 17 जिलों में और लोगों पर 107 और 16 की कार्रवाई करती है, और दूसरी तरफ PFI को परमिशन देती है। तो ये अपीजमेंट के कारण ये हौसला इस तरीके के जो अराजक तत्व उनका बढ़ा है। Their agenda is to put religious and communal divide in the forefront so that the issues of inflation, of unemployment, of progress, of development get relegated to the dustbin. They want that Hindus and Muslims should fight so that nobody asks Modi ji, where are the 15 lakhs in every account that you promised? They want Hindus and Muslims to fight in election going states so that people don't question them on their promise of 2 crore jobs a year. जोधपुर में स्थिति कंट्रोल में है और जो जिस तरह से दंगा हुआ ये तय कर लेना चाहिए, चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कांग्रेस बीजेपी किसी का कार्यकर्ता हो, किसी जाति धर्म का व्यक्ति हो, दंगा फैलाने का, दंगा भड़काने का, दंगा करने का किसी को हक नहीं है। स्थिति कंट्रोल में है, सख्त कार्रवाई करेंगे। पुलिस वहाँ पर मौजूद है और किसी भी कीमत पर किसी भी दंगाई को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी दंगा फैलाने का हक नहीं है। आमने सामने लोग हुए, इसमें कोई दोहराई नहीं है, दंगा भड़का है। और जिन लोगों ने ये कार्रवाई की है, जो जिस तरह से प्लान वे में आज आखाती है, हिंदुओं का बड़ा त्योहार है, ईद भी है, मुसलमानों का बड़ा त्योहार है, सबकी जिम्मेदारी है अमन चैन और भाईचारे से रहने की। देखिए, कहीं भी दंगा नहीं होना चाहिए और दंगे को रोकने के लिए मेरी अपील है, वहाँ के जितने भी लोग हैं, इससे कुछ लोगों को लाभ हो सकता है, लेकिन दंगे से समाज का, प्रदेश का और देश का बड़ा नुकसान होता है। और हमारे देश की संस्कृति रही, हम मिलके रहते हैं और ईद के दिन ये त्योहार ऐसा है, गले मिलने का है, एक दूसरे के करीब आने का, एक दूसरे से बातचीत का है। इसलिए जो दंगा हुआ है मैं उसकी निंदा करता हूँ। वहाँ पे किसी ने दंगा नहीं भड़काया था। जो पत्रकार थे वहाँ पे वो निकल रहे थे, उस समय रात को भजन संध्या थी। वो अंदर से जब बाहर आए हैं, उससे पहले दोपहर में पुलिस वालों ने उनको कहा है कि यहाँ पे परशुराम जयंती के और वो है जालोरी गेट चौराहे पे आपने भगवे झंडे सजाए हुए हैं। उन्होंने सारे उतारे हैं कि कल नमाज का दिन भी है और ईद भी है, इसलिए ये झंडे हटा देते हैं। और वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी दंगे भड़का रही थी, उनको शर्म आनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने वो झंडे दोपहर में हटा दिए ताकि चौराहे पे जो है वो कोई ऐसी बात नहीं रहे। Now, you know, there are multiple theories that are coming out, but what we can confirm right now that the city of Jodhpur is on edge. This is an incident that has followed very closely on 2 back-to-back incidents that has led to a communal minefield, in Rajasthan, which is in the beginning, the first Karoli, followed by Alwar, and now in Jodhpur. Jodhpur, once again, is also a constituency that is represented by none other but Ashok Gehlot himself. He's got a stronghold on the entire area, and the buck today stops with him. How is it that saffron flags remained on the area where the minority community was coming to read the namaz? It wasn't taken away. It is a failure of the law and order situation where Jodhpur is concerned, where 2 communities clashed last night, and this morning, of course, stone pelting. Things haven't quite ebbed right now, is what we're getting to understand. Fresh incidents of heightened emotions, people reading out the Hanuman Chalisa, all of that right now in Jodhpur. And uneasy, calm, or on the edge, that's what the city of Jodhpur is right now, where Rajasthan is concerned. I'm going to slip into a quick break. You do stay with me on the other side. The loudspeaker debate gets louder. Owaisi slams Raj Thakre over his ultimatum. That's coming up next. Stay with us.
Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com or call 9999892171. NASA beamed doctors into the middle of the International Space Station while they were physically on Earth. This might seem like a scene from a sci-fi movie, but this technology now exists. NASA tried this new method to ensure medical help is provided to people in adverse situations. This is being called the first holoportation handshake from Earth in space. So what is holoportation and how does it work? According to NASA, it is a capture technology that allows high-quality 3D models of people to be reconstructed, compressed and transmitted live anywhere in real time. When these images are combined with mixed reality displays such as HoloLens, it allows users to see, hear and interact with remote participants in 3D. The technology gives a feeling as if the person is right in front of you. NASA says that the technology could be highly effective in deep space where communication lag is a major problem due to the immense distance between Earth and other objects. Using the Microsoft HoloLens Kinect camera with custom software, NASA flight surgeon Dr. Joseph Schmid and their teams were holoported. They interacted with astronaut Thomas Pesquet in a two-way conversation. Holoportation is not new. It has been in use since at least 2016 by Microsoft. But this was the first use in such an extreme and remote environment as space. You are watching India Today. Everyone said the road was impossible. Everyone said not in our lifetime. Everyone said the battle was unwinnable. Only KCR believed and made it possible. And how?
Welcome back. Notices now have been served under Section 149 to MNS leaders today. The notice mentions Raj Thakrae's call to MNS workers for putting up loudspeakers in front of masjids and recite Hanuman Chalisa if they do not take down loudspeakers for Azan. The notice also mentions that Raj Thakre threatened Maharashtra government with respect to loudspeakers on masjids. All right, viewers, that's the latest news that we are breaking right now. Trouble mounting for MNS Chief Raj Thakre. He'd given the ultimatum to Uddhav Thakre, the Chief Minister of Maharashtra, and now he's been served with a notice a day before the ultimatum. On the other hand, Asauddin Owaisi has asked for the arrest of Raj Thakre, stating that this is the man that incited violence in his Aurangabad rally. The notice is to Raj Thakre and other MNS leaders for inciting violence. I want to cut across to my colleague Paras, who's going to give us more details of this notice that's coming out. Paras, can you get us more details? What is this notice? What does it entail? Yeah, the notice have been served to Raj Thakre. It's Section 149 has been given to Raj Thakre. The notice has been served a little while ago, and it states that Raj Thakre has told his members to put all the loudspeaker down from mosque, and he's trying to violate the rules. He's trying to make a law and order situation in Maharashtra, and this is the major thing which has been done by police right now, and they had issued Section 145 notice to Raj Thakre a few moments ago. All the situations should be okay. So that's why 149 have been served to Raj Thakre a few moments ago. All right, appreciate you joining us with that quick update. Meanwhile, the debate over loudspeakers is only getting louder. Maharashtra MNS Chief Raj Thakre has reiterated his fourth May ultimatum to remove loudspeakers, threatening to play Hanuman Chalisa outside mosques on double the volume if his demand is not met. Owaisi has slammed both Shiv Sena and the BJP over Raj Thakre's comment, claiming that the government cannot take action against his own brother. Owaisi also claimed that it was all part of BJP RSS plan. Now the loudspeaker debate has reached the national capital. Delhi BJP MP Parvesh Singh wrote to the governor demanding Uttar Pradesh-like crackdown on loudspeakers. The leader said that the Supreme Court order on loudspeakers is not being strictly followed in Delhi. He claimed that Uttar Pradesh-like treatment is required for the law to take its own course. हमने संपूर्ण महाराष्ट्र स्टेट के पुलिस फोर्स को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि कौनसी ही परिस्थिति में कायदा व सुव्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए, और इसके लिए जो भी आपको हमें जो स्टेप्स लेने हैं हम जरूर लेंगे। जो कायदा व सुव्यवस्था खराब करने की कोशिश करेगा उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जब वहां की मुकामी पुलिस ने उनको कंडीशन के साथ परमिशन दिया है तो उनको चाहिए कि फौरन सोमोटो एक्शन ले कि एक बार हो जाने दो। क्या हो जाने दो? क्या एक शख्स पूरे स्टेट के पीस को दांव पे लगाएगा? क्या एक शख्स थ्रेटन करेगा औरंगाबाद की हिंदू मुस्लिम दलित के भाईचारगी को? तो पुलिस क्या कर रही है? और क्या ये क्या मतलब है कि एक बार हो जाने दो? क्या हो जाने दो? क्या सो मोटो एक्शन पुलिस नहीं लेगी? लगाइए 153 295 और अरेस्ट करके जेल को भिजाइए, क्योंकि शिवसेना की सरकार है और वो अपने भाई के खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। वही एक नवनीत राणा अगर उद्धव ठाकरे घर पर जाकर कुछ पढ़ना चाहती थी तो आपने उसको अरेस्ट करके सेडेशन लगाया। यहाँ आपके भाई का मामला आ रहा, वो बकवास कर रहा है, पूरे पीस को बर्बाद करना चाहता है, धमकी दे रहा है। 4 तारीख क्या स्टेट को कोई रैंसम पे होल्ड कर सकता है क्या? मैं आपके जरिए उनको कहना चाह रहा हूं कि हमारा मजहब भी ये कहता है, हमारी तहजीब भी ये कहती है कि वो हमारे मेहमान हैं। अगर वो आ रहे हैं यहाँ पर तो आप सभा में जाने से पहले हमें बताइएगा कि हम सब साथ में मिलकर है, तो आप स्टेज पर जाकर आपको जो बोलना है आप बोलिएगा उसमें है? लेकिन हम दुश्मन नहीं है। आपकी अलग राजनीतिक पार्टी का एजेंडा है, हमारी अलग राजनीतिक पार्टी का, दूसरों की राजनीतिक पार्टी का अपना अपना एक एजेंडा है इसके अंदर। तो आपके जरिए मैं आपको ये दावत दे रहा हूँ कि आप आइए, हमारे साथ इफ्तार करिएगा, उसमें हम सब साथ में मिलकर करते हैं। Meanwhile, the Home Minister Amit Shah is in Karnataka at a time when there is speculation about leadership changes and cabinet rejigs. Chief Minister Basavaraj Bommai is to host a dinner for the Home Minister at his residence.
and that is going to be a crucial one. Shah and Bommai are going to have a one-on-one discussion on the political pot which is boiling in Karnataka, especially with one more year to go to the assembly elections. A month back, during his last visit, Shah attended the party core committee meet and set a target of 150 seats in Karnataka elections of 2023. Shah is on an official visit to the state where he paid tribute to the 12th century social reformer and Lingayat saint Basavana on the occasion of Basava Jayanti, and later will take part in the valedictory function of Khelo India University Games. Meanwhile, gang war inside a bar in Bannur near Mysuru. Due to an old rivalry, a gang of 4 to 5 members attacked 29-year-old Dayanand with beer bottles and a machete on Monday. The whole incident was caught on CCTV camera. FIR has been registered at Bannur police station. Speaking to India Today, the superintendent of Mysuru district, R. Chetana, said 2 accused have been arrested so far. They had old rivalry with the victim Dayanand, who is also a history sheeter and hails from Bannur. Dayanand has mentioned mainly 3 names and others in the complaint. Rest of the accused are absconding. More probe is going on. I'm going into a quick break. Stay with us. Updates continue on the other side. When it's the world's biggest news story, there's only one gold standard of journalism. When it's the world's biggest news story, there's only one gold standard of journalism. You are watching India Today.จุดประสงค์ตอนแรกมันไม่ได้คิดอะไรกันคือมันเริ่มจากอยากทำแล้วก็ถ่ายด้วยมือถือพอถ่ายแล้วภาพมันออกไปเนี่ยมันเริ่มมีคนสนใจเข้ามาก็มีการสร้างกลุ่มคนก็เริ่มเฮ้ยผมอยากต่อยแบบนี้บ้างแบบนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มจากตรงนี้ถ้าในเรื่องของพรบมวยคือเราไม่ได้เข้าพรบมวยเราไม่ได้จัดมวยเถื่อนผมตอนนี้คือขึ้นอยู่กับกรมปกครอง
ซึ่งเป็นกิจกรรมไฟท์คลับเราไม่ได้เป็นมวยเราไม่ได้เป็นกีฬาเราเป็นกิจกรรมหนึ่งซึ่งมีสมาคมของเราสมาคมไฟท์คลับไทยแลนด์ You are watching India Today. Everyone said the road was impossible. Everyone said not in our lifetime. Everyone said the battle was unwinnable. Only KCR believed and made it possible. And how? So sorry. हाँ जी नमस्कार जी। पॉलिटिक्स में कहता हूँ कि आम आदमी हूँ, गुजराती माँ बोले सामान्य मानस छू छू छू, बंगाली में कहते हैं अमी एकदम साधारण मानुष, और पंजाबी विच कहंदे ने पचक दो तुहाडे बिन नहीं रहना, तुहानू सब फ्री देना, तुहाडे वर्गा कोई नहीं हो साथियों। हम तुमसे इतना सेंगे, तुमको फ्री में बिजली देंगे, मुफ्त में पानी लाएंगे, बैठ के ढोकला खाएंगे। हम तुमसे इतना सेंगे, चुनाव के दिन है आएंगे, बैठ के फाफड़ा खाएंगे, गुजरात में कुर्सी पाएंगे। अंग्रेजी में कहते हैं कि कॉमन मैन हूँ, गुजराती माँ बोले सामान्य मानस छू, बंगाली में कहते हैं अमी एकदम साधारण मानुष, और पंजाबी विच कहंदे ने पचक दो तुहाडे बिन नहीं रहना, तुहानू सब फ्री देना, तुहाडे वर्गा कोई नहीं ओ साथियों। गुजराती बंगाली पंजाबी के बाद कन्नड़ में भी सीख रहा हूँ जी, जल्दी बताऊंगा क्या कहते हैं। नमस्कार जी। Presented by Berger Easy Clean. No dog, no dhabba, only beautiful walls. Good afternoon. You're watching news at 2 p.m. I'm Preeti Chaudhary. These are the headlines. It's a political showdown over Rahul Gandhi's viral Kathmandu nightclub video. Jeering BJP labels Congress MP party time neta. Congress hits back, says what's wrong in attending a wedding.
Fresh violence in Jodhpur after midnight clashes over flag and loudspeaker. Miscreants pelt stones at cops. Police resort to lathi charge and tear gas. Gehlot government under fire over Jodhpur clashes. BJP blames Rajasthan government for the violence, calls it choti si baat. Loudspeaker debate gets louder. Owaisi slams Raj Thackeray over his ultimatum, demands the arrest of MNS chief. BJP MP Parvesh Verma demands UP loudspeaker model in Delhi. Home Minister Amit Shah in Karnataka amidst cabinet rejig speculations ahead of the crucial polls in 2023. CM Bommai will hold a dinner with Shah. After a massive outreach in Berlin, Prime Minister Modi heads to Denmark on day 2 of his European visit. He will meet prime ministers of all Nordic nations. All right, viewers, this is a time when the Congress party is in literal freefall. Rahul Gandhi was now spotted partying in a club in Kathmandu. Various BJP leaders have now launched a scathing attack at the Congress leader after his video of partying was posted by the social media chief of the Bharatiya Janata Party, Amit Malviya. BJP went after Rahul Gandhi for partying while there is a serious crisis not only internally in his party but also in Congress-ruled states like Rajasthan, and comes after a defeat in Punjab. Some BJP leaders called him partying time Neta, while others have questioned the seriousness of the Congress leader. Rahul Gandhi was in Kathmandu to attend his journalist friend's wedding ceremony that was held on Monday. Meanwhile, Smriti Irani is visiting Rahul's turf in Wayanad. Smriti, who defeated Rahul in Amethi, has gone to Wayanad on the day when Rahul's video of partying in Kathmandu has gone viral. राहुल गांधी जी हैं, इनका दिक्कत क्या है? ये फुल टाइम पर्यटन और पार्ट टाइम जो है वो पॉलिटिकल पाखंड। तो ये फुल टाइम जो पर्यटन करता हो, पार्ट टाइम पॉलिटिकल पाखंड में लगाओ, परिश्रम में लगाओ, तो परिश्रम में भी ये सब का दिखाई पड़ता है उनका। तो जब तक ये फैमिली फ़ोटो फ्रेम में फिक्स ये पार्टी और पप्पू के चोचले और परिवार के घोंसले में ऐसी सिमटी रहेगी, तभी इस तरह का उसकी जगहसाई होती रहेगी। सवाल ये है कि राहुल गांधी कहां पर हैं और किसके साथ हैं। सवाल ये भी है कि क्या चाइना के एजेंटों के साथ राहुल गांधी पार्टी कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी जो ट्वीट करते हैं या संसद में जो भाषण देते हैं चाइना के पक्ष में और भारत की सेना के खिलाफ, क्या वो इन्हीं लोगों के दबाव में दिया जाता है जिनके साथ वो पार्टी करते हुए दिख रहे हैं? देश विरोधी जो एजेंडा राहुल गांधी के द्वारा पुश किया जा रहा है, क्या उसके पीछे चाइना है? अच्छी बात है, पार्टी तो कर ही सकते हैं वो। अब वो किसके साथ पार्टी करें उसमें हम लोगों को क्या एतराज है? हम लोग तो पार्टी का काम करते हैं, वो पार्टी करते हैं, इतना ही अंतर है। पार्टिंग ज्यादा जरूरी है और पार्टी कम, और इसीलिए इनके ही पार्टी के लोग उन्हें कहते हैं कि ये पार्ट टाइम नेता नहीं, ये तो पार्टिंग टाइम नेता है। ये सारी चीजें बताती है कि राहुल गांधी ट्विटर पर प्रोपेगेंडा तो भरपूर करेंगे, परंतु जनता के बीच, प्रजा के बीच रहने का या जनता के बीच रहकर वहां पर उनके बीच गंभीरता से मुद्दों को उठाने का दमखम उनमें नहीं है। देश में दो मॉडल हैं, एक प्रधानमंत्री मोदी जी सेवा भाव से 365 दिन 24 घंटे देश की सेवा करना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और दूसरी तरफ पार्टी करना जो राहुल गांधी जी का या विदेश भाग जाने का जो एक उनकी राजनीति है। तो ये तो कांग्रेस पार्टी इस पे जवाब दे। Meanwhile, in the midst of all of this, the Congress has come out and said that Rahul Gandhi was attending a wedding of a friend, and that is part of the Indian culture. And is it a crime to go and attend a friend's wedding? Many of you do it as well. इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे कि देश के लोग दूध क्यों नहीं खरीद पा रहे, दाल क्यों नहीं खरीद पा रहे, सब्जी क्यों नहीं खरीद पा रहे, शिकंजवी क्यों नहीं पी पा रहे? पर आपको राहुल गांधी जी को गाली देने से फुर्सत मिले, वो प्रधानमंत्री हूं या भाजपा के नेता हूं, आसमान के जहाज से लेकर, टेलीफोन की तरंगों से लेकर,
जमीन के नीचे पाताल में कोयले तक सब मोदी जी ने बोली पर लगा रखा है और सवाल हमसे पूछ रहे हैं। Mr. Gandhi is on a private visit to attend a marriage in Kathmandu, and there is a media person's correspondent's wedding. Therefore, he has been there to attend that marriage. What is the harm in attending a marriage? The problem with these people is that they see everything in a different prism. It's very sad that BJP, a national party, a governing party, is doing these kind of cheap things, and ministers are also jumping into it. ऐसा है कि वो पार्टी कब नहीं करते और अच्छी पार्टी करते हैं, तभी उसके बाद ऐसे वक्तव्य आते हैं उनके। It is none of our business whether Rahul Gandhi wants to party at a nightclub or holiday in Bangkok or travel to Italy, which he does quite routinely. The question here is that every time there's a problem, he's missing. When Mumbai was under attack, he was at a nightclub. When his party is exploding and there are several instances of communal flare-up in the states governed by the Congress, he's attending a wedding party, as you tell me, in a nightclub. So there is something amiss. His priorities are completely out of sync. You're not surprised the way Rahul Gandhi is behaving. He's partying around, he's having lots of fun, knowing very well that what is the internal condition of Congress. His mother is so much worried. She's trying to reach some political strategists. She's trying to do some brainstorming. But here, the son is playing around. He's partying. So this shows that how serious he is, how dedicated he is towards his political party, towards his constituents. So this is the reality of the Congress party. I mean, senior leaders, they are, partying around. They do not have any concern. But Ma Sonia Gandhi has got all the love for her putra, Rahul Gandhi. And for that, if Indian National Congress Party, it sees the doomsday, she will not mind about that. All right, viewers, let's cut across to the latest news break that is coming in from Jodhpur. Curfew has been imposed in 10 police stations area of Jodhpur from the 3rd of May 1 p.m. to the 4th of May midnight. Well, curfew was only on till 6 p.m. this evening, but now it's been extended for another over 24 hours. Curfew is on now across the city of Jodhpur, where 10 police stations are concerned, and it will carry on till the 4th of May 1 p.m. On the other hand, tension continues to mount in Jodhpur after violent protests broke out between two communities after the fresh clashes on the morning of Eid and Allahu Akbar chants. Angry protesters were seen reciting the Hanuman Chalisa as a counter. A huge mob armed with lathis and sticks recited the Chalisa and raised slogans. This comes after fresh escalation and morning violence after overnight clashes of removal of religious flags on the eve of Eid. In the morning, a violent mob clashed with cops assaulting them, vandalized vehicles and torched bikes. Many cops also sustained injuries in the clashes. The police used force and resorted to lathi charge to disperse the rioters. 3 alleged rioters were arrested by the cops. शाम को जोधपुर के जालोरी गेट पर हुए दो समुदायों के झगड़े के बाद शहर के भीतरी इलाके जो रावतों का बास है, इसमें आप देख सकते हैं इधर एक कम्युनिटी के लोग हैं और पुलिस ने इनको रोक रखा है, और इधर मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दूसरी तरफ दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं जिनको पुलिस रोक रही है। आपस में पत्थरबाजी भी हो रही है और गाड़ियों की भी तोड़फोड़ की गई है। इस समय गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, पूर्व महापौर घनश्याम ओझा, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, ये सब लोग पुलिस से भारी मशक्कत कर रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस समय मैं बताना चाहूँगा कि ये उपद्रवियों ने ये कार को तोड़ा है। इधर दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं जो वो नारे लगा रहे हैं, इधर अशोक गहलोत के खिलाफ नारे लग रहे हैं। कुल मिलाकर तनाव है, पुलिस का जाब्ता मौजूद है इस समय और लगातार तनाव चल रहा है। मैं आपको बताऊँगा कि ये दोनों पक्षों में जो समझाइश का भी दौर चल रहा है, लेकिन इस समय तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस का जाब्ता लगा रखा है। मैं इस समय भीतरी शहर इलाके में हूँ और यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। अशोक शर्मा। Meanwhile, after the clashes on the night before Eid celebrations, Rajasthan's Jodhpur witnessed violent clashes. After the morning Eid prayers, a mob was seen raising slogans and clashing with cops. The mob
pelted stones at the police personnel at Jaluri Gate, compelling the cops to resort to lathi charge. The cops sustained injuries in the violent clashes and many vehicles were also damaged. In a crackdown on rioters, 3 troublemongers were arrested. The chants were countered of Allahu Akbar by Hanuman Chalisa with a rival group. Last night, on the eve of Eid, clashes had started over the removal of a religious flag and installation of another religious flag at the Jaluri Gate intersection. Both the groups received resorting to stone pelting and vandalism. The mob also tried to remove loudspeakers from the location. The mob vandalized property in the area. Many also sustained serious injuries in the clashes. Cops reached the spot immediately and used force to control the crowds. Chief Minister Gehlot, who was slammed by the BJP for failing to control rioters, appealed for peace. इन सबको जवाब देना पड़ेगा। मेरे जो चोट लगी है किसी को कोई मतलब नहीं, सिर्फ इनको इनके भगवे की फिक्र है। क्यों? इनका माई बाप है या भगवा? हेलो हेलो इन सबको जवाब देना पड़ेगा। मेरे जो चोट लगी है किसी को कोई मतलब नहीं, सिर्फ इनको इनके भगवे की फिक्र है। क्यों? इनका माई बाप है या भगवा? हेलो हेलो यहाँ से जालूरीगढ़ से पत्थर मारते हुए आ रहे थे। यहाँ पे 2 ट्रैफिक पुलिस खड़ी थी, उनको हमने यहाँ पे बचाया। उनको जो मारने के लगे यहाँ पे पत्थर मारते आए तो मैंने कहा ये क्या करें, उनको रोकिए। उन्होंने कोई रोका नहीं, सब पत्थर मारते आते रहे और मेरी गाड़ी के ऊपर भी पत्थर मारा। उसके बाद ऊपर से यहाँ पे इस गली के अंदर से एक लेडी खड़ी थी, उसने क्या हो रहा उसने ऊपर से मटका फेंका। जब वो इधर से निकल के पास वाली गली के अंदर गए और यहाँ पे पुलिस वालों को मारा उन्होंने। 2 पुलिस वाले ट्रैफिक वाले खड़े थे, उनको मारा। एक सुनील जी बाफना भी थे, उन्होंने उन दोनों पुलिस वालों को बचाया। जब उन्होंने वापस वहाँ पे टेलीफोन किया कि यहाँ पे पुलिस फोर्स भेजिए, इस तरह से हो रहा है, उसके 3 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद यहाँ पे पुलिस आई। उसके पहले कोई नहीं आया और सब पत्थर मारते हुए निकल सके। हमारे यहाँ पे अभी जो सिचुएशन है अंडर कंट्रोल है। हमने सफिशिएंट जाब्ता लगाया हूँ। अभी हम फ्लैग मार्च के लिए भी निकल रहा हूँ। सभी प्रकार से व्यवस्था है। मुझे लगता है हम इसको ये लॉ एंड ऑर्डर स्थिति जो है बनाए रखने के लिए हम इस पे जो भी केस दर्ज होंगे उस पर हम कार्रवाई करेंगे। जो भी अगर कोई गैरकानूनी काम किया है जो जिस पे कानून के खिलाफ है उसके विरुद्ध कानून के तहत कार्रवाई की जाए। मैं यही अपील करूँगा सभी को शांति बनाए रखें। Let's listen in to Ashok Gehlot, the Chief Minister of Rajasthan. जोधपुर में जो तनाव पैदा हुआ है कल देर रात से, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूँ कि हमारी राजस्थान की और मारवाड़ की परंपरा रही है। सभी समाज के सभी धर्मों के लोग हमेशा हर त्योहारों के अंदर भी प्रेम से भाईचारे से रहते आए हैं। मैं अपील करना चाहूँगा कि तमाम लोग शांति बनाए रखें और तनाव समाप्त करें, क्योंकि ये तनाव हिंसा का माहौल हित में नहीं है जोधपुर वासियों के भी। और जो लोग फिर भी ऐसे कोई तत्व एंटी सोशल एलिमेंट आते हैं तो सख्ती से निपटा जाएगा। ये मैंने पुलिस को निर्देश दे दिए हैं और समय रहते हुए मैं समझता हूँ कि सबको समझना चाहिए कि सब मिलजुल करके जो हमारा भाईचारा बनाए रखें। ये मेरी बहुत मार्मिक अपील है। जो मैंने सुना है कि वहाँ पर कुछ लोगों ने और कुछ नेताओं को मैं अपील करना चाहूँगा, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी नेता हो, कि जो राजनीति में कार्यकर्ता है या नेता है, जनप्रतिनिधि है किसी पार्टी का हो, पहला उसका धर्म होता है कि कैसे वो अपनी पार्टी के लोगों को, अपने मिलने वाले लोगों को, सबको संदेश करे कि किसी भी कीमत पर झगड़ा नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि इस परंपरा का निर्वहन करने के लिए तमाम पार्टी के लोग एकजुट रहेंगे। ये मैं उनसे अपील करना चाहूँगा। मैं इस वक्त खड़ा हूँ जालोरी गेट चौराहे पर। आप देख सकते हैं कल रात इसी जगह पर एक 2 समुदायों का गुट था। उस गुट में झंडा लगाने को लेकर, लाउड स्पीकर को लेकर विवाद हुआ है। जो तनाव इतना बढ़ चुका है कि पत्थरबाजी हुई, लाठीचार्ज हुआ और लाठीचार्ज होने के बाद आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। इस समय मैं इस चौराहे पर खड़ा हूँ, यहाँ पर आरएससी तैनात है। और आज सुबह भी इसी जगह पर जैसे ही नमाज अदा करके लोग बाहर निकले तो इन्होंने गाड़ियाँ के कांच फोड़े। तकरीबन
तकरीबन 15 से 20 गाड़ियों के कांच फोड़े हैं और इस समय तनाव का माहौल है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पुलिस जाब्ता लगा रखा है। तकरीबन 3 से 4 पुलिसकर्मियों के चोटें भी आई है, लेकिन प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें भेज दिया गया है। इस दंगे पर जहां झंडा लगाया गया था, अब उस पर प्रशासन द्वारा तिरंगा झंडा लगा दिया गया है। अब इस समय पुलिस जाब्ता तैयार है, हर जगह तैनात है। शहर में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। जिस तरीके से कल रात और आज सुबह जो शहर में जिस तरीके से हुड़दंग हुआ है, उसको लेकर तनाव का माहौल है। कमिश्नर, डीसीपी ईस्ट वेस्ट दोनों मौके पर हैं और मोर्चा संभाले हुए हैं। अशोक शर्मा, आज तक, जोधपुर। Meanwhile, there is no end to politics. Politics has broken out after the violent communal clashes in Rajasthan. On the occasion of Eid, BJP has slammed the Gehlot government for the clashes between two communities. They've called it irresponsible. The mayor of Jodhpur has called out on the Congress government, accusing them of fueling communal clashes. The mayor comes from the Bharatiya Janata Party. The Congress netas, while speaking on the communal clashes, have called it a small issue and said that it could have been resolved easily. Meanwhile, Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot has called a high-level meet to take stock of law and order and has appealed to maintain peace in this violent hit area. Their agenda is to put religious and communal divide in the forefront so that the issues of inflation, of unemployment, of progress, of development get relegated to the dustbin. They want that Hindus and Muslims should fight so that nobody asks Modi ji, where are the 15 lakhs in every account that you promised? वहाँ पर इस तरह के जो क्रिमिनल एलिमेंट हैं, जो क्रिमिनल एलिमेंट की कम्युनलिज्म का झंडा लेकर के और अपने क्राइम को करते हैं, उनको प्रश्रय मिलता है, उनको संरक्षण मिलता है और उसका नतीजा है कि वो एक के बाद एक इस तरह की घटनाओं को बेशर्मी और बेदर्दी के साथ कर पाते हैं। इसलिए हमारा तो उनको बिना मांगी सलाह यही है कि सेकुलरिज्म जो है वो सियासी वोटों का सौदा नहीं होना चाहिए, बल्कि संवैधानिक संकल्प का मसौदा होना चाहिए। और जब तक आप सेकुलरिज्म को संवैधानिक संकल्प नहीं मानेंगे और सियासी वोटों का सौदा मान के काम करेंगे, तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी और आप मूक दर्शक बने हुए देखते रहेंगे। हिंसा करवानी थी, धारा 144 लगाई, जहाँ जहाँ रामनवमी के रथ यात्रा निकल रही थी, एक ही समुदाय के ऊपर धारा 144 लगाई जा रही है। दूसरी जगह रोज़े बनाए जा रहे हैं, उसके लिए एक अलग से राजस्थान सरकार विशेष आदेश निकालती है कि बिजली की कटौती कतई नहीं होगी। तो उस समय रामनवमी भी थी, लेकिन सिर्फ एक खास समुदाय के लिए ही कहा गया कि बिजली की कटौती यहाँ पर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति है। राजस्थान को ये तालिबान बनाने पर आमदा हैं। ये जो घटना की जा रही है लगातार और राजस्थान का माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें सबसे बड़ी विफलता कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण की नीति, सोची समझी साजिश के तहत ही मैं फिर आरोप लगा रहा हूँ कि तुष्टीकरण की नीति के कारण ही सरकारें न्याय नहीं कर पाती। राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री के गृह जिले जोधपुर में जिस प्रकार से जालोरी गेट में सांप्रदायिक हिंसा और तनाव फैला और उसको फैलाने दिया गया, इसके पीछे का कारण केवल इंटेलिजेंस फेलियर है या तुष्टीकरण की राजनीति में लीन हुई सरकार का संपूर्ण फेलियर है। ऐसी घटनाएं कब तक चलती रहेगी राजस्थान में, इसका जवाब भी अशोक गहलोत की सरकार को और कांग्रेस पार्टी को देना होगा। अशोक गहलोत जी के कांग्रेस के शासन में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है और खास तौर पर जो अपीजमेंट की राजनीति इन्होंने शुरू की है, उसी का नतीजा है कि इस तरीके से धर्म के नाम पर या किसी भी समारोह के नाम पर स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति पे झंडा लगाना और परशुराम जी के झंडे उतारना, उसके बाद लगातार जिस तरीके से करौली की घटनाओं के बाद जो घटनाएं सीक्वेंस से हुई हैं, एक तरफ तो सरकार बैन करती है रामनवमी के जुलूस को, 144 इम्पोज करती है 17 जिलों में और लोगों पर 107 और 16 की कार्रवाई करती है, और दूसरी तरफ पीएफआई को परमिशन देती है। तो ये अपीजमेंट के कारण ये हौसला इस तरीके के जो अराजक तत्व उनका बढ़ा है। जोधपुर में स्थिति कंट्रोल में है और जो जिस तरह से दंगा हुआ ये तय कर लेना चाहिए, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कांग्रेस, बीजेपी किसी का कार्यकर्ता हो,
किसी जाति धर्म का व्यक्ति को दंगा फैलाने का, दंगा भड़काने का, दंगा करने का किसी को हक नहीं है। स्थिति कंट्रोल में, सख्त कार्रवाई करेंगे। पुलिस वहां पर मौजूद है और किसी भी कीमत पर किसी भी दंगाई को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी दंगा फैलाने का हक नहीं है। आमने सामने लोग हुए, इसमें कोई दोहराई नहीं है। दंगा भड़का है और जिन लोगों ने ये कार्रवाई की है, जो जिस तरह से प्लान वे में आज आखाती है, हिंदुओं का बड़ा त्योहार है, ईद भी है, मुसलमानों का बड़ा त्योहार है, सबकी जिम्मेदारी है अमन चैन और भाईचारे से रहने की। देखिए, कहीं भी दंगा नहीं होना चाहिए और दंगे को रोकने के लिए मेरी अपील है, वहाँ के जितने भी लोग हैं, इससे कुछ लोगों को लाभ हो सकता है, लेकिन दंगे से समाज का, प्रदेश का और देश का बड़ा नुकसान होता है। और हमारे देश की संस्कृति रही, हम मिलके रहते हैं और ईद के दिन ये त्योहार ऐसा है, गले मिलने का है, एक दूसरे के करीब आने का, एक दूसरे से बातचीत का है। इसलिए जो दंगा हुआ है मैं उसकी निंदा करता हूँ। वहाँ पे किसी ने दंगा नहीं भड़काया था। जो पत्रकार थे वहाँ पे वो निकल रहे थे, उस समय रात को भजन संध्या थी। वो अंदर से जब बाहर आए हैं, उससे पहले दोपहर में पुलिस वालों ने उनको कहा है कि यहाँ पे परशुराम जयंती के और वो है जालोरी गेट चौराहे पे आपने भगवे झंडे सजाए हुए हैं। उन्होंने सारे उतारे हैं कि कल नमाज का दिन भी है और ईद की है, इसलिए ये झंडे हटा देते हैं। और वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी दंगे भड़का रही थी, उनको शर्म आनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने वो झंडे दोपहर में हटा दिए ताकि चौराहे पे जो है वो कोई ऐसी बात नहीं रहे। Meanwhile, the language war is now only getting louder. Actor Chiranjeevi has spoken out on how South Indian cinema used to be viewed. Chiranjeevi said that he felt insulted, humiliated, that for a long time Indian cinema only meant Hindi cinema. The southern superstar credited films like Bahubali and RRR for breaking the barrier. Meanwhile, Bollywood actor Anil Kapoor and Anupam Kher put out a video praising the mega hit movie RRR. This after Ajay Devgan had taken on Kicha Sudeepa for saying that Hindi wasn't the national language. We've seen RRR and it's a brilliant film, fantastic. Actually commercial film तो मैंने देखी नहीं है। बहुत सुपर जबरदस्त, मजा आ गया। और पूरा 3 घंटे हमने बहुत आउटिंग की। आई थिंक बहुत सालों बाद हमने किसी और की फिल्म देखने गए। Hats off to राजामौली साहब, superb and both amazing. Of course, superb. क्या बात है, मजा आ गया सिनेमा में। जूनियर एंड रामचरण, unbelievable. बहुत जबरदस्त काम किया। वीर रस की फिल्म है, वीर रस की जबरदस्त। साउथ की मूवीज बात की काफी इंडिया की मूवी है यार। साउथ नॉर्थ खत्म अभी खत्म। इंडिया वन। Into all the reactions on the raging language war debate. Hindi is no more national language. So which is the national language today? Which is the national language? No national language. Correct? So what is pan-India? Just because ನಾವು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಆ ಟರ್ಮ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು? ಅರೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ನೋಡೋದು ಬಿಡೋದು ಜನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋದು ಮಾತ್ರ ನಾವಿರೋದು. So because we come from South India, they've started terming us pan-India. Why isn't Hindi being said as pan-India? ಅವರು ಇವತ್ತು ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಅವರು ಡಬ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಓಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡಿ ಡಬ್ ಆಗಿರೋದು ಅಲ್ಲೂ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ. So which is having a better reaction from the audiences today? ಇವತ್ತು ನೀವು ಪುಷ್ಪ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೀವು KGF ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು, ಅದಕ್ಕೆ ಗೆದ್ರು. சார் இந்த ஹிந்தி சம்பந்தமா சார் மத்திய அமைச்சர் வந்து இந்த ஹிந்தி சம்பந்தமா சொல்லியிருக்காரு, இனிப்பு மொழியா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு. சார் இந்த ஹிந்தி சம்பந்தமா சார் மத்திய அமைச்சர் வந்து இந்த ஹிந்தி சம்பந்தமா சொல்லியிருக்காரு, இனிப்பு மொழியா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு. சார் இந்த ஹிந்தி சம்பந்தமா சார் மத்திய அமைச்சர் வந்து இந்த ஹிந்தி சம்பந்தமா சொல்லியிருக்காரு, இனிப்பு மொழியா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு. சார் இந்த ஹிந்தி சம்பந்தமா சார் மத்திய அமைச்சர் வந்து இந்த ஹிந்தி சம்பந்தமா சொல்லியிருக்காரு, இனிப்பு மொழியா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு. It's a quick break. On the other side, it's in the club with Dipali.
India Today TV wins big awards at ENBA 2021. Bags the best channel of the year. Shines bright with 15 goals. Gaurav Sawant, Best Anchor, English. Preeti Chaudhary, Best Continuing Coverage by a Reporter, English. Shivarur, Best Anchor, English. Udayan Mukherjee, Best Business Program, English. Rahul Kamal, News Director of the Year. India Today Group sweeps with a record 90 awards. India Today Group, the gold standard of journalism. When it's the world's biggest news story, there's only one gold standard of journalism. You Should you upgrade to 5G? Are you still wondering if you should get a 5G compatible phone? Well, it'd be a future-proof upgrade, especially with what 5G can really offer. 5G is faster, exactly 20 times faster than 4G. Experts are saying now that it's likely to bring a technological revolution. Unlike its predecessor 4G, which used longer airwaves, 5G uses millimeter waves, which makes it much faster. So, say goodbye to annoying buffering when watching your videos. Why is 5G so fast? The millimeter waves are short, which means they have limited range and higher penetration. 5G also carries the promise of making latency disappear, which means that there's going to be less delay between sending and receiving information. So, downloading heavy file sizes, of course, will take a few seconds. Can 5G make our cities smart? The idea is that 5G can create smart cities with more connected devices. For instance, increased use of connected or autonomous vehicles will impact lifestyle choices. This also begs the question of enormous amount of data it will generate. So, digital security will be an area of concern, of course, especially since 5G network is more difficult to protect than its predecessors. So, are you ready for the next upgrade? When it's the world's biggest news story, there's only one gold standard of journalism. You are watching India Today. Everyone said the road was impossible. Everyone said not in our lifetime. Everyone said the battle was unwinnable. Only KCR believed and made it possible. And how?
Everyone said the road was impossible. Everyone said, not in our lifetime. Everyone said the battle was unwinnable. Only KCR believed and made it possible. And how? Hello and welcome. You're watching In the Club. I am Dipali Patel. This is where we get you all the latest news from the world of showbiz. First up, fashion world's biggest night, Met Gala, was held in New York. Blake Lively, who was the co-host, turned out to be a showstopper in her Versace gown, while singer Billie Eilish got the theme right in her period Gucci ensemble. Shawn Mendes, on the other hand, looked dapper in his tailored jacket. Here are all the highlights. Met Gala, referred to as fashion world's Oscar night, is back with all shine and luster. The biggest, most fashionable and the starriest event rolled out its red carpet in New York, with industry's A-listers putting their best foot forward. Some looked surreal, few seemed extravagant, while others were no less than bizarre. Held to raise funds for the Metropolitan Museum of Art's Costume Institute, the gala returned in full swing to its usual early May slot after the coronavirus pandemic forced the cancellation of the 2020 event and delayed last year's to autumn, honoring American contribution to fashion. This year's Met Gala costume theme was In America, an anthology of fashion. The dress code was termed as gilded glamour. Blake Lively ended up getting it right and how. In fact, co-chairs for fashion's biggest night out, Blake Lively and her husband Ryan Reynolds owned the night, and the look said that even. Blake wore a beaded strapless Versace gown with an oversized satin bow that unfurled to reveal a light blue train. As she ascended the Met stairs, a few assistants joined her and helped her unveil her gown. They unwrapped the giant bronze bow to unveil an opulent aqua blue and rose gold colored skirt, creating another layer over the staircase covering the train. The audience and her husband Ryan were left equally stunned. Blake teamed her iconic look with accessories that took us back to the last decades of 19th century. She wore rose gold colored opera gloves, which she later changed to match the color of a newly unveiled skirt that had matching shoes, a bejeweled tiara, rose gold and aqua blue earrings. Amongst the men, Canadian singer Shawn Mendes looked no short of royalty in his tailored jacket that he later removed to reveal a fitted double-breasted suit. He swapped his shirt and a tie for turtleneck under the tonal navy look, proving that his fashion sense is anything but miserable. Next to nail the dress code was also singer Billie Eilish. She won the night in a period Gucci pale green and cream silk corset gown with a goth punk twist. What's more, she even chose to go sustainable with the look, as the gown was made from existing materials. Emma Stone, Hyeon Jung, Jima Chan, and Cynthia Erivo are amongst 14 others who opted for a previously worn Louis Vuitton design for the event, cementing their commitment to sustainability.
Cardi B stunned the red carpet wearing a custom creation by Versace. Her halter dress was made from embroidered jewelry and metal mesh with matching gold-layered necklaces and bracelets in the band's signature gold chain. American supermodel Gigi Hadid turned heads in her sultry red corset jumpsuit by Versace and a voluminous matching maroon puffer that fit Met Gala quite literally. Sister Bella Hadid also did not disappoint as she made her appearance at fashion's biggest night in a Burberry ensemble that included a leather corset, mesh evening gloves, a sexy thigh-high slit and sheer lace tights. Like Bella Hadid, Nicki Minaj also opted for a Burberry outfit. She rocked a baseball cap, which made her overall look anything but casual on the Met Gala 2022 red carpet. Dakota Johnson had a unique take on the night's theme. She paired a ruby robe with a sheer bejeweled black jumpsuit by Gucci. Camila Cabello made a statement in an upcycled white dress from designer Prabal Guru. Interestingly, Michelle Yeoh and model and First Nations activist Kwana Chasing Horse was spotted on the red carpet in an outfit from the same designer. Indian socialite Natasha Poonawalla walked the red carpet in a golden Sabyasachi gown with metallic corset and a train. This year, the couple stole the show not just with their appearances together on the red carpet, but also with their PDA, or public display of affection. Case in point, Kourtney Kardashian and Travis Barker, who arrived with other members of the Kardashian-Jenner family, including Khloe Kardashian, who turned into a literal goddess for her Met Gala debut. Kim Kardashian and her babe, Pete Davidson, made stunning Met Gala red carpet debut together. The reality TV personality showed up wearing Marilyn Monroe's iconic design by Jean Louis. She had her hair coiffed in a shade of platinum blonde to go with it. Pregnant Sophie Turner made her way to Met Gala red carpet with husband Joe Jonas. The couple looked adorable as they posed for the cameras in the color-coordinated Louis Vuitton ensemble. Amongst the other guests was former presidential candidate Hillary Clinton, who said she was attending for the first time in 20 years to celebrate the fashion and spirit of America. She wore this maroon Joseph Altazara gown, which had 60 names of historic women, including her mother's, embroidered on it. And do not miss out on the newly elected New York City Mayor Eric Adams, who chose to make a political statement out of his ensemble. This important yet bold statement, with his 2022 Met Gala debut, he sported a Gilded Age appropriate tuxedo with a classic tailcoat featuring the words, and I quote, "End gun violence," unquote. Entertainment Bureau, India Today. While Priyanka Chopra and Deepika Padukone skipped this year's Met Gala, Natasha Poonawalla showed up in Sabyasachi ensemble. These Indian beauties are among those who have earlier made their appearances at fashion's biggest night. So here's a throwback report. Met Gala is one of the biggest fashion events of the year, and just like A-listers from the West, Bollywood celebrities have also made quite an impact on the red carpet each year with their bold choices. Priyanka Chopra almost broke the internet with her dramatic debut at the 2017 Met Gala in beige Ralph Lauren trench gown. While this was the day when she met and made her first official and public appearance with her now husband, Nick Jonas, what our Desi girl actually made headlines for was her choice of outfit. And no wonder, Twitter had a field day. In 2018, Priyanka stepped out looking like a goddess. She was perfectly dressed for the theme Heavenly Bodies, Fashion and the Catholic Imagination. She opted for a burgundy velvet gown with a long train that was attached to an embellished hood.
2019 turned out to be yet another year when Priyanka triggered countless memes, courtesy her gown, hair, makeup, and overall look. Like Priyanka, even Deepika Padukone made her Met Gala red carpet debut in the year 2017. She wore a gorgeous white slip dress by Tommy Hilfiger. The dress was sure a bold and risky one with a daring backless silhouette and slip details along the front. She finished her look with a hair accessory and a paired diamond earring. In 2018, Deepika Padukone was back on the red carpet. But this time around, she played it safe by opting for a red one-shoulder Prabal Gurung gown with a high thigh slit. The diva, for her 2019 red carpet appearance, Deepika looked no less than a princess. In fact, she opted for a pink Zac Posen gown and pulled her hair up in a Barbie-like ponytail. Similarly, Mukesh and Neeta Ambani's daughter Isha Ambani wore a cream Christian Dior couture dress for her Met Gala debut in 2017. But it was in 2019 when she turned many heads with a beautiful lilac creation by Prabal Gurung. Philanthropist and businesswoman Natasha Poonawalla, who made her Met Gala debut in 2018, complimented her Prabal Gurung illustrative gown with professionally blow-dried hair tucked in place and highlighted cheekbones with a classic red lip. Her fashion choices have always stood out, and this icy blue Dundas number she picked for Met Gala 2019 in fact also did not disappoint. Now off carpet, author, comedian and YouTube sensation Lily Singh prefers a more understated look. But for her Met Gala debut, she transformed into a floral enigma as she wore a pink Jeremy Scott ensemble. Entertainment Bureau, India Today. Fendi and Versace have once again teamed up with Naomi Campbell for a joint collection. Here's all that you need to know. Rival Italian luxury brands Fendi and Versace have once again teamed up with Naomi Campbell for a joint collection. The labels first announced their collaboration in September 2021 and even presented their collection at the Milan Fashion Week. For their latest collection's promo, Naomi Campbell is the bouncer checking names on the door of the Fendis nightclub as supermodels arrive to the party dressed head to toe in Fendis. The joint capsule was again co-designed by Versace and Fendi's creative directors Kim Jones and Sylvia Fendi, which is being called a swap of two designer collections. The collaboration of both the brands, which is named Fendis, brings together Fendi with Versace, and it is owned by Capri Holdings, the US firm that is also home to Michael Kors and Jimmy Choo. The latest collection is all set to launch on May 12th. Entertainment Bureau, India Today. The ongoing legal battle between Hollywood stars Johnny Depp and his ex-wife Amber Heard is getting uglier by the day. Earlier, Amber had accused Johnny of domestic violence, and now the former has concluded his testimony by saying it's the other way around. Seems like tables have turned also after audio recordings were presented at the trial. Here at India Today, we get you and explain you every detail of this high-profile case in our special report. First, there was a suit, then a counter-suit. Accusations led to counter-accusations. And now, things have got really murky.
twists and turns unfolding like never seen or heard before. Yes, this high-profile legal battle between Hollywood stars Johnny Depp and his ex-wife Amber Heard may sound like a scene from a courtroom drama, but this is reality. That has only opened a can of worms, making their private life public in a way that no one expected. It all began in 2016 when the duo got divorced, following which Amber Heard also filed for a domestic violence restraining order, accusing Depp of violent and volatile behavior perpetrated under the influence of drugs and alcohol. Even though these charges were denied by Depp back then, and the actor had also sued a British tabloid for alleged libel over an April 2018 headline that called him a wife-beater, 2 years later, Heard went on to write an article for an international portal revealing her experiences with domestic abuse. She may not have named Depp, but subtly referred to herself as a victim and called him an abuser. Paul Bettany is a good friend. Repercussions of which were faced by Depp. He was ousted from the 6th film of the Pirates of the Caribbean franchise, and it was then that he decided to take the legal route to deal with the situation. What would any of you be willing to do? Would you brave the weird and haunted shores at world's end to fetch back witty? Johnny Depp filed a defamation suit against Heard, seeking $50 million. What's more, Heard in turn filed a $100 million countersuit against Depp, claiming that he defamed her as his legal team referred to her article as fake and a sexual violence hoax. A year later, in 2020, another setback came in for Depp as he lost the libel trial against the British tabloid. It further affected his career as he was requested by Warner Brothers to resign from his role as Grindelwald in the Fantastic Beasts movie series. Legally, Depp still, however, did not lose hope. In fact, a year later, he contested this ruling that said that there was overwhelming evidence that he assaulted Heard. But even this appeal was ultimately denied by the court. That's when he pinned all his hopes on the defamation case he had filed against Heard in 2019. Up to 2022, seems like tables have turned. In the ongoing defamation trial in Virginia, Depp shared details about his year-long marriage to Heard, often depicting her as an aggressor, and even concluded his testimony saying he was the victim of domestic violence in their relationship and was broken by the time their marriage fell apart. Yes or no? At times. And his fourth day on the witness stand in court, in fact, also ended with his attorneys playing audio from a conversation that took place after Heard had secured a restraining order against him in 2016. What was just played on the audio recordings? And they were rather disturbing for both the jurors as well as the fans and the media covering the case. Very much the tone. Amber, in one of the recordings, was heard dismissively admitting to hitting Depp before mocking him. I didn't punch you, by the way. I'm sorry that I didn't hit you across the face in a proper slap, but I was hitting you. It was not punching you. While Depp in turn was recorded sounding vulgarities at Heard and disparaging her over her weight. That's not all. In another recording, Heard challenged her then-husband to go public with his claim that he was the one who had suffered abuse. Amidst this ongoing trial, Amber Heard fired her PR team and hired a new firm after a psychology expert testified that she suffered from 2 personality disorders. The results of Ms. Heard's evaluation supported 2 diagnoses: borderline personality disorder. This is what Amber carried in her purse for the entire relationship
with Johnny Depp. What also served as further embarrassment for Amber in this case was when a makeup brand disputed a claim by her lawyer that she used its concealer to cover bruises from domestic violence. A video widely circulated on a social media platform clearly specified that the product that they claimed she was using came out a year after the couple's divorce in 2016. Meanwhile, Depp fans are calling for her to be axed from Aquaman 2, which is due to be released next March. A petition demanding the same has also crossed 3 million signatures. Critics believe Amber should suffer the same fate as Depp did when he was dropped by Disney in his role as Captain Jack Sparrow in the 6th installment of Pirates of the Caribbean after Heard alleged he had domestically abused her. Social media has also been flooded with anti-Amber tweets. For the unversed, Depp and Heard's relationship began more than a decade ago and eventually devolved into what appears to have been a toxic marriage. Entertainment Bureau, India Today. It's time for a short break now, but there's lots more coming up on the other side, so stay tuned to In the Club. You are watching. Let's check out what is keeping us celebrities busy. Here's all that's trending in the Tilson town. दूसरी वजह बताने के लिए आएंगे Deepika Padukone took to social media to share this behind-the-scenes video from the sets of her movies including Gehraiya, Piku, Happy New Year and others. In the video, the actress is seen goofing around with her co-stars as she messes up her dialogues. Enjoy the people that you work with. Sharing the video, the actress captioned it, "Messing up my line," in 3, 2, 1. Deepika had recently shared the news that she's among one of the 9 jury members at this year's Cannes Film Festival.
As far as her upcoming projects are concerned, she will next be seen opposite Shah Rukh Khan and John Abraham in Pathan. हमारे देश में हम नाम रखते हैं अपने धर्म या जाति से, पर उसके पास इनमें से कुछ नहीं था। यहाँ तक कि उसके पास कोई नाम रखने वाला भी नहीं था। अगर कुछ था तो बस यही एक देश, इंडिया। और जिनका नाम नहीं होता उनका नामकरण उनके साथ ही कर देते। तो ये नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। जल्दी मिलते हैं पठान से। The film is set to hit theaters in January 2023. Filmmaker and choreographer Farah Khan recently went out for dinner with actors Huma Qureshi, Aditi Rao Hedri and Patrulekha. While Farah and Aditi wore black for the night, Patrulekha chose a white top and jeans. And Huma, on the other hand, finished her look with a beautiful floral shrug. The gang took several pictures, but what's going viral is this video shared by Farah where Huma and Aditi are seen smashing plates as a part of restaurant's customary tradition. The makers of Bhool Bhulaiya 2 have released the title track of the film. In the song, Karthik can be seen ruling the dance floor with his uber cool moves. The track has been sung by Neeraj Sridhar and it has been created by Danish Bagchi and the choreography is by Bosco Caesar. Sharing the video song, Karthik wrote and we quote, "Do the zigzag step with True Baba." Directed by Anis Basmi, Bhool Bhulaiya 2 features Karthik Aryan, Tabu, Kiara Advani and Rajpal Yadav in key roles. The film is slated to release in theaters on May 20th. Entertainment Bureau, India Today. That's all we could pack in the show today. Till next time, thanks for watching and goodbye. Climate change is real. The long-term shifts in temperatures and weather patterns are constantly taking place and it will affect you. If you are still not bothered about it, here are some facts which you should know. The world's polar ice caps are shrinking little by little. The Arctic is heating up twice as fast as the rest of the planet, with Greenland's glaciers receding particularly quickly. This process is speeding up all by itself. Melting snow exposes ice underneath, which then absorbs the sun's rays and increases thawing. At the opposite end of the Earth, 90% of the ice shelves on the Antarctic Peninsula are starting to disintegrate. Ice melt is also being observed in mountain ranges like the Himalayas, Kilimanjaro, the Alps, and Pyrenees. In the Andes, glaciers are retreating and risk disappearing altogether. Ocean levels are rising due to the combination of melting ice and warmer sea temperatures, as warm water has a greater volume than cold water. At the current rate, it is predicted that by the year 2100, sea levels will rise between 26 centimeters and a meter.
Islands in the Pacific or Indian Oceans like the Maldives will be submerged. Densely populated, low-lying coastal areas like Bangladesh, Vietnam, the Netherlands, and the east coast of the United States are all under threat. You are watching India Today. Hello and welcome. Thank you for tuning in. I'm Pooja Shali. Let's begin first with the headlines at 3 today. Fresh violence being reported in Rajasthan's Jodhpur after midnight clashes over a flag and loudspeaker. Miscreants pelting stones at cops. Police resort to lathi charge and tear gas. Curfew in 10 areas. Gehlot government is now under fire over the Jodhpur clashes. BJP blames Rajasthan government for violence. Congress neta calls it choti si baat. But apart from that, it's the big political showdown over Congress MP Rahul Gandhi's viral Kathmandu nightclub party video. Jeering BJP now labels the Congress MP as a party-time neta. Congress defense says, is it a crime to attend a wedding or a party? Loudspeaker debates gets louder and noisier. Asaduddin Owaisi slams Raj Thackeray of the MNS over the ultimatum, demands his arrest. BJP MP Parvesh Verma demands loudspeaker model of Uttar Pradesh in Delhi also. Home Minister Amit Shah is in Karnataka amid the cabinet rejig speculation ahead of the crucial elections in 2023. Chief Minister Basavaraj Bommai will hold a dinner meeting with Shah. After massive outreach in Berlin, Prime Minister Modi lands in Denmark. This is day 2 of his Europe visit. He will be meeting the Prime Ministers of all Nordic nations. Senior Neta of the Congress party, Rahul Gandhi, was spotted partying at a nightclub in Kathmandu. The video went viral and now it has of course become a political showdown as well. This is the video on your screens. So how has this become political? A party of a video of that is now going viral. It's the BJP leaders who are launching a scathing attack at the Congress Neta after this video of the partying at the nightclub has since been viral. Now BJP has slammed Rahul Gandhi for partying while they are claiming there is a serious crisis not just internally in his party but also in Congress-ruled states like Rajasthan and a massive defeat in Punjab. Some BJP leaders have called him a partying time neta, while others are questioning the seriousness of a political representative, an elected representative of the Congress leader. Rahul Gandhi, just to give you a background, was in Kathmandu to attend his journalist friend's wedding ceremony that was held on Monday. Meanwhile, Smriti Irani is now visiting Rahul's turf in Wayanad in Kerala. Smriti Irani, remember, had defeated Rahul Gandhi Nepal and is currently in Wayanad in Kerala on the day while this video is viral and the BJP is latching on to it. सवाल यह है कि राहुल गांधी कहां पर हैं और किसके साथ हैं। सवाल यह भी है कि क्या चाइना के एजेंटों के साथ राहुल गांधी पार्टी कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी जो ट्वीट करते हैं या संसद में जो भाषण देते हैं चाइना के पक्ष में और भारत की सेना के खिलाफ, क्या वो इन्हीं लोगों के दबाव में दिया जाता है जिनके साथ वो पार्टी करते हुए दिख रहे हैं। देश विरोधी जो एजेंडा राहुल गांधी के द्वारा पुश किया जा रहा है, क्या उसके पीछे चाइना है? राहुल गांधी जी हैं, इनका दिक्कत क्या है? ये फुल टाइम पर्यटन और पार्ट टाइम जो है वो पॉलिटिकल पाखंड। तो ये फुल टाइम जो पर्यटन करता हो, पार्ट टाइम पॉलिटिकल पाखंड में लगाओ, परिश्रम में लगाओ, तो परिश्रम में भी ये सब का दिखाई पड़ता है उनका। तो जब तक ये फैमिली फ़ोटो फ्रेम में फिक्स ये पार्टी और पप्पू के चोचले
और परिवार के घोंसले में ऐसी सिमटी रहेगी, तभी इस तरह का उसकी जगहसाई होती रहेगी। अच्छी बात है, पार्टी तो कर ही सकते हैं वो। अब वो किसके साथ पार्टी करें उसमें हम लोगों को क्या एतराज है। हम लोग तो पार्टी का काम करते हैं, वो पार्टी करते हैं, इतना ही अंतर है। देश में 2 मॉडल है। एक, प्रधानमंत्री मोदी जी सेवा भाव से 365 दिन 24 घंटे देश की सेवा करना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और दूसरी तरफ पार्टी करना जो राहुल गांधी जी का या विदेश भाग जाने का जो एक उनकी राजनीति है। तो ये तो कांग्रेस पार्टी इस पे जवाब दे। पार्टिंग ज्यादा जरूरी है और पार्टी कम, और इसीलिए इनके ही पार्टी के लोग उन्हें कहते हैं कि ये पार्ट टाइम नेता नहीं, ये तो पार्टिंग टाइम नेता है। ये सारी चीजें बताती है कि राहुल गांधी ट्विटर पर प्रोपेगेंडा तो भरपूर करेंगे, परंतु जनता के बीच, प्रजा के बीच रहने का या जनता के बीच रहकर वहां पर उनके बीच गंभीरता से मुद्दों को उठाने का दमखम उनमें नहीं है। So the Congress party has also now reacted on this video. The Congress has defended Rahul Gandhi, saying attending a wedding of a friend is part of a culture. There is no crime in that. Listen in to what the Congress party is saying. इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे कि देश के लोग दूध क्यों नहीं खरीद पा रहे, दाल क्यों नहीं खरीद पा रहे, सब्जी क्यों नहीं खरीद पा रहे, शिकंजवी क्यों नहीं पी पा रहे। पर आपको राहुल गांधी जी को गाली देने से फुर्सत मिले, वो प्रधानमंत्री हूं या भाजपा के नेता हूं, आसमान के जहाज से लेकर टेलीफोन की तरंगों से लेकर जमीन के नीचे पाताल में कोयले तक सब मोदी जी ने बोली पर लगा रखा है। और सवाल हमसे पूछ रहे हैं। Mr. Gandhi is on a private visit to attend a marriage in Kathmandu. And there is a media person's correspondent's wedding. Therefore, he has been there to attend that marriage. What is the harm in attending a marriage? The problem with these people is that they see everything in a different prism. It's very sad that BJP, a national party, a governing party, is doing these kind of cheap things, and ministers are also jumping into it. ऐसा है कि वो पार्टी कब नहीं करते और अच्छी पार्टी करते हैं, तभी उसके बाद ऐसे वक्तव्य आते हैं उनके। Let's go across to my colleague Supriya Bhardwaj reporting on the latest. Supriya, can you tell us more details? One, about the video. Who is there in that video, and how has this become a political showdown? Why is the BJP latching on to a video that is just of partying, which anyone would be doing in their free time? Well, first and foremost about that video, Pooja, what our sources are informing us from the Congress party is this, that this is a wedding ceremony which is taking place in Nepal, in Kathmandu, of Mr. Gandhi's friend, who happens to be a journalist, a former journalist, and an ambassador's daughter. And he is there in that capacity along with other friends. And it is being widely reported in the Nepal media also. This is what they are referring to. They are saying that all these people had gone for a pre-wedding bash. And it is not only Mr. Gandhi, there are other people also who are present there. And it's just another party which people hold. This is what the Congress party is saying before their weddings. And it's just a pre-wedding bash which Mr. Gandhi was also attending. And they are saying that he's going to attend the wedding of his friend and he's going to come back. It's a completely personal visit. And that's why they are saying that why BJP is lashing out is beyond their comprehension. They are saying BJP should be talking about the power crisis. They should be talking about the inflation. They should be talking about the rates of the fuel in the country. Rather, they are trying to target Mr. Gandhi because this is a way to divert attention of the people from these burning issues. So this is what the Congress party is saying. They are saying that as far as Mr. Gandhi is concerned, he's on a personal visit. And also, at the moment, he's what Mr. Manikam Tigor and other people have said, that whenever the Congress party goes all out and say that Mr. Gandhi, you are required to do this particular thing within the party, he works like any other political worker in the party. He doesn't behave like a politician as far as who's going to just throw his weight around. This is what a lot of Congress party leaders are saying, and they're saying that's why Mr. Gandhi stands apart. And also, as far as the Telangana visit, which is on the 6th and 7th, this is what Manikam Tigor referred to. He said that Mr. Gandhi will be coming there attending. There are other units also of the party, whether it's Gujarat, whether it's Rajasthan. They have also extended an invite to him, and he will be visiting these states soon. Very interesting, Supriya, what you're telling us. So while the BJP is latching on to this video on your screens of Rahul Gandhi partying,
there in Kathmandu at a nightclub. The Congress is defiant. Congress is saying, what's the big deal? And when he's required for work, he's available. So clearly a political showdown over this video. Supriya, thank you very much for now. Violence is being reported from Jodhpur. We now have accessed 4 shocking images. These are CCTV footages and likely when the moment when a mob went on a rampage. Take a look at this. We are showing you multiple angles of different videos. In one, as you can see, it appears miscreants, antisocial elements are seen with swords, sticks, and they then go on a rampage. From another video accessed again by the CCTV, there is clearly stone pelting taking place between 2 different groups. But in the third visual, if you look closely, vehicles are being vandalized and there is apparently, we're being told, even stabbing that was caught on camera in these visuals. So the situation is definitely tense there in Jodhpur. 3 different videos. Take a look at that. Easily available swords, knives, stabbing, vandalizing, taking law into their own hands. What is giving these antisocial elements and miscreants the confidence of indulging in this behavior? कैमरा पर्सन निखिल शर्मा और अशोक के साथ देवंकुर वधावन, जोधपुर, आज तक। Devankar Vadhavan, he's currently on the ground in Jodhpur, exactly tracking all the latest. Remember, Rajasthan is now becoming just another state with regard to other states that have been reporting communal violence. We saw in Rajasthan, in Karoli itself, just a few weeks ago, the violence that had taken place. And now Devankar Vadhavan is telling us the update. Let's listen in and go across to him. Out. In fact, police personnel from nearby police stations have already been summoned and are stationed out here to ensure that the situation once again does not spiral out of control. I would want to show you the Jaluri Gate main Choraha where the communal clashes are said to have erupted. You can see the Indian flag currently unfurling, but before that, last night when the saffron flag was there, it's being alleged that some of the miscreants had arrived out here and they had on purpose trying to instigate the entire inside the entire situation, had removed that flag and some of the other flags that were already there and replaced them with some other flags, after which they tried to incite other people, after which the violence had broken out, which was being alleged. The police is currently investigating the entire matter. The situation continues to remain volatile, but is said to be under control. Internet ban is already there. It was imposed at 1 a.m. in the night and curfew is there in 10 police stations in Jodhpur currently, and there is heavy patrolling which is going on. Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot had been holding deliberations with senior police officials in state capital Jaipur, and the situation, as you can witness right now, is there is an uneasy calm which currently prevails in Jodhpur, and senior officials from the district police and administration are keeping a watch. With camera person Nikhil Sharma and Ashok Sharma, Devankur Vadhavan in Jodhpur for India Today. Tension continues to simmer in Jodhpur. These are the latest visuals coming in. This is after violent protests broke out between 2 communities. After these are fresh clashes on the morning of the Eid festival, where there was sloganeering of Allahu Akbar, angry protesters seen reciting Hanuman Chalisa as a counter. So it was 2 groups that decided to then clash. A huge mob armed with lathis, sticks, recited the Chalisa, raised religious slogans. This comes, remember, after fresh escalations and morning violence that already took place, and that was about removal of the religious flag on the eve of the Eid festival. What happened in the morning then? A violent mob clashed with cops, even assaulted them, vandalized vehicles, torched the bikes. Many cops have sustained injuries, as we are being told from the ground from our reporters. They have sustained injuries trying to control the situation on the ground. Cops had to resort to force, had to resort to mild lathi charge to disperse the rioters. 3 alleged rioters at least have now been taken into arrest by the police. कल शाम को जोधपुर के जालूरी गेट पर हुए 2 समुदायों के झगड़े के बाद शहर के भीतरी इलाके जो रावतों का बास है, इसमें आप देख सकते हैं इधर एक कम्युनिटी के लोग हैं
हैं और पुलिस ने इनको रोक रखा है। और इधर मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दूसरी तरफ दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं जिनको पुलिस रोक रही है। आपस में पत्थरबाजी भी हो रही है और गाड़ियों की भी तोड़फोड़ की गई है। इस समय गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, पूर्व महापौर घनश्याम ओझा, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, ये सब लोग पुलिस से भारी मशक्कत कर रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस समय मैं बताना चाहूँगा कि ये उपद्रवियों ने एक कार को तोड़ा है। इधर दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं जो वो नारे लगा रहे हैं, इधर अशोक गहलोत के खिलाफ नारे लग रहे हैं। कुल मिलाकर तनाव है, पुलिस का जाब्ता मौजूद है इस समय और लगातार तनाव चल रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि ये दोनों पक्षों में जो समझाइश का भी दौर चल रहा है, लेकिन इस समय तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस का जाब्ता लगा रखा है। मैं इस समय भीतरी शहर इलाके में हूँ और यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। अशोक शर्मा। Let's go on the ground. My colleague Sharat Kumar is now joining me for all the latest on that. Sharat, what is the current status? So if there were, you're telling us 2 clashes. एक जो शाम को हुआ था और उसके बाद सुबह फिर से क्लैशेस होते हैं 2 ग्रुप्स के बीच में। किस तरह से सिचुएशन है beyond the ground in जोधपुर? देखिए, अभी फिलहाल शांति है। जो मुस्लिम इलाके हैं वहाँ पर कुछ नाराज़गी की खबरें आ रही थी, जिसे देखते हुए 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया है। देखिए, उनकी नाराज़गी यह है कि 1 साल बाद हमारी ईद आई थी, हम ईद मना नहीं पाए, हमारे ईद जानबूझकर बिगाड़ी गई है। इसे लेकर वहाँ पर समझाइश जारी है, शांति समझौते जो हैं वो आयोजित किए जा रहे हैं। लेकिन गलियों में, मोहल्लों में ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर आक्रोशित जो भीड़ है, नवयुवक हैं, वो बाहर आ जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो हिंदू हैं जिनकी गाड़ियाँ टूटी हैं, उन्हें लेकर बीजेपी के नेता जो हैं वो आए थे, वो आक्रोशित है कि उनकी गाड़ियाँ तोड़ दी गई। वो अपने छतों पर खड़े थे, बालकनी में खड़े थे, वहाँ पर पत्थर फेंके गए। लेकिन जो ये घटना हुई, इस पूरी घटना को समझने की ज़रूरत है कि ईद की तैयारी रात को चल रही थी, अचानक से एक अफवाह उड़ती है। अफवाह ये उड़ती है कि स्वतंत्रता सेनानी की जो मूर्ति लगी है वहाँ पर मुसलमानों ने उसे काले बैंड से ढक दिया है। उसके बाद वहाँ पर बीजेपी कह लें या फिर हिंदू संगठन कह लें, हिंदू कह लें, कुछ भी कह लें, वो भीड़ आती है और भीड़ जिस तरह से ईद की जो तैयारी होती है, झंडे लगाए जाते हैं, उसे उखाड़ के गिराने लगते हैं, लाउड स्पीकर निकाल के तोड़ने लगते हैं। उसके बाद मुसलमानों में ये बात फैलती है कि हमारी ईद की तैयारी ध्वस्त की जा रही है। वो भी निकलते हैं घर से और आपस में पथराव शुरू हो जाता है। उसके बाद पुलिस जो है वहाँ पर किसी के झंडे नहीं लगने देती है और मुसलमान अपने घर चले जाते हैं। सुबह ईद होती है, उनके दिल में टीस रहती है कि हमारी जो तैयारी थी, लाउड स्पीकर, ईद, झंडे वंडे की सब खत्म कर दी गई है। और वो जब आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी के मूर्ति पर भगवा झंडा लहरा रहा है। अब देखिए, मैं इसको पूरा प्रशासन का फेल्योर मानता हूँ। रात को वहाँ पर इतना बड़ा बवाल हो गया जब ईद की तैयारी वहाँ पर चल रही थी। आप जानते हैं कि आज अक्षय तृतीया का दिन है, हिंदुओं के लिए सबसे शुभ है। राजस्थान में पूरे साल में जितनी शादियाँ होती हैं, अकेले आज के दिन होती है 1/3 शादियाँ। इसके बावजूद पुलिस सोई हुई थी। And this is in series of what has happened in Rajasthan previously also. That's an important point. Why wasn't the administration on alert already, considering there have been incidents taking place in the past as well? Thank you so much. Sharat Kumar is tracking all the latest, giving us a timeline, latest visuals of mob armed with swords and stakes going on to vandalize the area there in Jodhpur. So after the clashes on the night before the Eid celebrations, Rajasthan's Jodhpur witnessed fresh violence today morning. That after the Eid prayers were offered. Now, what happened then? A mob was seen on one side raising the Allahu Akbar slogans and clashing with cops. The mob pelted stones at the police personnel at the Jalori gate, compelling the police to resort to lathi charge. We are being told cops have sustained injuries in these violent clashes. Many vehicles have been damaged in the violence. In the crackdown on rioters, 3 troublemongers have now been taken into custody. We are constantly updating you with the visuals and the timeline. Take a look at this on your screen. This is 2:15 a.m. last night when the cops had to resort to lathi charge. Again in morning, a crowd gathers, again sloganeering. All of this as a precautionary measure now. Curfew has been imposed in 10 police station areas of Jodhpur till 4th of May midnight. Last night, on the eve of the Eid festival, clashes started over the removal of a religious flag and the installation of another religious flag at the Jalori gate intersection. Both the groups, that is when, were seen resorting to pelting of stones and vandalism. The mob tried to remove loudspeakers. The mob vandalized properties in the area. Many have sustained injuries. While right now we are being told the situation is under control, but definitely tense. इन सबको जवाब देना पड़ेगा। मेरे जो चोट लगी है किसी को कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इनको इनके भगवे की फिक्र है।
क्यों? इनका माई बाप है या भगवा? हेलो हेलो जाओ भाई साहब, चले जाओ। इन सबको जवाब देना पड़ेगा। मेरे जो चोट लगी है किसी को कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इनको इनके भगवे की फिक्र है। क्यों? इनका माई बाप है या भगवा? हेलो हेलो जाओ भाई साहब, चले जाओ। यहाँ से जालूरगढ़ से पत्थर मारते हुए आ रहे थे। यहाँ पे 2 ट्रैफिक पुलिस खड़ी थी, उनको हमने यहाँ पे बचाया। उनको जब मारने के लगे यहाँ पे पत्थर मारते आए तो मैंने कहा ये क्या करें, उनको रोकिए। उन्होंने कोई रोका नहीं, सब पत्थर मारते आते रहे और मेरी गाड़ी के ऊपर भी पत्थर मारा। उसके बाद ऊपर से यहाँ पे इस गली के अंदर से एक लेडी खड़ी थी, उसने क्या हो रहा उसने ऊपर से मटका फेंका। जब वो इधर से निकल के पास वाली गली के अंदर गए और यहाँ पे पुलिस वालों को मारा उन्होंने। 2 पुलिस वाले ट्रैफिक वाले खड़े थे, उनको मारा। एक सुनील जी बाफना भी थे, उन्होंने और इन्होंने उन दोनों पुलिस वालों को बचाया। जब उन्होंने वापस वहाँ पे टेलीफोन किया कि यहाँ पे पुलिस फोर्स भेजिए, इस तरह से हो रहा है, उसके 3 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद यहाँ पे पुलिस आई। उसके पहले कोई नहीं आया और सब पत्थर मारते हुए निकल सके। हमारे यहाँ पे अभी जो सिचुएशन है अंडर कंट्रोल है। हमने सफिशिएंट जाब्ता लगाया हूँ। अभी हम फ्लैग मार्च के लिए भी निकल रहा हूँ। सभी प्रकार से व्यवस्था है। मुझे लगता है हम इसको ये लॉ एंड ऑर्डर स्थिति जो है बनाए रखने के लिए हम इस पे जो भी केस दर्ज होंगे उस पे हम कार्रवाई करेंगे। जो भी अगर कोई गैरकानूनी काम किया है जो जिस पे कानून के खिलाफ है उसके विरुद्ध कानून के तहत कार्रवाई की जाए। मैं यही अपील करूँगा सभी को शांति बनाए रखें। We've now got a reaction from the Chief Minister of the state, Ashok Gehlot, as well. He's appealed to maintain peace and has added that any anti-social elements will be dealt with strictly. जोधपुर में जो तनाव पैदा हुआ है कल देर रात से, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं समझता हूँ कि हमारी राजस्थान की और मारवाड़ की परंपरा रही है, सभी समाज के सभी धर्मों के लोग हमेशा हर त्योहारों के अंदर भी प्रेम से भाईचारे से रहते आए हैं। मैं अपील करना चाहूँगा कि तमाम लोग शांति बनाए रखें और तनाव समाप्त करें, क्योंकि ये तनाव हिंसा का माहौल हित में नहीं है जोधपुर वासियों के भी। और जो लोग फिर भी ऐसे कोई तत्व एंटी सोशल एलिमेंट आते हैं तो सख्ती से निपटा जाएगा। ये मैंने पुलिस को निर्देश दे दिए हैं। और समय रहते हुए मैं समझता हूँ कि सबको समझना चाहिए कि सब मिलजुल करके जो हमारा भाईचारा बनाए रखें। ये मेरी बहुत मार्मिक अपील है। जो मैंने सुना है कि वहाँ पर कुछ लोगों ने और कुछ नेताओं को मैं अपील करना चाहूँगा, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी नेता हो, कि जो राजनीति में कार्यकर्ता है या नेता है, जनप्रतिनिधि है किसी पार्टी का हो, पहला उसका धर्म होता है कि कैसे वो अपनी पार्टी के लोगों को, अपने मिलने वाले लोगों को, सबको संदेश करे कि किसी भी कीमत पर झगड़ा नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि इस परंपरा का निर्वहन करने के लिए तमाम पार्टी के लोग एकजुट रहेंगे। ये मैं उनसे अपील करना चाहूँगा। Let's go across to Jodhpur now. On location, India Today's Devankur Vadavan is now tracking all the latest. Dev, what do we see around you? Is it calm right now, and eerie calm? Are there people around you? Can we speak to someone? Do tell us about the latest on the ground. Well, Pooja, there is an uneasy calm which currently prevails in Jodhpur. Behind me, you can see, if the camera person can zoom in and show you the heavy police presence that is there. That is the Jaluri Gate Choraha, and you can see several saffron flags which are currently, unfurling out there. Earlier, what actually happened was that, 2 days ago, on the occasion of Parshuram Jayanti, this area had a lot of saffron flags, Bhagwa flags, which were there. But on the occasion of Eid, the night before Eid, it's being alleged that several people had turned up, some of them allegedly miscreants who wanted to replace those saffron flags with flags which were of green color. And when there was some amount of resentment against that, that is when the clashes, the communal clashes in Jodhpur broke out. I would want to show you the current situation which is there. All of these shops are currently closed. There is a curfew in place. In 10 police thanas of Jodhpur, the situation continues to remain tense but is slightly better than what it was last night. Although in the morning as well, there have been several clashes which broke out. The police is trying to maintain somehow some amount of calm out here. There are several people who I would want to get in a voice from. Sir,
what actually transpired? How did the clashes break out? You were there, so if you could tell us more about it. I am not there, but I heard. मैंने सुना कल रात को जालोरी गेट पर एक हमारे स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए थे बाल मुकुंद बिस्सा, उनकी मूर्ति है, उस पर काफ़ी समय से एक भगवा झंडा उनके पास लगा हुआ है। तो ऐसा सुनने में आया कल कुछ लोग, विशेष समुदाय के कुछ लोग कल आए थे वहाँ पर और उन्होंने जालोरी गेट के चौराहे पर तो अपने झंडे लगाए, उसमें इट इज नॉट कोई ऐतराज़ नहीं था, बट क्या किया कि वो बाल मुकुंद बिस्सा की जो मूर्ति थी, सुनने में आया था कि उसके भगवा झंडे को हटाकर उन्होंने अपना झंडा लगाया विशेष समुदाय का और मूर्ति पर काले कपड़े बांध दिए गए थे। उससे कुछ लोगों में रोष उत्पन्न हुआ कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपनी नमाज अदा करें, आप जालोरी गेट चौराहे पर झंडे लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है, पर किसी विशेष समुदाय के मूर्ति पर इस प्रकार से भगवा झंडा हटाकर उस पर दूसरा झंडा लगाना और काले कपड़े ढक देना, उससे एक रोष उत्पन्न हुआ था और वहाँ से ये विवाद। सर, जो लोग आए थे आपने कहा, वो लोग कौन थे? वो आप उनको जानते थे? यहीं के लोकल्स थे? वो कौन थे? नहीं, ये नहीं पता। ऐसा है, फ्रीडम फाइटर बाल मुकुंद बिस्सा के स्टेचू लगी हुई है जालोरी गेट के ऊपर। उस स्टेचू के ऊपर मोमिनस भैया ने क्या किया कि काला वो कपड़ा डाल दिया और हरे ग्रीन पट्टी लगा करके और उसका अपमान किया और उस मूर्ति के ऊपर चढ़ गए। सर, मैं ये जानना चाह रहा था, जिन लोगों को आप आरोप लगा रहे हैं वो लोग कौन थे? वो यहाँ के लोकल्स थे, कहीं बाहर से आए थे? वो सब लोकल थे, लोकल मोमडन्स थे। आप लोगों ने उनके बारे में आइडेंटिफाई कर चुके हैं? आप लोग कौन थे? नहीं, ये तो नेचुरल है। वी आर नॉट ऑन द स्पॉट, दे नॉट देयर, हम वहाँ नहीं थे ऑन स्पॉट पर, बट ये सुनने में आया कि इस प्रकार का कल घटनाक्रम हुआ था और जो भी हुआ वो गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जोधपुर इस तरह का शहर नहीं है, अपना ऐत का शहर है। Pooja, Jodhpur is known for its calmness, its peace, its tranquility, but right now there is heavy police presence and we are right now outside the house of Suryakanta Vyas, who is the local BJP MLA from the area. She is also here. मैम, जिस तरह से यहाँ पर कम्युनल क्लैश हुए कल रात में, क्या आपको लगता है कि वो नियंत्रण में लाए जा सकते थे? वैसा नहीं होना चाहिए था? वो नियंत्रण में ला सकते थे जब ये वारदात शुरू हुई है, उसी टाइम अगर इनको रोक लगा देते और अगर पुलिस प्रशासन सचेत रहता और इसको देख लेता तो आज ये नौबत अपने को देखने को नहीं मिलती। आज पूरे जोधपुर के अंदर और विशेष तौर के शहर के अंदर इस तरह की अव्यवस्था है, उसका कोई जवाब नहीं है। मैम, आप यहाँ से बीजेपी की विधायिका हैं, ये बताएं कि आपने क्या किया ये स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए? क्या आपने पुलिस कमिश्नर को, किसी हायर अप को कॉल करके बताया, क्योंकि आप इसी एरिया में रहती भी हैं? मेरे को रात को मालूम पड़ा, मेरे पोते की बहू का फ़ोन आया, जालोरी गेट पे झगड़ा हुआ है, तो मैं रात को 1 बजे वहाँ जालोरी गेट पहुँची हूँ, सबसे बात की हूँ, पुलिस कमिश्नर से बात की, कलेक्टर साहब से बात की, उनसे वार्तालाप की और सुबह रात भर बैठी रही हूँ और उनको बताया है कि अगर इस तरीके से वारदात हुई, मैं तो सिर्फ एक ही बात पूछना चाहती हूँ पुलिस प्रशासन को और यहाँ के प्रशासन को कि इस तरीके से स्वतंत्रता सेनानी बिस्सा जी Is Devankar tracking and talking to eyewitnesses? Remember now, of course, our reporters are trying to gather as much information as to what exactly happened. Remember, this is not just one clash. It first happened last evening, then again repeated today morning. The question is, and like our reporters have been saying, it was festival in many ways for both the communities. There is also the Eid festival, there's the Akshaya Tritiya, a lot of wedding functions are being organized. If that area was communally sensitive at any point, if there was any alert, why was the administration not prepared? And then the police has to resort to lathi charge to, of course, clear the situation there. In turn, many police personnel have been attacked. They have received serious injuries. We have those visuals as well. Some of these troublemongers are either being pushed away or some have now been taken into arrest as well. The focus comes on the Ashok Gehlot government, and specifically the BJP in opposition is now stepping up ante that after Karoli, now it's Rajasthan's Jodhpur. Now remember, let's focus on the politics part of it, because right now it's become a massive political showdown. The Bharatiya Janata Party has slammed Ashok Gehlot government for the clashes that broke out between two communities and are holding the Rajasthan corps irresponsible. Jodhpur Mayor called out the Congress government, accusing them of fueling communal clashes. Congress netas have called it a small issue, said this could have been resolved much easily.
Meanwhile, Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot has called a high-level meeting. We're now cutting across to Prime Minister Narendra Modi's day 2 of the Europe visit, the Namaste Europe, and this is now in Denmark. Remember, yesterday in Berlin, Germany, the Prime Minister interacted not just with the official delegation, but obviously there were a lot of Indian diaspora. There was dancing and colour and cheering for Prime Minister Narendra Modi. Today, it remains to be seen what exactly will be with regard to the diaspora, but I can tell you that there is a packed itinerary for Prime Minister Narendra Modi. There are business meetings that have been scheduled for late in the evening Indian Standard Time. Right now, he's just arrived and is now interacting. We'll try and get you further details on that. He's also going to interact with the Prime Ministers of the Nordic nations, waving right now to the supporters, to the camera persons present there on location. One by one, we are going to give you the updates. Remember, 3-day Europe visit. Yesterday was Germany, today it is Denmark. Remember, this is also at a time when there is an ongoing war in Ukraine, and Prime Minister Modi has appealed for peace and referred very clearly to how important that is. Take a look at all that color that was witnessed just about a few hours ago, and I presume that is from the location as in when he landed at the airport. So, of course, the Indian diaspora ensuring that he does not miss his home country, and there is colour and dance and cheer. This appears to be, as I can see, perhaps a Marathi dance taking place there yesterday as well. Remember, the Shivaji statue and the manner in which they were dressed, we saw a lot of that there in Germany as well. But now, of course, it will be interesting to note how the Prime Minister interacts with the top leadership in Denmark and what will be on agenda for the Prime Minister. Remember, it's not just politics. There are already references that have been done to technology, to climate change. All of this, I've been told, is on agenda with the Nordic nations. And this will be during the Denmark visit. But it will be, as of course we are waiting to see, apart from the official meetings, how the Indian diaspora decides to welcome him. This is scheduled, and right now there is a meeting that is going to be on the itinerary with the Danish Prime Minister. Then there will be a Second India-Nordic Summit with the Prime Ministers of Denmark, Iceland, Finland, Sweden and Norway. And I can also add here, my colleague Anjana Om Kashyap is on location and travelling with the cavalcade of the Prime Minister, tracking every bit of this meeting. But because this is the second leg of the 3-day visit, it will be primarily focusing on the various elements of the India-Denmark ties. We're also being told there is going to be a green strategic partnership that will be on agenda. And this GSP, the Green Strategic Partnership, was established in September 2020 and, according to the government, has translated into a results-oriented 5-year action plan when the Danish PM also had visited India last year. Let's go across now on the ground because Anjana Om Kashyap is there and tracking. Anjana, must be a busy schedule as much for you as well, from one country to another, getting in all the cheer, the sound, the noise and colour. It was fantastic to see what we saw yesterday. What are we expecting from the Indian diaspora? But today's bilateral with Mette Frederiksen, the Prime Minister of Denmark, is very crucial, and we're right now at her private residence. This is the house where they're having a bilateral meet right now. Prime Minister Narendra Modi has already entered the premises of the Danish Prime Minister, and they're having the bilateral talks, their consultations, and on the other hand, in a few minutes they'll be but the colours you talked about, Pooja, 3 days and 3 countries. You can imagine the kind of euphoria in the Indian diaspora about Prime Minister Narendra Modi, be it the airport, and even on our way when we saw people walking with little flags. So we knew there's a lot of talk in town, as you said. All the Indians are gathering together. They're going to be welcoming him because after this bilateral, the Prime Minister comes here. Let me quickly show our viewers. The Prime Minister is coming here for a briefing, and we have the SPG guys already taking care of the security and all the measures right here because along with the Danish Prime Minister,
Prime Minister Narendra Modi is coming here for a press briefing. So you can see the SPG guys taking stock of the entire situation. On the other hand is the entire Danish media which is present here. You can see people from the Indian delegation also who will be signing a grievance here. The Danish media is present. Prime Minister Narendra Modi and the Danish Prime Minister Mette Frederiksen is going to be briefing us here. So the bilaterals have already begun. After this, the colors of the Indian diaspora that you talked about, because we've been showing it yesterday and yet again today, we're going to be out in Copenhagen at the Bella Center, which roughly 2,000 Indians are again gathering today, and the Prime Minister is supposed to be interacting with them. I mean, yesterday he gave a long speech which turned political at certain points, but again tomorrow, today itself, we'll be seeing a huge Indian diaspora interacting with the Prime Minister. There will be politics, there will be business, there will be strategic references here. But yesterday in his speech, it was very different. The manner in which he usually speaks at international forums, it was very informal. It was in Hindi, he was reaching out to all the diaspora there, made a lot of jokes as well. Do you think, are we expecting any sort of speech or address today to the diaspora? And Anjana, these are the latest visuals on our screens as well. Yes. I will just interrupt you there for a second. This is the Prime Minister right now. Yes, walking. Yes, Anjana, please go ahead. Yeah. So Prime Minister Narendra Modi has already entered the premises. The bilaterals have begun between the two countries. But yeah, it did turn political yesterday. There were a lot of jokes, but that's his people connect. That Prime Minister Modi is the master of communication, and he did it yet again. I mean, the kind of claps and the kind of euphoria. After the event was over, we were out and we saw Indian citizens absolutely feeling proud and great about the entire interaction. But what is very tricky today, quickly if you have a 30-second, I can tell you, with Denmark, the relationship has been absolutely up and down, because with regard to the 1995 Kim Devi extradition in 1995, he is accused of the arms dropping case in Purulia, West Bengal. He's here, and his extradition is something that the Indian government has been wanting. 2002, Atal Bihari Vajpayee had come to Denmark. After that, there has never been a bilateral between a Danish Prime Minister and an Indian Prime Minister. Manmohan Singh did come here as Prime Minister, but that was to participate in the UN climate change. Because when the government here did not take up the extradition and appeal against it in the Supreme Court, then the Indian side had actually downscaled the relationship. But I think again on a new footing, Prime Minister Narendra Modi wants to establish relations with Denmark. And let me tell you, Mette Frederiksen, interestingly, Pooja, is a very popular leader. She was highly acclaimed for her management of COVID when Europe and a lot of countries of Europe were reeling under the pressure of COVID. So she's a social democrat, and she's a very popular leader here in Denmark. So the briefing here, I'm sure, is going to be very interesting, and what comes out of these two prime ministers meet is also going to be something that India is going to be looking at. Now, the visual currently on our screen is the Prime Minister talking to the Danish Prime Minister, Mette Frederiksen, who's also one of the youngest Prime Minister of the country. And as we take a look at this visual, and Anjana is there, this is the private residence, and clearly the Prime Minister of Denmark showing the Prime Minister around, and interaction is currently on. This is the latest live visual on our screens right now. And Anjana, if from what I saw when he arrived at the airport as well, the Prime Minister has been there since the beginning. She received Prime Minister Narendra Modi, and now there is an interaction taking place. There was a photo opportunity, and that is very heartening to see. Absolutely. India, I think the Danish Prime Minister accords great value to Prime Minister Narendra Modi's visit. The Nordic Summit is to be held tomorrow. So all these countries, in fact, if you see, be it Germany or be it Denmark today, France tomorrow, these countries have been looking forward. India has become a key player. Post the Russia-Ukraine war, India and India's stand, the much talked about independent foreign policy or the Atmanirbhar foreign policy that India has adopted is actually a huge center of conversation around these countries. So I think she was there at the airport receiving him. The Indian diaspora was there. So as of now, everything euphoric. Let's see what comes forth from here. Because when German Chancellor Olaf Scholz and Prime Minister Narendra Modi briefed yesterday, they were very clear that we are
we want to disrupt the so-called superpowers of the world, and we emerging powerful countries are here to collaborate on every step. So I think we'll all be waiting for what they have to say here when they come here for the press briefing. Anjana, that visual that is still on, do tell us and our viewers this. Why is this 3-day visit to Europe by the Prime Minister so significant? Why should we know that this is not just any other foreign visit by the Prime Minister this time? See, I think, Pooja, if you sum it in 4 or 5 lines, it begins with the Russia-Ukraine war, yes, and India's independent foreign policy, in which we have made it clear any pressure from any country is not acceptable to India. We are very clear. At any point, with every country, we will have a one-to-one relationship. So we have good relations with America. Joe Biden has been holding talks. The British Prime Minister Boris Johnson just left India, and he said that India can be a key player. India has emerged as an important power, and what India has to say on these issues, because India has clearly stated that if it is important for our country, we're going to go ahead with the petrol deals or for our defense deals. If we depend on Russia, we are going ahead with that. So I think a lot of things gather together, and that's how this entire momentum has built over a period of time, that India and its independent foreign policy is something that the world is talking about, appreciating at several steps, but at the same time knowing that no amount of pressure is going to work on our stand, as you call it, yes, in the Russia-Ukraine war. And that was India has definitely come across very strong, that we have held on to our own despite pressure from the West, or even to some level from Ukraine and Russia. Anjana, also about this visit, Denmark also has a royal family. There is this strong culture of royalty there in the country. Are we expecting any interaction with the royal family, any meeting, formal or informal, anything that you're picking up on that, Anjana? एब्सोल्युटली पूजा, आज शाम में क्वीन के साथ भी प्रधानमंत्री का भोज है, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े अपने दर्शकों को जरा आज तक पर भी दिखा दें। देखिए, यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं अब से कुछ ही देर में। एसपीजी के तमाम लोग हैं जो फाइनल चेक्स यहां पर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो डैनिश प्राइम मिनिस्टर हैं वो दोनों ही मेटे फ्रेडरिक यहां पर पहुंचने वाली हैं, और हम उनके आवास पर ही इस वक्त मौजूद है। एसपीजी के तमाम लोग आपको फाइनल सिक्योरिटी चेक्स यहां पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार बाहर लिए चलते हैं अपने दर्शकों को जरा और दिखाते हैं। हम इस वक्त प्राइम मिनिस्टर जो है डेनमार्क की, उनके रेसिडेंस पर मौजूद हैं, और यहीं पर ये बातचीत चल रही है। ये बायलैटरल जो आप देख रहे हैं इस वक्त हो रहा है, ये डैनिश प्राइम मिनिस्टर मेटे फ्रेडरिक का घर है, और ये उनका प्राइवेट रेसिडेंस है। ब्योनवा कासल इसे कहा जाता है, और ये देखिए यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी बातचीत हो रही है। अगर यहाँ की प्रधानमंत्री पर चर्चा करें तो वो एक बहुत लोकप्रिय नेता हैं, बहुत यंगेस्ट, सबसे कम उम्र की वो यहाँ पर डेनमार्क में प्राइम मिनिस्टर चुनी गई हैं। सोशल डेमोक्रेट हैं, उनकी अपनी एक सोच है, अपनी रणनीति है, और उनकी लोकप्रियता बहुत है अपने देश में। कोविड को उन्होंने जिस तरह से यूरोप के बाकी देश जब कोविड की मार झेल रहे थे तो उन्होंने अपने देश को किस तरह से बचाया, इसको लेकर उनकी प्रशंसा हुई। कई सारे कुछ स्कैम्स भी हालिया दिनों में हुए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये डेनमार्क का दौरा भी बहुत दिलचस्प है। ये बायलैटरल के जरिए क्या रिश्तों में बेहतरी होगी, सबकी नजर ये रहेगी। क्या किम डेवी का प्रत्यर्पण अभी भी भारत के लिए एक बड़ा कंसर्न है? 1995 में पुरुलिया में, पश्चिम बंगाल में हथियार गिराने का जो मामला था, आर्म्स ड्रॉपिंग का, उसमें वो आरोपी है। उसके प्रत्यर्पण की कोशिशें भारत कर रहा था, लेकिन वो नहीं हो पाया। यहाँ की सरकार ने जब सर्वोच्च अदालत में यहाँ पर उसके खिलाफ अपील नहीं किया तो भारत सरकार ने स्केल डाउन कर लिए थे अपने रिश्ते। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री यहां पर आए थे, उनकी बायलैटरल मीटिंग हुई थी। उसके बाद बायलैटरल कभी नहीं हुआ। हाँ, प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह यहां पर जरूर आए थे, पूर्व प्रधानमंत्री, लेकिन वो यूनाइटेड नेशंस के क्लाइमेट चेंज वाले फोरम में यहां पर वो आए थे। बायलैटरल टॉक्स नहीं हुई थी। तो इतने लगभग 20 साल के गैप के बाद, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बाद 20 साल के गैप के बाद ये बायलैटरल हो रहा है। और एक बार फिर से आपको ये दिखा देते हैं, ये तस्वीर देखिए, ये उनका घर है, डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे एंडरसन का, और यहीं पर ये बायलैटरल मीट जिसके अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उन्हीं का पूरा रेसिडेंस है। एक बहुत खूबसूरत ये
देश है और बहुत खूबसूरत कोपेनहेगन की आज की ये सुबह भी हो गई है। सुबह ठंड बहुत ज्यादा थी, लेकिन रिश्तों की गर्माहट जैसे अब बढ़ती जा रही है दिन की दोपहरी आते आते। और ये चारों तरफ आप देखेंगे इस कासल में भी, तो चारों तरफ इस कासल के आपको एसपीजी के, डेनमार्क के तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस दिखेंगे, क्योंकि चारों तरफ से पेड़ों के बीच में ये पूरा जो कासल है वो पेड़ों के बीच में है। यहाँ भी दिखा दीजिए, देखिए अभी हम लोग चर्चा कर ही रहे थे तो एक एसपीजी वाले इधर से भी आ रहे हैं। तो चारों तरफ, क्योंकि बहुत बड़ा ये कासल है और जैसे लगता है चारों तरफ जंगल ही जंगल है, उन सब के बीच ये कासल है कोपेनहेगन में। और यहीं पर ये चर्चा इस वक्त हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से इन तमाम यूरोपीय देशों के साथ अपने रिश्तों को आगे ले जा रहे हैं। याद रखिए, सबसे ज्यादा नजर डेनमार्क में, ये बायलैटरल तो है ही, लेकिन इसके बाद बेला सेंटर है जहां पर इंडियन डायस्पोरा के साथ प्रधानमंत्री की बैठक होगी और उनका इंटरैक्शन है उनके साथ। लेकिन सबकी नजर इस बात पर है कि कल जो नॉर्डिक समिट होने वाला है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री डेनमार्क की प्रधानमंत्री से बातचीत कर रहे हैं, कल जो 4 मुल्क और शामिल हो रहे हैं जिसमें आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, तो इसमें अगर आप फिनलैंड और स्वीडन को देखें तो दोनों ही नेटो में शामिल होने की महत्वाकांक्षा रखते हैं। उस पर व्लादिमीर पुतिन रूसी राष्ट्रपति ने सीधी धमकी दी है कि अगर ऐसा होगा तो हम उनके खिलाफ जंग छेड़ेंगे। तो वो एंगल भी है और भारत ने चूंकि एक बहुत ही न्यूट्रल स्टैंड रखा है, न्यूट्रल से भी ज्यादा इसे कहा जाता है कि हम अपनी स्वतंत्र विदेश नीति लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में क्या ये देश ये कहेंगे कि भारत भी खुलकर रूस के खिलाफ अपनी बात कहे? ये दबाव कहां होगा, क्योंकि भारत ने इस पर लगभग हर जगह पर साफ कर दिया है कि हम अगर अपनी तेल की जरूरतों के लिए, रक्षा की जरूरतों के लिए अगर हमारा एक रिश्ता है रूस से तो वो कायम रहेगा। उससे इंडिपेंडेंट अगर आपको हमारे साथ रिश्ता बनाना है तो उसको आप बनाइए। और यही हमने जर्मनी में होते हुए देखा और उसके बाद से आज डेनमार्क में। एक बार फिर से, चूंकि आप तस्वीरें देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक की, इसलिए आपको दोनों के ही राजनीतिक सफर के बारे में जल्दी जल्दी बता देते हैं, क्योंकि 2019 में सबसे युवा प्रधानमंत्री के तौर में मेटे फ्रेडरिक ने यहां पर कार्यभार संभाला है और उनकी लोकप्रियता का जिसका हम लोग जिक्र कर रहे थे बार बार, एक महिला और वो भी उन्होंने इतनी कम उम्र में इस पद को हासिल किया। बहुत दिलचस्प किस्से हैं उनके बारे में। उन्होंने एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट के तौर पर रेन फॉरेस्ट में पेड़ ना काटे जाएं, इसके लिए उन्होंने एक एक्टिविस्ट के तौर पर अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी और धीरे धीरे वो पॉलिटिक्स में आई और इसी में वो रह गए। उनके पिता एक स्टेनोग्राफर थे, उनकी माँ एक टीचर थी, लेकिन उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी। उन्होंने शुरुआत से ही एक्टिविस्ट और उसके बाद से वो पॉलिटिक्स में आ गई, सोशल डेमोक्रेट लीडर बनी और सबसे कम उम्र में वो प्रधानमंत्री बन गई हैं डेनमार्क की। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफर को देखें तो उन्होंने गुजरात में मुख्यमंत्री रहने के बाद प्रधानमंत्री देश के बने हैं और वो नए सिरे से भारत की कूटनीति को तमाम यूरोप के देशों के साथ भी आगे ले जा रहे हैं। ये सब कुछ देखिए उस साए में हो रहा है जो रूस यूक्रेन की जंग है। ये सब कुछ उस साए में हो रहा है जिसमें सबसे ज्यादा दबाव इस बात को लेकर है कि भारत का क्या स्टैंड है। लेकिन भारत ने ये साफ कर दिया है, हम युद्ध के विरुद्ध हैं। आपने देखा जर्मनी में भी प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि युद्ध में कोई विजेता होता ही नहीं है, युद्ध में सबकी हार होती है, नुकसान सबका होता है। आपसी बातचीत के जरिए ही, वार्ता से ही किसी भी समस्या का हल ढूंढा जा सकता है। तो ये उन्होंने बिल्कुल साफ और स्पष्ट कर दिया है। लेकिन इसी के साथ अगर कोई ये चाहता है कि रूस के विरोध में खुलकर भारत बोले तो इस तरह के किसी भी दबाव को भारत नहीं मानने वाला है। भारत ने बल्कि सबका दोहरा चरित्र सामने रख दिया है कि चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप के देश हो। जर्मनी का आप देखिए कितना वो गैस खरीदते हैं और ऑयल खरीदते हैं रूस से। ऐसे में भारत ने साफ कर दिया है कि दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। आप जितना तेल एक शाम में खरीदते हैं, हम लोग शायद पूरे महीने में भी नहीं खरीदते। खैर, ये पूरा जो रिश्ता है और इसीलिए यूरोप के ये तमाम देश और उनसे नए सिरे से रिश्ता बनाने की कोशिश है कि आप हमारा जो स्टैंड है रूस को लेकर यूक्रेन वॉर में, उस पर हम निगोशिएट करने को तैयार नहीं है, उस पर हम किसी दबाव में आने को तैयार नहीं है। जो भारत के हित में होगा हम वही करेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ अगर ये तमाम यूरोपीय देश, जिसमें शक्तिशाली फ्रांस, जर्मनी, तमाम मुल्क हैं, ये सब एक रिश्ता अच्छा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी भारत खुली बाहों से आगे बढ़ रहा है। नॉर्डिक समिट, फिनलैंड, स्वीडन नेटो की महत्वाकांक्षा रखते हैं। कल नॉर्डिक समिट उनके साथ सुबह में होना है, जिसके बाद प्रधानमंत्री फिर निकलेंगे फ्रांस के लिए। इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं, वो री-इलेक्ट हुए 10 दिन पहले। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक स्टॉप ओवर विजिट में उन्हें पर्सनली बधाई देना चाहते हैं, उन्हें निजी तौर पर कांग्रेचुलेट करना चाहते हैं। तो उसकी तस्वीरें कल आप देखेंगे। लेकिन जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क और डेनमार्क के जरिए जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, इन सब के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बातचीत होगी। तो हमने आपको पूरी तस्वीर समझाई कि चाहे वो डेनमार्क की प्रधानमंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, दोनों देशों के रिश्ते कैसे बेहतर होंगे, क्या नए सिरे से आगे बढ़ेगा। ग्रीन एनर्जी पे बहुत फोकस है और हमने पहले भी जानकारी भेजी थी, डालमिया सीमेंट के यहाँ पर सीईओ है जो कि एमओयू भी साइन करने वाले हैं, तो कैसे फुटप्रिंट्स को, जो कार्बन फुटप्रिंट्स है उसको कम किया जाए, रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी पर काम किया जाए, ये सब भी इस पूरी दौरे में एक तरह से वो भी फोकस में है। लेकिन दूसरी तरफ वो सब कुछ यहीं पर होगा। प्रेस ब्रीफिंग जब आप देखेंगे, एक बार फिर से ये नजारा दिखाते हुए एक बार फिर से आपको दिखा दें, ये वो कासल है जहां पर इस वक्त ये बायलैटरल मीट चल रही है। चारों तरफ से जंगल का इलाका है, ये एक बार इधर दिखा दीजिए जरा, ये पूरा जंगल का इलाका है। बहुत ही खूबसूरत ये कासल है प्राइम मिनिस्टर मेटे फ्रेडरिक का। और ये देखिए, ये चारों तरफ इस तरह के घने जंगल हैं, उधर भी दिखाइए। और इन जंगलों के बीच से सिक्योरिटी की पूरी यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं और हर तरफ आपको एसपीजी और यहाँ पर जो ये एक बार दिखा दीजिए, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कुछ लोग आ रहे हैं। कुछ ही देर के बाद ये माना जा रहा है कि अब बातचीत खत्म होगी, उसके बाद दोनों प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे प्रेस ब्रीफिंग के लिए। यहाँ पर चारों तरफ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये वो कासल जिसमें ये बैठक इस वक्त चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही जो मेटे फ्रेडरिक है डैनिश प्राइम मिनिस्टर के। एक बार फिर से अब आपको अंदर लिए चलते हैं। यहाँ पर मीडिया का बहुत बड़ा हुजूम है, जो डेनमार्क का भी मीडिया है वो यहाँ पर कवर करने के लिए आया हुआ है। और ये यहीं पर कुछ देर में अब हम ब्रीफिंग देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक की तरफ से। अंजना, इंडियन डायस्पोरा की अगर ये बात करें, बिजनेस मीटिंग्स तो और ये जो ऑफिशियल शेड्यूल है, इसके बाद रंग तो उन्होंने एयरपोर्ट से ही जमा दिया ढोल नगाड़े के साथ। क्या जर्मनी के मुकाबले डेनमार्क में भी इंडियन डायस्पोरा का आज कुछ प्लानिंग रहेगा? I'll try and connect again with Anjana Kashyap. She's been showing us exactly how the place is, the castle there of the Prime Minister. That's the visual coming in of the Danish Prime Minister, Mette Frederiksen, who had not only received Prime Minister Narendra Modi, but this was an interaction right there at the residence of the Denmark Prime Minister. After that, as Anjana has been telling us, while that meeting is currently on, we are expecting a statement shortly. But what a beautiful location. Take a look at that. A massive ground and a castle there right at that residence of the Prime Minister. These are visuals on your screen just from about a short while ago, where the Prime Minister had received the Prime Minister Narendra Modi. And then, of course, the Indian diaspora ensuring the drums and dances ready as the Prime Minister landed there in Copenhagen. Now remember, Prime Minister Modi landed in Copenhagen, Denmark, and will be holding a bilateral meeting, and that will be with the Danish counterpart, Mette Frederiksen. Prime Minister Modi will be participating also. There is a Second India-Nordic Summit where there will be also later a business round table in the evening, Indian Standard Time. An interaction with the Indian diaspora is scheduled at about 8 p.m. tonight. But not just that. Very interestingly, remember, Denmark also has a royal family, and Prime Minister will be meeting the Danish Queen as well, because the Queen is attending and hosting a dinner for Prime Minister Narendra Modi. So therefore, a very packed schedule from the Indian diaspora to the Nordic Summit to meeting the Indian diaspora and then meeting the royal family of Denmark as well. But these visuals coming in from the castle and the gardens there of Copenhagen of the Prime Minister. We've just landed at Copenhagen Airport on the second leg of Prime Minister's three-nation tour to Europe. I had a very special gesture. The Honourable Prime Minister of Denmark is here at the airport to receive the Prime Minister. Behind me also is a very enthusiastic band of Indian culture and music right there on the back. And we are waiting now for Prime Minister to alight. He has a packed agenda for the day. Directly from the airport, he is going to the official residence of the Prime Minister of Denmark, where we will have talks. Later on in the day, he has engagements with the business community and thereafter with the Indian community, followed by a meeting with Queen Margaret of Denmark. India today has been tracking this three-day visit today in Denmark, and we'll be taking you through all the latest. After a very short break, we have updates coming in from Rajasthan and Jodhpur, where there have been midnight clashes and then again in the morning over a flag and a loudspeaker. Stones pelted, lathi charged by the police and tear gas. Curfew now in 10 areas. The situation is tense. Let's bring you the ground update after a very short break.
are watching India Today. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com or call 9999892171. When it's the world's biggest news story, there's only one gold standard of journalism. You are watching India.จุดประสงค์ตอนแรกมันไม่ได้คิดอะไรกันคือมันเริ่มจากกับอยากทำแล้วก็ถ่ายด้วยมือถือพอถ่ายแล้วภาพมันออกไปเนี่ยมันเริ่มมีคนสนใจเข้ามาก็มีการสร้างกลุ่มคนก็เริ่มเฮ้ยผมอยากต่อยแบบนี้บ้างแบบนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มจากตรงนี้ถ้าในเรื่องของพรบมวยคือเราไม่ได้เข้าพรบมวยเราไม่ได้จัดมวยเถื่อนผมตอนนี้คือขึ้นอยู่กับกรมปกครองซึ่งเป็นกิจกรรมไฟขับเราไม่ได้เป็นมวยเราไม่ได้เป็นกีฬาเราเป็นกิจกรรมหนึ่งซึ่งมีสมาคมของเราสมาคมไฟขับไทยแลนด์You are watching in बचपन जिंदगी The Empire suddenly gave her the point, which is really unfair.
that was one of the reasons I've lost is what I felt. I mean, that is my feeling because, you know, at that minute it would 14-11 and you'd never know, it would have been 15-11, but it was all of a sudden 12-14 and she took continuous points. And I think this was one and it was very unfair. When it's the world's biggest news story, there's only one gold standard of journalism. When it's the world's biggest news story, there's only one gold standard of journalism. You are watching India Today. You are watching India Today. Fresh violence was reported from Jodhpur today morning. That is after the midnight clash that took place over a flag and a loudspeaker. Anti-social elements and miscreants pelted stones at cops. Police had to resort to lathi charge and even tear gas. As of now, there is curfew in 10 areas of Rajasthan. Remember, these fresh clashes have also now led to politics and the BJP attacking the Gehlot government. Let's take a look first at all the headlines that have been coming in and what is the latest in it. Fresh violence in Jodhpur after midnight clashes over flag and loudspeaker, pelting stones at cops, resorting to lathi charge, curfew in 10 areas. Gehlot government is under fire over the clashes. BJP blames Rajasthan government for violence. Congress neta calls it choti si baat. It's a political showdown over Rahul Gandhi's viral video of partying at a Kathmandu nightclub. The jeering BJP labels the Congress MP as a party-time neta, but Congress defends it, saying, is it a crime to attend a wedding? Loudspeaker debate now gets noisier. Owaisi slams MNS's Raj Thackeray over the ultimatum, demands the arrest of the MNS chief. BJP MP Parvesh Verma, meanwhile, demands the UP loudspeaker model in Delhi now. Home Minister Amit Shah in Karnataka today amid the cabinet rejig speculation ahead of the crucial elections in 2023. Chief Minister Basavaraj Bommai will be holding a dinner meeting with Amit Shah. After a massive outreach in Berlin, Prime Minister Modi lands in Denmark today. This is day 2 of his Europe visit. Meeting the Danish counterpart Mette Frederiksen and are set to attend a Second India-Nordic Summit amid a packed itinerary.
Rahul Gandhi was spotted partying at a nightclub in Kathmandu. The video has now gone viral and expectedly has become political as well. Various BJP leaders have launched a scathing attack at the Congress leader after this video on your screen of him partying at a nightclub. Now, Bharatiya Janata Party has slammed Rahul Gandhi for partying while they're saying there is a serious crisis not just internally within the Congress party but also in Congress-ruled states like Rajasthan and a massive defeat in Punjab. Now, the BJP netas are calling him a party-time neta, while others are questioning the seriousness with regard to politics of the Congress leader. Rahul Gandhi, just giving you a background here, was in Kathmandu to attend, as we are being told, his journalist friend's wedding ceremony that was held on Monday. Meanwhile, Smriti Irani is visiting Wayanad. Wayanad is in Kerala and is Rahul Gandhi's turf. Smriti Irani, remember, had defeated Rahul Gandhi in Amethi and has now gone to Wayanad on the day when Rahul Gandhi's video of partying is viral. राहुल गांधी जी हैं, इनका दिक्कत क्या है? ये फुल टाइम पर्यटन और पार्ट टाइम जो है वो पॉलिटिकल पाखंड। तो ये फुल टाइम जो पर्यटन करता हो, पार्ट टाइम पॉलिटिकल पाखंड में लगाओ, परिश्रम में लगाओ, तो परिश्रम में भी ये सब का दिखाई पड़ता है उनका। तो जब तक ये फैमिली फ़ोटो फ्रेम में फिक्स ये पार्टी और पप्पू के चोचले और परिवार के घोंसले में ऐसी सिमटी रहेगी, तभी इस तरह का उसकी जगहसाई होती रहेगी। सवाल यह है कि राहुल गांधी कहां पर हैं और किसके साथ हैं। सवाल यह भी है कि क्या चाइना के एजेंटों के साथ राहुल गांधी पार्टी कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी जो ट्वीट करते हैं या संसद में जो भाषण देते हैं चाइना के पक्ष में और भारत की सेना के खिलाफ, क्या वो इन्हीं लोगों के दबाव में दिया जाता है जिनके साथ वो पार्टी करते हुए दिख रहे हैं? देश विरोधी जो एजेंडा राहुल गांधी के द्वारा पुश किया जा रहा है, क्या उसके पीछे चाइना है? अच्छी बात है, पार्टी तो कर ही सकते हैं वो। अब वो किसके साथ पार्टी करें उसमें हम लोगों को क्या एतराज है? हम लोग तो पार्टी का काम करते हैं, वो पार्टी करते हैं, इतना ही अंतर है। देश में दो मॉडल हैं। एक, प्रधानमंत्री मोदी जी सेवा भाव से 365 दिन 24 घंटे देश की सेवा करना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और दूसरी तरफ पार्टी करना जो राहुल गांधी जी का या विदेश भाग जाने का जो एक उनकी राजनीति है। तो ये तो कांग्रेस पार्टी इस पे जवाब दे। पार्टिंग ज्यादा जरूरी है और पार्टी कम, और इसीलिए इनके ही पार्टी के लोग उन्हें कहते हैं कि ये पार्ट टाइम नेता नहीं, ये तो पार्टिंग टाइम नेता है। ये सारी चीजें बताती है कि राहुल गांधी ट्विटर पर प्रोपेगेंडा तो भरपूर करेंगे, परंतु जनता के बीच, प्रजा के बीच रहने का या जनता के बीच रहकर वहां पर उनके बीच गंभीरता से मुद्दों को उठाने का दमखम उनमें नहीं है। Now, interestingly, while the BJP is charging at Rahul Gandhi, Congress is defiant, defending Rahul Gandhi, saying that attending a wedding of a friend is part of a culture and not a crime. इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे कि देश के लोग दूध क्यों नहीं खरीद पा रहे, दाल क्यों नहीं खरीद पा रहे, सब्जी क्यों नहीं खरीद पा रहे, शिकंजवी क्यों नहीं पी पा रहे? पर आपको राहुल गांधी जी को गाली देने से फुर्सत मिले, वो प्रधानमंत्री हो या भाजपा के नेता हो, आसमान के जहाज से लेकर टेलीफोन की तरंगों से लेकर जमीन के नीचे पाताल में कोयले तक सब मोदी जी ने बोली पर लगा रखा है। और सवाल हमसे पूछ रहे हैं। Mr. Gandhi is on a private visit to attend a marriage in Kathmandu. And there is a media person's correspondent's wedding. Therefore, he has been there to attend that marriage. What is the harm in attending a marriage? The problem with these people is that they see everything in a different prism. It's very sad that BJP, a national party, a governing party, is doing this kind of cheap things, and ministers are also jumping into it. ऐसा है कि वो पार्टी कब नहीं करते और अच्छी पार्टी करते हैं, तभी उसके बाद ऐसे वक्तव्य आते हैं उनके। Across to Supriya Bhardwaj reporting on the latest. Supriya, because you also closely track the Congress party, what is the mood like within the party with this video that has gone viral? The BJP is attacking Rahul Gandhi on this, and it has been now a tag that has been put on Rahul Gandhi that he's always out, he's vacationing while the Congress is in turmoil. How is the Congress right now trying to be in damage control?
Well, there is no damage control as far as this entire saga is concerned. Okay. Pooja, Congress party has thrown its weight behind its former president, saying that Rahul Gandhi is like any other person, is entitled to go and attend the wedding function of his friends or for his own personal visits. They have also come out and said that BJP is doing this because they want to divert the attention of the people from the burning issues like that of inflation, that of price rise, at the same time also that of the power crisis which is plaguing the country. So Congress leaders Randeep Singh Surjewala, to Manikam to go to other who's who in the party have gone all out and said that there is nothing wrong in going and attending a wedding of a friend. Rather, the BJP should answer about the power crisis which is there in the country. They should talk about the high fuel prices. They should talk about the inflation which is going on. Also, Pooja, as far as the Congress party is concerned, they are adding that whenever Rahul Gandhi is required to do a particular job for the party, he is always available, whether it is the upcoming Telangana tour which is going to be on the 6th, and whether it is the following Chintan Shivir in Rajasthan or that in Gujarat. So they are saying at the moment Rahul Gandhi is not holding any organizational post. He is just a member of parliament. He is not the Congress president or the general secretary. So they are saying that as far as Mr. Gandhi is concerned, he treats party above all and is always just have to available interrupt you here because there are more reactions coming in on what is happening in one of the Congress-ruled states, Rajasthan, where remember there's a lot of violence that's taken place. Reactions coming in. Let's listen in. स्वतंत्रता सेनानी बालमुकुंद बिस्सा जी की मूर्ति के ऊपर काला और हरा कपड़ा और टेप लपेट करके एक मजहब विशेष का झंडा वहां लगाया गया। बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स रोड पर लगाए गए। कार्यकर्ताओं द्वारा उस झंडे को बालमुकुंद जी की मूर्ति के अपमान न करने के चेतावनी देने और उसे हटाने का आग्रह करने पर उनके साथ जिस तरह से मारपीट की गई, मारपीट के बाद में एक राय होकर के जिस तरह से वहाँ हमला किया गया, पुलिस चौकी पर पथराव करके पुलिस चौकी को तोड़ा गया, गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया गया। लेकिन जब पुलिस वहाँ पर बड़े जाब्ते के साथ में पहुँची तो बजाय उपद्रवियों को खदेड़ने के पहले पुलिस ने ऐसे लोग जो पीड़ित थे उन्हीं पीड़ितों के ऊपर लाठीचार्ज किया और उस लाठीचार्ज में कई पत्रकार मित्रों को भी चोटें लेना पड़ा। पुलिस के अधिकारियों ने बिना देखे सोचे समझे पत्रकारों को और अन्य लोग जो वहाँ मौजूद थे, जो इस तरह की घटना का प्रतिकार करने के लिए, घटना को रोकने के लिए वहाँ एकत्रित हुए थे, उन सब के ऊपर ये लांछन लगाते हुए कि ये शराब के नशे में धुत हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, बेवजह पीटा गया। पथराव निरंतर हो रहा था और उस पथराव के कारण से बहुत सारे लोग चोटिल भी हुए। जैसा अभी माननीय जिलाध्यक्ष जी ने कहा, एक ही तरह के पत्थर जो या शायद किसी योजनाबद्ध तरीके से, और ऐसा मैं इसलिए कह पाता हूं क्योंकि अभी पिछले दिनों में जिस तरह से प्रदेश में करौली से लेकर के अन्य स्थानों पर जिस तरह की घटनाएं हुई है और जिस तरह से सुनियोजित रूप से छतों पर से पत्थर जो पहले से एकत्रित किए थे वो पत्थर बरसाए गए, ऐसा प्रतीत होता है कि इसी तरह की मंशा के साथ में तैयारी पहले भी की गई थी और जो है पथराव हुआ। रात भर पुलिस प्रशासन के साथ में बातचीत और वार्ता का दौर चला और वार्ता के बाद में ईद की नमाज शांति के साथ में हो। आदरणीय सूर्यकांता जी इतनी वय होते हुए भी सारी रात वहाँ बैठी थी और बैठ करके उन्होंने पुलिस प्रशासन के साथ में लोगों को समझाइश करके और उससे जो है मार्ग निकाला। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि सुबह ईद की नमाज के समय में ऐसा क्या हुआ, किसने किसको क्या कहा, क्यों लोगों को और किस तरह से उकसाया गया कि वहाँ से एक राय होकर के निकलने के बाद में जे शहर भर में इस तरह के हुड़दंग, तोड़फोड़, गाड़ियों को तोड़ के साथ तोड़फोड़, घरों में घुस कर के लोगों के साथ में मारपीट, महिलाओं का अपमान, छोटी बच्चियों के कपड़े फाड़ करके उनके पांव तोड़ देना, दुकान में बैठे लोगों का दुकान में घुस कर के तलवारों को लेकर के जा कर के सिर फोड़ देना, इस तरह की घटनाएं शहर भर में हुई। रास्ते में खड़ी हुई गाड़ियों के कांच तोड़े गए, घरों पर पत्थर फेंके गए, दुकानों के शीशे तोड़ दिए गए, लेकिन पुलिस और प्रशासन मौन बना हुआ मूक दर्शक की तरह देख रहा था।
मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि प्रशासन जब रात में इतनी बड़ी घटना हुई और इतनी बड़ी घटना होने के बाद में इस बात का अंदेशा था कि एक साथ में एक जगह इकट्ठे हुए 25-30 हज़ार लोग जो है वो किसी तरह की प्रतिक्रिया कर सकते हैं या किसी तरह की घटना को, बुरी घटना को अंजाम दे सकते हैं और समाज कंटक एकत्रित होकर के जो है किसी तरह का उपद्रव या बवाल कर सकते हैं। पुलिस और प्रशासन ने इसको पहले से तैयारी क्यों नहीं की? यदि तैयारी थी तो क्या दबाव था कि उसके चलते पुलिस ने इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए पहले से जो है योजना नहीं बनाई और पुलिस जाब्ते का डिप्लॉयमेंट नहीं किया? इसके बाद में सरे राह चलते हुए गांछा बाजार के एक युवक के पीठ में मोटरसाइकिल पर पीछे चलते हुए छुरा भोंक दिया गया। वो आज ऑपरेशन करके छुरा निकाला गया है। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद में भी 3 घंटे बाद में उसकी सर्जरी, जब हम सब लोग हॉस्पिटल पहुंचे उसके बाद में शुरू हुई। छुरा निकाला गया। वो अपने जीवन और मृत्यु के साथ में संघर्ष कर रहा है। भगवान उसको शीघ्र स्वास्थ्य दे जो और लंबी वय दे, इसकी प्रार्थना करने के साथ साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह का तांडव जोधपुर में हुआ है, जोधपुर में कभी इस तरह की परंपराएं नहीं रही है, लेकिन सरकार के बेजां हस्तक्षेप के कारण, दबाव के कारण से राजस्थान भर में जिस तरह का क्रम इस तरह की घटनाओं का चल रहा है, उनके चलते उसी के मार्ग पर जोधपुर भी आगे चला है। हमने जितने लोग हम यहाँ उपस्थित हैं, आदरणीय राजेंद्र जी, आदरणीय मेयर साहिबा वनीता जी, आदरणीय सूर्यकांता जी, आदरणीय अतुल जी, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, जिले के पदाधिकारी, हम सब लोग कमोबेश सभी स्थानों पर गए, लोगों के साथ में समझाइश की। जब हम सोनारों का बास में पहुँचे, सोनारों का बास में जैसा मैंने उल्लेख किया कि घरों में घुस करके लोगों के साथ में अत्याचार हुआ था, उनके सिर फोड़ दिए गए थे, उनकी महिलाओं के साथ में अपमानजनक व्यवहार किया गया था, तेजाब की बोतलें फेंकी गई थी, मंदिर को क्षति पहुंचाने की कोशिश पत्थर मार मार करके की गई थी, मूर्ति को तोड़ने की कोशिश की गई थी, लोगों के घर में जाकर के तलवार से हमला किया गया था, दुकान पर बैठे हुए लोगों के साथ में मारपीट की थी। लेकिन उसके बाद में भी ऐसा सब करने वाले एक राय होकर के चौक में एकत्रित होकर के मजहब विशेष के नारे लगाते हैं और पुलिस फिर भी खड़े होकर के उनको खदेड़ने के बजाय उनको रोक करके वहाँ खड़ी थी। निश्चित रूप से ये प्रश्न इस बात का खड़ा करता है कि पुलिस और प्रशासन किसी न किसी जो है अदृश्य दबाव के तहत इसमें काम कर रहा है। और मैं तो ये कहूँगा कि जब इतनी दर्दनाक स्थिति मुख्यमंत्री के गृह जिले में हो रही थी, तब मुख्यमंत्री रात को 12 बजे से लेकर के आज दिन में 3 बजे तक, जब उन्होंने एक ट्वीट करके फौरी तौर पर यह कहा कि मैं सबसे अपील करता हूं कि सब लोग शांति सौहार्द बनाए रखें, उससे पहले न तो इस तरह की कोई अपील जारी करते हैं और 3 बजे के बाद में वो दूसरा ट्वीट करके लोगों से ये आग्रह करते हैं कि अभी मुझे कृपया, मैं व्यस्त हूँ इसलिए जो है गुलदस्ते न लेकर के आएँ। तो अंग्रेजी में जो कहावत है कि नीरो फिडल्ड व्हेन रोम वाज बर्निंग, कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था, उनका अपना शहर जल रहा था, उनके अपने शहर में दंगा चल रहा था, उनके अपने शहर में जो शहर की आत्मा, शांति, भाईचारा और सौहार्द है उसको फूका जा रहा था और वो जन्मदिन के गुलदस्ते लेने में, जन्मदिन की खुशबू जो है शुभकामनाएं लेने में व्यस्त थे। ये निश्चित रूप से साधारण विषय नहीं है। और साथ ही साथ में आज में जब प्रशासन से हम लोगों ने चर्चा की तो प्रशासन ने कहा कि दंगा हो रहा था और कांग्रेस पार्टी के लोग जयपुर में बैठ करके, मुख्यमंत्री जी ने जो राग पिछले दिनों में आलापा है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग दंगा करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि सुबह जितनी घटनाएं हुई, जो भी घटनाएं सुबह हुई, गिनती उनकी 15-20 जगह पर जिस तरह की घटनाएं हुई, क्या वहाँ भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता था? क्या वहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक भी स्वयंसेवक उपस्थित था? केवल अनर्गल। और क्या वहाँ दंगा करने के लिए कोई दूसरा पक्ष पथराव कर रहा था? एक तरफा कार्रवाई की गई है, एक तरफा जो है इस तरह का उपद्रव बवाल मचाया गया। पुलिस एफआईआर लेने तक से कतरा रही थी। अभी जब प्रशासन पर दबाव पड़ा है तब जाकर के पुलिस ने एफआईआर स्वीकार करना तय किया है। हमने कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर को साथ बिठा करके चेतावनी दी है कि यदि इस विषय में प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो हम सब लोग मिलकर के जालोरी गेट पर धरना देंगे, हजारों की संख्या में लोगों के साथ में बैठेंगे
और वहाँ बैठ करके प्रशासन को इस बात के लिए मजबूर करेंगे कि प्रशासन जोधपुर की शांति और भाईचारे को बिगाड़ने वाले ऐसे सारे असामाजिक तत्वों को के खिलाफ कार्रवाई करे। अमूमन ऐसा देखा जाता है, हमने प्रशासन को इस बात के लिए आगाह किया है कि ऐसी घटनाओं के समय पुलिस जो है फौरी तौर पर दोनों तरफ के पक्षों के लिए, दोनों तरफ के पक्षों के विरुद्ध इस तरह की एफआईआर लॉन्च करती हैं और इस तरह की एफआईआर लॉन्च करके दोनों पक्षों पर दबाव बनाने की कोशिश करती है। आज की घटनाओं के समय तो कोई भी किसी तरह का दूसरा पक्ष था नहीं, जो कोई भी था वो पीड़ित था। और कल की घटनाएं तो बहुत सारे पत्रकार मित्र खुद उस बात के साक्षी हैं कि किस तरह का व्यवहार पुलिस प्रशासन ने किया और उपद्रवियों ने किया। आपके सामने है कि जो है कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं जिनके सिरों पे पट्टियां बंधी हुई हैं, लोग जो सामान्य जन जिनका कोई विषय नहीं था। मैं चाहूँगा कि एक बार आप इनकी भी चर्चा सुने, इनके मुंह से सुने कि किस तरह से व्यक्ति अपनी दुकान में बैठा था और उसके ऊपर आकर के हमला किया गया। किस तरह से एक छोटी सी बच्ची जिसका कोई लेना देना नहीं था, उस बच्ची के कपड़े फाड़ दिए गए, उसकी लज्जा भंग करने का प्रयास किया गया, उसकी टांग तोड़ दी गई। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र जी के घर में जाकर के उनके दुकान को तोड़ा गया, उनके घर में जाकर के उनके बच्चियों के साथ में मारपीट की गई, उनके घर पे पथराव किया गया। ऐसा जोधपुर में कृत्य करने के किन लोगों का प्रश्रय था? क्यों करके इस तरह की परिस्थितियां जोधपुर में बनी? प्रशासन और सरकार दोनों की इसमें क्या भूमिका थी? निश्चित रूप से इसकी जांच हो। और आप सब पत्रकार मित्रों से भी मेरा आग्रह है कि हम, क्योंकि सब जोधपुर के कस्टोडियन के रूप में काम करते हैं, हम सब लोग जोधपुर की आत्मा, जोधपुर की शांति, जोधपुर के सौहार्द को बनाए रखने की जिम्मेदारी वाले लोग हैं। हम सब लोग भी इस बात की पुरजोर भर्त्सना करें और साथ ही साथ में प्रशासन पर इस बात में दबाव बनाने के लिए भी आप सब लोगों का सहयोग अपेक्षित है। केवल राजनीति न हो, प्रभावी कार्रवाई हो और इसे सुनिश्चित करें, ऐसा मेरा आप सबसे आग्रह है। मैं बता रहा हूँ ना, उसी के कहा मैंने, उसके कपड़े फाड़ दिए गए, उसकी टांग तोड़ दी, वो कॉमा में। That's Union Minister Gajendra Singh Shekhawat speaking on the Jodhpur violence. Remember, he also has a Jodhpur connect. His education is from the city of Jodhpur, and now he's reacting to the violence and stepping up ante against the Gehlot government. Now, remember, there is one by one visuals coming to the surface. There are shocking new CCTV videos that have emerged, and in the latest, as you can see, take a look at this. Mob vandalizing, pelting stones, breaking a bike, at least one vehicle that has been caught on camera. There is then another video now on your screen, shows people with sticks running around, pelting stones, clearly indulging in a rampage. Now the third video, a CCTV video where people are brandishing swords. How easily are swords available, as we can see in these visuals that are coming around? As a result of the violence that has been now reported, curfew has been imposed in at least 10 areas of police stations of Jodhpur. There were fresh clashes that erupted today morning after the clashes at midnight yesterday. Members of two communities brandishing sticks, stones. On one side, there was the chanting of Hanuman Chalisa. On the other, there were Allahu Akbar slogans in Jodhpur. Situation in Jodhpur continues to remain tense after the communal clashes that broke out during wee hours. You can see heavy police presence in Jodhpur near the Jaluri Gate Choraha, where the communal clashes had broken out. In fact, police personnel from nearby police stations have already been summoned and are stationed out here to ensure that the situation once again does not spiral out of control. I would want to show you the Jaluri Gate main Choraha, where the communal clashes are said to have erupted. You can see the Indian flag currently unfurling, but before that, last night when the saffron flag was there, it's being alleged that some of the miscreants had arrived out here and they had on purpose trying to instigate the entire inside the entire situation, had removed that flag and some of the other flags that were already there and replaced them with some other flags, after which they tried to incite other people, after which the violence had broken out, which was being alleged. The police is currently investigating the entire matter. The situation continues to remain volatile, but is said to be under control. Internet ban is already there. It was imposed at 1 a.m. in the night, and curfew is there in 10 police stations
in Jodhpur currently, and there is heavy patrolling which is going on. Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot had been holding deliberations with senior police officials in state capital Jaipur, and the situation, as you can witness right now, is there is an uneasy calm which currently prevails in Jodhpur, and senior officials from the district police and administration are keeping a watch. With camera person Nikhil Sharma and Ashok Sharma, Devankur Vadhavan in Jodhpur for India Today. So the tension that is still prevailing in that area, while as of now there is an eerie calm, the situation is under control, but clearly still very sensitive in that location, because this clash that broke out between two communities was on the morning of Eid festival, where on one side there was Allahu Akbar chanting, then angry protesters on the other side were reciting the Hanuman Chalisa as a counter. Then a huge mob armed with lathis and sticks, also reciting these religious slogans and chanting, then had a face-off. Then again in the morning, fresh clashes get reported. Initially, it was about the removal of religious flags. In the morning, it became about religious slogans. A violent mob in the morning clashed with cops, assaulted them, vandalized vehicles, torched two-wheelers and bikes. We are being told many cops who tried to resolve the situation have received injuries, and cops had to eventually resort to force and resort to lathi charge to disperse the rioters and antisocial elements. 3 at least have been taken into arrest by the cops. कल शाम को जोधपुर के जालोरी गेट पर हुए दो समुदायों के झगड़े के बाद शहर के भीतरी इलाके जो रावतों का बास है, इसमें आप देख सकते हैं इधर एक कम्युनिटी के लोग हैं और पुलिस ने इनको रोक रखा है, और इधर मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दूसरी तरफ दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं जिनको पुलिस रोक रही है। आपस में पत्थरबाजी भी हो रही है और गाड़ियों की भी तोड़फोड़ की गई है। इस समय गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, पूर्व महापौर घनश्याम ओझा, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, ये सब लोग पुलिस से भारी मशक्कत कर रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस समय मैं बताना चाहूँगा कि ये उपद्रवियों ने एक कार को तोड़ा है। इधर दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं जो वो नारे लगा रहे हैं, इधर अशोक गहलोत के खिलाफ नारे लग रहे हैं। कुल मिलाकर तनाव है, पुलिस का जाब्ता मौजूद है इस समय और लगातार तनाव चल रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि ये दोनों पक्षों में जो समझाइश का भी दौर चल रहा है, लेकिन इस समय तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस का जाब्ता लगा रखा है। मैं इस समय भीतरी शहर इलाके में हूँ और यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। अशोक शर्मा। And after this communal clash, expectedly politics has broken out there in Rajasthan's Jodhpur area. Specifically, the Bharatiya Janata Party, which is in opposition in Rajasthan, has slammed the Ashok Gehlot government for the clashes. Now, they are holding the Rajasthan cops and the government as irresponsible. Jodhpur mayor has called out on the Congress government, accusing them of fueling communal sentiments. Congress netas, while speaking on this communal clash, have said it is a small issue, could have been resolved easily. But Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot has now reacted, also called a high-level meeting to take stock of the law and order, and has meanwhile appealed to people of the area to maintain peace in their place. Their agenda is to put religious and communal divide in the forefront so that the issues of inflation, of unemployment, of progress, of development get relegated to the dustbin. They want that Hindus and Muslims should fight so that nobody asks Modi ji, where are the 15 lakhs in every account that you promised? वहाँ पर इस तरह के जो क्रिमिनल एलिमेंट हैं, जो क्रिमिनल एलिमेंट की कम्युनलिज्म का झंडा लेकर के और अपने क्राइम को करते हैं, उनको प्रश्रय मिलता है, उनको संरक्षण मिलता है, और उसका नतीजा है कि वो एक के बाद एक इस तरह की घटनाओं को बेशर्मी और बेदर्दी के साथ कर पाते हैं। इसलिए हमारा तो उनको बिना मांगी सलाह यही है कि सेकुलरिज्म जो है वो सियासी वोटों का सौदा नहीं होना चाहिए, बल्कि संवैधानिक संकल्प का मसौदा होना चाहिए। और जब तक आप सेकुलरिज्म को संवैधानिक संकल्प नहीं मानेंगे और सियासी वोटों का सौदा मान के काम करेंगे, तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी और आप मूक दर्शक बने हुए। And now joining us on this live telecast is Devankur Vadhavan, and with him the Union Minister Gajendra Singh Shekhawat. Listen in. Over to you now, Devankur. What is the minister saying?
आ गए। Well, Pooja, Union Minister Gajendra Singh Shekhawat is here and he has lashed out at the Ashok Gehlot government in Rajasthan. Sir, गहलोत सरकार ने पहले भी कहा है कि ये जो सारे दंगे हैं, जब करौली के दंगा हुआ तो उन्होंने उसके बाद कहा कि बीजेपी इसको ऑर्केस्ट्रेट करवा रही है, पर जो जोधपुर में हुआ उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मुझे लगता है कि आज जोधपुर में जिस तरह की घटनाएं हुई है उसके बाद में ये सिद्ध हो गया है कि इसको ऑर्केस्ट्रेट जो है सत्ता और सरकार और कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस पार्टी के मुखिया करौली में दंगा होता है और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सवाई माधोपुर में होते हैं और अपने किसी पार्टी के कार्यक्रम में बात करके जाते हैं, उनसे उसको विषय को जोड़ते हैं। लेकिन आज का विषय न तो कोई भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति था, न कोई कार्यकर्ता था, न कोई आरएसएस का कोई स्वयंसेवक वहाँ था, और न कोई दूसरा पक्ष था कि जो है किसी दंगे में दूसरा पक्ष होना आवश्यक है। दूसरा पक्ष ही था कि जो वहाँ जाकर के कोई जो है घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहा होगा, उकसा रहा होगा। एक तरफा घटना अंजाम की जा रही थी। गजेंद्र जी, आपने प्रशासन से बात की, देना उनको पड़ेगा कि इसको कौन ऑर्केस्ट्रेट कर रहा था। आपने प्रशासन से बात की, जोधपुर पुलिस से बात की, आपने बताया कई लोग घायल भी हो गए और आप कुछ लोगों को दिखा भी रहे थे जिनके आपके हिसाब से सर पर चोटें आई हैं। अगर उनसे आप बुला सकें, आप बता सकें कि किन। देखिए, निश्चित रूप से ऐसे शहर में आज 50 लोग होंगे जो घायल हुए हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, घर में सो रहे हैं, घर में पट्टी बंधवा करके पड़े होंगे, कुछ लोग शायद अभी अस्पताल पहुंच रहे होंगे। ये ऐसी परिस्थिति क्यों बनी? प्रशासन की ने कहाँ इसमें जो है सुस्ती बरती या किसके दबाव में इस तरह की सुस्ती बरती? ये सब जो है इसका जवाब तो निश्चित रूप से प्रशासन ने आपको क्या बताया है? दंगा शुरू कैसे हुआ, किस तरह से जो पूरा बवाल है वो मचा? मुझे लगता है कि ईद के प्रशासन के बताने की जरूरत नहीं है, आंखों देखा हल कर दे। जो है, जो लोग वहाँ मौजूद थे वो सब लोगों के विषय को मैं जानता हूँ। और रात में जिस तरह से घटनाएं प्रारंभ हुई और जिस तरह से इस आज़ादी के अमृत वर्ष में एक स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति का जोधपुर के हृदय स्थल पर जिस तरह से अपमान किया गया, उनके मुंह पर काला और हरे रंग का कपड़ा बांधा गया और उसको रोकने के लिए जब आग्रह किया गया, उसको लेकर के मारपीट करना और उसके बाद में पथराव करना, पुलिस चौकी को तोड़ना, पत्रकारों के साथ में पथराव करना, मारपीट करना, ये सब जब घटनाएं होती है और जब सुबह वापस जब दोबारा घटनाएं होती है तो महिला पुलिस अधिकारियों के साथ मारपीट से लेकर के और इतनी सारे शहर में स्थानों पर घटनाएं होना, ये गजेंद्र जी, कांग्रेस का ये आरोप है कि जो इस साल गुजरात में चुनाव होने हैं, अगले साल राजस्थान में चुनाव होने हैं, उससे पहले जगह जगह बीजेपी दंगा करवा रही है ताकि पोलराइज कर सके, हिंदू मुस्लिम के नाम पे राजनीति कर सके, क्योंकि महंगाई, पेट्रोल डीजल के प्राइस राइज, बेरोजगारी के ऊपर उसके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। ये देखिए परिस्थिति, ये देखिए कि लड़के के गाड़ी में बैठे हुए पीछे से चाकू मारा गया और वो चाकू अस्पताल में 2 घंटे के ऑपरेशन के बाद में वो निकाल पाए। तो ये जो देखिए कांग्रेस के आरोप के कांग्रेस ने जिस तरह का आरोप लगाया है और ये जो परंपरा कांग्रेस ने बना ली है कि अपनी सारी विफलताओं का जो है ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पर या केंद्र की सरकार पर फोड़ना, लेकिन आज तो वो कटघरे में है, न तो कोई दूसरा पक्ष ही नहीं है। तब कौन दंगा कर रहा था, कौन उकसा रहा था, ये तो सबके सामने स्पष्ट हो गया। आपने एक बड़ा आरोप लगाया, कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, वो अपना जन्मदिन मना रहे थे आज, जब जोधपुर में दंगा हुआ उसके बाद। यहाँ आपने बोला कि व्हेन रोम वाज बर्निंग नीरो वाज प्लेइंग फिडल, तो आपने कंपेयर किया उसके साथ। तो कल रात से जोधपुर में रात को लगभग 11 बजे से लेकर अभी हम शाम के जब बात कर रहे हैं तब तक शहर पूरा जल रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने तो 3 बजे जाकर के अपने बर्थडे के फंक्शंस को अति व्यस्त होने के कारण से कृपया गुलदस्ते न लेकर के आए, ये कहते हुए उन्होंने उसको कॉल ऑफ किया है। तो आपको लगता है मुख्यमंत्री को खुद यहाँ पर आना चाहिए था, क्योंकि ये गृह जिला भी है, ये उनकी जिम्मेदारी है, ये उनका शहर है, वो जोधपुर का निवासी और जोधपुर से चुनकर गया वो मुख्यमंत्री होने की दुहाई कई दिन से टीवी पर देते रहे। तो आज जब जोधपुर में इस तरह की अनहोनी हो रही थी, उनको यहाँ मुख्य मौके पर मौजूद होना चाहिए था। फौरी तौर पर उन्होंने गृह राज्य मंत्री और जो है कुछ अधिकारियों को भेज करके यहाँ पर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर दी है, या शायद उनके माध्यम से ये जितना भी कुछ घटनाएं हुई इसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश पर एक आखिरी सवाल है गजेंद्र जी, एक आखिरी सवाल है। जोधपुर को एक पीसफुल काम डिस्ट्रिक्ट माना जाता था, राजस्थान को भी एक कंपैरेटिवली पीसफुल स्टेट माना जाता था, बट करौली के बाद फिर जोधपुर में होना, क्या आपको लगता है? करौली नहीं है, पिछले 3 साल में राजस्थान अपराध की राजधानी बन गया है, सबसे ज्यादा अपराध वाला प्रदेश बन गया है, महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार वाला प्रदेश बन गया है। वो राजस्थान जिसकी पहचान हाड़ी रानी से थी, पन्ना गोरा धाई से थी,
जिस रानी की पहचान मीरा से थी, जिस राजस्थान की पहचान पद्मिनी के जौहर से थी, उस राजस्थान को आज देश और दुनिया में एक रेप कैपिटल के रूप में कलंकित करने का काम इस वर्तमान गहलोत सरकार ने किया है। और राजस्थान छोटी अबोध बालिकाओं के प्रति दुराचार का सबसे बड़ा केंद्र राजस्थान में बनकर के उभरा है। नित्य प्रतिदिन अखबार में इस तरह की घटनाएं मिलेंगी। कल ही समाचार पत्र में छपा था कि पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने बलात्कार किया और उस बलात्कार की रिपोर्ट जो है नागौर जिले में, उसकी रिपोर्ट भी पुलिस प्रशासन दर्ज नहीं करता है। कोर्ट में जाकर के आदेश कराने के बाद में एसपी आदेश करता है कि उसमें दर्ज हो, और अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है। ब्लैकमेलिंग की घटना, रेप के बाद ब्लैकमेलिंग के बाद में रिपीटेड रेप्स, ये रिकरिंग होने के बाद में पुलिस अगर ऐसा कर रही है और फिर भी प्रशासन सरकार अगर चुपचाप बैठती देख रही है, मुझे लगता है कि ये केवल ऐसी एक दो घटनाएं जिनको आप चर्चा कर रहे हो, ऐसा नहीं है। पूरी कानून व्यवस्था ही जो है वो जार जो है इस राज्य के Well, so clearly, Pooja, the allegation against the Gehlot government, which is currently in the dock over the communal violence in Jodhpur, is that it has been looking the other way when the communal violence was happening, when there have been allegedly several incidents of violence, whether it was in Karoli or in Jodhpur, and the BJP minister leveling serious accusations against the Gehlot government, and Chief Minister Ashok Gehlot in particular mentioning that he was celebrating his birthday while communal violence was happening in Jodhpur. So political face-off clearly about what the communal clashes breaking out there in Jodhpur. The situation still tense, and Devankur getting us all the top political reactions. Union Minister Gajendra Singh Shekhawat speaks to India. Today we have some big news coming in. Let's take a look. News coming in from Maharashtra. FIR has been registered against MNS chief Raj Thackeray. This is under section 153, 116 and 117 for inflammatory speech. FIR has been registered in the Aurangabad City Chowk police station. Remember why Aurangabad? This FIR coming in with regard to the speech that he had made just about a few days ago in Aurangabad, that massive rally that he had managed to gather. But this FIR is lodged not just against Raj Thackeray, but 3 other people, including the organizers of that rally. In the Aurangabad rally, just giving you a background, Thackeray had asked people to play the Hanuman Chalisa outside the mosque from the 4th of May as an ultimatum if the loudspeakers there were not removed. Now an FIR has been filed against him. The superstar language war is refusing to end. Now, actor and one of the top actors of his time, Chiranjeevi, has spoken out on how the South Indian cinema used to be viewed and also ignored to a level. Chiranjeevi said he felt insulted and humiliated that for a long time Indian cinema only meant Hindi cinema. The southern superstar credited films like Bahubali and recently the RRR for breaking that language barrier. Meanwhile, actors from the Hindi film industry, specifically top actors like Anil Kapoor and Anupam Kher, put out a video praising the mega hit movie RRR. This after, remember, superstar Ajay Devgan had taken on Kicha Sudeepa for saying that Hindi was not the national language. ఆ టైంలో నేను చాలా హ్యూమిలేట్కి లోనయ్యాను, చాలా అవమానానికి బాధపడ్డాను. అంటే ఇండియన్ సినిమా అంటే హిందీ సినిమా అని మాత్రమే ప్రొజెక్ట్ చేశారు వాళ్ళు. కానీ ఆ తర్వాత నేను గర్వపడేలాగా బాహుబలి 2, RRR ఇలాంటి సినిమాలు దోహదపడ్డాయి. మన సినిమా, మన రీజనల్ సినిమా కాదు, తెలుగు సినిమా హద్దులు ఎల్లలు చెరిపేసి మాదంతా ఒకటే భారతదేశం, మా సినిమాలన్నీ కూడా ఇండియన్ సినిమాస్ అని ప్రతి ఒక్కరు గర్వపడేలాగా. We've seen RRR and it's a
ब्रिलियंट फिल्म, फैंटास्टिक. ऐसी कमर्शियल फिल्म तो मैंने देखी नहीं है. बहुत सुपर, जबरदस्त, मजा आ गया. मजा आ गया. और पूरा 3 घंटे हमने बहुत आउटिंग की. आई थिंक बहुत सालों बाद हमने किसी और की फिल्म देखने गए. हैट्स ऑफ टू राजा मौली साहब. सुपर एंड बोथ द एक्टर्स अमेजिंग. ऑफ कोर्स सुपर. क्या बात है, मजा आ गया. सिनेमा में जूनियर एंड रामचरण, अनबिलीवेबल. बहुत जबरदस्त काम किया. वीर रस की फिल्म है, वीर रस की. जबरदस्त. रिसेंटली साउथ की मूवीज बात की काफी डब. इंडिया की मूवी है यार. साउथ नॉर्थ खत्म. अभी खत्म. इंडिया वन. Listen in now to all the reactions that have been coming in on this language war debate. Hindi is no more national language. So which is the national language today? Which is the national language? National language. Correct? So what is pan-India? Just because ನಾವು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಆ ಟರ್ಮ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು? ಅರೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ನೋಡೋದು ಬಿಡೋದು ಜನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋದು ಮಾತ್ರ ನಾವಿರೋದು. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟರ್ಮಿಂಗ್ ಎಸ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ವೈ isn't ಹಿಂದಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸೆಡ್ ಎಸ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ? ಅವರು ಇವತ್ತು ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಅವರು ಡಬ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಓಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡಿ ಡಬ್ ಆಗಿರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಬೆಟರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಡಿಯನ್ಸಸ್ ಟುಡೇ? ಇವತ್ತು ನೀವು ಪುಷ್ಪ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೀವು KGF ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು, ಅದಕ್ಕೆ ಗೆದ್ರು. சார் இந்த ஹிந்தி சம்பந்தமா சார் மத்திய அமைச்சர் வந்து இந்த ஹிந்தி சம்பந்தமா சொல்லியிருக்காரு, இனிப்பு மொழியா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு. சார் இந்த ஹிந்தி சம்பந்தமா சார் மத்திய அமைச்சர் வந்து இந்த ஹிந்தி சம்பந்தமா சொல்லியிருக்காரு, இனிப்பு மொழியா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு. சார் இந்த ஹிந்தி சம்பந்தமா சார் மத்திய அமைச்சர் வந்து இந்த ஹிந்தி சம்பந்தமா சொல்லியிருக்காரு, இனிப்பு மொழியா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு. சார் இந்த ஹிந்தி சம்பந்தமா சார் மத்திய அமைச்சர் வந்து இந்த ஹிந்தி சம்பந்தமா சொல்லியிருக்காரு, இனிப்பு மொழியா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு. After a very short break, I'll be getting you Home Minister Amit Shah's visit to Karnataka amid a cabinet rejig speculation ahead of elections in the state. Let's bring you what the Home Minister is up to in the state of Karnataka. You are watching India Today. India Today TV wins big awards at ENBA 2021. Bags the best channel of the year. Shines bright with 15 goals. Gaurav Sawant, Best Anchor, English. Preeti Chaudhary, Best Continuing Coverage by a Reporter, English. Shivarur, Best Anchor, English. Udayan Mukherjee, Best Business Program, English. Rahul Kamal, News Director of the Year. India Today Group sweeps with a record 90 awards. India Today Group, the gold standard of journalism. Watching India. You are watching India Today.
Home Minister Amit Shah is in Karnataka at a time when there is speculation about change in leadership and a cabinet rejig. Chief Minister of Karnataka, Basavaraj Bommai, is to host a dinner tonight for the Home Minister at his official residence, and that could possibly be a crucial one. Amit Shah and Basavaraj Bommai are going to also have a one-on-one discussion of the boiling political status in the state, especially with just 1 year to go now for the assembly elections of the state. A month ago, during his last visit, Amit Shah attended the party core committee meeting, setting a target of 150 seats in Karnataka election of 2023 for the BJP. This is, of course, an official visit to the state by Home Minister Amit Shah, where he also paid tribute, as you can see, to the 12th century social reformer and Lingayat Saint Basavana on the occasion of Basav Jayanti. Later, also taking part in a valedictory function of Khelo India University Games. There was bloodshed in a Mysuru bar after a gang war broke out. Members of one gang attacked a 29-year-old of a rival gang with glass bottles and machetes. The attack was done to settle scores of an old rivalry, as it appears now. This shocking attack, as you can see the visuals caught on camera on the CCTV inside the bar. An FIR has now been registered at the Bannor police station in Mysuru. According to the Mysuru police, 2 accused have been taken into arrest so far. The victim, Dayanand, is actually a history sheeter and has named 3 people now in his complaint. Hunt is on for other accused also still underway. After a very short break, let's take you to Denmark today. After a massive outreach in Germany, Prime Minister Narendra Modi meeting the Danish counterpart Mette Frederiksen and set to attend the Second India-Nordic Summit and much more. Let's bring you the details of that visit after a break. You are watching India Today. The Ukraine-Russia crisis is ongoing after a month. Russia confirmed that it had fired a new hypersonic missile during bombing raids in the city of Mariupol. But what are hypersonic weapons? How do they attack the target? Considered the next generation of weapons, these missiles are characterized by their ability to travel at speeds of more than Mach 5, or 5 times the speed of sound. There are 2 types, the hypersonic cruise missile and the hypersonic glider. The latter is carried by a ballistic missile. The glider separates from its missile to reach the upper atmosphere above 50 kilometers. Then it hovers at hypersonic speed towards its target along an unpredictable trajectory. Anti-missile or anti-aircraft defense systems. Without propulsion, it gradually decelerates and can perform evasive actions such as zigzags to reach its target by thwarting opponent interception systems. The cruise missile, meanwhile, has its own propulsion in the form of a ramjet with supersonic combustion. Once in flight, the missile moves at high speed before diving onto its target. This missile flies at a lower altitude than the glider at around 20 to 30 kilometers and can maneuver in full flight, which is its advantage. You are watching India Today. Prime Minister Narendra Modi has landed today in Copenhagen, Denmark, and will be holding a bilateral meeting with his Danish counterpart Mette Frederiksen. Prime Minister Modi will also be participating in the Second India-Nordic Summit. He will be a part also of a business roundtable later in the evening, and interaction with the Indian diaspora is scheduled at 8 p.m. Indian Standard Time. Prime Minister will also be meeting the Danish Queen and attend a dinner hosted by Queen Margaret II.
just landed at Copenhagen airport on the second leg of Prime Minister's three-nation tour to Europe. I had a very special gesture. The Honourable Prime Minister of Denmark is here at the airport to receive the Prime Minister. Behind me also is a very enthusiastic band of Indian culture and music right there on the back. And we are waiting now for Prime Minister to alight. He has a packed agenda for the day. Directly from the airport, he is going to the official residence of the Prime Minister of Denmark, where we'll have talks. Later on in the day, he has engagements with the business community and thereafter with the Indian community, followed by a meeting with Queen Margaret of Denmark. On 2nd May, the first leg of the trip, Prime Minister Modi received a rousing welcome from the Indian diaspora in Berlin and addressed the Indian diaspora very specifically, saying, 1. Innovators are being boasted in India. It has become a land of startups with over 60,000 startups operating in the country. Prime Minister said India has registered the highest real-time payment transactions of 2021, accounting for over 40% of the world's real-time payment. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जोरदार 8 साल पहले 200, 300 या 400 स्टार्टअप्स आज 68,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स दुनिया के सारे पैरामीटर्स कह रहे हैं कि इसमें दर्जनों स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बन चुके हैं। पिछले साल पूरी दुनिया में हुए रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स, कान खोल दो, रियल टाइम डिजिटल पेमेंट में से मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। अब भारत छोटा नहीं सोचता है। रियल टाइम डिजिटल पेमेंट में से 40% भागीदारी भारत की है। पहले तो हमारा देश की विशेषता देखिए साहब, देश एक संविधान 2 थे, मालूम है ना, 2 संविधान थे। सात दशक हो गए दोस्तों, 7 दशक हो गए एक देश एक संविधान लागू करते करते। अब लागू हुआ दोस्तों। पिछले 7-8 साल में भारत सरकार ने डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीधा एक क्लिक किया, जो हकदार है उसके खाते में पैसे चले गए। डायरेक्ट जो डीबीटी के द्वारा हमने पैसे भेजे वो अमाउंट है 22 लाख करोड़ रुपए से अधिक। यानी अब आप जर्मनी में हैं तो आपको बता दूं, $300 बिलियन से भी ज्यादा बेनिफिशियरीज के खाते में पैसे पहुंचे हैं। बीच में कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट की कंपनी नहीं, कहीं कट मनी नहीं। And we'll be tracking all the latest of this through the evening today. Coming up after a very short break, BJP is now blaming Rajasthan government for the violence, while Congress Neta calls it Choti Si Baat. But before I go across to that, we have some fresh visuals now coming in from Denmark. Take a look at this. These are the visuals coming in from Copenhagen. Just remember, about a short while ago, you're looking at Prime Minister of Denmark, Mette Frederiksen, in interacting with Prime Minister Narendra Modi. The Prime Minister had received, the Danish Prime Minister received Prime Minister Narendra Modi at the airport, and then there was a visit to the private residence. That's where they are currently. We are expecting a statement also shortly on this. But remember, this is a packed itinerary today where there are going to be the
Nordic Summit. There's going to be an interaction with the Indian diaspora, just like it happened in Germany. And then there's going to be a dinner hosted by the Queen of Denmark. Right now, both the Prime Ministers walking toward, possibly it appears, to the press enclosure that has been set up. And that is where our colleagues, our Anjana Kashyap, will be tracking all the latest. These are the visuals coming in. Of course, a rousing welcome by the diaspora to the Prime Minister when he arrived in Germany. That was the first leg, then Denmark, and this is the second leg of the visit. So, of course, a lot of dhol, nagara, colour and dance for the Prime Minister by the Indian diaspora. But, of course, a very proud Prime Minister referring to how India has transformed in the past few years, and specifically with regard to investments and the avenues that have been opened for the startups here in the country. Danish Prime Minister and Indian Prime Minister walking there towards possibly the press enclosure. Remember, it's a beautiful residence of a castle that we just saw about a short while ago. Massive gardens there. And now inside the press enclosure, where from the world, across the world, the media is present. Let's listen into what is coming from there. In India. There's a letter also of intent between the Indian Ministry of Ports, Shipping and Waterways and the Danish Ministry of Industry, Business and Financial Affairs on a Centre of Excellency in India. Then a joint declaration of intent between the Indian Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying and the Danish Ministry of Food, Agriculture and Fisheries on cooperation in the field of animal husbandry and dairying on a Centre of Excellence in India. There are quite a number of agreements. Just a second. A cultural exchange program between the Ministry of Culture of India and the Ministry of Culture of Denmark. A memorandum of understanding between the Indian Ministry of Skills Development and Entrepreneurship and the Danish Ministry of Children and Education on cooperation in the field of skill development, vocational education and entrepreneurship. A declaration of intent on migration and mobility between the Government of the Republic of India and the Government of Denmark. A letter of intent between Invest in India and the Technical University of Denmark on startups ecosystems. And if I can ask the ambassadors to exchange the agreements. Are you? Ready, you can leave. The ambassador stays. You can leave. Thank you. And now I would like to turn to a number of agreements that have been signed between the commercial sector. We have the first one is a memorandum of understanding that will be exchanged between the CEO of Haldor Topsoe, Mr. Roland Barn, welcome, and Projects of and Development India Limited, and they will be represented today by the Her Excellency the Ambassador of India. Please. Thank you. The second agreement will be exchanged between the CEO of Cement FLSmidth, Carsten Riisbjerg Lund, and the Managing Director and CEO of Dalmatia Cement, Mahendra Singhi. Please. The memorandum of understanding between Dalmia and FLSmidth focuses on the next generation of cement technology towards building a sustainable future. The goal is to enable carbon neutral cement production by 2030, focusing on both energy and process emission. Please. Thank you. The third agreement is exchanged between the Executive Vice President at Larsen & Toubro, Sabajit Depp, and the Director of DI Water, Mads Helleberg Dorf. If I can ask you to come up here. This memorandum of understanding is the first step towards a long-term partnership focused on positively impacts
the business environment and the sustainability agenda within the water sector in India. Mr. you stay here. Mr. Deb is very busy today, so he will remain for the last and fourth agreement, which is exchanged between the Executive Vice President of Larsen & Toubro, Mr. Deb, and the Director of AVK, Niels O. Kjær. And the purpose of this agreement is to strengthen the partnership between Larsen & Toubro and AVK for projects and opportunities specifically within the water and wastewater segments in India and also globally. Thank you very much. That ends the ceremony on agreements. And if I could ask the Prime Minister of Denmark, you have the floor. Thank you so much, and first of all, once again, a very warm welcome to Denmark. His Excellency Prime Minister Modi and I had a very productive meeting today. The relations between our two countries are very strong. Prime Minister, I deeply appreciate this important meeting. We are moving fast in transforming our green strategic partnership into some concrete results. The Indian government has high ambitions for green transition and for making India more independent on fossil fuels. I am very proud that Danish solutions play a key role in realizing these important ambitions. Today we have agreed on a number of concrete steps on green energy, clean water, and to counter the next global health crisis, just to mention a few examples. Hopefully, the two of us can lead by example by showing that green growth and green transition can go hand in hand. And I am convinced that India and Denmark has a huge untapped potential for trade and investment. We share many values. We are two democratic nations. We both believe in a rule-based international system. And in times as these, we need to build an even stronger bridge between us. As close partners, we of course also discussed the war in Ukraine. We discussed the consequences on the horrible crimes committed against civilians and the serious humanitarian crisis in Ukraine. The reports on killings of civilians in Bucha are deeply shocking. We have condemned these killings, and we stressed the need for an independent investigation. Denmark and the entire European Union strongly condemn Russia's unlawful and unprovoked invasion of Ukraine. My message is very clear. Putin has got to stop this war and to end the killings. I, of course, hope that India will influence Russia also in this discussion. I now look forward to continuing the discussions between the two of us tomorrow, also with our Nordic colleagues at the Indo-Nordic Summit 2022. And just to finalize, we have a very strong partnership between our two countries, and we are very grateful that you are in Copenhagen this day. Welcome. Thank you. Your Excellency, Prime Minister of Denmark, डेलीगेशन के सदस्यों, मीडिया के मित्रों, गुड इवनिंग एंड नमस्कार। एक्सेलेंसी, प्राइम मिनिस्टर मेरे और मेरे डेलीगेशन के डेनमार्क में शानदार स्वागत और मेजबानी के लिए
आपको और आपकी टीम को हार्दिक धन्यवाद। आपके खूबसूरत देश में यह मेरी पहली यात्रा है। पिछले वर्ष अक्टूबर में मुझे आपका भारत में स्वागत करने का अवसर प्राप्त हुआ। इन दोनों यात्राओं से हम अपने संबंधों में निकटता ला पाए हैं और उन्हें गतिशील बना पाए हैं। हमारे दोनों देश लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के शासन जैसे मूल्यों को तो साझा करते ही हैं, साथ में हम दोनों की कई कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ भी है। फ्रेंड्स, अक्टूबर 2020 में इंडिया डेनमार्क वर्चुअल समिट के दौरान हमने अपने संबंधों को ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया था। हमारी आज की चर्चा के दौरान हमने अपनी ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ज्वाइंट वर्क प्लान की समीक्षा की। मुझे खुशी है कि विभिन्न क्षेत्रों में विशेष रूप से रिन्यूएबल एनर्जी, स्वास्थ्य, पोर्ट्स, शिपिंग, सर्कुलर इकोनॉमी तथा वाटर मैनेजमेंट के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। 200 से अधिक डेनिश कंपनियां भारत में विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही हैं, जैसे पवन ऊर्जा, शिपिंग, कंसल्टेंसी, फूड प्रोसेसिंग, इंजीनियरिंग, ऐसे कई क्षेत्र हैं। इन्हें भारत में बढ़ते ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और हमारे व्यापक आर्थिक रिफॉर्म्स का लाभ मिल रहा है। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और ग्रीन इंडस्ट्रीज में डेनिश कंपनीज और डेनिश पेंशन फंड्स के लिए निवेश के लिए बहुत अवसर है। आज हमने भारत ईयू रिश्तों, इंडो पैसिफिक और यूक्रेन सहित कई क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत की। हम आशा करते हैं कि इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उस पर नेगोशिएशंस यथाशीघ्र संपन्न होंगे। हमने एक फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक क्षेत्रों को सुनिश्चित करने पर जोर दिया। हमने यूक्रेन में तत्काल युद्ध विराम और समस्या के समाधान के लिए बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने की अपील की। हमने क्लाइमेट के क्षेत्र में अपने सहयोग पर भी चर्चा की। भारत ग्लासगो COP26 में लिए गए संकल्पों को पूरा करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। हम आर्किटेक्ट क्षेत्र में सहयोग के अधिक अवसर तलाशने पर सहमत हुए हैं। एक्सेलेंसी, मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में भारत और डेनमार्क के संबंध नई ऊंचाई प्राप्त करेंगे। मैं कल होने वाली सेकंड इंडिया नॉर्डिक समिट की मेजबानी करने के लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूं और आज भारतीय डायस्पोरा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भी मैं, क्योंकि आपने वहां आने के लिए समय निकाला, भारतीय समुदाय के प्रति आपका कितना प्यार है इसका ये प्रतीक है और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। हेलो, थैंक यू। Thank you so much.
Jodhpur simmers after Eid clashes. Cries of Allahu Akbar and Hanuman Chalisa reverberate once again. Mobs armed with lathis and stones on a rioting spree. Chief Minister Ashok Gehlot appeals for calm. New communal clashes in Jodhpur. The true story of what happened in Jodhpur. Rahul's foreign nightclub videos go viral. Rahul filmed partying at Kathmandu club. "12-second Rahul party video quakes the Congress." Mega face-off after Rahul party video erupts. Jeering BJP labels Rahul a partying time neta. Congress hits back, terms it a personal visit. BJP launches all-out attack on what they call an unserious neta. Rahul nightclub politics. Thanks for being with India Today. This is 5 Live. I'm Shiv Arur. Let's get you straight to the top stories this Tuesday. Well, after the clashes on the night before Eid celebrations, here's what happened in Jodhpur. I'm going to decode the anatomy of what really took place. Here's a report. Communal tensions grip another Rajasthan city. After Karoli violence, this time it's Jodhpur that's simmering. It all started on Monday night when a mob allegedly tried to remove Hindu flags from the freedom fighter Bal Mukund Bissa's statue for Eid celebrations. The claim is that black tapes were put on the statue. As the news spread, the other side soon landed at the spot and removed the Muslim flag. Loudspeakers were also removed from the spot. It triggered a brawl which soon turned into violent clashes with stone pelting between the two community groups. The police intervened but struggled to contain the communal tension. Reinforcements were called in and the police resorted to a lathi charge, even using tear gas to control the warring mobs. On Tuesday, after Eid prayers, a mob chanting Allahu Akbar faced off with the police, attacking several police personnel. CCTV images accessed by India Today capture miscreants wielding swords, sticks, lathis and stones. The mob also vandalized and torched vehicles. The police once again launched a crackdown on these antisocial elements and resorted to a lathi charge. यहाँ से जालूगढ़ से ये पत्थर मारते हुए आ रहे थे और यहाँ पे पुलिस वालों को मारा उन्होंने। 2 पुलिस वाले ट्रैफिक वाले खड़े थे, उनको मारा। जब उन्होंने वापस वहाँ पे टेलीफोन किया कि यहाँ पे पुलिस फोर्स भेजिए, इस तरह से हो रहा है, उसके 3 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद यहाँ पे पुलिस आई। उसके पहले कोई नहीं आया और सब पत्थर मारते हुए निकल सके। भगवा झंडे को हटाकर उन्होंने अपना झंडा लगाया विशेष समुदाय का और मूर्ति पर काले कपड़े बांध दिए गए थे। उससे कुछ लोगों में रोष उत्पन्न हुआ कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। Some of the miscreants were also held by the police. The Jodhpur Commissioner of Police has assured people that the situation for now is under control and under curfew. हमारे यहाँ पे अभी जो सिचुएशन है अंडर कंट्रोल है। हमने सफिशिएंट जाब्ता लगाया हो
अभी हम फ्लैग मार्च के लिए भी निकल रहा हूँ। सभी प्रकार से व्यवस्था है। मुझे लगता है हम इसको ये लॉ एंड ऑर्डर स्थिति जो है बनाए रखने के लिए हम इस पे जो भी केस दर्ज होंगे उस पे हम कार्रवाई करेंगे। जो भी अगर कोई गैरकानूनी काम किया है जो जिस पे कानून के खिलाफ है उसके विरुद्ध कानून के तहत कार्रवाई की जाए। मैं यही अपील करूँगा सभी को शांति बनाए रखें। The Allahu Akbar slogans were met with Hanuman Chalisa chants when an angry group staged a counter-protest against the violence. इधर एक कम्युनिटी के लोग हैं और पुलिस ने इनको रोक रखा है और इधर मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दूसरी तरफ दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं जिनको पुलिस रोक रही है। आपस में पत्थरबाजी भी हो रही है और गाड़ियों की भी तोड़फोड़ की गई है। इस समय गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, पूर्व महापौर घनश्याम ओझा, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, ये सब लोग पुलिस से भारी मशक्कत कर रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस समय मैं बताना चाहूँगा कि ये उपद्रवियों ने ये कार को तोड़ा है। इधर दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं जो वो नारे लगा रहे हैं, इधर अशोक गहलोत के खिलाफ नारे लग रहे हैं। कुल मिलाकर तनाव है। Keeping in mind the grim situation in the district, curfew has been imposed in 10 thanas of Jodhpur till the 4th of May midnight. Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot is also keeping a close watch on the situation and has urged everyone to maintain peace. मैं अपील करना चाहूँगा कि तमाम लोग शांति बनाए रखें और तनाव समाप्त करें, क्योंकि ये तनाव हिंसा का माहौल हित में नहीं है जोधपुर वासियों के भी। Will this communal flare-up hit the prospects of the Gehlot government in the run-up to next year's assembly elections? From Karoli to Jodhpur, where will it happen next? Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot had been holding deliberations with senior police officials in state capital Jaipur, and the situation, as you can witness right now, is there is an uneasy calm which currently prevails in Jodhpur, and senior officials from the district police and administration are keeping a watch. With camera person Nikhil Sharma and Ashok Sharma, Devankur Vadhavan in Jodhpur for India Today. And Jodhpur is the third site in Rajasthan in the last few days where communal flare-ups have taken place. First it was Karoli, then it was Alwar, and now it is Jodhpur. Remember, there are elections in Rajasthan at the end of next year, but already the politics over these communal divisions has heated up against the Rajasthan government headed by the Congress's Ashok Gehlot. Take a look. First, Karoli Ram Navami clashes, then unrest over the Alwar temple demolition, and now communal clashes in Rajasthan's Jodhpur. Jodhpur becomes the latest Rajasthan city to bleed, but there's no end to the politics. A war of words is broken out after violent late-night communal clashes and rioting in Rajasthan's Jodhpur on the day of Eid, right after a religious flag was hoisted at the Jalori Gate locality. The opposition was quick to take on the Rajasthan government. The BJP slammed Chief Minister Ashok Gehlot for the clashes that broke out between two communities and criticized the Rajasthan police for failing to control rioting elements. करौली से लेकर के अन्य स्थानों पर जिस तरह की घटनाएं हुई है और जिस तरह से सुनियोजित रूप से छतों पर से पत्थर जो पहले से एकत्रित किए थे वो पत्थर बरसाए गए, ऐसा प्रतीत होता है कि इसी तरह की मंशा के साथ में तैयारी पहले भी की गई थी। रास्ते में खड़ी हुई गाड़ियों के कांच तोड़े गए, घरों पर पत्थर फेंके गए, दुकानों के शीशे तोड़ दिए गए, लेकिन पुलिस और प्रशासन मौन बना हुआ मूक दर्शक की तरह देख रहा था और राजस्थान का माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। उसमें सबसे बड़ी विफलता कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण की नीति है। Criticizing something in India or creating a element of doom as if things are not good in the country, but he'll choose to be quiet on, say, Rajasthan. He will not even comment on the dismal state of affairs in Rajasthan or in other Congress-ruled states. The Jodhpur mayor accused the Congress government of fueling the communal clashes. वहाँ पे किसी ने दंगा नहीं भड़काया था। जो पत्रकार थे वहाँ पे वो निकल रहे थे, उस समय रात को भजन संध्या थी। वो अंदर से जब बाहर आए हैं, उससे पहले दोपहर में पुलिस वालों ने उनको कहा है कि यहाँ पे परशुराम जयंती के और वो है
जालोरी गेट चौराहे पे आपने भगवे झंडे सजाए हुए हैं, उन्होंने सारे उतारे हैं कि कल नमाज का दिन भी है और ईद की है, इसलिए ये झंडे हटा देते हैं। और वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी दंगे भड़का रही थी, उनको शर्म आनी चाहिए। Forced on the back foot, the Congress tried to play down the rioting, calling it a small flare-up. The Congress has termed the clash as a pre-poll communal plot by the BJP aimed at diverting attention from issues like the prevalent power crisis. जोधपुर में स्थिति कंट्रोल में है और जो जिस तरह से दंगा हुआ ये तय कर लेना चाहिए, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कांग्रेस, बीजेपी किसी का कार्यकर्ता हो, किसी जाति धर्म का व्यक्ति हो, दंगा फैलाने का, दंगा भड़काने का, दंगा करने का किसी को हक नहीं है। Their agenda is to put religious and communal divide in the forefront so that the issues of inflation, of unemployment, of progress, of development get relegated to the dustbin. Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav too has called for calm. कहीं भी दंगा नहीं होना चाहिए और दंगे को रोकने के लिए मेरी अपील है वहाँ के जितने भी लोग हैं, इससे कुछ लोगों को लाभ हो सकता है, लेकिन दंगे से समाज का, प्रदेश का और देश का बड़ा नुकसान होता है। Is Rajasthan the latest tinderbox in a growing communal frenzy? With Devankur Vadhavan in Jodhpur, Rajasthan. Bureau Report, India Today. And here are the questions we're asking. Remember, this is a developing story. A curfew has been imposed in Jodhpur right now. The first question we're asking, of course, is who instigated the violence? Who's stoking the violence in Jodhpur? Second question we're asking, is the Gehlot government simply incapable of maintaining law and order? From Karoli to Alwar and now in Jodhpur, is the Gehlot government simply incapable of maintaining law and order? Who should be held responsible for these clashes? Did it begin with one group? Who's responsible? Is there a deliberate attempt to disrupt communal harmony? That's a rhetorical question because clearly there's a pattern, not just in Rajasthan, but nationally as well, but especially in Rajasthan. And are communal clashes being instigated with an eye on election season that's coming up in other parts of the country and in Rajasthan next year? Devankur Vadhavan joins me live from Jodhpur this evening. Dev, curfew imposed after those, pretty disturbing clashes that took place late last night. What is the current situation? What action has the police taken so far? Because right now the big public glare is on the Gehlot government and the Rajasthan police over not having done enough to either preempt or act upon those who may be responsible. Well, Shiv, there is an uneasy calm which prevails currently in Jodhpur. And this is not just one of the major cities of Rajasthan. It is also the home district of Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot. He comes from here. Today is his birthday. And the BJP has levelled some serious accusations. I'm just coming out of a press conference held by Union Minister Gajendra Singh Shekhawat, and he alleged that he in fact drew comparisons mentioning that like when Nero was playing fiddle even as Rome was burning, Rajasthan Chief Minister was busy celebrating his birthday even as his home district was facing communal violence or clashes of the worst kind. Shiv, I have certain people with me right now. They claimed that they were at the receiving end of the attack that happened last night around midnight, and thereafter once again after the namaz that was read out in the morning today. They claimed that there were several people who came from the other side, attacked them without any provocation whatsoever. So I will go straight away, get in some voices and thereafter come back to you. सर आप बताएं, आप बता रहे थे कि आपके सर पर जो चोट आई है, ये अटैक जो हुआ था उसमें कुछ लोगों ने आके आपके ऊपर अटैक किया था? जी बिल्कुल, पत्थरबाजी कर रहे थे, उस पत्थरबाजी में पत्थर लगाए। तो कौन थे वो लोग जो मिसक्रिएंट्स थे, किनकी तरफ से अटैक हुआ? क्या वो कहीं बाहर से आए थे या आप लोगों के मतलब मोहल्ले में ही रहने वाले लोग थे? जो सिलावटों के पास के मुस्लिम बहुल्य इलाका है वहाँ के लोग थे जो नंगी तलवारें लेके हाथ में लाठियां सरिये वगैरह लेके हमला करने के इरादे से दौड़ रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे। प्रशासन को आपने बताया कि वो लोग कौन हैं, क्या कुछ आइडेंटिफाई हो पाए हैं वो लोग? जी, प्रशासन ने उस बारे में जो सीसीटीवी लगे हुए थे वहाँ से रिकॉर्डिंग ली है और जो एफआईआर दर्ज है उसके ऊपर कार्रवाई कर रही है फिलहाल।
ये बताएं कि यहाँ पर आप आए हुए थे, आपने सीनियर पुलिस ऑफिशियल से मिलने की भी कोशिश की। जयपुर से कई सीनियर पुलिस ऑफिसर्स आए हुए हैं, उनसे मुलाकात हो पाई क्या आप लोगों से? थोड़ा सा आगे आके बात करें। वो मिलके नहीं गए हैं, वो बाहर से अंदर से मीटिंग करके चले गए। हम लोग इनका इंतजार करते रह गए। हमने उनसे मिलने की चाहा, लेकिन वो हमसे बगैर मिलके चले गए। सर, आज ईद का पर्व है, पर जिस तरह से अटैक हुआ, एक तो बहुत अनफॉर्चुनेट रहा जिस तरह से अटैक हुआ, पर क्या वो बिल्कुल भी विदाउट एनी प्रोवोकेशन था? कौन थे वो लोग? क्या आप लोगों ने कोई आइडेंटिफाई कर पाए उन्हें? हम आइडेंटिफाइड कर पाए, लेकिन वो बिल्कुल प्लानिंग से थे। वो अल्पसंख्यक से जुड़े हुए थे और हमें ये बिल्कुल आशा नहीं थी कि हमने सोचा कि ईद है, चलो हम अपने काम से बिजी, वो अपने काम से बिजी, लेकिन ये सब उनकी प्लानिंग थी, अनएक्सपेक्टेड। सर, जोधपुर के 10 थानों के इलाकों में कर्फ्यू लग चुका है, इंटरनेट पर बैन है इस समय, पर ये बताएं कि जो पूरा कौन कौन से इलाके हैं, क्योंकि आप लोकल हैं, कौन कौन से इलाके हैं जो कम्युनल वायलेंस या स्ट्राइफ या जो टेंशन इस समय फेस कर रहे हैं जोधपुर में? एक्चुअल में एक तो प्रॉपरली हमारा सोनारा के पास और सिलावटा के पास एरिया है, एक जालोरी गेट एरिया है, एक उदय मंदिर एरिया है, एक प्रताप नगर एरिया है, एक मेड़ती गेट एरिया है और एक नागौरी गेट एरिया है। एक अभी एक न्यूज़ और मिली है, एक वो ये न्यारियों का एक हमारा मोहल्ला है, वहाँ पे अभी कुछ समाचार मिले हैं कि वहाँ पे भी इस तरह की घटना अभी हो रही है। Well, Shiv, I was speaking with several local people and they mentioned to me after the Parshuram Jayanti that was being celebrated 2 days ago, there were several saffron flags which some of the people came last night, the night before Eid, they tried to remove those saffron flags and replace them with flags of green color, after which there were some protests against that, and that is how the communal clashes began. But sir, ये बताएं कि जो communal clashes जो शुरुआत हुई, क्योंकि कुछ झंडे जो थे वो हटाने की कोशिश की गई, उसके बाद शुरू हुए, उसके क्या कुछ घटनाक्रम हुआ, टाइमलाइन अगर आप बता पाएं? सर, रात को जालोरी गेट चौराहे के ऊपर एक मूर्ति लगी हुई है, उस मूर्ति के आसपास भगवा झंडे लगे हुए थे। मुस्लिम समुदाय के कुछ असामाजिक तत्व आए वहाँ पर और उन लोगों ने उस मूर्ति की आंखों के ऊपर जो है अपना हरा झंडा जो है बांध दिया और जो परशुराम जयंती के बैनर्स थे वो हटाकर और खुद के बैनर लगाने की कोशिश की। लाउड स्पीकर्स हमारे हटा के खुद के लगाने की कोशिश की, तो रात को बहुत ज़्यादा वहाँ पे माहौल ख़राब हुआ था। और जब सुबह हम लोगों ने हम हमारे दुकानों पे काम कर रहे थे, स्वर्ण व्यवसायी है, मैं खुद उसी एरिया से आता हूँ, मैं एक अधिवक्ता हूँ और स्वर्ण व्यवसाय के इलाकों में मैं रहता हूँ। तो जो स्वर्ण व्यवसायी अपनी दुकानों में काम कर रहे थे, तो सुबह नमाज अदा करने के बाद में कुछ असामाजिक तत्व तलवारें, तेजाब की बोतलें और पत्थर, लोहे के सरिये लेकर निकले। हमारे भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं, उनकी दुकान पे हमला किया, उनके और उनके पिताजी के ऊपर, उनके घर में तलवार लेके घुसने की कोशिश की। और उसके बाद जैसे सत्यप्रकाश जी वहाँ बैठे हैं, वो माहौल ख़राब देखकर अपनी दुकान से निकले और अपनी गाड़ी अंदर रख रहे थे, तो उनके सिर के ऊपर मोमडन्स ने जो है लकड़ी से वार किया। उनका भतीजा बीच में गया, नरेंद्र यहीं कहीं खड़ा है, उसके पेट में लकड़ी डाल दी। जो कुछ हुआ, क्या कुछ इंस्टिगेट किया गया था किसी को? आपको लगता है क्या जो कुछ, क्योंकि ईद का पर्व था, उसके पहले अगर वो झंडे लगाना चाह रहे थे, ऐसा कुछ हुआ था क्या? सवाल है मेरा आपसे कि वो लगाना चाह रहे थे पर उनको रोका गया हो, या फिर उनको मतलब किसी ने किसी तरफ से, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि वहाँ से शुरुआत हुई, स्टोन पेल्टिंग हुई, पर किसी प्रकार की कोई प्रोवोकेशन थी क्या? सर, किसी ने नहीं रोका, वो झंडे लगा रहे थे तो वो लगा सकते थे। जोधपुर जो है शांति का शहर है, अमन का शहर है, और जब आप एक मूर्ति के ऊपर जो भगवा झंडा लगा है वो हटाकर आप हरा झंडा लगा रहे हो, आप क्या संदेश देना चाहते हो? कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री महोदय का इसमें हस्तक्षेप था, क्योंकि पिछले कई दिनों से वो वन साइडेड मैसेज दे रहा। आज उन्होंने अपने जन्म दिवस पर उनके अपने, आपको लगता है मुख्यमंत्री, क्योंकि उनका ये गृह जिला भी है, उनको खुद को यहाँ पर आना चाहिए था? सर, मुख्यमंत्री का मूल वोट बैंक जो है वो मुस्लिम वोट बैंक है। जो वोट बैंक की आप बात, अगर, क्योंकि देखिए हम हिंदू मुस्लिम के नाम पे डिवाइड नहीं करना चाहते, पर मेरा सवाल बड़ा ये है सर, जो हमारी लोकल एमएलए है मनीषा पवार, हमने उनसे संपर्क किया कि मैडम हमारे साथ ये हो रहा है, आप यहाँ आइए, तो वो वहाँ पे कब आती है? 3 घंटे बाद, कर्फ्यू लगने के बाद कलेक्टर महोदय और कमिश्नर महोदय के साथ में आती है। और एक तरफ हम लोग खड़े हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे न्याय मांगने के लिए, दूसरी तरफ वो वहाँ पे जो सामने वाला समुदाय है उनके साथ वहाँ खड़ी थी। हमने कहा मैम आप इधर आइए, तो वो सिंगल टाइम भी 1 सेकंड के लिए भी हमारे पास नहीं है पूछने के लिए। ये पट्टियाँ बंदी भी खड़े हैं, कई लोगों के कपड़े फटे हुए थे। प्रशासन को लेकर मेरा एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जहां पर वायलेंस हुआ कहा जा रहा है कि वहां पर सीसीटीवी कैमरास कई सारे लगे हुए हैं,
की वजह से कुछ लोग आइडेंटिफाई कर पाई है प्रशासन, या आपके हिसाब से प्रशासन? आइडेंटिफाई हुए कुछ लोग, लेकिन अभी प्रशासन ने उनके नाम ओपन नहीं किए हैं। उन्होंने सीसीटीवी चेक किया है, उसकी रिकॉर्डिंग ली है पेन ड्राइव में, लेकिन अभी नाम ओपन नहीं किया है। प्रशासन की जो कार्यवाही है वो आपको लगता है क्या वो निष्पक्ष है, इम्पार्शियल है, फेयर है अभी तक? सर, पूरी दुनिया उसी पे कायम रहती है कि न्यायपालिका अपना न्याय सही करेगी, लोगों को यही उम्मीद है। जिला प्रशासन की बात कर रहा हूँ मैं। जिला प्रशासन भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा, हम यही उम्मीद करते हैं। सर, पक्षपात ना हो। सर, मैं एक अधिवक्ता हूँ और फाइल देखने के बाद हमें पता चल जाता है कि पुलिस ने किसके फेवर में कार्रवाई की है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि सरकार कांग्रेस की है, और कांग्रेस ने जिस तरीके से हमारे साथ भेदभाव किया है, तो निष्पक्ष रूप से वो जो है हमारे खिलाफ कार्रवाई करेगी। You know, Shiv, some of the major questions, as even you pointed out, who those people were who created trouble out there. Another important question is that after the trouble that was fomented last night around midnight, how is it that the police failed to apprehend those miscreants, those troublemakers, and how is it that a repetition of that trouble happened in the morning after the namaz was read? So why is it that the police once again was unable to control the situation in the morning after the last night's communal violence? So some serious questions that the district administration has to answer, which the Gehlot government has to answer. And after Karoli, once again the BJP has latched upon this issue and asking some serious probing questions from the Gehlot government in Rajasthan. Dave, thanks very much for that ground report. There's a curfew still in force there, and as you can see from the tone and tenor of those we're speaking to on the ground there, things are still very, very sensitive. Dave, stay safe. We'll keep coming back to you. Things are still very tense there in Jodhpur. Jodhpur is the latest, and I just want to refresh our viewers' minds about the non-stop spate of communal flare-ups. Now, we're not saying they're all linked, but is there a sense that there is a pattern to what's actually going on at this point of time? That's the big question. It started in Karoli, where, you know, a Hindu New Year procession was allegedly targeted. So that was also in Rajasthan. Then it went on April 10th to Khargon in Madhya Pradesh, where a Ram Navami procession was pelted with stones. April 10th, the same day, Himmatnagar, Khambat, Dwarka in Gujarat, where a Ram Navami party was attacked there as well. Same day, Lohardaga and Bokaro in Jharkhand, where stones were apparently hurled at a Ram Navami procession there. Howrah in West Bengal clashes once again on Ram Navami on that same particular day. Again on Ram Navami, JNU campus in Delhi clashes over the eating of non-veg food took place again on Ram Navami. Jahangir Puri, of course, we all remember, in the national capital, happened on April 16th. There was violence during a Hanuman Jayanti rally. April 16th, Kurnool in Andhra Pradesh, stone pelting between two groups. April 16th in Hubli in Karnataka, where a mob attacked a police station over an anti-Muslim post. Same day in Haridwar in Uttarakhand, stone pelting during a Shobha Yatra. May the 3rd, Jodhpur, Rajasthan, violence over flags and loudspeakers. So if you look at the entire country at this point of time, since the beginning of April, you have all these places, from Rajasthan to Jharkhand to West Bengal to Uttarakhand to Delhi to Andhra Pradesh to Karnataka to Maharashtra, where these flare-ups have been taking place. So I just wanted to show you how far and how big the spread is all across India. And we will continue to treat each of those stories individually, but continue to ask the question over whether there is a larger pattern to what's going on. On the other side of this break, we're going to tell you about the big viral story that's gone fully political and fearsome here in India. And what has triggered it? Images of Rahul Gandhi partying at a nightclub in Kathmandu. He was there to attend the wedding of a friend. But what has resulted is a huge political fight back home. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com or call 9999892171.
When it's the world's biggest news story, there's only one gold standard of journalism. You are NASA beamed doctors into the middle of the International Space Station while they were physically on Earth. This might seem like a scene from a sci-fi movie, but this technology now exists. NASA tried this new method to ensure medical help is provided to people in adverse situations. This is being called the first holoportation handshake from Earth in space. So what is holoportation and how does it work? According to NASA, it is a capture technology that allows high-quality 3D models of people to be reconstructed, compressed and transmitted live anywhere in real time. When these images are combined with mixed reality displays such as HoloLens, it allows users to see, hear and interact with remote participants in 3D. The technology gives a feeling as if the person is right in front of you. NASA says that the technology could be highly effective in deep space where communication lag is a major problem due to the immense distance between Earth and other objects. Using the Microsoft HoloLens Kinect camera with custom software, NASA flight surgeon Dr. Joseph Schmid and their teams were holoported. They interacted with astronaut Thomas Pesquet in a two-way conversation. Holoportation is not new. It has been in use since at least 2016 by Microsoft. But this was the first use in such an extreme and remote environment as space. You are watching India. Rahul Gandhi has been away from the country for many weeks now, supposedly on some kind of a vacation. But his first public appearance after that vacation was not here in India, but at a nightclub in Kathmandu. He's in Nepal to attend the wedding of a friend. But these images of him in a nightclub in Nepal's capital have gone viral here in India and become the centerpiece of a fearsome, coordinated all-round attack on him by, you guessed it, the BJP. Take a look. Rahul Gandhi at a popular Kathmandu nightclub, Lord of the Drinks. Seen having some leisurely moments in company of a woman, chatting casually. Rahul attended the wedding ceremony of his journalist friend Sumnima Udas at Marriott Hotel in Kathmandu, a tour termed as a personal visit. But this seemingly innocuous 12-second video sparked a massive political controversy. The BJP went all guns blazing against the Congress MP, calling out Rahul for misplaced priorities, branding him a partying time neta who merely tweets while partying abroad. Several BJP leaders tweeted the viral video. BJP's Kapil Mishra wondered if Rahul was hobnobbing with Chinese agents in Kathmandu. BJP also claimed that Rahul was even partying during the 26/11 attacks. राहुल गांधी जी हैं, इनका दिक्कत क्या है? ये फुल टाइम पर्यटन और पार्ट टाइम जो है वो पॉलिटिकल पाखंड। तो ये फुल टाइम जो पर्यटन करता हो, पार्ट टाइम पॉलिटिकल पाखंड में लगा हो, परिश्रम में लगा हो, तो परिश्रम में भी ये सब का दिखाई पड़ता है उनका। तो जब तक ये फैमिली फ़ोटो फ्रेम में फिक्स ये पार्टी और पप्पू के चोचले और परिवार के घोंसले में ऐसी सिमटी रहेगी, तभी इस तरह का उसकी जगहसाई होती रहेगी। सवाल ये है कि राहुल गांधी कहाँ पर हैं और किसके साथ हैं। सवाल ये भी है कि क्या चाइना के एजेंटों के साथ राहुल गांधी पार्टी कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी जो ट्वीट करते हैं या संसद में जो भाषण देते हैं चाइना के पक्ष में और भारत की सेना के खिलाफ, क्या वो
इन्हीं लोगों के दबाव में दिया जाता है जिनके साथ वो पार्टी करते हुए दिख रहे हैं। देश विरोधी जो एजेंडा राहुल गांधी के द्वारा पुश किया जा रहा है, क्या उसके पीछे चाइना है? अच्छी बात है, पार्टी तो कर ही सकते हैं वो। अब वो किसके साथ पार्टी करें उसमें हम लोगों को क्या एतराज है। हम लोग तो पार्टी का काम करते हैं, वो पार्टी करते हैं, इतना ही अंतर है। The Congress put its weight behind Rahul Gandhi, lashing out, saying that attending weddings is not a crime. Congress also launched a personal attack on Prime Minister Narendra Modi without naming him, accusing him of abandoning his wife. इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे कि देश के लोग दूध क्यों नहीं खरीद पा रहे, दाल क्यों नहीं खरीद पा रहे, सब्जी क्यों नहीं खरीद पा रहे, शिकंजवी क्यों नहीं पी पा रहे। पर आपको राहुल गांधी जी को गाली देने से फुर्सत मिले, वो प्रधानमंत्री हूं या भाजपा के नेता हूं। Mr. Gandhi is on a private visit to attend a marriage in Kathmandu, and there is a media person's correspondent's wedding. Therefore, he has been there to attend that marriage. What is the harm in attending a marriage? While Rahul is partying in Kathmandu, the challenges for Congress party are constantly rising. A humiliating loss in Punjab, uncertainty over who leads the party, open dissent by G23 netas, and back-to-back crises in Rajasthan. But the woes for Rahul don't end there. Rahul's Amethi nemesis Smriti Irani visited the Congress MP's turf, Wayanad, on a day when Rahul's video of partying went viral, rubbing in the missing MP narrative. Bureau Report, India Today. Now, it can be nobody's case that Rahul Gandhi doesn't have the right to party, to go on vacation. Nobody is ever going to judge him on that. But at the same time, nobody can stop the politics that has erupted over here because it plainly looks bad. Take a look at why I personally think this is embarrassing to the Congress party, and any reasonable person would probably think the same. For one, remember that Rahul Gandhi's own party has been sniping at Prime Minister Modi on his foreign visits, including the one that just began. They said that so many things are happening in the country and Narendra Modi is off on another foreign visit. Second, after vacationing for all these weeks, Rahul Gandhi has been missing in action for all these weeks where he's been holidaying somewhere in Europe allegedly. His first public appearance in the country is not even in the country, it's in a nightclub in Nepal. So it just looks bad perceptionally. Number three, the reason why it is so embarrassing and harming the Congress is that it gives the BJP ammunition to sort of turn the tables on the Congress party. The Congress would say this is like a diversionary tactic. Indeed so, it gives the BJP ammunition to divert from the real issues in the country and focus that attention on Rahul Gandhi. Number four, it bogs down the Congress's communication machinery, its social media machinery, its MPs, etc. They have to drop their important work and spend all their energy defending Rahul Gandhi, which is a terrible waste of valuable opposition resources at a time when the Congress is very, very feeble and weak. Point number five, it forces the Congress to rally its precious opposition energy and resources to defending Rahul Gandhi. It's the same thing. Why waste all that energy on defending Rahul Gandhi when you can spend it on trying to hold the government accountable on many legitimate issues in this country right now. Number six, it allows the BJP to say, we told you so, about this perception that Rahul Gandhi is an unserious politician, a part-time politician or a partying politician, as the BJP is kind of very jeeringly and rudely saying about Rahul Gandhi. So the Congress has every reason to feel sensitive, but this is huge fodder, no matter which way you slice it, for unverified innuendo that explodes virally. That's the reason why many BJP leaders are saying, who is this Chinese woman? Giving the impression that Rahul Gandhi is liaising with some Chinese diplomat, etc., which, there are many verifications that have not come in on any of the big claims that are being made about that video, but those go viral in the river of virality that these videos have made possible. And finally, this reminds the Congress voter
base of Rahul's part-time priorities. There are so many things happening, but the only time Rahul makes the news is when he's partying somewhere or is away from the country. So those are very real hard facts. And remember, here on India Today, we don't take sides. We don't hold anybody's brief. Rahul Gandhi is fully entitled to his personal time, his private space, his privacy, partying, weddings, whatever it is. He's got that space. But what is the impact on his party? What is the impact on perception? And what is the impact on the Congress's opposition vitality to take on the BJP in another big election season that's coming up, especially at a time when Rahul Gandhi is already viewed as an unserious ad hoc politician? Joining me live now is Manikam Tagore. He's a Congress Member of Parliament from Tamil Nadu. He is part of Rahul Gandhi's inner circle, someone who is close to Rahul Gandhi and frequently is fielded, as he is today, to defend a person considered to be the de facto chief of the Congress party. Mr. Tagore, many thanks for being with us. I know this is a tricky, uncomfortable story to have to come out and speak out about, so I thank you for being with me. But your first reactions, Mr. Tagore, to Rahul Gandhi coming under such fierce attack from the BJP over what would appear to be a pretty innocuous thing, but has become viral at this time. Thank you, Shiv. The main issue is that BJP has a tactics to divert from the real issues. The real issues are the petrol prices 110 rupees, diesel prices at 100 rupees, LPG prices at 1000 rupees, no power available, 4 hours to 8 hours power is not there. All sections of people are suffering, but they want to divert to an issue which is a private function. When he goes for Mr. Gandhi, when he went for a marriage of a CNN correspondent in Kathmandu on the invitation of her father. For it is a very unfortunate thing that BJP does politics on every issue of anybody's attending wedding reception. Also is a mistake by Mr. Gandhi. Means what they wanted to convey to the world as well as the people. And the senior ministers are jumping into it is a very, very sad state. They should concentration on the issues which I raised it, which Mr. Gandhi has raised in Parliament and in the public forums. They are not ready to solve the real issues. They just want to divide people and divert from the real attention from the pain of people. That's the thing. But Mr. Tagore, you know, after sort of quote unquote missing in action for all these days, he's been abroad. You know, nobody blames him for that. The BJP, of course, attacks him. But, you know, after being away during this very important time for your party, you know, isn't it embarrassing for persons like you having to, you know, drop everything and, you know, spend all your time now bogged down defending Rahul Gandhi for something like this? No, Mr. Rahul Gandhi is the person who has always raised these issues in the whole parliament session also, and he was campaigning outside also, and he has been the person who is asking the questions, the straight questions to the government on the people's issue. And he has always stood against these government's atrocities towards the other people and particularly the marginalized. When we speak about these issues, Mr. Gandhi was a week or something, he is away from Delhi, and 6th and 7th he is in Telangana. He's coming for a tour to meet the farmers in Telangana and other party functionaries in Telangana. He has always stood with the party, and whenever party wanted, he has stood for it. Therefore, there is no grievance from our part that he is not there. But we know that the BJP's equilibrium as well as the ecosystem wants to raise that thing that he is not there. But he is always available whenever the party wanted. Mr. Gandhi has done padayatras, has campaigned in every election, whatever we may be losing. But he has always been consistent in standing for the party and with the party in all issues. No, but Mr. Tagore, your party, you know, itself has been attacking Modi, including right before his current trip to Europe, saying that, you know, when all this stuff is happening in India, Modi is off on another foreign visit. I mean, in the Prime Minister's case, he's on official work. It's not a personal visit. So why are you surprised that Rahul Gandhi is coming under attack for partying at this so-called serious time, as the Congress says?
Yeah, Mr. Rahul Gandhi is the former Congress president and he is a member of parliament and member of CWC. But whatever responsibility he is assigned from the party leadership, he does it. For every state, he has been to Gujarat a few months before when they invited him, and he's planning again to go to Gujarat. And here we had invited him. Telangana, I'm in charge. Therefore, we had invited him for Telangana in the 4th April meeting also, and he has confirmed it for the 6th and 7th. Therefore, we are preparing. He is always there, and he is whenever these kind of personal weddings and others, when he is going, this also, if somebody makes it as a political issue, it is very, very unfortunate. What else we can say? Nepal is not Pakistan. Nepal is a friendly country with India, and he has gone to ambassador's family wedding. Means we should also always think in a positive way, but we know that the RSS and BJP mindset is to find fault with Mr. Gandhi because he is not a Godse Bhakt. Therefore, they will always find fault in Mr. Gandhi's whatever private or personal things or the public things, whatever he does it, they will find fault, and 5 to 10 ministers will jump on it, and they will always ask questions about which is irrelevant to the people of India. No, but Mr. Tagore, I can't help but ask, at a time when Rahul Gandhi ought to be, doubling up as a full-time politician, putting on hold clubbing and partying and holidaying, perhaps, and this is just one view. Considering that the Congress is in such disarray, every last ounce of his energy should be poured into resurrecting the party, galvanizing the forces, rallying the troops for another election season that's coming up. He once again just hands an issue to the, to the BJP and the, the so-called Sanghis, as you put it, on a platter. There's no wonder that your leader is coming under attack in this manner. So my question to you is, hasn't this demoralized and sort of embarrassed Congress cadres, the fact that Rahul Gandhi provides this fodder to his detractors and critics to attack him in this way? Are they demoralized? No, we don't get embarrassed. One thing is that what is our responsibility? Mr. Gandhi is not the Congress president. Mr. Gandhi is a CWC member and the MP from Wayanad. Therefore, his responsibility is to whatever party leadership asks, he has to do it. For example, my responsibility as an MP and as an in charge in Telangana is my work. There is no, I can take vacations and I can go. I'd gone on a vacation and come back with my family to Kerala. Therefore, these are all personal things. Let us be very clear that everybody needs to have their spaces also. Mr. Gandhi has always, whenever, I'll repeat again and again, whenever the party has asked him to campaign in states, wherever we were losing so badly also, he has worked very hard. It may be in any state, you take it any state, he has given his full time, and he has whatever the party in the state leadership or the party wanted him to do, he has always done it. It is unfortunate that the ecosystem of BJP, particularly those people who are around the BJP power structure, always finds faults with Mr. Gandhi's every action. For example, yesterday he has gone for a wedding reception, and they are showing it as if it is some Chinese wedding or Chinese party or something. This kind of lies being spread by BJP is not new to India. It has been practiced, but people are not going to believe it. And we are very clear that Mr. Gandhi has always been available whenever the party wanted to do any kind of work. It may be Padayatra, it may be public meeting, it may be traveling to the deep interiors of any kind of these things, wherever, it may be Unnao, or it may be wherever things has happened, wherever women or children are insulted or minority community people have been insulted, he has been there whenever they have been in distress. But my submission would be that occasions like this blunt the weapons that the Congress has against the BJP, because like you rightly said, it gives all of Rahul Gandhi's critics a chance to divert from any real issues that may exist. And I must also submit, Mr. Tagore, that it can't only be the ecosystem. Of course, the ecosystem is very powerful. The BJP ecosystem that's always trying to portray Rahul Gandhi as foolish, as ad hoc, as unserious, as someone who's a part-time politician. This only kind of reinforces that entire image. But apart from that, my final question to you is that the
politician who defeated Rahul Gandhi in Amethi in 2019, Smriti Irani, is currently in Wayanad. I don't know if that's a coincidence on the day when these videos have come out, but she has, from Wayanad, attacked Rahul Gandhi, saying, where is Rahul Gandhi? Painting him as a runaway politician, a person who's missing in action. What did you make of that? Not at all. Not at all. In reverse, I'll see. I was speaking to young friends in the age group of 20 to 30 in the afternoon in a Zoom conference. And they were very, very much excited that Mr. Gandhi has gone for a wedding, and with the music and others, he's seeing that. Therefore, it has its imaginary place to the other people in a different way. And we know that BJP will always do this kind of things. And Mrs. Smriti Irani ji, as a Honorable Minister of Textiles, should do some kind of good work for Wayanad also. She should not discriminate Wayanad on the from her ministry, because whatever child and welfare, women and child ministry, whatever she is holding in the portfolio, she should see to it that the women and child of Wayanad are not discriminated by her or by her ministry. And she, as union minister, as she is representing the government of India, that she is welcome to go to any constituency in India, and she has gone to Wayanad. Is also a good thing that after 3 years she has seen, first time she may be seeing Wayanad. Good that she's, as a central minister, she has gone to see Wayanad, and she should come to Virudhunagar also, which she has never come. I can invite her to Virudhunagar also, to visit Virudhunagar and address our issues with the women child in my constituency also. Thank you very much, Manikam Tagore, Congress Member of Parliament from Tamil Nadu, someone who is said to be very close to Rahul Gandhi, defending Rahul Gandhi on a particularly embarrassing day for the Congress party. Remember, here on India Today, let me remind all of our viewers, this is not about attacking Rahul Gandhi for his right to party. This is about the politics that has been made possible as a result of these videos going viral. We do not judge one way or the other. We only report what's happening. At the same time, let's remind all of our viewers that this isn't the first time that Rahul Gandhi has been quote-unquote missing in action at inopportune times for the Congress party. Remember, in December 2021, when Rahul visited Italy just before assembly polls to the 5 states. November 2021, month-long trip to London by Rahul Gandhi just ahead of the big Parliament winter session. December 2020, foreign visit by Rahul Gandhi for New Year's. He skipped the Congress's foundation day, and that was, heavy with implication as well. December 2019, a few months after the big election defeat, Rahul visited South Korea during the Congress's anti-CAA protests. December 2019, Rahul visited South Korea, skipping the last leg of the Jharkhand poll campaign. October 2019, he travelled abroad for meditation during the Congress's stir against the Modi government. There are many more examples, but these are just some of a few. It's something to think about. You can't have the cake and eat it too. If you want to be taken seriously as a politician, stop giving your detractors such heavy ammunition to attack you in this manner. Can Rahul be a full-time politician is a question not just his critics are asking, but remember the huge voter base that the Congress still enjoys in the country. Something to think about. Very quick break. That's it on 5 Live. Thanks so much for watching. Coming up next, we're going back to Jodhpur, the big story from Rajasthan, where tension has gripped Ashok Gehlot's constituency, his hometown, where a riot-like situation broke up the night just before Eid late yesterday. Pooja gets you the full story.
ประสงค์ตอนแรกมันไม่ได้คิดอะไรกันคือมันเริ่มจากอยากทำแล้วก็ถ่ายด้วยมือถือพอถ่ายแล้วภาพมันออกไปเนี่ยมันเริ่มมีคนสนใจเข้ามาก็มีการสร้างกลุ่มคนก็เริ่มเฮ้ยผมอยากต่อยแบบนี้บ้างแบบนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มจากตรงนี้ถ้าในเรื่องของพรบมวยคือเราไม่ได้เข้าพรบมวยเราไม่ได้จัดมวยเถื่อนผมตอนนี้คือขึ้นอยู่กับกรมปกครองซึ่งเป็นกิจกรรมไฟขับเราไม่ได้เป็นมวยเราไม่ได้เป็นกีฬาเราเป็นกิจกรรมหนึ่งซึ่งมีสมาคมของเราสมาคมไฟขับไทยแลนด์Presented by PolicyBazaar.com in association with LIC हर पल आपके साथ Castrol Magnatech Oh So Smooth Fresh Communal Flare-Up Communal clashes mar Eid festivities. Jodhpur latest flashpoint. Ashok Gehlot government faces the heat. Who is disturbing communal harmony? Good evening and welcome. You're watching 6 p.m. Prime with me, Pooja Shali. We're going to go back to Rajasthan after Karoli. Now, Jodhpur is reporting communal clashes. Who is disturbing one by one in different states? This time, it's the Congress-ruled state of Rajasthan. Let's begin first with the headlines. Gehlot government is under fire over the Jodhpur clashes. BJP blames Rajasthan government for the violence. Congress neta calls it choti si baat, could have been resolved easily. Loudspeaker debate gets noisier. MNS chief Raj Thackeray is now booked for inflammatory speech in Aurangabad. FIR lodged against organisers of the rally. Home Minister Amit Shah is in Karnataka today amid a cabinet rejig. Speculation ahead of elections in the state in 2023. Chief Minister Basavaraj Bommai will hold a dinner meeting with Amit Shah tonight. After a massive outreach in Berlin, Prime Minister Modi lands in Denmark now on day 2 of his Europe visit. Meets the Danish counterpart Mette Frederiksen, set to attend Second India-Nordic Summit. Superstar language war gets bigger, and this time Chiranjeevi says he felt insulted and humiliated when Hindi cinema was called Indian cinema. The actor credits recent films like Bahubali and the RRR for breaking the language barrier. European football's governing body UEFA bans Russian clubs from next season's Champions League and other competitive events for Putin's invasion of Ukraine. Jodhpur is a well-known tourist destination in Rajasthan, but right now it is tense due to the communal clashes that broke out on the night before Eid celebrations. Jodhpur witnessed fresh violence after midnight today morning again. What happened? After the morning prayers on Eid, a mob was seen chanting and shouting Allahu Akbar slogans and then clashed with cops as well. The mob pelted stones at the police personnel at the Jalori gate, compelling the police to resort to lathi charge. To maintain law and order, a curfew has now been imposed in the area in 10 areas. So on one side there was Allahu Akbar, on another there was Hanuman Chalisa, swords and stones in Jodhpur. Here's a report of what happened. Communal tensions grip another Rajasthan city. After Karoli violence,
this time it's Jodhpur that's simmering. It all started on Monday night when a mob allegedly tried to remove Hindu flags from the freedom fighter Bal Mukund Biswa statue for Eid celebrations. The claim is that black tapes were put on the statue. As the news spread, the other side soon landed at the spot and removed the Muslim flag. Loudspeakers were also removed from the spot. It triggered a brawl which soon turned into violent clashes with stone pelting between the two community groups. The police intervened but struggled to contain the communal tension. Reinforcements were called in and the police resorted to a lathi charge, even using tear gas to control the warring mobs. On Tuesday, after Eid prayers, a mob chanting Allahu Akbar faced off with the police, attacking several police personnel. CCTV images accessed by India Today capture miscreants wielding swords, sticks, lathis and stones. The mob also vandalized and torched vehicles. The police once again launched a crackdown on these anti-social elements and resorted to a lathi charge. यहाँ से जालूगढ़ से पत्थर मारते हुए आ रहे थे और यहाँ पे पुलिस वालों को मारा उन्होंने। दो पुलिस वाले ट्रैफिक वाले खड़े थे, उनको मारा। जब उन्होंने वापस वहाँ पे टेलीफोन किया कि यहाँ पे पुलिस फोर्स भेजिए, इस तरह से हो रहा है, उसके 3 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद यहाँ पे पुलिस आई। उसके पहले कोई नहीं आया और सब पत्थर मारते हुए निकल सके। भगवा झंडे को हटाकर उन्होंने अपना झंडा लगाया विशेष समुदाय का और मूर्ति पर काले कपड़े बांध दिए गए थे। उससे कुछ लोगों में रोष उत्पन्न हुआ कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। Some of the miscreants were also held by the police. The Jodhpur Commissioner of Police has assured people that the situation for now is under control and under curfew. हमारे यहाँ पे अभी जो सिचुएशन है अंडर कंट्रोल है। हमने सफिशिएंट जाब्ता लगाया हूँ। अभी हम फ्लैग मार्च के लिए भी निकल रहा हूँ। सभी प्रकार से व्यवस्था है। मुझे लगता है हम इसको ये लॉ एंड ऑर्डर स्थिति जो है बनाए रखने के लिए हम इस पे जो भी केस दर्ज होंगे उस पे हम कार्रवाई करेंगे। जो भी अगर कोई गैरकानूनी काम किया है जो जिस पे कानून के खिलाफ है उसके विरुद्ध कानून के तहत कार्रवाई की जाए। मैं यही अपील करूँगा सभी को शांति बनाए रखें। The Allahu Akbar slogans were met with Hanuman Chalisa chants when an angry group staged a counter-protest against the violence. इधर एक कम्युनिटी के लोग हैं और पुलिस ने इनको रोक रखा है और इधर मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दूसरी तरफ दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं जिनको पुलिस रोक रही है। आपस में पत्थरबाजी भी हो रही है और गाड़ियों की भी तोड़फोड़ की गई है। इस समय गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, पूर्व महापौर घनश्याम ओझा, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, ये सब लोग पुलिस से भारी मशक्कत कर रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस समय मैं बताना चाहूँगा कि ये उपद्रवियों ने ये कार को तोड़ा है। इधर दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं जो वो नारे लगा रहे हैं, इधर अशोक गहलोत के खिलाफ नारे लग रहे हैं। कुल मिलाकर तनाव है। Keeping in mind the grim situation in the district, curfew has been imposed in 10 thanas of Jodhpur till the 4th of May midnight. Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot is also keeping a close watch on the situation and has urged everyone to maintain peace. मैं अपील करना चाहूँगा कि तमाम लोग शांति बनाए रखें और तनाव समाप्त करें, क्योंकि ये तनाव हिंसा का माहौल हित में नहीं है जोधपुर वासियों के भी। Will this communal flare-up hit the prospects of the Gehlot government in the run-up to next year's assembly elections? From Karoli to Jodhpur, where will it happen next? Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot had been holding deliberations with senior police officials in state capital Jaipur, and the situation, as you can witness right now, is there is an uneasy calm which currently prevails in Jodhpur, and senior officials from the district police and administration are keeping a watch. With camera person Nikhil Sharma and Ashok Sharma, Devankur Vadhavan in Jodhpur for India Today.
So what exactly happened in Jodhpur? We have tried to compile the eyewitness accounts and possibly what is now the timeline of the events. Now, on one side, it appears to have started on May 1st, where a saffron flag is hoisted on Parshuram Jayanti. That is just one group hoisting the saffron flag. On 2nd May, another group, permission is given to them for loudspeakers and flags. This is just ahead of the Eid festival. By May 3rd, the situation has now deteriorated. A rumor spreads that religious flags and Pakistan flags are being hoisted in specific areas where they are not supposed to be. By 2:12 a.m., which is just post midnight on the 2nd of May, BJP workers, as it appears, and some supporters removed the flags and the loudspeakers. Now the situation has gone out of control. A clash takes place which clearly has communal overtones. Stones are pelted during these clashes, turns into a mob-like situation. Rampage and arson and stone pelting and swords are brandished. Cops have to intervene by the 3rd of May midnight, which is early morning basically. The cops had to resort to lathi charge and tear gas. In this, many cops have received injuries. But as it appears that the night is over, in the morning after the Eid prayers, again there is a flare-up. This time fresh violence is now being reported over a saffron flag being seen. Now, by the late of morning on the 3rd of May, there is a BJP protest at the Jalori Gate, which is a big intersection in Jodhpur area. As the situation continues to turn volatile, there are protests that break out in Muslim-dominated areas, angry over the action that is taken. By now, politics has broken out. Curfew is imposed in at least 10 police station areas of Jodhpur, and as of now, the situation is still tense, though under control. Let's go on the ground directly. My colleague Devankur Vadhavan has been tracking the latest and talking to all the eyewitnesses. Devankur, do you think there was a specific trigger to what happened in Jodhpur? Was it rumor mongering? Was it pre-planned? What are you picking up from the eyewitnesses, and where does the investigation stand at this point? Well, Pooja, just about 10 minutes ago, I was speaking with a senior police officer in district police in Jodhpur, and she was mentioning to me that it seems to be a trigger moment which led to the entire communal flare-up which happened in Jodhpur. The incident flared up after some of the people who were there, they tried removing the flags which were already there, the saffron-colored flags, and after that they tried, replacing them with some with other flags. And thereafter, once allegedly the one of the statues of a local freedom fighter, his face was covered with a green-colored flag that resulted in the entire flare-up happening. And there was a lot of stone pelting which thereafter happened, in which several police officers, several police personnel are also said to have gotten injured. Several people from both sides allegedly were indulging in stone pelting, and thereafter some of the vehicles which were there in the lane leading up to Jalori Gate were also attacked. Their window panes were broken, and some of the people who were caught in the melee got seriously injured as well. I've spoken with some of the victims of the communal clash, and they mentioned that it was an unprovoked attack, that there was no instigation from or incitement from their side, and whatever happened, they claimed that this is something which is unprecedented for Jodhpur, which is known to be one of the calmer cities of Rajasthan, where this kind of an incident, perhaps at least in the Jalori Gate area, has not happened for decades. So clearly what Devankur you're telling us, yes, the police and the district administration, that this is definitely, as it appears to be, an unprecedented violence for a place. Yeah. Go ahead, Dave. Go finish your point, please. Go ahead. Yeah, one more point, Pooja. They mentioned that, after the violence that happened around 12:30 or midnight last night, if the police would have acted in time, then the violence that happened after the Eid prayers in the morning today, that would not have happened. They claim that the police was sleeping while the miscreants were on the rampage, and because those who caused mayhem last night, they were not apprehended, and that is why they, in a way, went ahead on a rampage once again in the morning. Pooja? That is actually an important point, that if there was already violence that had broken out at midnight till about 2 a.m., 3 a.m. in the morning, why did it have to be another clash? Why was immediate restriction not put in that area? Was it because it was a festival, or was it just sheer callousness?
of the administration or the police. Devankur Vadhavan tracking all the latest on that. Dev, I request you to stay on with me because with the violence that broke out, expectedly politics has broken out and erupted as well. The Bharatiya Janata Party, which is in opposition in Congress-ruled Rajasthan, has slammed the Ashok Gehlot government, stating that they failed to control the anti-social elements. Now, the Congress party has termed the clashes and as a pre-poll communal plot by the BJP. War of words while people are clashing on the streets. Take a look now what the netas are saying over Jodhpur. First, Karoli Ram Navami clashes, then unrest over the Alwar temple demolition, and now communal clashes in Rajasthan's Jodhpur. Jodhpur becomes the latest Rajasthan city to bleed, but there's no end to the politics. A war of words is broken out after violent late-night communal clashes and rioting in Rajasthan's Jodhpur on the day of Eid, right after a religious flag was hoisted at the Jalori Gate locality. The opposition was quick to take on the Rajasthan government. And speaking of politics now, of course, political delegations are visiting the site. My colleague Devankur is also telling us that a Congress delegation is visiting the site of the flare-up. Let's go across directly. These are the visuals coming in on your screen. Remember, politics breaking out, now politicians on the ground. Well, Pooja, these are senior people from Ashok Gehlot government. Dr. Subhash Garg, considered to be a close confidant of the Chief Minister himself, is here. वो बात करें, he is the convener. Sir, सुभाष जी एक सेकंड, एक आपसे दो सवाल हैं सिर्फ. आप मैं अभी बिल्कुल नहीं दूंगा, प्रेस को बुला रहे हैं, 7 बजे आप सर्किट हाउस आ जाइए. सर्किट हाउस में आ जाइए, यहाँ पे कुछ देखने आए हैं. सर, आप यहाँ पे जयपुर से आए हो. जिनके पास हैं उन्हें रखो यहाँ, बाकी बाहर जाइए. सर, जयपुर से आए हैं आप. एक सेकंड, कहीं से आए, 1 मिनट आप एक तरफ हो जाइए. नहीं, आप कर्फ्यू में खड़े हैं, आप एक बार इधर हो जाइए. देखने दीजिए. सवाल है सिर्फ. मैंने सवाल पूछ लिया, आप 1 मिनट धैर्य रखो. हम 7 बजे पूरे घटना समझ लें, तभी सवाल का जवाब देंगे. प्लीज. आपको जवाब देंगे बिल्कुल. No problem, sir. We are here to show us around, even if they're not willing to talk. Show us around how the Congress netas are visiting. Who all are there? Are the police personnel also with them? Where are they visiting specifically? We are doing our work. Let us do. Yeah. So, Pooja, these people are going to the places which are communally sensitive. These people where the strife happened. You can see senior ministers in Rajasthan government. In fact, Dr. Subhash Garg has arrived out here. आप काम कर, please. आप मीडिया को काम करने से मत रोकिए. आप अपना काम कर रहे हैं, please. आप कहाँ से? सर्किट हाउस. बात हो गई है. एक सेकंड. ठीक है. सर्किट हाउस प्लीज. अरे तो आप एक ठीक है. That's okay. हम लोग काम कर रहे हैं सर. बात मानिए आप हमारी, लेकिन सर्किट हाउस. तो जहाँ वो हम लोग सिर्फ आप ऐसे रोक नहीं, मीडिया को आप ऐसे रोक नहीं सकते हैं. Sir, what is the reason? Why are they stopping you to go to that location? आप लोग रोक क्यों रहे हैं? मुझे इतना बता दीजिए, आप क्यों रोक रहे हैं? आप क्यों रोक रहे हैं? 1 मिनट बता. नहीं, आप रोक क्यों रहे हैं तो बता दीजिए. आप रुकिए. आप क्यों रोक रहे हैं? सर्किट. Okay. एक सेकंड प्लीज. अरे आप ऐसे जी. Well, so all right, Devankur, I think what Devankur, my colleague, is telling us that right now in that area, as you can see, it's complete curfew. As Dev is showing us, it's complete curfew. The street is shut. Congress netas are visiting. These are elected representatives as well. But the cops clearly are not letting the India Today crew go very close. And the Congress netas are not answering exactly because the onus, remember, is on the Congress government in Rajasthan at this point. And with after Karoli, what's happening in Jodhpur, not an isolated incident, happens at midnight, again happens in the morning. These are some visuals on your screen that is from a previous night as well. What happened with the flag that became a trigger? Where was this flag hoisted and why? Devankur, do tell us that as you are trying to speak to netas as well. This flag appears to be the one of the triggers that led to a situation that turned ugly. So this is what Rajasthan's Jodhpur is looking like today. I'm heading into a very short break, but when we return, it is the loudspeaker debate that is getting noisier. Asaduddin Owaisi of the AIMIM has slammed MNS chief Raj Thackeray over an ultimatum demanding the arrest of
Thackeray. Will that happen, or will Thackeray get his way? And just about a few hours of that threat ends. We'll get you the latest on that after a break, as loudspeaker dangal reaches from Uttar Pradesh, Maharashtra, possibly to Delhi now. India Today TV wins big awards at ENBA 2021. Bags the best channel of the year. Shines bright with 15 goals. Gaurav Sawant, Best Anchor, English. Preeti Chaudhary, Best Continuing Coverage by a Reporter, English. Shivarur, Best Anchor, English. Udayan Mukherjee, Best Business Program, English. Rahul Kamal, News Director of the Year. India Today Group sweeps with a record 90 awards. India Today Group, the gold standard of journalism. Should you upgrade to 5G? Are you still wondering if you should get a 5G compatible phone? Well, it'd be a future-proof upgrade, especially with what 5G can really offer. 5G is faster, exactly 20 times faster than 4G. Experts are saying now that it's likely to bring a technological revolution. Unlike its predecessor 4G, which used longer airwaves, 5G uses millimeter waves, which makes it much faster. So say goodbye to annoying buffering when watching your videos. Why is 5G so fast? The millimeter waves are short, which means they have limited range and higher penetration. 5G also carries the promise of making latency disappear, which means that there's going to be less delay between sending and receiving information. So downloading heavy file sizes, of course, will take a few seconds. Can 5G make our cities smart? The idea is that 5G can create smart cities with more connected devices. For instance, increased use of connected or autonomous vehicles will impact lifestyle choices. This also begs the question of enormous amount of data it will generate. So, digital security will be an area of concern, of course, especially since 5G network is more difficult to protect than its predecessors. So, are you ready for the next upgrade? You are watching India Today. Just few hours to go for MNS Chief Raj Thakrae's threat, ultimatum to end, to remove the loudspeakers from mosques, or there will be Hanuman Chalisa on the loudspeakers. This debate over the loudspeaker is getting louder, noisier and shriller in Maharashtra. Days after the May 4th ultimatum, now an FIR has been lodged against Raj Thackeray and also the organizers of the event for that inflammatory speech, as is being alleged by him in Aurangabad few days ago. The FIR comes after Raj Thackeray called on the MNS workers to put loudspeakers in front of the mosques and loudly recite the Hanuman Chalisa if they not pull down the loudspeakers for the azan. Now, Owaisi has meanwhile jumped in. He has slammed both the Shiv Sena and the Bharatiya Janata Party over Raj Thakray's comment, claiming it was all a part of the BJP RSS plan. The loudspeaker debate, just to tell you, has now reached from Uttar Pradesh via Maharashtra to national capital Delhi. Delhi BJP Member of Parliament Parvesh Singh has now written to the governor, the Lieutenant Governor, demanding Uttar Pradesh-like crackdown on loudspeakers. The leader has said that Supreme Court order on loudspeaker is not strictly being followed in Delhi. He's claiming Uttar Pradesh-like treatment is required. And this is while Uddhav Thackeray says, Raj Thackeray says, we want to remind
Uddhav Thackeray government of the ultimatum. हमने संपूर्ण महाराष्ट्र स्टेट के पुलिस फोर्स को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि कौनते ही परिस्थिति में कायदा व सुव्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए और इसके लिए जो भी आपको हमें जो स्टेप्स लेने हैं हम जरूर लेंगे। जो कायदा व सुव्यवस्था खराब करने की कोशिश करेगा उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जब वहां की मुकामी पुलिस ने इनको कंडीशन के साथ परमिशन दिया है तो उनको चाहिए कि फौरन सो मोटो एक्शन ले कि एक बार हो जाने दो। क्या हो जाने दो? क्या एक शख्स पूरे स्टेट के पीस को दांव पे लगाएगा? क्या एक शख्स थ्रेटन करेगा औरंगाबाद की हिंदू मुस्लिम दलित के भाईचारगी को? तो पुलिस क्या कर रही है? और क्या ये क्या मतलब है कि एक बार हो जाने दो? क्या हो जाने दो? क्या सो मोटो एक्शन पुलिस नहीं लेगी? लगाइए 153 295 और अरेस्ट करके जेल को भिजाइए, क्योंकि शिवसेना की सरकार है और वो अपने भाई के खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। वही एक नवनीत राणा अगर उद्धव ठाकरे घर पर जाकर कुछ पढ़ना चाहती थी तो आपने उसको अरेस्ट करके सेडेशन लगाया। यहाँ आपके भाई का मामला आ रहा है, वो बकवास कर रहा है, पूरे पीस को बर्बाद करना चाहता है, धमकी दे रहा है। भाई 4 तारीख क्या स्टेट को कोई रैंसम पे होल्ड कर सकता है क्या? मैं आपके जरिए उनको कहना चाह रहा हूं कि हमारा मज़हब भी ये कहता है, हमारी तहजीब भी ये कहती है कि वो हमारे मेहमान हैं। अगर वो आ रहे हैं यहाँ पर तो आप सभा में जाने से पहले हमें बताइएगा कि हम सब साथ में मिलकर है, तो आप स्टेज पर जाकर आपको जो बोलना है आप बोलिएगा उसमें है? लेकिन हम दुश्मन नहीं है। आपकी अलग राजनीतिक पार्टी का एजेंडा है, हमारी अलग राजनीतिक पार्टी का, दूसरों की राजनीतिक पार्टी का अपना अपना एक एजेंडा है इसके अंदर। तो आपके जरिए मैं आपको ये दावत दे रहा हूँ कि आप आइए, हमारे साथ इफ्तार करिएगा, उसमें हम सब साथ में मिलकर करते हैं। Let's go across now to Mumbai, and what does the city look like just hours to go before that ultimatum that has been given by Raj Thackeray gets over. Paras Dama is reporting on the latest. Paras, has Raj Thackeray made a presence? What is the situation like outside his house in Mumbai? Has police given any sort of warning to Raj Thackeray or the MNS workers? Paras. Mumbai police has already started their action. We can see Mumbai and Maharashtra, where Mumbai police has already detained some of the MNS workers, and they are just Mumbai police is just in action because they doesn't want the situation to be get more bizarre. They doesn't want law and order situation to be get bad in Mumbai and Maharashtra. So Mumbai police has already started the action, and we are right outside Raj Thackeray house. You can see Raj Thackeray house outside Raj Thackeray house. A little police protection has been increased. Police has come. Some few of the constables and senior police inspector was present sometime before here because MNS worker had came here. You can see on my right side some of the MNS workers were gathered over here, and they were just asking that nothing should happen to Raj Thackeray because he is fighting for the Hindutva. You can see this all people who are over here, they are MNS workers. So Mumbai police has to take precautions, and that's why Mumbai police just increased a little security outside Raj Thackeray's house. One more important thing, some moment back Raj Thackeray came out of his window and he just given a glimpse that he is all okay and he is ready for what he has told. So tomorrow will be the most important day, as he has given warning to Uddhav Sarkar that before 4th, if the loudspeaker will not be removed, he will do action. He will reply in his own way, in his own style, and he will just play Hanuman Chalisa in front of mosque in double power. So right this now, is about political power, Paras. This is about, importantly, law and order. And will this be a revival, a comeback of MNS Chief Raj Thackeray, or will eventually government have its way? It's very interesting how the next few hours are going to be in Mumbai, and Paras and all our colleagues in Mumbai will be tracking the latest. And will Uddhav Thackeray at all budge with that political pressure? That's all from Maharashtra for now. I'm heading into a short break. When I return, we'll take you to across few seas. This is now Namaste Europe.
After a massive outreach in Berlin, Prime Minister Modi lands in Denmark today. This is the second leg of the Europe visit and has met already Danish counterpart Mette Frederiksen and a packed itinerary with not only the business honchos but the Indian diaspora. Let's bring you that after a very short break. This is Elon Musk. For some reason, he's sharing a console with Homer Simpson. His mind is as rich as an Italian wedding soup. Elon Tusk, listen, we need your help. Rick, Morty, why me? Did something happen to Elon Musk in your own reality? No, he's fine. When it's the world's biggest news story, there's only one gold standard of journalism. When it's the world's biggest news story, there's only one gold standard of journalism. Prime Minister Narendra Modi is in Denmark today. He met his Danish counterpart in Copenhagen, and this is Prime Minister's first visit to Denmark. The Russia-Ukraine war and Vladimir Putin's shadow clearly looming over the discussions. These are the visuals from a short while ago, meeting Danish Prime Minister Mette Frederiksen, and who also received Prime Minister Modi at the airport. Now, Prime Minister Modi will be part of a business roundtable later in the evening. There's an interaction with the Indian diaspora scheduled at 8 p.m. tonight, Indian Standard Time. But interestingly, it will also have a dinner that will be hosted by the Danish Queen. And speaking during the joint address, meanwhile, with the Danish Prime Minister Modi did speak on the Ukraine war. Prime Minister Modi said they have appealed for immediate ceasefire and peace. Prime Minister Narendra Modi said the two sides need to follow the path of dialogue and diplomacy to resolve the crisis. हमने
यूक्रेन में तत्काल युद्ध विराम और समस्या के समाधान के लिए बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने की अपील की। As close partners, we of course also discussed the war in Ukraine. We discussed the consequences on the horrible crimes committed against civilians and the serious humanitarian crisis in Ukraine. The reports on killings of civilians in Bucha are deeply shocking. We have condemned these killings and we stressed the need for an independent investigation. Denmark and the entire European Union strongly condemn Russia's unlawful and unprovoked invasion of Ukraine. My colleague Anjana Om Kashyap has been travelling with the cavalcade of Prime Minister Narendra Modi. She is currently in Copenhagen and bringing us these visuals and the updates. This is, remember, following the press statement and the joint statement that was given by both the Prime Ministers. And it is only likely to now tell us, as you can see, the Indian diaspora there with both the Indian flag and that of Denmark cheering. And this was a similar scene witnessed yesterday in Berlin, in Germany as well. Anjana also told us this visit is very significant and historic. This is about India's stand during the Ukraine war, which has been independent of any political pressure from the West or from Russia or Ukraine. India held its own clearly all these days and therefore coming across as a strong power that has a mind of its own. And this meeting therefore crucial, also must tell you, with the Danish Prime Minister, who's also one of the youngest Prime Minister. But that is just one part of the meeting. Let me now help you understand why precisely this is going to be a packed itinerary of Prime Minister Narendra Modi. So, of course, a loud cheer there by the Indian diaspora. But apart from that, what is on the itinerary? Let me take you through one by one. Bilateral talks that have already now taken place just about a short while ago, which were followed by the Memorandum of Understanding exchange and also a joint press statement by Prime Minister Modi and his counterpart, Danish Prime Minister Mette Frederiksen. But now there is a business roundtable with the top CEOs and honchos in just about an hour from now. After that, there will be an Indian diaspora outreach, a community reception at the Bella Center. But the day then eventually ends. Remember, Denmark is a royal family where there is this culture of right now where there is a Danish queen hosting the dinner at about 8 to 10 p.m. That will be Queen Margaret II will be hosting that dinner, to of course which Prime Minister Modi has been invited. Latest visuals that are coming in from Denmark right now, Copenhagen. The first leg of the trip, remember, was yesterday in Germany, and now it is in Denmark. Let me now first take you through the shots that had come from Germany and how clearly there is going to be how the Indian diaspora reacts today. On one side, you see how yesterday when Prime Minister had arrived in Germany, the Indian community was all set there cheering with the sloganeering, dances and costumes. Today as well, there was dhol and nagara to welcome him. Prime Minister Modi addressed the Indian diaspora yesterday. He's expected to do that again today. But he added that innovators are being boasted in India. It has become a land of startups with over 60,000 startups operating in the country. And PM Modi said India has registered the highest real-time payment transaction in 2021, accounting for over 40% of the world's real-time payment. आठ साल पहले 200, 300 या 400 स्टार्टअप्स आज 68,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स दुनिया के सारे पैरामीटर्स कह रहे हैं कि इसमें दर्जनों स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बन चुके हैं। पिछले साल पूरी दुनिया में हुए
रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स, कान खोल दो, रियल टाइम डिजिटल पेमेंट में से मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। अब भारत छोटा नहीं सोचता है। रियल टाइम डिजिटल पेमेंट में से 40% भागीदारी भारत की है। पहले तो हमारा देश की विशेषता देखिए साहब, देश एक संविधान दो थे, मालूम है ना, 2 संविधान थे। सात दशक हो गए दोस्तों, 7 दशक हो गए एक देश एक संविधान लागू करते करते। अब लागू हुआ दोस्तों। पिछले 7-8 साल में भारत सरकार ने डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीधा एक क्लिक किया, जो हकदार है उसके खाते में पैसे चले गए। डायरेक्ट जो डीबीटी के द्वारा हमने पैसे भेजे वो अमाउंट है 22 लाख करोड़ रुपए से अधिक। यानी अब आप जर्मनी में हैं तो आपको बता दूं, $300 बिलियन से भी ज्यादा बेनिफिशियरीज के खाते में पैसे पहुंचे हैं। बीच में कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट की कंपनी नहीं, कहीं कट मनी नहीं। Let's now take you to Karnataka, where Home Minister Amit Shah is today, when there's also speculation about a leadership change possibly and a cabinet reject. Chief Minister Basavaraj Bommai is likely now to host a dinner for the Home Minister at his official residence, and that could become a crucial one. Amit Shah and Basavaraj Bommai are likely to have a one-on-one discussion of the boiling political status in the state, specifically with just 1 year to go for the assembly elections in Karnataka. A month ago, during his last visit, Amit Shah had attended the party core committee meeting and had set a target of 150 seats in 2023 Karnataka elections for the BJP. This visit of Amit Shah to the state, where he also paid a tribute to 12th century social reformer at Lingayat Saint Basavana on the occasion of Basav Jayanti, and later took part in the valedictory function of Khelo India University Games. बसवन्ना ने सैकड़ों साल पहले समाज के अंदर सर्वस्पर्शीय, सर्वसमावेशक लोकतंत्र कैसा हो सकता है, इसका उदाहरण इसी महान कर्नाटक की भूमि पर अनुभव मंडपम के द्वारा किया था। उन्होंने अपने वचनों के द्वारा समाज के हर वर्ग की समस्याओं को समाधान के बहुत सुंदर और सरल रास्ते दिखाए। मोदी जी की सरकार बनने के बाद देश में 6 नए केंद्रीय विश्वविद्यालय बने हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी 6 बनी है, IIM 7 बने हैं, IIT 7 बने हैं, एम्स 15 बने हैं, मेडिकल कॉलेज 209 नए मेडिकल कॉलेज को बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। Shocking visuals have emerged from Mysuru, where there was bloodshed seen at a Mysuru bar when a gang war broke out inside the bar. Members of one gang attacked a 29-year-old of a rival gang with glass bottles and machetes. These are the visuals on your screen. The attack was primarily done, as it appears, to settle scores of an old rivalry. The shocking attack was caught on the CCTV camera inside the bar. And now, as investigation is on, FIR has been registered at the Bannur police station in Mysuru. According to the police, 2 accused have been arrested so far. And what about the man who was attacked? The victim, his identity is now known as Van Dayanand and is actually a history sheeter. But he's also now named 3 people in his complaint. The hunt is on for another accused and is underway.
All right, time for a quick break. When I return, we have lots more coming up on the other side of the break. Stay tuned. In a landmark verdict, the Supreme Court of India has said that no one can be forced to get vaccinated against COVID-19. The court has said that restrictions imposed on individuals through vaccine mandates cannot be called to be proportionate. Importantly, the Supreme Court of India has also told the central government to ensure that all adverse effects related to vaccinations against COVID-19 be made public. Bodily integrity is protected under the law and nobody can be forced to be vaccinated is what the apex court said. Again, however, the court did say that certain limitations can be imposed on individuals in the interest of community health. The court has indicated that there can't be any restrictions on individuals in terms of their access to public spaces if they've not been vaccinated against COVID-19. Barring COVID-appropriate behavior, we suggest no curbs on unvaccinated individuals in access to public places, services and resources if cases are low, is what the court said. However, the court was making these observations in view of less number of cases. Till infection numbers are low, we suggest that no restriction is imposed on individuals on access to public places, services and resources. Recall the same if already done, the court said. The court, however, emphasized on COVID-appropriate behavior. And the court said that their order is limited to vaccine mandates. On reporting about adverse events, the court did say that all of this should be published without, in fact, compromising on the identity of the person who has been affected. Regarding segregation of vaccine trial data, subject to the privacy of individuals, all trials already conducted and to be subsequently conducted, all data must be made available to the public without further delay. There have been concerns from many quarters that the government of India is not in fact informing the people about the adverse effects on vaccines. Even with regards to vaccination for children, the Supreme Court said that adverse events must be reported almost immediately. Regarding vaccine for children, it is not possible for us to second-guess the opinion of experts in the vaccination. Indeed, follows the global standards and practices. However, data of adverse reactions should be published at the earliest, is what the court said. You are watching at 9 p.m. on the news today with me, Rajdeep Sardesai. A third communal flare-up inside a month in Rajasthan. Why is the Congress-ruled state becoming the country's latest communal flashpoint? And where does the buck stop? That's going to be a top talking point on the news today. Also, Prime Minister Modi continues with his European outreach. What will be the outcomes? We'll have live reports on that too. All that and much more on the news today. News without the noise. Just hours to go with Raj Thakra's ultimatum ending for Maharashtra's loudspeaker politics. Now it is becoming Thakre versus Thakre. Security has been tightened right outside Raj Thakra's residence in Mumbai. Not just that, he has been booked also for his provocative and allegedly inflammatory speech in Aurangabad rally just a few days ago, remember? Raj Thakra's cousin brother is the Chief Minister of the state, Uddhav Thackeray, and he has been now booked after a complaint for the provocation with intent to cause riot, abetment of offence and also abetting commission of an offence.
Will Raj Thackeray be arrested? Could there be possibility of that? With security being tightened, FIR being lodged against him, with deadline that is going to end anytime soon with regard to his demand to remove the loudspeakers from mosques across Maharashtra, or else Hanuman Chalisa will be played. This visual on your screen just about a short while ago, a little glimpse by Raj Thackeray there on the balcony, because a lot of MNS workers are on the ground as well to support him. But right outside Raj Thackeray's residence is my colleague Paras Dama. Paras, so it looks like this is becoming a direct face-off now between the Thackeray brothers. What is the situation like on the ground? Of course, it's a direct face-off. You can see how Mumbai police is reacting up to all this which is happening right now. Almost 150 MNS worker has already been detained in entire Maharashtra and Mumbai. And right now, we are outside Raj Thackeray residence, and you can see how security has been beefed up over here. MNS workers gathered around the residence sometime, and they were asking questions to Mumbai police also. So that is the major reason why security has been beefed up over here. MNS workers are trying all the things that can help Raj Thackeray in the entire situation right now which is happening. We had seen also the detention of some of the MNS workers from different parts of Mumbai, and also Mumbai police has taken loudspeaker from the party office also. So right now situation is getting little difficult, but the face-off is direct, because we had seen in the past how Raj Thackeray attacked Uddhav Thackeray with his different styles. First, when this entire scenario started, Raj Thackeray has gone to Raj Thackeray's MNS workers has gone to Sena Bhavan, and they had played Hanuman Chalisa in front of Sena Bhavan. After that, he has also targeted Sanjay Raut. So this is the situation which is happening. But now the most important question is that the warning time is getting over. Only few hours to go. What will happen tomorrow? So Paras, from what you are telling us here right now, if security is tightened, which means likely he's going to be restricted inside his house. If he's not allowed to come out after his ultimatum is over, will there be other MNS workers who will indulge in, as he said, Hanuman Chalisa on the loudspeaker? Will they wait for Raj Thackeray to be leading that? Very difficult to say right now, but the main man behind this all is Raj Thackeray, and Raj Thackeray will definitely go, because when we had gone inside, there was off-camera briefing done by off-camera talks done by Raj Thackeray, and in that Raj Thackeray said that I will be doing whatever I have to do, whatever I had said, I will do that. We all are waiting for a letter that will come in next 20-25 minutes. It will be for all over the people staying in India. He will just give a letter. 3-page letter will be given to all the people, and something will be said by Raj Thackeray in the letter. We all are waiting for the letter, but right now security has been beefed up outside Raj Thackeray And residence. is this going to be a law and order situation there in Mumbai tomorrow? Remember, will Raj Thackeray back down, or will it be the Mahavikas Aghadi that will eventually give in to the political pressure? We'll have to wait what happens by tomorrow morning. Big updates are expected from Mumbai. Security tightened right outside MNS Chief Raj Thackeray's residence in the Mumbai city. Paros with all the latest. And tomorrow, remember, we'll be tracking all the latest that comes out from Mumbai. Thank you so much for watching 6 p.m. Prime. Coming up at 7, all the big stories of the day with Preeti Chaudhary. Are lemons the new gold? Forget gold and silver, thieves are now stealing lemons.
Yes, you heard that right. With the prices of lemons looking north consistently, these vegetable thieves stole 140 kg of lemons from a farmer's garden in Gujarat, Surat. The owner of the garden, Jayesh Bhai Patel, had planted about 1,500 lemon trees on his farm. Keeping in mind that the prices had increased, he had tightened the security of his gardens. But despite that, the thieves stole the lemons and fled. The cost of stolen lemons is estimated to be around 15,000 rupees. But it's not about lemons only. Anything with skyrocketing prices is a thief's delight. The Gujarat police arrested a gang of highway robbers involved in diesel theft. 6 persons were held for stealing fuel from vehicles parked near highway eateries. The gang is said to be involved in diesel theft from around 100 vehicles around Gujarat and even outside the state. With the prices of petrol and diesel going past the 100 rupee mark, even diesel theft is understandable. But do you know what is the latest to be stolen? It's precious water. Amid severe heat wave, people in North India are facing severe water shortage. In Gujarat's Banaskantha, a village head has been accused of stealing water. That too from water pipelines installed for other villages and cattle. The villagers allege that the woman Sarpanch, Hansa Ben Thakur, and 15 others were stealing water by making a hole into the drinking water pipelines. Since water was being supplied there through the government water supply pipeline, the people of Tirth Gaon of Vav Tehsil have lodged a case of water theft with the police station. All in all, thieves are humans too. With rising prices of essential commodities, the robbers are also stealing what seems important to them. When it's the world's biggest news story, there's only one gold standard of journalism. You are watching 9 p.m. on the news today with me, Rajdeep Sardesai. A third communal flare-up inside a month in Rajasthan. Why is the Congress-ruled state becoming the country's latest communal flashpoint? And where does the buck stop? That's going to be a top talking point on the news today. Also, Prime Minister Modi continues with his European outreach. What will be the outcomes? We'll have live reports on that too. All that and much more on the news today. News without the noise. Presented by Aditya Birla Group, Big in Your Life. Co-powered by Panasonic Smart AC, AC for healthier homes. In association with SBI Life, अपने लिए, अपनों के लिए. Kalyan Jewellers. What is it that really happened in Jodhpur? Fake news responsible for communal fire. Two rumors led Jodhpur to the edge. The timeline of violence. Rumor 1. Freedom fighter statue vandalized. Rumor 2. Pakistan flags were put on the city square. Who spread these fatal rumors? Fake news led to the Eid violence. The Jodhpur truth at 7 p.m. Good evening. You're watching 7 at 7. Our top focus is the city of Jodhpur. What led the city of Jodhpur to become a communal minefield in 24 hours? Was fake news responsible? Specifically,
two rumors that were floated between 9 p.m. and 1 a.m. at night last night, Monday. We're going to break it down, the entire timeline for our viewers. I'm Preeti Chaudhary. But first, I'm going to take you through the headlines. Gehlot government under fire over Jodhpur clashes. BJP blames Rajasthan government for violence. Congress Neta calls it choti si baat. Fresh violence erupts in Rajasthan's Nagaur during Eid celebrations. Two factions of same minority community pelt stones at each other. Loudspeaker debate gets louder. MNS chief Raj Thackeray booked for inflammatory speech in Aurangabad. FIR also lodged against rally organizers. Home Minister Amit Shah in Karnataka in midst of cabinet rejig. Speculation ahead of the crucial polls in 2023. Chief Minister Bommai will hold a dinner meet with Shah. After his Berlin outreach, Prime Minister Modi lands in Denmark, Copenhagen on day 2 of his European visit, meets his Danish counterpart, set to attend Second India-Nordic Summit. Superstar language war gets bigger. Chiranjeevi says he felt insulted and humiliated when Hindi cinema was called Indian cinema. The actor credits Bahubali and RRR for breaking the barrier. European football's governing body, UEFA, bans Russian clubs from next session, Champions League and other competitions for Putin's invasion of Ukraine. So what's the truth behind the Jodhpur communal flare-up, viewers? Tension continued to simmer. The city's on edge, and it all came together in strangely just about 24 hours. Jodhpur, violent protests broke out between two communities. After the fresh clashes on the morning of Eid and Allahu Akbar chants, angry protesters were seen reacting with Hanuman Chalisa as counter. A huge mob armed with lathis and sticks recited Chalisa and raised religious slogans. All of this after Muslims pelted stones this morning when they saw a saffron flag at the Jalori gate. This comes after fresh escalations and morning violence after overnight clashes as well. Reports suggest that the violence may have broken out due to fake news. There are two rumors that were floated between 7 p.m. last night to 1 a.m. in the morning. The first, that Pakistan flags were put up. Later, it was found that the flags were Eid flags. In fact, they were Eid flags, and a rumor was floated that this, what you see on your television screen, is a Pakistan flag. And then there was an attempt to take down this flag. This was rumor number one. A lot of BJP cadre also gathered here, pulling down the flag and dismantling loudspeakers. Let's get you now to the second rumor. There was a second rumor that was spread that a freedom fighter statue was vandalized. Reports suggest the rumor was fanned by BJP Mayor Vinita Seth without any proof. Meanwhile, shocking new CCTV videos have also emerged. In this latest CCTV video, a mob can be seen pelting stones and breaking a motorbike. Another video shows people with sticks running around and pelting stones. The third CCTV video, which we will show you, shows people brandishing swords. Curfew now has been imposed in 10 police stations and areas of Jodhpur till 1 p.m. May 4th. In all probability, it's going to be extended. Let me now, viewers, let's listen into the reactions, and then we will get you the entire timeline of what exactly went down. जोधपुर में जो तनाव पैदा हुआ है कल देर रात से, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं समझता हूँ कि हमारी राजस्थान की और मारवाड़ की परंपरा रही है, सभी समाज के सभी धर्मों के लोग हमेशा हर त्योहारों के अंदर भी प्रेम से भाईचारे से रहते आए हैं। मैं अपील करना चाहूँगा कि तमाम लोग शांति बनाए रखें और तनाव समाप्त करें, क्योंकि ये तनाव हिंसा का माहौल हित में नहीं है जोधपुर वासियों के भी। और जो लोग फिर भी ऐसे कोई तत्व एंटी सोशल एलिमेंट आते हैं तो सख्ती से निपटा जाएगा, ये मैंने पुलिस को निर्देश दे दिए हैं।
और समय रहते हुए मैं समझता हूँ कि सबको समझना चाहिए कि सब मिलजुल करके जो हमारा भाईचारा बनाए रखें, ये मेरी बहुत मार्मिक अपील है। आज जोधपुर में जिस तरह की घटनाएं हुई है उसके बाद में ये सिद्ध हो गया है कि इसको ऑर्केस्ट्रेट जो है सत्ता और सरकार और कांग्रेस पार्टी कर रही। कांग्रेस पार्टी के मुखिया करौली में दंगा होता है और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सवाई माधोपुर में होते हैं और अपने किसी पार्टी के कार्यक्रम में बात करके जाते हैं, उनसे उसको विषय को जोड़ते हैं। लेकिन आज का विषय न तो कोई भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति था, न कोई कार्यकर्ता था, न कोई आरएसएस का कोई स्वयंसेवक वहां था, और न कोई दूसरा पक्ष था कि जो है किसी दंगे में दूसरा पक्ष होना आवश्यक है। दूसरा पक्ष ही था कि जो वहां जाकर के कोई जो है घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहा होगा, उकसा रहा होगा। एक तरफा घटना अंजाम की जा रही थी। All right, viewers, how did this clash actually come to being? What was the actual 24-hour timeline? I want to break it down. This report has been filed by my colleague Sharath. He's spoken to the police there, and this is what has been verified as the sequence of event. May 1st, Parshuram Jayanti was celebrated with gusto at the Jalori gate. Now, this is where this entire incident took place. May 2nd, the administration and Jalori Bazaar traders in good faith allowed Eid celebrations to take place, as just 3 days ago Parshuram Jayanti had taken place. On May 2nd itself, one-day permission was granted for loudspeakers and Eid flags. So there was permission given to put Eid flags and loudspeakers. Then on May 2nd, which was yesterday at 7 p.m, Eid flags were hoisted at the Jalori gate. However, there was at 9 p.m, a rumor starts spreading very fast that Pakistan flags have been hoisted. You've seen that one visual of that flag being taken down. Then, on May 2nd, 2 local channels report that freedom fighter statue has been vandalized. This was unverified. Till now, it's unsubstantiated. There is no evidence to prove that the freedom fighter statue was vandalized at all. On May 2nd itself, this is late at night yesterday, BJP Mayor Vinita Seth, who is the mayor of the area, and other BJP leaders react to this unverified report. May 3rd, this is last night at 12 a.m, viewers. BJP workers gather at the Jalori gate and these flags and loudspeakers are removed. The visual that you can see on our graphic as well. Then late at night, the video, all of this is happening, within a span of 7 p.m. and 3 a.m. Then the video of the flags and the loudspeakers being dismantled at Jalori gate goes viral. The video of the flags being removed goes viral. Members from the minority community see it. Emotions are heightened. They reach Jalori gate. May 3rd, 1 a.m. Stones are pelted. Communal clashes between these two factions occur. May 3rd, 1:30 a.m. The police has no option but to resort to lathi charge and tear gas. This happened in the dead of the night yesterday, 1:30 a.m. At around 3 a.m, viewers, members of both community, the leaders of both community are spoken to, truce is called. A guarantee is given by both factions, be it the ones that were taking down the flags and loudspeakers and the ones that were opposing it, and of course the result of violence of stone pelting. Both factions give a guarantee that Eid namaz will go off peacefully, which was today, this morning. What happens is, viewers, May 3rd, 8:30 a.m, fresh violence over saffron flag. What really happened was that members of the Muslim community came to offer namaz. Strangely, at that same square where you see that flag was a saffron flag that was planted. Nobody knew how it came about, but in the morning at 8:30 a.m, the flag was right there. Members of the Muslim community see that flag. Stone pelting began and vandalism by Muslim youth as well. Then, May 3rd, the administration replaces that saffron flag, which was earlier, that white flag, which is an Eid flag, which there was a rumor that it was a Pakistan flag. That flag was taken off, a saffron flag was put. Nobody knew who put that saffron flag, but it was there this morning. Then, that saffron flag was removed by the administration after violence this morning, and the Indian flag was put. Then at about 10 a.m. this morning, BJP starts protesting at the Jalori gate. Hanuman Chalisa was chanted by right-wing groups as well, because there was violence earlier by the Muslim community who were angered by the saffron flag there. Then at 2 p.m. this afternoon, curfew in Jodhpur was called till 1 p.m. tomorrow, which is the 4th of May. So viewers, when you break it down, it comes down to 2 rumors that fanned the violence that went down in Jodhpur.
I want to now, because there were these two rumors and questions are being raised at the mayor as well of Jodhpur, because she has talked a lot that one of the main reasons for the violence was the fact that a statue of a freedom fighter was vandalized. Till now, the police says, and that's been confirmed by reporters on ground, that there is no evidence of any statue being vandalized. But this is also what she told us this morning. Listen in to Miss Seth. वनिता जी, ये जो दृश्य वायरल हो रहे हैं, सारे चैनलों पर चल रहे हैं, झंडा उतारा जा रहा है उनका और लाउड स्पीकर खींच कर उतारा जा रहा है, वो कौन लोग उतार रहे थे और ये वीडियो कहाँ का है? ये रात की, एक मिनट आप बात सुनिए, रात को इन्होंने के लिए सर्कल खाली किया हुआ था, वहाँ पे इन्होंने क्या किया कि जो एक स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति थी उसके ऊपर टेप लगा दी, मुंह के ऊपर काली टेप, और उसको ढक रहे थे। तो आपके कोई जर्नलिस्ट वहां से निकल रहे थे, उन लोगों ने वहां पे रुक के कहा कि भाई ये क्यों कर रहे हो ऐसे। उन्होंने उस समय पत्थर मारने शुरू कर दिए। ये लाउड स्पीकर वगैरह पुलिस के प्रेजेंस में लगे हैं, तो लाउड स्पीकर की कोई इशू नहीं है, ये जानबूझ के इशू बनाया जा रहा है। सवाल ये कांग्रेस उठा रही है कि ऐसा क्यों किया गया, क्या ये जानबूझ के किया गया, माहौल बिगाड़ने के लिए किया गया? एक झंडा लगा हुआ था, उससे क्या दिक्कत है मुझे ये बताइए, नंबर एक। दूसरी बात, उन्होंने जो स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति लगी हुई थी उसके चारों तरफ ब्लैक कलर की टेप लगाई। सबसे ज्यादा इशू झंडा नहीं है, ये है, ये उनके मुंह के ऊपर ब्लैक टेप लगाने का क्या मतलब है? I want to now cut across to our Rajasthan Bureau Chief Sharad Kumar, who filed the sequence of events. You know, Sharad, बहुत सारे अलग अलग वो आ रहे हैं कि तथ्य कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर अगर हम सबको समेटें और पुलिस से बात करें शरद, तो दो चीज़ें साफ आती हैं कि दो रूमर स्प्रेड किए गए। पहला रूमर कि जो एक फ्लैग, जो ईद का फ्लैग होता है, वो रूमर चला कि ये पाकिस्तान का फ्लैग है और उससे लोगों के इमोशंस हाइटेंड हो गए और वो फ्लैग नीचे उतारा गया, उससे जो मुस्लिम समुदाय है उधर भी आक्रोश हुआ। दूसरा रूमर जो विनीता जी भी आपने ही उनसे सवाल किया था, क्या कोई तथ्य है कि जो फ्रीडम फाइटर का स्टैच्यू था उसको वैंडलाइज किया गया, उसको ढका गया, उस पे काली पोथी या काला टेप लगाया गया? प्रीति, जोधपुर में दूसरी घटना है। कुछ मीडिया हाउसेस पे भी मुकदमे हुए थे। पिछले साल जब उन्होंने लिखा था कि पाकिस्तान का झंडा जोधपुर में लहराया, तब भी वो चांद वाला झंडा था और इस बार फिर यही काम हुआ है पाकिस्तान का झंडे का। दूसरा जो सवाल पूछा स्टैचू का, एक वीडियो जरूर वायरल हो रखा है जिसमें कहा जा रहा है कि उनके मुंह पर काली टेप लगाई गई। अब वो किसने लगाया, क्या लगाया, मगर ये वीडियो वायरल हुए जिसके बाद ये बवाल मचा। वो जो वहाँ के मेयर हैं वो सही कह रही हैं कि इस तरह के वीडियो आए हैं, मगर किसने लगाया, क्या लगाया, ठीक उसी तरह से पता नहीं है जैसे सुबह भगवा झंडा किसने लगाया। अब इमोशन इतने ज़्यादा चार्ज अप हैं, हाई हैं वहाँ, इसमें मुझे लगता है कि राजस्थान सरकार के पुलिस का, इंटेलिजेंस का, एडमिनिस्ट्रेशन का एक बड़ा फेल्योर है कि अगर इस तरह की अफवाह फैल रही थी तो काबू में नहीं कर पाए। दूसरा, भीड़ जमा हो गई फिर काबू में नहीं कर पाए। तीसरा, सुबह जाकर सो गए थे क्या जो सैफरन फ्लैग लग गया। इतने ज़्यादा विवाद है, रात से आप आंसू गैस के गोले छोड़े हो, वहाँ कोई ले जाकर आपको सैफरन फ्लैग लगा दे, पता नहीं किसने लगाया, आपको पता ही नहीं चला। तो ये एक इतना बड़ा फेल्योर है। जो चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, खुद होम मिनिस्टर भी हैं वहीं। देखिए, बीजेपी अनएपोलोजेटिक है अपने इस मुद्दे को लेकर। खुद गजेंद्र सिंह हनुमान चालीसा का पाठ किए हैं वहाँ पर। तो प्रीति, आप समझ सकते हैं कि बीजेपी अपने हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर शर्मिंदा नहीं है, मगर ये कांग्रेस गवर्नमेंट के फेल्योर है कि इमोशन रीजन के नाम पर इतना हाइटेंड है, फिर भी आप फ्लेयर है, फिर भी आप कोई कदम नहीं उठा पा रहे हो। और करौली, राजगढ़ और अब जोधपुर, तो ये तो कांग्रेस सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्योर है। प्रीति, वही दो सवाल करूंगी शरद आपसे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि यहीं पर 7 बजे से 9 बजे रात से लेकर 3 बजे सुबह तक इतनी टेंशन रही है, वहां पर पुलिस अधिकारी हैं, उन्हें चोट आई है, वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, वहां पे लाठीचार्ज हुआ है, तो 3 बजे से 8 बजे तक क्या वहां पे कोई पुलिस तैनात नहीं थी कि एक भगवा झंडा किसी ने आके लगा दिया? हाँ, बिल्कुल, ये बड़ी लापरवाही है जिसका जवाब पुलिस के पास नहीं है कि झंडा कहाँ से आया। पुलिस को लगा कि रात खराब हुई है 3 बजे तक, अब घर जाकर सो जाते हैं क्योंकि सहमति बन गई है। ये नहीं समझे कि इमोशन इतना ज़्यादा
बिगड़ा हुआ है कि अब हिंदू कह रहे हैं कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी के स्टैचू वेंडलाइज किया गया, जो हमने परशुराम जयंती का झंडा लगाया था वो उतार दिया गया। मुस्लिम कह रहे हैं एक दिन तो हमारी ईद आती है, ईद से बड़ी कोई त्यौहार नहीं है, आज ही हमें ईद नहीं मनाया दिया जा रहा है, हमारा लाउड स्पीकर झंडा उखाड़ दिया। इतना इमोशन जब आपको पीक पर है, फिर भी जाके आप घर पर सो गए। इसके बाद सुबह फिर देखिए कि पथराव होता है और वहाँ पर पुलिस नहीं है। आप अगर इतने पुलिसकर्मी वहाँ होने चाहिए, कमिश्नरेट सिस्टम है, वहाँ तो 2-2, 3-3 एसपी बैठते हैं, कमिश्नर बैठते हैं, इतनी पुलिस लाइन है, इतनी पुलिस होनी चाहिए कि जहाँ पर नमाज पढ़ा जा रहा है, जहाँ पर सैफरोन झंडे को लेकर नारेबाजी हो रही है, वहाँ पर पथराव हो गया। और बालकोनी में जो लोग खड़े थे उनके ऊपर पत्थर फेंके गए, गाड़ियां तोड़ दी गई, मतलब पत्थरबाजी हुई और पुलिस रोक नहीं पाई, उसके बाद फिर लाठीचार्ज करना पड़ा। तो इससे ज़्यादा मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन का कोई फेल्योर नहीं है। देखो बीजेपी तो जो कर रही है वो करेगी, उसके लिए वो बिल्कुल ही शर्मिंदा नहीं है, वो अपने एजेंडे पर काम कर रहे हैं और आज भी उन्होंने जमकर नारेबाजी की है, खुद केंद्रीय मंत्री लीड कर रहे थे। तो कांग्रेस को अगर बीजेपी पर सिर्फ आरोप लगाना है तो फिर इस तरह से लगातार दंगे होते रहेंगे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का इनका फेल्योर करौली में भी था, राजगढ़ में भी था और जोधपुर में भी है। अब हम जरा वो टाइमलाइन ग्राफिक फिर से दिखा रहे हैं। आखिरी सवाल पूछूंगी कि ये बात तो तय है कि इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर जो गहलोत जी की सरकार का हुआ है कि कहां थे आप 3 बजे तक, वहीं पर आप तैनात थे, वहीं पर फ्लेयर अप हुआ है और आपको पता ही नहीं चला कि 3 बजे से 8 बजे तक क्या हो गया। पर दूसरा सवाल एक ये भी उठता है शरद कि रात में जब 12 बजे लोग एकत्रित हुए, जब झंडा निकाला गया, जब अफवाह उड़ी के जो स्वतंत्रता सेनानी है उनकी जो मूर्ति है उसका खंडन हुआ है, उसको वैंडलाइज किया गया है, क्या कोई उसका तथ्य है, वैंडलिज्म का कोई तथ्य है? और कौन लोग थे जो जमा हुए 12 बजे रात में, जिन्होंने ये लाउडस्पीकर निकाला, जिन्होंने झंडे निकाले? देखिए, पहले तो सबसे पहले सरकार का आदेश है कि किसी तरह का कोई जो है जुलूस और झंडे नहीं लगाए जाएंगे। उसके बावजूद वहां पर परशुराम जयंती के दिन झंडे लगाए गए थे। फिर उन्होंने तय किया कि ईद का झंडा वहां पर चढ़ता है, चढ़ाया जाएगा, ईद का झंडा लगा दिया गया। उसके बाद जब ये रूमर फैली तब भी पुलिस सोई हुई थी। इतने लोग बीजेपी हिंदू संगठन के जुट गए और कैसे उसको झंडे को उखाड़ रहे हैं, लाउड स्पीकर उखाड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से जैसे ही वीडियो मुस्लिम इलाकों में गया, वहां से लोग निकल के रात को चले आए, क्योंकि ईद में आपको पता है ये रात को जागते हैं मुस्लिम समुदाय के लोग। और उसके बाद इतनी ज्यादा भीड़ हो गई और पुलिस कम है, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े जोधपुर में। तो ये सरकार के लिए डूब मरने की बात है कि आपको पता है कि अक्षय तृतीया है। आज राजस्थान में जितनी शादी होती है 1/3 शादी आज हो जाएगी पूरे साल की। आप समझिए इतना पवित्र दिन है राजस्थान के लिए आज, और अक्षय तृतीया और ईद एक दिन है, उसके बावजूद आपकी पुलिस सोई हुई है। लाख बीजेपी को आरोप लगा दें अशोक गहलोत, इस आरोप से बच नहीं सकते कि उनके प्रशासन का एक बड़ा फेल्योर है। उनके घर में है जहां से वो विधानसभा क्षेत्र जीत कर आते हैं, जोधपुर से जो उनका गृह नगर है, वहां वो संभाल नहीं पाए हैं। यह जानते हुए बार बार कहते हैं कि और सारे करौली भी होंगे राजस्थान में, मुझे पता है, फिर भी आपकी पुलिस सोई हुई है। 2 दिन पहले आप मीटिंग लेते हो गृह मंत्रालय का कि अक्षय तृतीया और ईद एक साथ आ रही है, पूरी पुलिस को मुस्तैद होना चाहिए, और आपके इलाके में, आपके गृह नगर में ही पुलिस सोई हुई है। इसलिए जो जोधपुर आज जला है, इससे बच नहीं सकते इस आरोप से अशोक गहलोत अपने फेल्योर होने के। बहुत शुक्रिया शरद हमसे जुड़ने का। So 2 rumors that fueled the violence, but the responsibility rests on no one but Ashok Gehlot's government. He might blame the BJP for fanning these rumors, and at one end you do have the mayor of Jodhpur who actually believed and circulated news which was unverified. But having said all of that, the buck falls on the Chief Minister of Rajasthan. What was his administration doing between 3 a.m. and 8 a.m.? Because that is when the flag that you see was removed and a saffron flag was put, which of course they had to remove when all the tension took place and install the flag of India. With that, I'm going to quickly now shift focus. This was the timeline of what really went down in Jodhpur. 2 rumors fueled the fire that has led Jodhpur to become a communal minefield. Breaking news coming up. All right, here's the latest news break. It's going to be an eyeball-to-eyeball confrontation. Thackeray versus Thackeray. Security has been beefed up outside Raj Thackeray's residence. Raj Thackeray has been booked for his provocative speech in Aurangabad for inciting violence.
provocation with intent to cause riot, abetment of offence, abetment, commission of an offence. Will Raj Thackeray be arrested? That's the big question right now. Will the Maharashtra police bite the bullet, or is this exactly what Raj Thackeray wants politically, to court arrest? And will it be politically savvy for the Maharashtra government to go ahead and make that arrest? Well, we don't quite know. What we are getting to understand is that security has been beefed up. Those visuals of Raj Thackeray there at his balcony, a posse of policemen right under him, more policemen coming in, FIRs have been filed. Will he be arrested? Because the deadline, viewers, is running out. Tomorrow is the 4th of May. And that is the deadline that Raj Thackeray had given. He'd said that if by the 4th of May you do not take down the loudspeakers, I'm going to chant the Hanuman Chalisa on loudspeakers outside these mosques. Will he do so? And will the police arrest him before he does so? It's going to come to a crescendo tomorrow morning. What we are given to understand, FIRs have been filed. I'm going to go into a quick break. You do stay with me. On the other side is our fact check segment. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com or call 9999892171. Is there life on Mars? Well, NASA's Perseverance, or Percy, is looking for it for a year, and so far, it's only collected rocks. The rover is celebrating its first landiversary since it started trekking the red planet to look for life. The nuclear-powered, one-armed and six-wheeled robot by NASA is a work in progress. This sedan-sized rover is a giant experiment as NASA continues to calibrate and test it. Percy is also the first robot to roam freely on the red planet. The robot is looking for evidence of microbes that scientists anticipate were living on Mars a long time ago. Percy is one of its kind as it's laying the groundwork for sending Mars's rock samples back to Earth. These samples will be stashed on the Martian surface, which can be picked up later during a joint mission that's slated for 2030. Percy is a $2.7 billion rover equipped with lasers, spectrometers, and cameras. Its sample and caching system is the most complex mechanism with over 3,000 parts. The first sample it collected was a briefcase-sized rock nicknamed Rochette. To collect rock samples, it uses a drill and a hollow coring bit at the end of its robotic arm. The robot is trying to map Mars's geology and past climate to better understand the planet. Welcome back, viewers. You're watching now our fact check segment where we bust certain claims masquerading to be facts on social media platforms and WhatsApp groups. Now, there's a claim floating about suggesting the video of NRIs reciting Chalisa on the London Tower Bridge. The fact, the videos of 2021 Janmashtami celebrations, nothing to do with the current political context in India. With that, I'm going to leave you. It's a wrap on 7 at 7. Stay tuned. Big interview with Ashok Gehlot coming up on the other side. But I'll leave you with visuals. Images of Shah Rukh Khan wishing his fans on Eid from his residence. We wish all of you a very happy Eid. Well, this is Salman Khan and Shah Rukh Khan both wishing their fans a happy Eid. With that, I'm going to go into a quick break. Do stay tuned. Up next is To The Point.
So it is actually unreal to see the kind of attention every tweet from Elon Musk gets. But what do? The man has already bought Twitter, and now his next tweet has everyone asking one question: does Coca-Cola actually have cocaine? Is he joking? Or did the company actually add cocaine to its product? Well, the short answer is yes and no. So way back in 1885, when pharmacist John Pemberton came up with the formula of Coca-Cola, cocaine was in it. At least that is what the US government's National Institute of Drug Abuse claimed. What was actually in the formula, if one may think? In his formula, Pemberton used extraction of the coca leaf from which cocaine is made. The formula also contained cola nut, which has caffeine. So the name Coca-Cola was thus inspired by these two main elements. The formula was made at a time when cocaine was legal in the US. It was even used as a common ingredient in medicines. Now I think Pemberton was a marketing genius because he actually marketed Coca-Cola in the initial days as a medicine. He called it a brain tonic and intellectual beverage that could cure headaches, upset stomach and fatigue. Unlike today, since there were no regulations on medicines in the 19th century, many got away with adding addictive ingredients to their products and branding them as having health benefits. In around 1891, some Americans spoke out against the use of addictive ingredients in patent medicines. So following this, manufacturers in the US slowly reduced the content of such ingredients in their products, and Coca-Cola also complied. They began reducing the content of cocaine in the product and removed it completely by 1929. When it's the world's biggest news story, there's only one gold standard of journalism. When it's the world's biggest news story, there's only one gold standard of journalism. Everyone said the road was impossible. Everyone said, not in our lifetime. Everyone said the battle was unwinnable. Only KCR believed and made it possible. And how? Co-powered by Dish HD, Cricket Castly partner. In association with Philips Beard Trimmer. Adapts to you. Welcome back. You're watching To The Point. I'm Preeti Chaudhary. We're going to put the focus on what went down in Jodhpur, viewers, where within a span of 24 hours, or rather within hours, the city became a communal minefield of sorts. It all happened yesterday between 7 p.m. and 3 a.m. this morning. And then, of course, all that happened today. What really led to the communal clashes in Jodhpur? It's come down to two rumors which fueled the fire. Here's more. What is the truth of Jodhpur? Was fake news responsible for the communal fire? Did two rumors lead Jodhpur to the edge? Rumor 1, freedom fighter statue vandalized. Rumor 2, Pakistan flags put on the city square. Who spread the fatal rumors? Did fake news lead to the Eid violence? This is the sinister timeline that turned Jodhpur into a communal minefield. Two
days before Eid, Parshuram Jayanti was celebrated at Jalori Gate. The administration, the cops and the Jalori Bazaar traders came together to give permission for Eid celebrations at Jalori Gate. One-day permission was granted for loudspeakers and Eid flags. 7 p.m. on Monday, Eid flags were put. Around 9 p.m., a rumor spread like fire that Pakistan flags were put. 2 news channels start reporting unverified news that a statue of a freedom fighter has been vandalized by Muslims. BJP Mayor Vinita Seth and other BJP leaders react to this unverified report. At 12 a.m., BJP workers reach Jalori Gate and start pulling out flags and loudspeakers. This video of flags being removed goes viral. Members from the minority community reach the Jalori Gate. Clashes and stone pelting begins. 1 a.m. to 2 a.m. at night, lathi charge by cops. Truce is finally called at 3 a.m. Guarantee given that Eid Namaz will be peaceful. At 8:30 a.m. Tuesday, right before the Eid Namaz, tempers flare up when a saffron flag is spotted at the square. Stone pelting and vandalism by Muslim youth begins. The cops then replace the saffron flag with the Indian flag. BJP leaders reach the site and protest. Hanuman Chalisa chanted by right-wing groups. Curfew in Jodhpur till 1 p.m. 4th of May. दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है. This was the timeline of what went down. Bureau Report, India Today. All right, joining us right now is the Chief Minister of Rajasthan. I want to hand it over to our consulting editor, Rajdeep Sardesai. वेलकम टू आवर स्पेशल कवरेज. जॉइनिंग अस नाउ इज टुडेज न्यूज़मेकर. आज के जो न्यूज़मेकर है वो हमारे साथ है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी. अशोक जी, हमारे साथ इंडिया टुडे पर जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. ये बताइए अशोक जी कि जो जोधपुर में हुआ है किसको आप जिम्मेदार ठहराते हैं, क्योंकि सरकार आपकी है, आप गृह मंत्री हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, जोधपुर आपका होम टर्फ है, तो क्या आप अकाउंटेबिलिटी लेते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं जो कम्युनल वायलेंस जोधपुर में हुई है? सर देखिए, मैंने अभी करौली की घटना हुई थी राजस्थान के अंदर, तब भी मैंने कहा था कि करौली की घटना जब हुई है जिस रूप में हुई थी, रामनवमी पे रास्ता में शांति रही, परंतु देश के 7 राज्यों में मॉडल ऑपरेंडी वही थी जो कि करौली में हुई थी. उसी घटना की पुनरावृत्ति हुई थी 7 राज्यों के अंदर. तो मैंने कहा था ये इनका प्रयोग है जगह जगह दंगे भड़काने का. शुरुआत करौली से करी है जी. वही बात देखा आपने कि जब अलवर के राजगढ़ में जो मंदिर तोड़ा गया, बीजेपी का बोर्ड था वहां पर, उनका प्रस्ताव पास किया हुआ था, तब भी ब्लेम किया गया कांग्रेस को. और तीसरी घटना जोधपुर के अंदर जो आज हुई है, बिना कोई कारण की हुई है, अफवाह फैला के हुई है. ये एक प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं देश के अंदर किस प्रकार से हिंसा का माहौल बना हुआ है उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए. ये आप हम लोगों को सोचना पड़ेगा. पूरे मुल्क में एक माहौल बन गया तनाव का, हिंसा का, बहुत खतरनाक माहौल है और पूरा मुल्क चिंतित है इस बात को लेकर के. सर लेकिन सवाल यह है कि सरकार तो आपकी है, जैसे मैंने कहा गृह मंत्री आप है, लॉ एंड ऑर्डर जो है, कानूनी व्यवस्था जो है वो आपके दायरे में आती है. तो आप अगर बीजेपी को हर बार दोषी ठहराएंगे, सरकार की भी जिम्मेदारी है. इस मामले में सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं हट सकती. जोधपुर में मामला शुरू होता है सर रात को 12 बजे और कुछ घटनाएं होती है, फिर सुबह वापस होता है.
अब ये वापस क्यों होता है? कहीं ना कहीं प्रशासन की ढिलाई की वजह से है। द पुलिस फेल टू एक्ट सर इन द नाइट। अगर सरकार प्रशासन मजबूत होती तो घटना फिर से क्यों होती 8 बजे सुबह? देखिए, घटना तो हो सकती है और कहीं मालूम कमी रहती है तो उसकी जांच भी होती है, एक्शन भी होता है। सवाल ये है कि जब आप षड्यंत्र करके हिंसा फैलाओगे, धर्म के नाम पे आप ध्रुवीकरण करोगे, राजनीति के अंदर भी जो पूरे मुल्क में हो रहा है, पूरा मुल्क, मैंने कहा आपको चिंतित है आज जिस रूप में आज पूरे मुल्क में, मैं फिर कहूंगा, हिंसा का माहौल है, चुनाव में ध्रुवीकरण हो रहा है। ये कोई खतरनाक बात है। जोधपुर हो या कोई क्षेत्र हो, मेरा खाली जोधपुर नहीं है, वो तो ही मेरा खुद का गृह जिला है, पर आज पूरे राजस्थान के अंदर माहौल जो बनाया जा रहा है चुनाव को देखते हुए, वो बहुत ही खतरनाक माहौल बनाया जा रहा है। और ऊपर से इंस्ट्रक्शन है किस प्रकार से नेताओं को, किस प्रकार से आपको क्या एक्ट करना है, किस प्रकार से माहौल बनाना है। अगर कोई जांच पे आगे आएगा तो आपको मालूम पड़ेगा वास्तव में क्या किस प्रकार का माहौल बना के। गहलोत जी, आप बार बार कह रहे हैं कि देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन हकीकत है कि राजस्थान में 3 घटनाएं होती है। एक घटना होती है अप्रैल 2 को करौली में, एक घटना होती है अप्रैल 16-17 को जब अलवर में आपका एक मंदिर डिमोलिश किया जाता है, यार ये आरोप लगाया जाता है, और फिर ये कल रात की घटना होती है। तो राजस्थान में जब 3 घटनाएं लगातार होती है तो कहीं ना कहीं सवाल आपकी सरकार पर उठेंगे, आज आपकी प्रशासन पर, आपकी पुलिस पर उठेंगे। आप खुद जानते हैं जब किसी बीजेपी राज्य में होता है तो आप बीजेपी सरकार को दोष देते हैं, आज कांग्रेस के राज्य में हो रहा है, कहीं ना कहीं आपकी तो जिम्मेदारी होगी गहलोत जी। हमारी जिम्मेदारी तो होनी चाहिए, होती भी है और होनी स्वाभाविक है। जिनकी सरकारें होगी उनकी जिम्मेदारी पहले बनती है, पर जो आज शासन करने वाले लोग, देश में शासन करने वाले लोगों का मैसेज यही है। हम बार बार कहते हैं प्रधानमंत्री महोदय को, आपको आगे आके, मैं 1 महीने से कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी आपको आगे आके देश को संबोधित करना चाहिए कि हिंसा को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं हिंसा की निंदा करता हूँ। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को हिंसा की निंदा करने में कोई तकलीफ होती है? मैं गहलोत जी, प्रधानमंत्री जी, सर गहलोत जी, प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठे हैं, आप जयपुर में बैठे हैं, जोधपुर में घटना होती है जो आपकी होम कंस्टिट्यूंसी मानी जाती है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री को मैसेज देना चाहिए, जरूर देना चाहिए, लेकिन आपकी जिम्मेदारी का क्या जब पुलिस यंत्रणा फेल होती है? सर आप मुझे बताइए सर, 12 बजे जो पहली घटना होती है, उसके बाद ईद की जो प्रार्थना होती है, ईद प्रेयर्स होते हैं, 8 बजे के बाद फिर से घटना शुरू होती है। अफवाहें, लोग कहते हैं अफवाहें फैलाई गई, कुछ लोग कहते हैं सीसीटीवी पर दिखाई दिया गया है कि कौन इसके लिए जिम्मेदार था, कौन तोड़फोड़ कर रहा था रात को। इसके बावजूद पुलिस ने ढिलाई दिखाई। क्या आप मानते हैं पुलिस की ढिलाई थी या नहीं? देखिए, पुलिस ने अपना काम किया है। हर घटना पे, करौली में घटना हुई, 40 लोग गिरफ्तार हुए हैं। राजगढ़ में हुआ तो एटीओ और ईओ को सस्पेंड किया गया है। जोधपुर में अभी तक 53 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। सरकार एक्शन कर रही है। सवाल इस बात का है, जो मैं समझता हूँ पूरे देश को समझना चाहिए, महंगाई को और बेरोजगारी के जो इश्यू है देश के अंदर, उसे ध्यान भटकाने के लिए जानबूझ करके आप देख रहे हो पिछले एक लंबे अरसे से ये माहौल बनाया जा रहा है। उसको हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। सरकार किसी की पार्टी की हो, हिंसा को मैं समझता हूँ सबको मिलकर निंदा करनी चाहिए। सर मेरे पास लेकिन कुछ आंकड़े हैं कि 2021 साल में राजस्थान में 11.1 से क्राइम की घटनाएं बढ़ी है। महिलाओं के खिलाफ जो घटनाएं वो 17.1 से बढ़ी है। क्या आप मानते हैं कि ये सीरियस प्रॉब्लम है या नहीं? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि गहलोत सरकार कानूनी यंत्रणा को पकड़ में लाने में विफल रही है, वो कमजोर पड़ रही है। देखिए, वो तो यही कहेंगे और क्या कहेंगे, वो तो यही कहेंगे। मैं ये कहना चाहूंगा आपको, मैं बहुत ही गंभीरता से कहना चाहूंगा कि मेरे दिल में चिंता है और मैं समझता हूँ आप सहित पूरे मुल्क के लोगों में चिंता है। जो आज साहित्यकार है, लेखक है, पत्रकार है, सब डरे हुए हैं और थक गए लिखते। वो थक गए लिखते कि क्या लिखे, कोई सुनने वाला नहीं देश के अंदर। हालात बड़े गंभीर है, उसको पूरे मुल्क वासियों को, युवाओं को समझना पड़ेगा, ये मेरा मानना है। नहीं, ये गहलोत जी आप बार बार कह रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि सरकार की बीजेपी इसके पीछे। आप बताइए जोधपुर में कौन पीछे था? आप पूरे जोधपुर में आपकी पकड़ है, आप मुझे बताइए इस जोधपुर घटना के पीछे कौन था?
क्या आपके पास कोई सबूत है जब आप आज कहते हैं कि बीजेपी इसके पीछे है? जब आप आज कह रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत वहां के एमपी पहुंचे, उन्होंने सीधा आरोप आप पर किया है। मैं आपसे आज पूछ रहा हूं, आज जब आप कह रहे हैं कि बीजेपी जिम्मेदार है, कोई भी सबूत, कोई भी प्रमाण कि बीजेपी इसके पीछे है? देखिए, प्रमाण तो मैं भी यहाँ बोलना उचित नहीं समझता, वो तो जांच का विषय है। और जब तक तफ्तीश हो और जांच में क्या आके निकलता क्या निकलता है, तब तक कहना मेरे समझता हूँ कि मुख्यमंत्री के लिए उचित नहीं होगा। और बाकी नेता जो केंद्रीय मंत्री है या कोई भी नेता है, उनको आरोप लगाना बड़ा आसान है। मेरा मानना है कि जो हमारी जोधपुर परंपरा है, ईद के दिन हम लोग सब एक साथ बैठते, मंच पे बैठते, चाहे कांग्रेस या बीजेपी नेता हो। इनको पूछो, अगर आप आज सुबह ईद की नमाज में जाते तो आज ये हालात नहीं बनते। क्यों नहीं गए वहां पर? हर बार जाते सब लोग, इस बार क्यों नहीं गए? ये सोचा समझा षड्यंत्र है इन लोगों का। जानबूझ के ये अफवाह फैलाते हैं, दंगे करवाते हैं, हिंसा फैलाते हैं। ये इनका एजेंडा है देश के अंदर और प्रदेश के अंदर। सर, लेकिन ये जब कहा जाता है कि अगर उनका एजेंडा, आप कह रहे हैं कि विभाजित करो लोगों को, ये कहा जाता है कांग्रेस और गहलोत सरकार का एजेंडा है कि मुस्लिम समुदाय को अपनी तरफ रखो, चुनाव आ रहे हैं 18 महीने में, और मुस्लिम समुदाय को एक तरह से अपीसमेंट होती है। जो करौली में हुआ, जो राइटर्स थे उनके खिलाफ उस तरह की कार्रवाई नहीं हुई है जिस तरह से होनी चाहिए। इससे मैसेज जाता है कि जो इसके पीछे भी हो सकते हैं, क्योंकि आप मानेंगे कि दोनों तरफ से कहीं ना कहीं हिंसा हुई है। आप केवल एक समुदाय, एक गुट को नहीं जिम्मेदार ठहरा सकते। तो क्या आप आश्वासन दे सकते हैं कि दोनों के खिलाफ, अगर कोई मुस्लिम ग्रुप इसके पीछे है, अगर कोई मुस्लिम ग्रुप इसके पीछे, उनके खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे? ये तो देखिए, अगर हिंसा रोकना है मुझे या किसी को भी, तो जो आपने कहा मैं उसको समर्थन करता हूं। हिंसा करने वाला चाहे किसी जाति का हो, धर्म का हो, वर्ग का हो, पार्टी का हो, एक सा रवैया रखना पड़ेगा, तब जाके हिंसा रुकेगी, मेरा मानना है। सर, आप कह रहे हैं कि आप दोनों समुदाय के खिलाफ आप ठोस कार्रवाई करेंगे, लेकिन फिर भी मैं एक आखिरी बार आपसे पूछूंगा गहलोत जी कि क्या वजह है कि राजस्थान में ही इतनी लगातार घटनाएं हो रही है? आप कह रहे हैं देश भर में, लेकिन ये अगर आप उत्तर प्रदेश में जाए, जहां हमेशा सांप्रदायिक इस तरह से तनाव होता था, इस बार तो उस तरह का नहीं हुआ है। अब लोग कह रहे हैं कि योगी सरकार ने पूरी पकड़ है, इसलिए वहां सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए। आज महाराष्ट्र में भी इस समय माहौल तनावपूर्ण है, लेकिन वहां इस तरह के कम्युनल वायलेंस नहीं हुआ जो राजस्थान में हुआ है। कुछ ना कुछ वजह होगी। करौली से लेकर जोधपुर तक आप ही का प्रदेश क्यों, आप ही का राज्य क्यों इतने कम्युनल प्रोन बन गया है? देखिए, आपने पहले क्राइम की बात करी। क्राइम हमारे यहाँ नेशनल क्राइम 28% बढ़ा, तब हमारे यहाँ पर क्राइम 15% पे रहा, कम हुआ क्राइम भी। उसी प्रकार से जो दंगों की बात करते हो, हमारे नेताओं को जो बीजेपी के हैं, जिनको एजेंडा दिया गया देश से, देश की सरकार, जो हमारे इनके राष्ट्रीय नेता, उन द्वारा कि कैसे हम लोग दंगे करवाओ, जो अशांति पैदा करो, मुख्यमंत्री को, सरकार को बदनाम करो, चुनाव आ रहे हैं। दो टूक बात की गई लोगों को, इसीलिए ये बढ़ चढ़ करके बदनाम करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। आरोप लगाते झूठे, दम होता नहीं है। म्यूनिसिपलिटी बोर्ड है यहाँ पे राजगढ़ में बीजेपी का, और 35 में 34 मेंबर जो पार्षद है वो है बीजेपी के। 35 में से प्रस्ताव पास उन्होंने किया मंदिर गिराने का, सड़क चौड़ी करने का। उसके बाद में भी पूरा आंदोलन कांग्रेस के खिलाफ पैदा कर रहे हैं। ये इनकी सोची समझी चाल है चुनाव को देखते हुए, मेरा मानना है। आपने बार बार चुनाव का जिक्र किया, इसलिए मैं पूछूंगा। एक अटकलें लगाई जा रही है कि अशोक गहलोत क्या अभी भी मुख्यमंत्री रहेंगे अगले चुनाव तक, या बदलाव होगा? क्या अशोक गहलोत की सरकार पर भी सवाल उठेगा अगर इसी तरह से लगातार दंगे हुए? आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं क्या आप भी तैयार हैं इस बात को लेकर कि शायद राजस्थान में चुनाव के पहले कांग्रेस जिस तरह से पंजाब में किया था, राजस्थान में भी होगा एक बदलाव? देखिए, ऐसी अफवाहें तो सुनते सुनते मुझे 4 साल हो गए, 3 साल हो गए हैं, आगे सुनते रहेंगे। आप निश्चिंत रहो। मैंने अभी कहा एक मीटिंग के अंदर कि सोनिया गांधी जी के पास मेरा इस्तीफा पड़ा है 20 साल पहले का, 22 साल पहले का। पहली बार मुख्यमंत्री बना था, तब से मैंने इस्तीफा दे रखा है। जब चाहे वो यूज कर सकती हैं, कानों कान खबर नहीं लगेगी, सुबह अखबार पढ़ेगी मेरा इस्तीफा हो गया है।
सर एक मुझे बताइए कि आज तो आपका जन्मदिन है, तो पहले मैंने आपको जन्मदिन की बधाई देनी चाहिए थी, लेकिन बीजेपी के नेता वहां भी कह रहे हैं कि अशोक गहलोत जन्मदिन में मस्त थे और जोधपुर में ये वायलेंस हो रहा है। उनको वो कह रहे हैं आप राजस्थान के नेरो बन गए हैं। बीजेपी के नेता जो है जी मिस्टर महाजन जिनका मर्डर हुआ था, प्रमोद महाजन, उस दिन ही मेरा जन्मदिवस था। मैंने सारे प्रोग्राम उस दिन भी कैंसिल किए। प्रमोद महाजन के जिस दिन मर्डर हुआ था उनका, उस दिन मेरा जन्मदिवस था। मैं वो व्यक्ति हूँ कि कभी भी कोई घटना हो, मैंने कभी जन्मदिवस नहीं मनाया। आज भी मैंने तमाम प्रोग्राम छोड़ के मैं चीफ सेक्रेटरी को, डीजी पुलिस को, एसीएस होम को 3 घंटे मैंने मीटिंग करी है, उनको भेजा जोधपुर के अंदर हेलीकॉप्टर के अंदर, और पूरी तरह में लगा हुआ इसके काम के अंदर। जो कहने वाले लोग हैं उनको पूछो आप लोग कहाँ छिप गए थे? रात को जब दंगे की शुरुआत हो गई थी, सुबह आपको जाना चाहिए था ईदगाह पर, ईद की नमाज में आप हमेशा भाग लेते हो, भाग लेना चाहिए था, शांति की अपील करनी चाहिए थी। अब जाकर के वो इस प्रकार की बयानबाजी करें, उसमें कोई तुक नहीं है। अभी भी मैं कहना चाहूंगा, हिंसा किसी को बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी के नेता क्यों नहीं हो। तब जाकर के मैं समझता हूँ कि अब अपना कर्तव्य निभाएंगे जनप्रतिनिधि के रूप में। सर मेरी साथी सहयोगी प्रीति चौधरी आपसे एक सवाल पूछना चाहती। प्रीति सर, मैं सिर्फ 2 सवाल पूछूंगी। पहले तो जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं, पर आपके लिए ज्यादा शुभ नहीं रहा क्योंकि जो जोधपुर में हुआ। एक सवाल पूछना चाहूंगी गहलोत साहब कि अगर घटनाक्रम देखा जाए जो जोधपुर में हुआ, 3 बजे तक उसी स्थल पे आंसू गोले चले, उसी स्थल पे लाठीचार्ज हुआ। आपकी आवाज आ रही है सर? आपको आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है आवाज। हाँ सर, बस पहले तो जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहूंगी, पर इतना शुभ नहीं रहा क्योंकि जो जोधपुर में हुआ है। ये पूछना चाहूंगी आपसे, अगर हम घटनाक्रम देखें, 3 बजे तक सुबह जो जालोरी गेट है जोधपुर का, वहां पर आंसू गोले चले, वहीं पर लाठीचार्ज हुआ। 3 बजे का ट्रूस भी हो गया। दोनों जो गुट थे जिनमें क्लैशेस हो रहे थे, उन्होंने बैठ के सुलह भी कर ली कि भाई सुबह का जो नमाज है बिल्कुल शांतिपूर्वक जाएगा। अब 3 बजे से 8 बजे तक वहां पर कोई प्रशासन का था ही नहीं सर, कि किसी को पता ही नहीं चला कि आके किसी ने झंडा निकाल के भगवा झंडा लगा दिया फिर से। अब ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं माना जाएगा गहलोत साहब? देखिए ये आपके पास खबरें गलत आ रही है। ऐसी स्थिति नहीं है, पूरा कंट्रोल है, कर्फ्यू लगा हुआ वहां पर है। हमारे मैंने कहा कि मैंने हेलीकॉप्टर में एसीएस होम को, एडीजी को, सबको भेज रखा वहां पर। तमाम कंट्रोल में स्थिति है, शांति बनी हुई है। कुछ लोग मीडिया के माध्यम से अफवाह फैला रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा, ऐसे वक्त में हम सब मिलकर कैसे हिंसा को रोकें, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। और आप जानते हो जो एजेंडा किसी पार्टी का हो जी, तो ये बहुत खतरनाक स्थिति होती है, देश के लिए भी, प्रदेश के लिए भी। सर बस एक आखिरी सवाल है, यही सवाल करूंगी, फिर मैं राजदीप सर को वापस दूंगी, राजदीप सरदेसाई जो मेरे साथ बैठे हैं। पर एक सवाल और करूंगी, आपको इस एडमिनिस्ट्रेटिव माना जाता था कि प्रशासन पे इतनी कड़ी पकड़ आपकी है, जो अशोक गहलोत है। अब अशोक गहलोत क्या बार बार बीजेपी को ब्लेम करेंगे, कहेंगे कि उनकी वजह से ये हो गया? अब करौली एक हुआ है, और करौली भी होंगे, क्योंकि ये ज्यादा आपके ऊपर भारी नहीं पड़ेगा कि आपके रहते हुए करौली हुआ है, अलवर हुआ है, जोधपुर हुआ है, अब नागौर में पथराव हुआ है। क्या अशोक गहलोत ऐसे एस एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं रहे हैं अभी कि उन्हीं के, और बार बार चलिए मान लीजिए कि बीजेपी का ही ये पूरा एजेंडा है, अभी ये पूरा नहीं पारित हुआ है कि बीजेपी का है, पर अगर हम मान भी लें, क्या बीजेपी का पूरा एजेंडा है कि आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इतने आप कड़क थे, नहीं रहे हैं क्या? अभी संभाल नहीं पा रहे हैं अपना क्षेत्र? आप निश्चिंत रहो कि हम लोग जो है जिम्मेदारी सौंपी पब्लिक ने, तो उसको निभा रहे हैं मजबूती के साथ में। अभी आपको जान के खुशी होगी कि जब करौली में घटना हुई थी, मैंने कहा ये प्रयोग था इनका, हमने पूरी व्यवस्था करी। रामनवमी पर 7 राज्यों में वही घटना हुई, उसी तरीके से हुई जिस प्रकार करौली में हुई थी। राजस्थान में सबने स्वागत किया, आपस में सभी धर्मों के लोगों ने, यहाँ पर लोगों ने अप्रिशिएट किया। रामनवमी के अंदर एक घटना नहीं हुई यहाँ पर, ऐसी स्थिति नहीं है यहाँ पर मैं मानता हूँ इस बात को, मीडिया के अंदर जिस प्रकार से जो एजेंडा इनका है बीजेपी का, और इतना दबाव मीडिया के खुद ही ऊपर दबाव है देश के अंदर, हम सब जानते हैं इस बात को। मजबूरी है आप लोगों की कि कोई मीडिया वाला हो, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई के दबाव है। हमारी तो कोई मजबूरी नहीं है, आप यहाँ पे बैठ के खुल के बोल रहे हैं। आप ही चल रहे हो।
नहीं आपने हम लोग का मुकाबला कर रहे हैं। नहीं अशोक गहलोत जी, आपने सब पर इस इंटरव्यू में दोष दिया है, मोदी सरकार पर, केंद्र पर, भाजपा पर, मीडिया पर, सभी को आप दोष दे रहे हैं, लेकिन खुद आप जिम्मेदारी आज नहीं ले रहे हैं। आज आपका जन्मदिन है, लेकिन फिर भी थोड़ी तो जिम्मेदारी तो आखिर मुख्यमंत्री को लेनी पड़ेगी। सर, जब गुजरात 2002 के दंगे हुए थे, आप जानते हैं पूरे कांग्रेस ने, मोदी जी मुख्यमंत्री थे, उनको जिम्मेदार ठहराया था। जब भी कोई ऐसी सौभाग्य से कोई कैजुअलिटी कहीं नहीं हुई है तीनों दंगों में जी, खाली तनाव हुआ है जी, कुछ दुकानें जली गई है जी, उनको मुआवजे दे रहे हैं। यहाँ कोई कैजुअलिटी एक भी नहीं हुई है तीनों जगहों पर, खाली कुछ मारपीट की घटना हुई है। ये कोई कम बात है क्या कि तीनों घटना में किसी को हमने आगे नहीं बढ़ने दिया और समय पर कार्रवाई करी है। आप निश्चिंत रहे, आपकी चिंता को मैं शेयर करता हूँ कि देश में कहीं भी, प्रदेश में कहीं भी दंगे नहीं होने चाहिए, शांति, भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत से हम सब रहें, ये हमारा प्रयास है। आप आश्वासन दे रहे हैं कि ये जो प्रयोग आप कह रहे हैं, ये प्रयोग आप कह रहे हैं कि जोधपुर के बाद घटनाएं अब नहीं होगी। आप पूरी तरह से कह सकते हैं, आश्वस्त हैं कि सख्ती से अब काम किया जाएगा, पुलिस हो या कोई भी गुट हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब पर कार्रवाई होगी। देखिए, आप निश्चित रहें, राजस्थान में हम लोगों ने संकल्प ले रखा है, हम चाहेंगे राजस्थान में शांति, सद्भाव, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा रहे, तभी राजस्थान आगे बढ़ेगा। ये बात का एहसास राजस्थान वासियों को भी है। पर जो मिसक्रिएंट एलिमेंट है, जो सत्ता में अगर केंद्र में बैठे हुए हैं, उनकी ड्यूटी बनती है वो अपने लोगों को यहाँ पर रोके झूठे आरोप लगाने से या रोके उनको भड़काने से। वो खुद ही ऐसी बुला बुला की मीटिंग करे दिल्ली के अंदर, माहौल बिगाड़ रहे हैं चुनाव के देखते हुए। इसको आपको उनको समझना पड़ेगा। फिर भी आप निश्चित सर राजस्थान में चुनाव है, देश भर नहीं सर राजस्थान में चुनाव है, सर राजस्थान में चुनाव है, लेकिन सभी राज्यों में नहीं है सर। जहां राजस्थान में चुनाव 18 महीने के बाद है, लेकिन बाकी जगहों में कई जगह ऐसे हैं जहां चुनाव नहीं है, इसके बावजूद वहां घटनाएं हुई है। यानी आप ये नहीं कह सकते चुनाव है इसलिए। क्या आप आज आरोप लगा रहे हैं कि 18 महीने बाद चुनाव है इसलिए आज जोधपुर में दंगे हुए? हमारे यहाँ तो पहले शुरू कर दिया है, बाकी मध्य प्रदेश में देखिए अब क्या हो रहा है। बुलडोजर चल रहे हैं वहां पर, निर्दोष लोगों में चल रहे हैं। पूरे देश में जो हाहाकार मचा रखा है इन लोगों ने, उन तत्वों को समझना पड़ेगा हम सबको। देश को बचाना है तो मुझे चिंता लगी हुई है। चलिए अशोक गहलोत जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। मैं आपको अब आज तक के स्टूडियो ले जा रहा हूं, बट बहुत बहुत शुक्रिया। All right. You just heard the Chief Minister of Rajasthan, Ashok Gehlot, on where the current investigation stands, where what went down in just about 9 hours in Jodhpur, what really happened. We're going to play that exclusive interview with Rajdeep Sardesai again at about 9 p.m. To stay with us, up next is Gaurav Samit.จุดประสงค์ตอนแรกมันไม่ได้คิดอะไรกันคือมันเริ่มจากอยากทำแล้วก็ถ่ายด้วยมือถือพอถ่ายแล้วภาพมันออกไปเนี่ยมันเริ่มมีคนสนใจเข้ามาก็มีการสร้างกลุ่มคนก็เริ่มเฮ้ยผมอยากต่อยแบบนี้บ้างแบบนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มจากตรงนี้ All
ในเรื่องของพรบมวยคือเราไม่ได้เข้าพรบมวยเราไม่ได้จัดมวยเถื่อนผมตอนนี้คือขึ้นอยู่กับกรมปกครองซึ่งเป็นกิจกรรมไฟขับเราไม่ได้เป็นมวยเราไม่ได้เป็นกีฬาเราเป็นกิจกรรมหนึ่งซึ่งมีสมาคมของเราสมาคมไฟขับไทยแลนด์ When it's the world's biggest news story, there's only one gold standard of journalism. You are watching The Badshah of Bollywood owns one of the world's fastest cars as well as one of the most expensive. This is the Bugatti Veyron, which is worth rupees 12 crores. The car has a top speed of over 400 kilometers per hour. Amir Khan bought himself a Mercedes-Benz S600, which is said to be a bomb-proof car. It costs over 10 crores and the actor got himself this car from a security point of view after receiving death threats. Hrithik Roshan bought a Rolls-Royce Ghost Series 2, which is estimated to be around 7 crores. The base model of the car starts at rupees 4.5 crores. However, reports suggest that the actor has customized the car a lot as per his needs. Mukesh Ambani's Rolls-Royce Phantom Series 8 EWB beats all the other big toys he has in his garage. It is priced at rupees 13.5 crores without customizations. He also owns a fully armored Mercedes-Benz S-Guard with bulletproof doors. It's also known as a fortress on wheels. Reuben Singh, a London-based Indian origin businessman, made headlines